है बेटा जी। अच्छा, now let us start by examining what is a budget constraint. Before I talk about budget constraint, I want to introduce something which is known as consumption bundle. बेटा, what is a consumption bundle? किस चीज को बोलते हैं consumption bundle? Consumer consumes different commodities. For example, I can go ahead and I can consume one apple, two mangoes, one TV, 5 t-shirts. Whatever a consumer consumes, when I list that down, जब मैं उसको लिखती हूं, when I go ahead and I tell exactly what a consumer is consuming, then that is called as a consumption bundle. So we can say that a list of what consumer consumes. So when I list it down, that what my consumer is consuming, okay, that is called consumption bundle. That is called as consumption bundle. So listing what consumer will consume is consumption bundle. Now in economics, generally, हम economics में consumption bundle को कैसे दिखाते हैं? How do we depict a consumption bundle in economics? We represent it using x1, x2. This beta represents a consumption bundle. इसको हम एक consumption bundle बोलते हैं. क्या ये represent कर रहा है? First of all, beta, it is representing that consumer is consuming two commodities. What it is representing? Consumer is consuming two commodities. So, consumption of two commodities. Beta, I can call these commodities as good 1 and good 2. इनको हम नाम दे देते हैं. That there are two commodities, good 1 and good 2. Second, how many units of good 1 consumer is consuming? कितना good 1 consume कर रहा है? So consumer is consuming x1 units of good 1. How many units of good 1 consumer is consuming? Consumer is consuming x1 units of good 1. Similarly, consumer is consuming x2 units of good 2. So when we go ahead and when we tell what consumer is consuming, जब हम ये बताते हैं कि एक consumer consume क्या कर रहा है, that is called as consumption bundle. उसी को consumption bundle बोल देते हैं. That's called a consumption bundle. So when I write x1, x2, it represents that I am consuming two commodities. x1 units of good 1 and I am consuming x2 units of good 2. बेटा, any consumption bundle, जब भी हम कोई भी consumption bundle लिखते हैं, it is represented using capital X. So capital alphabet is representative, represents
consumption bundle. It represents consumption bundle. Clear? Is this absolutely clear to everyone? तो देखो ध्यान से. Example. Beta, when I say x is equal to 7,8, it means consumer is consuming 7 units of good one. Good one के कितने units consume कर रहे बेटा हम? 7. And he is consuming 8 units of good. He is consuming 7 units of good one and he is consuming 8 units of good 2. ठीक है बेटा? अच्छा, okay. Now, beta, suppose I tell you that price of good one, ये है P1. And I tell you price of good 2, this is P2. Price of good 1 P1 दिया हुआ है और price of good 2 P2 दिया हुआ. You're given price of good 1 is P1, price of good 2 is P2. अच्छा, tell me something. What will be your expenditure on good 1 beta? Very simple. I am buying X1 units of good 1. हर एक का price P1 है. So expenditure on good 1 will be P1 X1. This is the amount you are spending on good 1. जैसे for example बेटा, अगर मैं आपको बोल दूं कि price of good 1 is 4 rupees and you are purchasing 10 units of good 1. Price of good 1 is 4 rupees and you are purchasing 10 units of good 1. तो क्या कह सकते हैं? What is the amount spent or expenditure on good 1? कितना खर्च किया आपने good 1 पे? 10 units, each purchased for 4 rupees. So you are spending 40 rupees on good 1. You are spending 40 rupees on good 1. So we can go ahead and we can say that P1 X1 represents, क्या represent कर रहा है बेटा? Expenditure on good 1. Similarly, can you tell me what is the expenditure on good 2 beta? Yes, ma'am, very simple. Expenditure on good 2 will be P2 X2. This is your expenditure on good 2. Price of good 2 into number of units of good 2. ठीक है बेटा? अच्छा, अब बताओ मुझे, let's suppose that I am telling you income of consumer is M. Consumer की जो income है वो M है. And consumer only lives in 2 commodity economy. यही 2 commodities है बस, good 1, good 2. तो tell me something. The total money that consumer can spend, जो भी consumer total खर्चा करेगा, it must be less than income of consumer. उसकी income से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकता ना. So whatever money consumer will spend, जो भी consumer खर्चा करेगा, it must be less than or equal to the income of the consumer. So we can say that the expenditure by consumer must be less than equal to income of consumer.
जो भी कंज्यूमर का खर्चा होगा, वॉट एवर विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर इज जो गुड वन पे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग ऑन गुड वन, प्लस जो गुड टू पे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू। So we can say that expenditure on good 1 plus good 2 must be less than equal to income of consumer. वो कंज्यूमर की इनकम से कम होना चाहिए। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। आई विल जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट। राइट बेटा? तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन क्या हो गया बेटा? P1 X1। एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू क्या हो गया बेटा? P2 X2। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितना भी खर्चा करोगे इनकम से कम ही होना चाहिए। वॉट एवर यू स्पेंड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू योर इनकम। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। राइट? दिस equation that I have written, this is your constraint. This is called your budget constraint. Constraint माने क्या? क्या है constraint इस चीज में? Limitation. That means you are limited. आप एक लिमिट हो रहे हो, आपके ऊपर एक लिमिट लग रही है। You are limited by the level of your income. You cannot spend more than your income. आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। So we can say that the expenditure incurred by consumer cannot exceed his income. We cannot exceed the income of the consumer. Beta, all those bundles that satisfy this equation, जो भी कंजम्पशन बंडल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, all those bundles, I am repeating, all those affordable consumption bundle that satisfy this equation form the budget set of the consumer. लिखते हैं, please write down. All affordable consumption bundle at prices P1, P2 which cost less than income of consumer, less than or equal to, which cost less than की जगह लिख दो, which cost up to the income of consumer are called budget set of the consumer. Right? This set, all affordable consumption set at price P1, P2 which cost up to the income of the consumer, consumer की income के बराबर ही cost होना चाहिए, that is called as budget set of the consumer. Example लेके देखते हैं बेटा। क्वेश्चन बेटा, P1 is 2 rupees, price of good one 2 rupees है, P2 3 rupees, income of consumer 60 rupees. ठीक है? You need to tell me, are the following consumption bundles part of budget set
ऑफ कंज्यूमर। क्या ये कंजम्पशन बंडल कंज्यूमर के बजट सेट के बराबर हैं? सो फर्स्ट बंडल आई एम गिविंग यू बेटा 8,3। देखते हैं बेटा व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर। 8,3 पे कितना एक्सपेंडिचर लगेगा? आई एम परचेजिंग 8 यूनिट्स ऑफ गुड वन, हर यूनिट 2 रुपीज का है एट प्राइस 2। I am purchasing 3 units of good 2, each at 3. This will be 16 plus 9. This will be 25, beta. 25 is less than my income. ये affordable bundle है. So we can say, therefore, it belongs to budget set as expenditure incurred is less than income of consumer। क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इनकर इज लेस देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट विल बिलोंग टू द बजट से। क्लियर हुई बात? ठीक है बेटा, सेकेंड बंडल देखते हैं। द सेकेंड बंडल दैट वी हैव दैट इज 10,40। अब देखो, आई एम परचेजिंग, व्हाट विल बी माई एक्सपेंडिचर बेटा? I am given that price is 2 and 3. So 2 rupees 10 units, 3 rupees 40 units, 20 plus 120, 140. This is more than my income. Therefore, it doesn't belong to budget set. इनकम से ऊपर हो रहा है ना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो इफ दैट इज द केस, इट डज नॉट बिलोंग टू माय बजट सेट। क्लियर हुई? ओके बेटा, थर्ड पॉइंट, सपोज आई टेल यू दैट योर बंडल इज 30,0। अब देखो बेटा, व्हाट विल बी योर एक्सपेंडिचर? ईच यूनिट ऑफ गुड वन इज फॉर 2 रुपीज और ये है 3 रुपीज का। सो 2 रुपीज 30 यूनिट्स, 0 यूनिट्स 3 रुपीज 60 रुपीज। बेटा व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर? 60। दिस इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जितना खर्च कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर स्पेंडिंग इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो सिंस expenditure is equal to income of consumer, it belongs to budget set। बेटा आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है ना? तो when will something belong to budget set? फाइनली एक रूल लिख लेते हैं, whenever your expenditure on consumption bundle is less than or equal to your income, then we can say that the consumption bundle belongs to budget set। Then the consumption bundle will belong to the budget set। Clear beta? Okay beta, thank you।
Okay, beta. So in the last class, we had gone ahead and introduced the concept of budget constraint. हमने पढ़ा था कि budget constraint क्या होता है. Today, I want to go ahead and I want to talk about an important concept in this lecture, and that is going to be that of a composite code. देखो, first of all of you may go ahead and think कि ma'am, this is very impractical. कि our consumption bundle only consists of two goods. हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा जो consumption bundle है, what do we say? That our consumption bundle, it only has two goods, x1 units of good 1 and x2 units of good 2. But this assumption of only two goods is far from any real world scenario. असली में सिर्फ दो गुड्स होना, ये तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बहुत ही अलग है. इट इज वेरी फार फ्रॉम एनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो, राइट? सो यू मे गो अहेड एंड यू मे आस्क कि मैम व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इफ वी आर not interested in just two goods? So there are two things that we have to understand. First of all, beta, we do this for the purpose of simplification. हमारा aim क्या है? हम मल्टीपल गुड्स के साथ भी डील कर सकते हैं. वी कैन डील विद n गुड्स कंजम्पशन बंडल ऑल्सो, गुड 1, गुड 2, गुड 3 till good n. We can deal with n good consumption bundle, but this will be very complicated to use. We just want to introduce a concept to you. हमें ये पता है कि expenditure on the goods has to be less than equal to income. So whether I talk about two goods or many goods, how does this matter? If there are two goods, I can write P1 x1 plus P2 x2 less than equal to income. If there are three goods, I can write P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 less than equal to income. If there are n goods, तो कोई दिक्कत नहीं है. We can write P1 x1 plus P2 x2 and so on plus Pn xn less than equal to income. I can simply extend this model to multiple goods. Why are we dealing with two goods? Because this is a simplified model to work with. But suppose, second, I tell you कि बेटा मेरा फोकस ना एक गुड पर है, राइट? जैसे आई वॉन्ट टू जस्ट फोकस ऑन द डिमांड ऑफ मिल्क. मुझे सिर्फ मिल्क के डिमांड पे फोकस करना. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट. सो इन केस वी आर इंटरेस्टेड in studying only one good, then the other good can represent everything else that consumer wants. For example, if consumer is interested in studying the demand of milk, अगर हम मिल्क का डिमांड पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, then what we can do, beta? x1 can represent the quantity demanded of milk. x1 को हमने quantity demanded of milk represent कर दिया, and x2 can represent demand of all other commodities. समझे? x1 can represent the demand of milk and x2 can go ahead and represent the demand of all other commodities. बाकी सारा commodities का demand को मैंने x2 से represent कर दिया. So what will be this interpretation now? x2 can go ahead and represent the amount spent on other goods, right? What x2 can represent? The dollar or the rupees or the amount that you are spending
on other good. Because this is already in amount terms बेटा, इसको पहले ही हमने पैसों के terms में लिख दिया, units की जगह. I am already writing this in the terms of amount. I am not writing this anymore in terms of unit. So therefore, price of amount is always one only. है ना? $1 का प्राइस $1 है, $2 का प्राइस $2 है. So price of amount is nothing. Price of $1 is $1 only. So now my budget constraint, it will look like this. P1 X1 plus X2 less than equal to income of consumer. ध्यान से समझो बात को. X1 represents the units of milk purchased. कितना मिल्क खरीद रही हूं मैं. P1 represents the price of each unit of milk. So P1 into X1 is my expenditure on milk. कितना खर्चा मैं मिल्क पे कर रही हूं. P1 X1 is my expenditure on milk. Now I can go ahead and I can say that X2 represents expenditure on all other commodities. X2 क्या हो गया कि मिल्क को छोड़कर, leaving milk aside, whatever I am spending on all other commodities, beta, that is X2. And then I have M here. And this M represents the income of consumer. M हो गया income of consumer. So now let me just go ahead and give you an example. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो. Example. Price of milk is 10 rupees. I am purchasing 5 units of milk. Income of consumer is 200. And I am saying find X2. Where X2 is what beta? It is representing the money spent on all other goods. कितना पैसा मैं बाकी सारे goods पे खर्च कर रही हूं. The total money I am spending on all other goods, that is X2. तो देखो ध्यान से. I know P1 X1 plus बेटा अगर मैं budget line पर हूं, if I am on the budget line, so P1 X1 plus X2 will be equal to income of the consumer. This equal to sign represents that my entire income is spent, right? So what can I say beta? 10 into 5 plus X2 बच्चे equal to 200. So X2 will be what बच्चों? 200 minus 50, it means 150. So the amount I am spending on all other goods, that is 150. ठीक है. Now, X2 can be called as composite good. What can we call X2? X2 can be called as composite good. What is a composite good? Composite good represents all other goods except good 1. Good 1 यहाँ पे क्या है? Good 1 is milk. So my demand of all other goods except milk, better that will be composite good. So please write down good 2 represents composite good. What is a composite good beta? It shows demand for all other goods. जितने भी बाकी goods हैं, उन सबका demand except demand for good 1. Good 1 का demand छोड़ के whatever you are demanding, that is
composite good. Is this clear? So everything that you are spending except the money spent on good one, उसको हम composite good बोल देंगे. I hope this is absolutely clear to everyone. ठीक है? ठीक है बेटा. Homework question. Just try to go ahead and do this yourself. So suppose I tell you that good one represents the demand of popcorns. ठीक है बेटा? And I am telling you that each unit of popcorn costs P1. Write equation of budget line beta if x2 represents composite good. If x2 represents composite good. ठीक है, very simple homework question बेटा. क्या बोला गया है? I am telling you good one represents the demand of popcorn. Good one का demand popcorn का demand है. Each unit is costing you P1. ठीक है, and you need to write the budget line where x2 is the composite good. ठीक है, I hope this concept of composite good is absolutely clear to you. Okay बेटा, thank you. Hello, good afternoon, everyone. So, beta, now in today's class, we will go ahead and we will talk about the properties of budget set. ठीक है? अच्छा, beta, what is the equation of budget line? क्या equation है budget line का? When you are on the budget line, you are spending all your income. आप अपने सारी इनकम को खर्च कर रहे हो अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो. So when a consumer is on the budget line, his equation will be P1 x1 plus P2 x2 is equal to n. ठीक है, ये जो भी बंडल्स हैं, बंडल मीन्स ये जो कंजम्पशन है गुड वन एंड गुड टू का, वट एवर बंडल आई हैव x1 comma x2, बेटा दिस इज कॉस्टिंग the entire income of consumer. ये consumer का सारा income, it is costing consumer his entire income because it is an equal to sign, right? So it is exhausting the entire income of the consumer. अच्छा, अब ध्यान से देखना, हाँ, listen to me very carefully. देखो, I am going ahead and I am taking good one consumption here and good two consumption here. ठीक है? Tell me something, beta. If I go ahead and I ask you how much units consumer can consume if he spends his entire income on good one. अगर कंज्यूमर अपना सारा पैसा गुड वन पे खर्च कर दे तो वो कितने यूनिट्स खरीद पाएगा? If consumer spends his entire income on good one, how much will be he buying? So what can you say, beta? Very simple. P1 x1 plus
P2 X2 is equal to M. Case 1, entire income on good 1 beta. तो माने good 2 will be 0 units of good 2 है कि नहीं? So if I just put 0 here, what will I get beta? P1 X1 plus P2 into 0 is equal to M. P1 X1 is equal to M. So beta, what will be my X1? M divided by P1. So if a consumer is spending his entire income on good 1, अगर वो अपना सारा पैसा good 1 पे लगा दे, then he will be buying M by P1 units of good 1. Similarly, beta case 2. Entire income on good 2. Consumer good 1 consume ही नहीं कर रहा. He is consuming his entire income on good 2. Now what will happen beta? देखो ध्यान से. P1 X1 plus P2 X2 is equal to M. He is putting his entire income on good 2 now. So good 1 ka consumption will be 0. So I will put 0 here. P1 into 0 plus P2 X2 is equal to M. So beta, what will I get? P2 X2 is equal to M. X2 will be M by P2. So if the consumer is spending his entire income on good 2, अगर वो सारा का सारा income good 2 पे खर्च कर दे, he will purchase M by P2 units of good 2. If I join this, है ना? If I join this, तो बेटा this is my budget line. ये हो गया मेरा budget line. All bundles on the budget line, चाहे मैं point A पे हूं, whether I am point B, point C, point D, point E, all bundles on the budget line, जब तक मैं budget line के ऊपर हूं, I am consuming my entire income. So please write down all bundles on the budget line exhaust entire income of the consumer. In सारा का सारा consumer का income is getting exhausted. ठीक है? अच्छा, now if I am below the budget line, मतलब I am anywhere here beta, in this yellow region, I am below the budget line. So if I am below the budget line, माने मेरा पूरा income use नहीं हो रहा. Suppose point G, point H, I am not using the entire income, less than income hai. So this is exhausting less than full income. सारा income खर्च नहीं हो रहा. I am not spending the entire income. I am only spending my income partly. Clear beta? ठीक है. Now, बच्चे, next thing that we need to go ahead and understand, that is called as slope of budget line. Beta, I will teach you 3 ways to find slope of budget line. 3 तरीके से हम budget line का slope निकालेंगे. There will be 3 ways we will be using. ठीक है बेटा? So method number 1 बच्चे. Please understand this thing. Any equation, method 1 है ये, हाँ? Beta, any equation in maths can be written in the form of y is equal to mx plus c.
किसी भी इक्वेशन को, जब हम मैथ्स में कोई भी इक्वेशन लिखते हैं बेटा, एनी लाइन इक्वेशन, इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पे ना दिस m बच्चे, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, एंड दिस c, it represents the intercept on y axis। बेटा क्या होता है स्लोप? व्हाट इज स्लोप? स्लोप टेल्स अस how much change is there in anything which is on the y axis divided by anything which is on the x axis। ध्यान से समझना, स्लोप क्या बता रहा है कि y में कितना चेंज आएगा जब x में चेंज आएगा। whenever there will be change in y, how much change will be there in x। let's take an example। जैसे बेटा यहां पे आई एम टेकिंग योर हैप्पीनेस, हियर आई एम टेकिंग योर पॉकेट मनी, है ना। एवरीबडी विल बी हैप्पी व्हेन यू विल गेट पॉकेट मनी बेटा। तो हियर आई एम टेकिंग हैप्पीनेस, हियर आई एम टेकिंग पॉकेट मनी। बेटा मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, दिस इज माय अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, हैप्पीनेस एंड पॉकेट मनी, ठीक है। अच्छा नाउ आई एम सेइंग व्हेन आई गेट जीरो पॉकेट मनी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। वी कैन स्टिल बी हैप्पी, वी कैन स्टिल एंजॉय लाइफ, है ना। सो व्हेन यू गेट जीरो पॉकेट मनी, दिस इज योर हैप्पीनेस। ये हो गया ये वैल्यू, दिस सी। इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, सो दिस इज सी। अब बात करते हैं स्लोप। दिस इज द स्लोप m, ये है स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप टेलिंग मी बेटा? हाउ माय हैप्पीनेस विल चेंज when there will be change in pocket money। मेरा हैप्पीनेस कैसे चेंज होगा? हाउ माय हैप्पीनेस इज गोइंग टू चेंज when there is going to be change in the pocket money। समझे बात को? So this is what is the meaning of slope and intercept। अब we will go ahead and we will try to understand this concept through our budget line। तो देखो what is the equation of budget line बेटा? P1 x1 plus P2 x2 is equal to n। What is coming on the y axis बेटा? good 2, x axis पे good 1, so good 2 के terms में लिखते हैं। so I will get P2 x2 is equal to m minus P1 x1, m minus P1 x1, ठीक है बेटा। अच्छा what will be x2 from here बच्चे? x2 will be m by P2 minus P1 by P2 x1, ठीक है। सो दिस इक्वेशन बेटा आई कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ मैथ्स इक्वेशन जो हमने अभी भी पढ़ा, आई कैन कंपेयर इट विथ दैट। सो व्हाट इज माय मैथ्स इक्वेशन? y इज इक्वल टू m x प्लस c। इसको रीराइट कर लेते हैं। यू कैन राइट दिस एज माइनस p1 बाय p2 इंटू x1 प्लस m बाय p2, ठीक है। नाउ जस्ट कंपेयर दिस। सो यू आर राइटिंग y, ये y एक्सिस पे आ रहा है ना, दिस इज कमिंग ऑन द y एक्सिस इज इक्वल टू बेटा दिस इज द स्लोप m, बेटा दिस इज x प्लस बेटा दिस इज द इंटरसेप्ट टर्म c। क्लियर? तो नाउ नोटिस दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज हैविंग अ नेगेटिव साइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो रहा है बेटा? दैट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन। तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? फर्स्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज माइनस P1 by P2। बेटा सिंस इट हैज अ नेगेटिव साइन, it means that it is a downward sloping line। this is a positively sloped line, upward sloping। जब नेगेटिव साइन हो गया तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। so it means that budget line is downward sloping। what do we know about y axis? y axis का इंटरसेप्ट क्या बन रहा है? I am getting the intercept of y axis as m by p2। so intercept
of y-axis is P2. M by P2 is the intercept of y-axis and slope of budget line is minus P1 by P2. Clear? Clear है ये बात एकदम? तो अब देखो जरा that y-axis intercept I was anyways getting M by P2 only ना? देखो यहाँ पे. So this is verified कि y-axis intercept is M by P2. So now I can just go ahead and I will just replot this budget line. हाँ बेटा, इधर आ रहा है M by P2. Here I had M by P1. हाँ, इसका the slope of this will be minus P1 by P2. Beta, this is good 1. And beta, this is good 2. I have good 1 and good 2. Is this clear to everyone? एकदम clear हो गई ये बात? Making sense? ठीक है बच्चे. So this is how you can find the slope. अच्छा, अब slope बता क्या रहा है? What is slope telling me? To take an example. Suppose I tell you price of pencil is 5 rupees. Price of pen is 10 rupees. एक पेन 10 रुपए का आता है और एक पेंसिल 5 रुपए की आती है. प्राइस ऑफ पेंसिल इज 5 रुपीज, प्राइस ऑफ पेन इज 10 रुपीज. नाउ बेटा आई एम आस्किंग यू कि सपोज आपके पास बहुत सारे यहाँ पे पेन्स हैं. यू हैव मेनी पेन्स विद यू. यू हैव अ बास्केट ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, है ना? नाउ आई टेल यू दैट यू नीड वन मोर पेन. आपको एक और पेन चाहिए. आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो कि आई वॉन्ट टू सेल माई पेंसिल, मुझे आपको पेंसिल बेचनी है, बट इन रिटर्न कैन यू प्लीज गिव मी पेन. शॉपकीपर सेज ओके, यू कैन डू दिस, बट एट व्हाट रेट यू विल ट्रेड ऑफ बेटा? यू आर गिविंग पेंसिल, आप पेंसिल दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग पेन इन रिटर्न. कितना पेंसिल देना पड़ेगा सो दैट यू कैन परचेज वन पेन? 2 पेंसिल्स. When you will give 1 pencil to this shopkeeper, he will give you 5 rupees in return. When you will give 2 pencils to this shopkeeper, he will give you 10 rupees in return. From this 10 rupees, beta, you can buy pen from this shopkeeper. आप ये पेन खरीद सकते हो. So, if I ask you how many pencil you have to give up to purchase 1 unit of pen, कितना पेंसिल देना पड़ेगा एक पेन खरीदने के लिए? 2 पेंसिल्स. क्लियर है ये बात? यू हैव टू गिव अप 2 पेंसिल्स. जब 2 पेंसिल दोगे, व्हेन यू विल गिव अप 2 पेंसिल्स, यू विल अर्न 10 रुपीज. व्हेन यू विल अर्न 10 रुपीज, यू विल यूज दिस 10 रुपीज टू परचेज 1 पेन. क्लियर? अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज द प्राइस रेशियो? क्या है ये प्राइस रेशियो बिटवीन पेन एंड पेंसिल? प्राइस ऑफ पेन है 10 रुपीज एंड प्राइस ऑफ पेंसिल है 5 रुपीज. दैट मीन्स द प्राइस रेशियो इज 2. प्राइस रेशियो भी 2 ही आ रहा है. प्राइस ऑफ पेन इज 10 रुपीज एंड प्राइस ऑफ पेंसिल इज 5 रुपीज. तो प्राइस रेशियो इज 2. तो ये प्राइस रेशियो, व्हाट इज दिस टेलिंग अस बेटा? इट इज टेलिंग अस द रेट एट विच market substitutes one good for another. है ना? The rate at which market substitutes one good for another. तो ये बोल रहा है कि ठीक है, आपको कितना पेंसिल, how many pencil you have to give up to purchase an extra unit of pen. ये अगर आपको पता करना है तो you can simply find the price of pen divided by the price of pencil. यही तो हमने किया. This is where I am getting to. Clear हुआ ये example? Is this making sense? So what is this slope telling us बेटा? अच्छा, why negative sign? क्योंकि हमें देना पड़ रहा है. I have to give up pencil to purchase pen. कुछ दे रहे हो कुछ लेने के लिए.
right? You're giving up something to take something else, right? So what is this slope telling us? This slope is telling us how many, see, I am moving from point A to point B. Mane, I am increasing the consumption of good 1. I am giving up on good 2. So how many good 2 I have to give up? कितना good 2 मुझे देना पड़ेगा for an additional unit of good 1? एक extra good 1 पाने के लिए how much good 2 I have to give up? That is what this slope is telling me. So please write down the slope of budget line tells us how much amount of good 2 the consumer must give up to consume an additional unit of good. कितना good 2 मुझे देना पड़ेगा? How much good 2 I have to give up for an extra unit of good 1? That is what this is telling me, बेटा. अच्छा, method number 2, इसी से आपको समझ में आ जाएगा. So let me just write method 2 to find the slope. ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ बेटा, देखो, I am saying equation of budget line क्या है बच्चे? The equation of budget line can be written as P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of consumer. अच्छा, एक बात बताओ जरा ध्यान से, listen to me very carefully. हाँ, ये मेरा बजट लाइन है बेटा. दिस इज पॉइंट ए सपोज ऑन द बजट लाइन. बच्चे, दिस इज गुड 1. बेटा, this is good 2. At point A, I am consuming x1 units of good 1, x2 units of good 2. ठीक है? अच्छा, when I go to point B, जब मैं point B पर गई, that is also on the budget line. budget line पर ही है. So try to understand that at point A, I am consuming my entire income. यहां पे भी मैं entire income consume कर रही हूं. And at point B also I am consuming my entire income. But at point B, what has happened now? I have changed the amount of good x to x1 dash. And I have changed the amount of good 2 to x2 dash. मैंने good 1 को बढ़ा दिया और good 2 को कम कर दिया. So what happens is, can I write that this point B, bundle B, is nothing but जो भी bundle A था, x1, x2, I have done some changes in that bundle. उस bundle में ही मैंने कुछ change किया. The change can be positive or negative. Change है. I am bringing some change in the bundle. Isn't it? अच्छा, देखो ध्यान से, try to understand this thing. Suppose बच्चे मैं कहती हूं कि bundle A is 4,5 and bundle B is suppose 7,2. ठीक है? तो बेटा, I am changing good 1 by positive 3 units and I am changing good 2 by negative 3 units. good 1 में 3 units add कर दिए और good 2 में 3 units कम कर दिए. This is what I have done. So bundle B, can I represent this bundle B as bundle A plus some change, bundle A plus some change? ये जो change का value है, it can be very well positive or negative. Equal होने का भी जरूरत नहीं है. It यहाँ पे it could have been very well 1 also.
It would depend on क्या new bundle है which is affordable. But try to understand that bundle B, ये जो bundle है, it can be written as bundle A with some change. कुछ हमने यहां कम किया, कुछ बढ़ाया और bundle B आ गया. I've made some changes in bundle A in good 1 and good 2 consumption and I've got bundle B. So bundle B can be, so we can say that bundle B can be written as x1 plus change in x1. जो भी बंडल ए था उसमें कुछ चेंज किया तो बंडल बी आ गया. बट बंडल बी इज ऑल्सो ऑन द बजट लाइन, वो भी तो बजट लाइन पे है. सो बंडल बी also satisfies budget line equation. Bundle B bhi, it is going ahead and it is satisfying the equation of the budget line. So if it is satisfying the equation of budget line, beta bundle B ka jo bhi bundle hai, whatever is the consumption of good 1 and whatever is the consumption of good 2, it should be equal to income. समझ रहे हो बात को? This is bundle B. Bundle B पे whatever expenditure I have incurred, जो भी मैंने खर्चा किया है, it should be equal to the income of consumer. ठीक है? तो I have got two equations now बेटा. एक इक्वेशन बंडल ए का आया है which is this. बंडल ए क्या था? बंडल ए is x1 comma x2. ये उसका इक्वेशन है. And this is the equation of bundle B बच्चे. Both are on the budget line. एक बार इस तरह लिख लेते हैं. Bundle A equation is P1 x1 plus P2 x2 equal to M. Bundle B equation is P1 x1 plus change in x1 plus P2 x2 plus change in x2 equal to M. Clear? बच्चे, very very simple. Now what I can do is subtract, है ना? तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. इक्वेशन 2 को ओपन अप करेंगे, व्हाट विल आई गेट? P1 x1 plus P1 change in x1 plus P2 x2 plus P2 change in x2 equal to M. This is equation number 2. And equation 2 minus 1 will give me P1 change in x1 plus P2 change in x2 equal to 0. Clear? Right hand side तो M ही है, both sides have M. M minus M is 0. P1 x1 cancel हो जाएगा, P2 x2 will cancel out. But from here I will get P1 change in x1 is equal to minus P2 change in x2. So what will be my value of change in x2 by change in x1? Minus P1 by P2. है कि नहीं? बेटा, this is your slope of budget line. समझ रहे हो? This is your slope of budget line. So we can say that the slope of budget line is opportunity cost of good 1. Slope of budget line is opportunity cost of good 1. माने कि good 1 को कंज्यूम करने के लिए good 2 कितना देना पड़ रहा है. How much good 2 you have to give up to consume an additional unit of good 1. ठीक है? That is what this is telling me. So let's just write down finally. So how much good 2 consumer has to give up to consume an additional
unit of good one. कितना गुड टू देना पड़ रहा है, हाउ मच गुड टू द कंज्यूमर गिव्स अप to consume an additional unit of good one. ठीक है, this is what this slope is telling us. Am I clear with this beta? अच्छा, last method, method number 3. Beta, simply speaking, your slope is perpendicular by base, है ना? What is perpendicular बच्चे? देखो, अगर if I just go back to my budget line एक बारी के लिए, what is my perpendicular? This m by p2, यही तो perpendicular gap है. What is base beta? This m by p1. So very simply you can say m by p2 divided by m by p1, negative sign क्योंकि downward sloping है, and you will get minus p1 by p2. Another way to find the slope of budget line. ठीक है? So these are the 3 methods to find the slope of budget line. Beta, I am giving you one last technique, method number 4. Sometimes when I am teaching, just today, rarely it will happen in Delhi NCR that the weather will be good. It's a beautiful weather today. Beautiful. Matlab, I don't know, but in student life, if this is the weather, wow. With a cup of coffee, studying becomes so nice, na? It is like a bliss. You take a cup of coffee and you enjoy this weather and you study. For students, huh? So it's very nice. Otherwise, you can watch movie also. You can go out, enjoy cafe. Ye sab bhi karo. It is important. And this is also important that sometimes you take a cup of coffee and you read a book. Equally, blissful. ठीक है, last method. So budget line का equation हो गया P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. ठीक है. I do a full differentiation of this. So I will get P1 dx1 plus P2 dx2 equal to dm. But along a budget line, income doesn't change. Income तो सेम ही है पूरा बजट लाइन पे, है ना? तो बेटा, this means dm will be 0. Since your income is not changing along a budget line, so dm will be 0. So you will get P1 dx1 plus P2 dx2 is equal to 0. P1 dx1 is equal to minus P2 dx2. So this gives you dx2 by dx1 is equal to minus P1 by P2. This is when I find in terms of continuity. So this is also telling me the same thing only. This is telling me change in good 2. How much good 2 you have to give up when you want to consume extra unit of good 1. Change in good 1. And this comes out as minus P1 by P2. So up to you, beta. कैसे करो? All of them are the same methods only. Ultimately, you should remember the slope of budget line, which is minus P1 by P2. बस slope समझने का जरूरत है. Otherwise, things are same only. अच्छा, now I just want to give you one question as homework. Plot budget line. Right, beta? You are given P1 is equal to 10. P2 is equal to 20. Income of consumer is 100. So you need to plot the budget line of the consumer. ठीक है?
And second part, find the slope of budget line. Plot the budget line and find the slope of budget line. Hello, beta. Good evening, everyone. So today we are going to go ahead and see another important part of budget line, how budget line changes. Okay, beta. So I want to ask an important question today. We have seen how to plot a budget line. ये हमने कल देखा था. In today's lecture, I want to go ahead and I want to ask how budget line changes. Okay. In order to go ahead and ask how budget line changes, let us first go ahead and write down the equation of budget line. So, beta, what is budget line equation? It is P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of consumer. देखो, budget line can change due to two reasons. Reason number one, change in income of consumer. Reason number two, beta, change in price of goods. जब भी इंडिविजुअल का इनकम चेंज होगा, whenever there will be change in income of consumer or whenever there is going to be change in the price of the goods, budget line will change. अच्छा, let us look at the first one through an example. Suppose beta, I tell you price of good 1 is 10 rupees, price of good 2 is 20 rupees, income of consumer is 100. ठीक है बेटा, तो हाउ विल यू प्लॉट द बजट लाइन? कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम इस बजट लाइन को बच्चे? वेरी सिंपल, वी नो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज P1 x1 प्लस P2 x2 is equal to income. तो दिस विल गिव मी 10 x1 plus 20 x2 is equal to 100. अच्छा, टेल मी समथिंग. What is my x-axis intercept, beta? X-axis का intercept क्या होता है? X-axis intercept is when good 2 is 0. If I will put x2 as 0, what will I get? 10 x1 is equal to 100. x1 is equal to 100 divided by 10, माने 10. If you remember, बच्चे, तो this is nothing but m by P1. Income divide by price of good 1. ये x axis intercept है. अच्छा, what about y axis intercept बेटा? Y axis intercept is when you will put x1 as 0. x1 को 0 रखोगे. तो in this same equation, 10 into 0 plus 20 into x2 is equal to 100. बेटा, you will get 20 x2 is equal to 100. तो यहां से ना x2 का वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 माने 5. दिस इज नथिंग बेटा बट m बाय P2, इनकम बाय प्राइस ऑफ गुड 2. तो व्हेनेवर वी ड्रॉ बजट लाइन, जब भी हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, हाउ डू वी गेट दिस बजट लाइन बेटा? हाउ डू वी गेट द बजट लाइन? वेरी सिंपल, गुड 1, राइट बेटा, गुड 2, right? What is my x-axis intercept, बच्चे? X-axis intercept is m by P1. And what is m by P1 here, beta? It is coming out as 10. M by P1 is coming out as 10. What is m by P2, बच्चे? 5. तो यहाँ पे I will get m by P2, which is
5. And this will be my budget line, beta. If I join this, I will get my budget line. ठीक है? अच्छा, can you tell me what will be the slope of this budget line? इसका slope क्या रहेगा? Very simple, ma'am. The slope of this budget line will be minus P1 by P2 minus 10 by 20 minus half. ये हो गया slope of budget line. अच्छा, now, beta, I am telling you there is an increase in income of consumer. Consumer का जो income है ना, वो increase हो रहा है. There is increase in income of consumer. तो जैसे for example, बेटा suppose I tell you that now income of consumer is 200. अभी तक income क्या था बेटा? Income was 100. देखो, income was 100. Now income is 200. So beta, what will be budget line? Very simple. Budget line can be written as P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of consumer. Price of good 1 is 10 beta. Price of good 2 is 20 beta. Income is now 200. But can you tell me what will be the x-axis intercept now? Very simple. It is going to be M by P1. Income is what, beta? 200. Price of good 1, 10. So it will be 20. But what will be y-axis intercept? Can you tell me? Yes, it is going to be M by P2. Income is bache 200. Price of good 2 is 20. This will give you 10. Clear? So beta, what is my x-axis intercept coming out as? Bache, it is coming out as 20. What is y-axis intercept coming out as? It is coming out as 10. What is slope beta? Slope to unchanged hai, ma'am. Slope to P1 by P2 hota hai. So slope is P1 by P2. Beta, price of good 1 is what? 10. 2, 20. तो यहाँ पे तो अभी भी minus half ही आ रहा है. So slope is unchanged at half. है ना? So you can see beta that my new budget line, it will be this. Beta, this budget line slope will also be half. Minus half. So slope of the two budget line are equal to each other. This and this budget line has same slope. Same slope means what? They will be parallel to each other. So please write down. Please write down, bache. Increase in income of consumer leads to parallel shift of budget line. The slope of budget line is unchanged. Beta, slope of budget line is unchanged. So budget line shift to ho raha hai. Budget line is shifting, but the slope does not change. Slope remains the same. Now let us take the other case, beta. This is change in price of goods. So we will take case 1, beta. I will take increase in price of commodity. Increase in price of good 1. ठीक है? But suppose I tell you that price of good 1 is 10 rupees. Price of good 2 is 20 rupees. Income of consumer is 100. Beta, what will be the budget line? क्या हो जाएगा budget line? Let's write this down. P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of consumer. How will we plot this, beta?
Let's plot this. I am going to take good 1 here. Beta good 2 here. है ना? Good 1 here, good 2 here. Beta what will be this intercept? M by P1 माने 100 by 10 माने 10. What will be this intercept beta? M by P2 माने 100 by 25. है ना? If I join this, क्या मिल जाएगा बेटा? I will get my budget line. Now, suppose I tell you that price of good 1 increases to 20 rupees. Price of good 1 is increasing, बढ़ रहा है. कितने पे? 20 rupees पे. Beta, what will be your new budget line? P1, price of good 1 is 20, X1. Price of good 2 तो पहले ही 20 था. It was 20 only. So plus P2, X2 is equal to, beta, income was what? 100, right? So income is 100. Beta, now what will be your x-axis intercept? Income divided by price of good 1, that means 5. What will be your y-axis intercept, बच्चे? क्या हो जाएगा y-axis का intercept? Income divided by price of good 2, that means 5. So this is 5 only, ये 5 ही रहेगा. But this will come to 5. And this will become your new budget. ये आपका new budget line हो जाएगा. And this is pivoting inwards. What can we say? We can say that the budget line this is called as pivot or rotate inwards. अच्छा बेटा, can you tell me कि slope पे क्या फर्क पड़ा? What will happen to the slope? What was the slope here, बच्चे? P1 by P2. Price of good 1 was 10. Good 2 was 20. So it was half. In absolute terms, half था, है ना? What about this beta? Minus P1 by P2. Price of good 1 भी 20 हो गया, good 2 भी 20 हो गया है. So this will become minus 1. Minus 1. तो अगर हम absolute terms में देखें, माने if I compare its positive value, ये half है, ये 1 है, तो slope has increased. Whenever the slope of any negative sign just shows it is downward sloping, उससे मतलब नहीं है, negative sign छोड़ दो. But see that here slope in absolute terms is half and here slope is 1. है ना? तो when in absolute terms slope increases, beta line becomes steeper. तो line क्या हो गई है? Steep हो गई है. So the budget line has become steeper. So please write down slope increases in absolute terms. Therefore, budget line becomes steeper. है ना? Budget line क्या हो गई है बच्चे? Steep. Okay, बेटा. Now what I will go ahead and do ना, take case 2. Beta, that is decrease in price of good 1. Decrease in price of good 1. Good 1 का जो price है वो decrease हो रहा है. So now what will happen बेटा? देखो, suppose P1 is 10, P2 is 20, income is 100. तो बेटा what is your budget line? पहले क्या होगी budget line? P1 X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer. ठीक है? So ये हमने अभी अभी plot किया बेटा. Here you will have 10. Here you will have 5.
and when you will join this, है ना, ये 10 ले लेते हैं, this will be your budget line. ये हमने already we have seen many times now, ये plotting देख लिया है हमने. Now बेटा, now this is good 1, है ना, this is good 2. थोड़ा दोबारा प्लॉट कर लेते हैं. Let's plot this again because I need some space here. So this is 5 and this is 10. ठीक है बेटा. अच्छा, now I am saying that price of good 1 has decreased to 5 rupees. Price of good 1 has decreased to 5 rupees. तो अब क्या हुआ बचे कि price of good 1 हो गया 5, good 2 भी 20 ही है, income is 100 only. बेटा, what will be your new budget line? P1 x1 P2 x2 is equal to income of consumer. Beta, what will be your x-axis interceptor? Very simple, income divided by price 20. What will be your y-axis intercept, beta? Income divided by price 5. तो y-axis intercept तो अभी भी 5 ही है, it is still 5. But x-axis intercept is now 20. यहाँ कर, जहां पे भी 20 is falling here. It is now 20. अच्छा, what about the slope of budget line बेटा? इसका क्या slope है? Minus P1 by P2 minus 10 by 20 minus half. And बेटा इसका क्या slope हो जाएगा? Minus P1 by P2 minus 5 by 20 minus 1 by 4. So in absolute terms, अगर हम absolute terms में slope निकालें, the slope has reduced, isn't it? पहले slope half था, that means 0.5. Now slope is 0.25. Slope has reduced ना, तो line will become flatter. जब भी slope decrease करेगा, the line becomes flatter. So please write down. When price of good 1 decreases, slope becomes, not slope, write down budget line becomes flatter. Budget line will become flatter. Clear हुई ये बात बेटा? So the budget line becomes flatter. ठीक है? Okay बेटा. Now, बेटा, homework question. You want to consider and plot 2 cases. But case 1 is where price of good 2 increases. है ना? ऐसा ले लेना कि P1 is equal to 10, P2 is equal to 10, income 100, and then price of good 2 increases to 20. ठीक है? Plot this case. And beta case 2, price of good 2 decreases. ठीक है जी? तो बेटा P1 is equal to 10, P2 is equal to 10, income 100, and then price of good 2 decreases to 5. P2 dash. Price of good 2 decreases to 5. Income is still 100 and price of good 1 is 10. So this is homework that you have to plot these 2 cases of budget line. ये दोनों ही cases आप plot करके लेके आओगे. You will plot these 2 cases. ठीक है? Okay बेटा. Thank you.
Hi, good evening, everyone. Beta, welcome to the next lecture. And today I am going to go ahead and talk about how taxes are impacting the budget line. Alternatively, थोड़ा आसान तरीके से बोलें तो how budget line is getting affected by taxes. कैसे budget line shift करती है या pivot करती है या क्या होता है budget line को जब भी हम tax impose करते हैं. ठीक है. Now, beta, there are three kind of tax that I will be teaching you today. Tax number one. This is called as quantity tax. Okay, beta. Quantity tax is a tax which is imposed per unit that you consume. समझो बेटा. Suppose example, I go ahead and I tell you that for each unit of good one consumed, tax paid is T rupees. Tax paid is T rupees. So, इसका क्या मतलब है? What does this mean, beta? It means that for every unit of the good that you go ahead and you consume, आपको T rupees tax देना पड़ेगा. So, for example, if I tell you that, suppose example, price of good one P1 है. P1 is the price of good one. So when I consume the first unit, जब बेटा मैंने एक unit consume किया, I am paying P1 as the price of good one plus I am paying T rupees as the tax on each unit I am consuming. So T is the tax I am paying. So beta, what is the price of good finally? The price of good will be P1 plus T. Right? Acha, what if you consume 2 units? So beta, each unit will cost you P1 and for each unit, हर unit पे आप जो tax pay करोगे, that will be T. तो price, total amount paid will be 2 into P1 plus T. समझे बात को? So when we talk about quantity tax is imposed for each unit of consumption. So it is like saying that the new price is now P1 plus T. आपका गुड का जो प्राइस है it has increased by T rupees. तो अगर for example, suppose I tell you that price of good beta that is suppose 5 rupees. Right? And per unit, there is a tax of beta 2 rupees. So how much amount will you pay per unit? Amount paid per unit. कितना pay करोगे बच्चे? You will be paying 5 rupees as price and 2 rupees as tax. So beta, you will be paying 7 rupees per unit. हर unit के लिए आप 7 रुपए पे करोगे. You will be paying 7 rupees per unit. So we can say, please write down with me, quantity tax is like increasing the price of the commodity by T rupees. I have increased the price of the commodity. मेरा commodity का जो price है, that has increased by how much बचे? By T rupees. So, what is your old budget line, beta? It is P1 X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer. And what will be your new budget line, beta? The price of the good is now what? P1 plus T per unit. हर यूनिट के लिए आप P1 plus T पे कर रहे हो into number of units plus
P2 X2 is equal to income. Is equal to income. So it is like that the price of the good has increased. If price of commodity increases, we have already seen budget line will pivot inwards. ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, गुड 1, गुड 2, देखो ये वाला इंटरसेप्ट क्या है, m by p2. First, what was the intercept, beta? M by p1. Now, what will be the intercept, beta? M by p1 plus p. We are dividing by a bigger number, so it will pivot inwards. Inward pivot. Acha, this is my old budget line. Bache, what is the slope of this old budget line? Minus p1 by p2. This is my new budget line. What is the slope of new budget line, beta? Minus p1 plus t by p2. है ना? In absolute sense, देखो numerator बढ़ रहा है, numerator is increasing, absolute, not negative sign के साथ. So in absolute sense, slope has increased. Beta, we have studied when slope increases, budget line becomes steeper. Budget line becomes steeper. So what has happened to the budget line? It has become steeper. Clear? Clear hai? Acha, example. I am telling you price of good 1 is 4 rupees. Price of good 2 is 5 rupees. Income of consumer is 20. Now, there is tax, per unit tax on good 1 of 1 rupee. Of 1 rupee, right? Then find new budget line. Right, beta? Plot new budget line. Find new budget line slope. न्यू बजट लाइन निकालो, ओल्ड बजट लाइन निकालो, दोनों का स्लोप निकालो, दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करो. दिस इज ऑल दैट यू नीड टू गो अहेड एंड डू. लेट्स स्टार्ट बेटा. व्हाट विल बी योर ओल्ड बजट लाइन? P1 price of good 1 into number of units of good 1 plus price of good 2 number of units of good 2 is equal to income of the consumer. है ना? This will be my old budget line beta. Okay, बच्चे, what will be your new budget line? New price क्या होगा? Per unit 4 rupees तो देने ही थे, but now per unit I need to pay this 1 rupee as tax also. For every unit I consume, I need to pay 1 rupee as tax. So beta 4 rupees plus 1 rupee, total I have to pay 5 rupees. So beta it will be 5. Number of units consumed. Price of good 2 is unchanged. Number of units consumed, 20. Clear? What is the slope of old budget line, beta? Earlier it was P1 by P2. That means minus 0.80. Right? What is the new slope, beta? P1 by P2. That means minus 1. So if I look in absolute sense, ये 0.80 है और ये 1 है. Slope has increased. Budget line will become steeper. ठीक है बेटा. Now let's plot the new and old budget line. So beta, I'm taking good 1 here. Good 2 here. What is your intercept term? M by P1, M by P2. So earlier my income is 20. 20 divided by 4 will be 5. 20 divided by 5 will be 4. So here I have 4, 5. This is my old budget line.
कैसे आया बेटा ओल्ड बजट लाइन? लेट्स जस्ट रिकैप. इनकम डिवाइडेड बाय P1. Income divided by P1. 20 divided by 4. That means 5. Income divided by P2. 20 divided by 5. That means 4. Clear? Now, beta, what is going to be your new budget line? देखो, income divided by P1. 20 divided by 5. That means 4. और P2 तो unchanged है. P2 is unchanged only, beta. So 20 divided by 5, 4. So this will be your old budget line. I have already written. And this will be my new budget line. Clear, beta? So what has quantity tax done? It has pivoted the budget line inwards. Clear? बेटा यहां देख सकते हो दिस इज m डिवाइडेड बाय P1 प्लस T. m है 20, प्राइस ऑफ गुड वन 4 था एंड टैक्स वाज 5. तो 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस 4. वही तो यहां आ रहा है. दिस 4 ओनली इज कमिंग हियर एंड दिस 5 इज कमिंग हियर. ओके ओके बेटा. Now let's go to the next tax. So this is our first kind of tax, which is called as quantity tax. Now I want to do the next tax, and that is called as, please write down, tax number 2, value added tax. Beta, quantity tax and value tax are very similar in nature. Just that now I am putting tax as some percent. ठीक है. This is not on quantity. ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट पे 1 रुपया, 2 यूनिट पे 2 रुपया. I am not putting a tax on the quantity. Rather, I am putting a tax on the value. So this tax is imposed on value. For example, beta, if I tell you price of good 1 is 5 rupees, price of good 2 is 10 rupees, income of consumer is 100. Okay. And I tell you there is 10% tax on good 1 value. Price of good 1 pay, there is a 10% tax. There is 10% tax on the value of good 1. So now what will happen, बच्चे? क्या हो जाएगा? What will happen? So the new price of good 1 will be what, beta? Old price plus 10% से increase हुआ है. It has increased by 10%. 10% of old price. So this is my old price. है ना? And this is the tax imposed. And कैसे tax impose कर रहे हैं? How am I imposing tax, beta? In terms of some percentage, right? It is 10% of the old value of the old price. Clear? So what will be your new price, beta? 5 plus 10% of 5. That means 5 plus 0.5. That means 5.5. So your new price of good 1 will become, beta, what? 5.5. ये आपका न्यू प्राइस हो जाएगा. न्यू प्राइस ऑफ गुड 1 will become 5.5. अच्छा, can you tell me what will be your old budget line? क्या होगा बेटा old budget line? Yes, it is going to be P1, price of good 1, X1 plus P2, X2 is equal to, income is given as 100. Right? And what will be your new budget line, beta? New price is what? New price is 5.5, good 1 का. तो 5.5 X1 plus 10 X2 equal to 100. Clear?
Beta, what is the slope? If I compare the slope, P1 by P2, that means minus 0.5. What is the new slope, beta? P1 by P2, minus 0.55. तो एब्सोल्यूट सेंस में क्या हुआ है? 0.5, 0.55. Slope has increased. Budget line will become steeper. What will happen to the budget line, beta? Budget line will become steeper. Clear? ठीक है बच्चे. Now let us go ahead and plot this. Good 1, good 2. बेटा what is, पहले देखो, m by p1, 100 divided by 5, that means 20. M by p2, 100 divided by 10, that means 10. Beta, this is my old budget line. This will be my old budget line. Now what is happening, beta? Now I have 100 divided by 5.5. 100 divided by 5.5. So if I just divide this, 100 divided by 5.5 is 18.18. तो अब यहाँ पे हो जाएगा 18.18. And 100 divided by 10 is 10 only. So I can just join this. है ना? And this will be my new budget line. ये हो गया inward pivot, right? Let's write down generally, beta. General case. So generally, if my old budget line is P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of consumer, so what is my new budget line, beta? P1, tax is on good 1. कितना परसेंट है? सपोज V%, ठीक है, या T%. You can keep any percent, है ना? So T% of P1, ये न्यू प्राइस हो गया P1 प्लस T% of P1. देखो यहां पे, जस्ट कंपेयर इट बेटा. व्हाट इज योर न्यू प्राइस? P1 प्लस 10% of P1, क्योंकि व्हाट वाज द टैक्स रेट? 10%. अब 10 की जगह आई एम जस्ट पुटिंग जनरल, तो T% of P1 into x1 plus P2 x2 is equal to n. क्लियर? बेटा देखो यहां पे P1 प्लस T%, हाउ डू आई कन्वर्ट परसेंटेज? 100 से ये करके into P1 x1 plus P2 x2 equal to n. I can take P1 common, beta. 1 plus T by 100 x1 plus P2 x2 equal to n. ये हो जाएगा बेटा P1 1 प्लस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 को कैसे हम लिख सकते हैं? x1 plus P2 x2 equal to n. 6 divided by 100 is 0.06. 7 divided by 100 is 0.07. तो t divided by 100 will be 0.0t. ठीक है, into x1. तो ये हो जाएगा बेटा P1 1.0t x1 plus P2 x2 equal to n. So your old budget line was this, है ना? And your new budget line will be this, बेटा. कंपेयर कर लो. क्या लिखा था हमने एग्जाम्पल में? 10% टैक्स था ना गुड 1 पे, और प्राइस ऑफ गुड 1 पहले 5 था और प्राइस ऑफ गुड 2 10 था. तो न्यू बजट लाइन अगर मुझे लिखनी हो तो प्राइस ऑफ गुड 1 5, 1.0, 10% टैक्स, तो टी की जगह पे आई विल रिप्लेस इट विथ 10% बेटा. तो ये हो जाएगा 10 x1 प्लस 10 x2 equal to m. M is 100.
5 into 1.1 क्या होता है बच्चे? 5.5 x1 plus 10 x2 equal to 100. So this will be your new budget. Clear? तो try to understand कि ये जो हमने हमारा new budget line यहां लिखा था, the new budget line that I had written here बेटा, इसी का general form ये है. This is its general form. है ना? Clear? Case 3 बेटा, last case. Income tax is on income of the consumer. It is like, it's also called as lump sum tax. है ना? So for example, beta, your old budget line, that is P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of the consumer. ये हमारा old budget line है. P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of the consumer. And हमारा new budget line बन जाता है बेटा P1 x1 plus P2 x2 is equal to income minus taxes. ये जो T है ये इनकम टैक्स है. पहले ही इनकम से I am reducing some amount. I am reducing 100 rupees. I am reducing 200 rupees. So I am deducting some money from the income. That is called as income tax. Is that clear? So this is my old budget line beta and this is my new budget line. ठीक है जी? Okay beta. Let's take an example. So suppose I tell you P1 is 5, P2 is also 5, income of consumer is 200. ठीक है? And then there is a tax, lump sum tax, fixed tax of 50 rupees. एक फिक्स्ड टैक्स इंपोज किया गया है. द फिक्स्ड टैक्स इंपोज्ड इज फॉर 50 रुपीज. सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर ओल्ड बजट लाइन बेटा? वेरी सिंपल. P1 x1 plus P2 x2 is equal to income of the consumer, right? And what will be your new budget line beta? P1 x1 plus P2 x2. न्यू इनकम क्या है? ओल्ड इनकम माइनस टैक्स पेड. ओल्ड इनकम माइनस टैक्स पेड. दैट विल बी योर न्यू इनकम. क्लियर? ठीक है बेटा. सो दिस विल गिव यू 5x1 plus 5x2 is equal to 150. Old budget line, new budget line. प्लॉट करते हैं बेटा. हाउ विल आई प्लॉट दिस? M by P1, 200 divided by 5 will be 40. M by P2, 200 divided by 5 will be 40. Join this. What's the slope beta? P1 by P2, 5 by 5, 1. New budget line बनाओ बेटा. 150 divided by 5, 30. 150 divided by 5, 30. What is the slope? P1 by P2 minus 1. So the slope of the budget line is unchanged. Budget line का slope change नहीं हुआ है. What has changed? Only shifted backwards. अब आपकी जो income है वो कम है, right? It has shifted backwards. That's the only change that you see here. Clear? तो I hope all three kind of taxes are clear to you बेटा. अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं. You need to go ahead and you need to do them as homework. Homework question बेटा. ठीक है? Consider that there is an initial budget line which is given to you as P1 x1
प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वन डबल्स। ठीक है बेटा, प्राइस ऑफ गुड टू बिकम्स 8 टाइम्स। हाँ बेटा, इनकम becomes 4 times larger। ठीक है बच्चे, राइट इक्वेशन of new budget line and plot both budget lines। होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, यू आर गिवन P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइस ऑफ गुड वन डबल हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड टू 8 टाइम्स हो रहा है, इनकम 4 टाइम्स लार्जर हो रही है। यू नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ न्यू बजट लाइन and you also need to go ahead and plot both the budget lines। Homework question, I will go ahead and discuss this in the next lecture. Try to do this on your own। Hello beta, good afternoon everyone। So in the last class beta, we had gone ahead and we had talked about the different kind of taxes। हमने अलग अलग तरीके के taxes की बात की थी, right? And I had gone ahead and I had given you this as your homework question। Just try to see the question। So I'm going to just attempt this question first, then I will talk about subsidies। देखो बेटा, the question says P1 X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer। So if you tell me, can you tell me how will I plot this budget line beta? If I take good one here and I take good two here, on the x-axis, your intercept will be M by P1. And on the y-axis, your intercept will be M by P2. And when you will join this, what will you get? Budget line of consumer। What is its slope, bache? What will be the slope of this budget line? Minus P1 by P2। You should always take some example in such questions। So suppose I take income as 100, price of good one as 10, price of good two also as 10। अभी के लिए मैं दोनों के प्राइस को इक्वल ले रही हूं। आई एम टेकिंग द प्राइस टू बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो बेटा व्हाट विल बी योर इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? Equation of budget line will be P1 X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer। Is equal to income of consumer। समझे? This is going to be your initial budget line beta। अच्छा, now what the question was saying? It says that price of good one doubles। तो इंस्टेड ऑफ P1 नाउ, पहला इक्वेशन था P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब क्या बोल रहे हैं? प्राइस ऑफ गुड वन डबल्स। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। तो P1 की जगह बच्चे आई विल प्लग इन 2 P1 X1, प्राइस डबल हो गया। नाउ लुक हियर, प्राइस ऑफ गुड टू बिकम्स 8 टाइम्स। तो P2 की जगह पे आई विल प्लग 8 P2 X2, 8 टाइम्स हो गया। एंड बेटा व्हाट इज हैपनिंग टू इनकम ऑफ कंज्यूमर? इनकम ऑफ कंज्यूमर इज बिकमिंग 4 टाइम्स लार्जर। यही क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन। सो 4 टाइम्स लार्जर मीन्स व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स द इनकम, है ना? यही तो क्वेश्चन ने बोला था, राइट इक्वेशन ऑफ न्यू बजट लाइन एंड प्लॉट द टू बजट लाइन्स। So equation of new budget line beta will be this new budget line equation।
Can you go ahead and can you tell me what will be the slope of this new budget line? Very simple. New price divided by new price. So it is going to be 2P1 divided by 8P2. Beta, this will be P1 by 4P2. पहले slope क्या था? What was the slope earlier, beta? P1 by P2. है ना? What is your new slope? 1 by 4 P1 by P2. 1 by 4 is what? 0.25 P1 by P2. तो slope is falling ना. पहले 1 into P1 by P2 था. अब 0.25 P1 by P2 है. Slope has fallen. What will happen to budget line? हमने पढ़ा हुआ है. Whenever slope decreases, budget line becomes flatter. Budget line becomes flatter. अच्छा, इसको देखने की कोशिश करो यहां से. तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकली देखूं तो what will happen बेटा? क्या हो जाएगा? Price of good one क्या हुआ? Price of good one has doubled. तो what will be new price of good one? 2 times 10, so 20 हो गया. Price of good two, बेटा price of good two is 8 times. तो what will be your price of good two? 80. इनकम को क्या बोला है हमने? इनकम हैज बिकम 4 टाइम्स. व्हाट विल बी योर न्यू इनकम बेटा? 4 टाइम्स. सो इट विल बिकम 400. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ योर न्यू बजट लाइन? क्या इक्वेशन आ रहा है न्यू बजट लाइन का? सिंपल. P1 X1 प्लस P2 X2 is equal to income of consumer. Is equal to income of consumer. So can you tell me कि बेटा what will be the intercept on x axis and y axis now? X axis intercept अब क्या हो जाएगा? X axis intercept. What have we studied? M by P1. 400 divided by 20. ये हो जाएगा 20. What will be your y axis intercept? M by P2. So 400 divided by 80. That means, बच्चे, this will be 5. पहले क्या था x axis intercept and y axis intercept? M by P1, which means 100 divided by 10, which means 10. And what was y axis intercept? 100 divided by 10. That means 10. So earlier, my x and y axis intercept, they were 10 each. अब y axis intercept बन गया है 5 and x axis intercept क्या बन गया बेटा? That has become 20. That has become 20. So if I join this will be my new budget line. This is the answer to your homework question. यही homework question था. You had to find the equation of new budget line and plot the two budget line. तो इस budget line का जो slope हमने निकाला, our slope is coming as 10 divided by 10, which means 1. And here slope is coming as 1 by 4, 0.25. Clear? I hope this is clear to all of you. Now, beta, let us talk about subsidies. So if you remember, in the last class, we had talked about taxes. हमने taxes की बात की थी. And while talking about taxes, I had explained to you that there are 3 kinds of taxes. Subsidies, maybe it is the same. So there are 3 kinds of subsidies that we can go ahead and we can see. First, quantity subsidy. Second, what will be the second subsidy? Same as tax. Value subsidy.
and third beta will be lump sum subsidy. So just like taxes, like there were three kind of taxes. देखो यहाँ पे there were three kind of taxes that we had studied. Exactly like that, there will be three kind of subsidies. तीन तरीके की subsidies हम पढ़ते हैं. Let us talk about the first one first, beta. Quantity subsidy. Example देखो. Try to see this example. Suppose you go to a shopkeeper. और वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि पर यूनिट chocolate that you will buy, chocolate का MRP 10 rupees है, but per unit chocolate that you buy, I will give you a subsidy of 1 rupee. I will give you discount of 1 rupee per unit. हर unit पे 1 रुपए का discount. That means per unit you have to pay only 9 rupees beta instead of 10 rupees, right? So this is called as quantity subsidy. So quantity subsidy is subsidy given per unit. So for example, there is a chocolate, right? The price of this chocolate is 10 rupees. And I am giving you a subsidy of 1 rupee. So you have to only pay 9 rupees for this product. So how are we saying, कैसे निकाल रहे हैं हम price per unit beta in this case? How are we finding price per unit? Price per unit will be actual price minus the subsidy. This will be the new price. What will be new price beta? Actual price minus subsidy. So let's take an example. Just I tell you, there is subsidy of S per unit on good 1. हर यूनिट पे जो आप गुड 1 का खरीद रहे हो, every unit of good 1 that you are buying, you will get a subsidy of S per unit. So what will be the new price of good 1 beta? The new price of good 1 will become P1 old price minus subsidy. है ना? Subsidy से subsidy is like a discount. So this will be your new price of good 1. Right, beta? Acha, now, beta, what will be your old budget line? It will be P1 X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer. What will be your new budget line? Price of good 1 has decreased. कितने से decrease हुआ है? S से. So new price is P1 minus S X1 plus P2 X2 equal to income. Beta, what was the slope of the old budget line slope? P1 by P2. What will be new budget line slope? P1 minus S by P2. तो numerator decrease हो रहा है ना? So in absolute sense, slope is decreasing. The line will become flatter. What will happen to budget line? It will become flatter. Clear? Okay, beta. Take an example now. So I am telling you price of good 1 is 10 rupees. Price of good 2 is 5 rupees. Income of consumer is 90. ठीक है? There is quantity subsidy of 1 per unit on good 1. Good 1 पे हम एक quantity subsidy दे रहे हैं and quantity subsidies of 1 per unit. So what will be your old budget line beta? P1 X1 plus P2 X2
is equal to income of consumer. What will be your new budget line beta? New price of good X क्या हो गया? Old price minus subsidy. So 10 minus 1 is 9 rupees per unit. 9x1 plus 5x2 is equal to 90. How can we plot this beta? Good 1. Good 2. है ना? P1, sorry, income divided by P1, 90 divided by 10, माने 9. 90 divided by 5, माने 18. This is my old budget line. New intercepts find out करो बेटा. Find new intercepts. 90 divided by 9, 10. 90 divided by 5, 18. New budget line. It has become flatter now. Flatter. बेटा what is the slope of old budget line? क्या slope है old budget line का? P1 by P2 minus 2. Slope of new budget line? 9 by 5. That means it will be minus 1.8. So slope has decreased in absolute value. देखो अगर मैं इसका absolute value minus 2 का निकालूं, it is 2 और ये है 1.8. So slope is decreasing in absolute value ना. So it means it has become flat. ठीक है. So this is the first thing बच्चे which is called as quantity subsidy. First thing. Now let's talk about the second thing which is going to be value subsidy. I have already done similar thing in tax, तो मैं बहुत ज़्यादा emphasize नहीं करूँगी. I won't be emphasizing a lot on this. You can do it on your own now. So I'm just going to take an example here. So please write down value subsidy. So value subsidy means you are getting subsidy on the price of the good. जैसे for example, if I tell you that the subsidy is 10% of good one's price, है ना? When I talk about subsidy in terms of the value, so it becomes a value subsidy. जैसे for example, if I tell you price of good 1 is 10 rupees, price of good 2 is 5 rupees, income of consumer is 90, and now I am telling you that there is 10% subsidy on good 1 price. गुड 1 के प्राइस पे 10% का सब्सिडी है. देयर इज अ 10% सब्सिडी ऑन द प्राइस ऑफ गुड 1, वैल्यू पे. तो व्हाट विल बी द न्यू प्राइस बेटा? इट विल बी 10 माइनस द सब्सिडी, है ना? सो इट विल बी 10 माइनस व्हाट इज द सब्सिडी अमाउंट? बेटा सब्सिडी इज 10% ऑफ दिस 10. 10% है 10 रुपए का. So 10% of this 10 rupees. 10% कैसे परसेंट निकालते हैं? 10 divided by 100 into P1. So this will give me 10 minus 1. It means 9. है ना? Clear? So your old budget line, it will be 10x1 plus 5x2 is equal to 90, and your new budget line will be 9x1 plus 5x2 is equal to 90. तो notice that बेटा ये वाले तो मैंने दोनों पहले ही बना के दिखा दिए. I've already shown you that it will pivot outwards only. ऐसा ही दिखेगा. Just that now instead of saying that the subsidy is 1 rupee,
आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला जा रहा दैट सब्सिडी इज 1 रुपी, राइट? So I am not telling you that subsidy is 1 rupee. Try to understand. I am telling you that subsidy is some percent of the price. तो generally कैसे लिख सकते हैं हम बेटा? Generally. So if there is a subsidy of S% on P1, तो what will be your new price बेटा? Old price minus subsidy. What is your what is your subsidy beta? S% on P1. How do we convert percent into this? S by 100 into P1. So if I take P1 common, तो क्या मिल जाएगा? 1 minus S by 100. Beta, anything divided by 100 will be 0.0 S. So this is going to be your new price. Price will decrease by the amount of subsidy. Price subsidy की वजह से decrease हो रहा है. But subsidy is in terms of value. Clear? So what will be your new budget line, beta? P1, 1 minus S by 100, price of new price of good one, into X1 plus P2 X2 is equal to income of consumer. This will be your new budget line. ये आपका new budget line हो जाएगा. Am I clear with this concept? Okay, beta. Last. Lump sum subsidy. All of you should be able to do this on your own now. सबको ये अच्छे से आना चाहिए. What is going to happen in case of lump sum subsidy, beta? Write down. Price of good one X1, price of good two X2. Subsidy क्या बोलता है कि गवर्नमेंट इज गिविंग यू सम लमसम मनी. गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, योर इनकम इज 100 रुपीज, टेक 10 फ्रॉम मी. 100 रुपए तो आपका इनकम है, 10 रुपए मुझसे भी ले लो, राइट? सो इन दिस केस योर इनकम इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी. सो चेक दैट इन दिस केस बेटा स्लोप इज अनअफेक्टेड. स्लोप को कोई फर्क नहीं पड़ा, गुड के प्राइजेस को कोई फर्क नहीं पड़ा. द प्राइस ऑफ द गुड्स आर अनचेंज्ड, दे आर नॉट चेंजिंग. व्हाट इज चेंजिंग? द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग बाय द अमाउंट ऑफ एस, बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी. आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो हाउ कैन वी शो दिस बेटा? फॉर एग्जाम्पल, if I tell you P1 is 5, P2 is also 5, income of consumer is 20, and now government gives lump sum subsidy of 5 rupees. गवर्नमेंट ने अब एक लमसम सब्सिडी दे दिया है 5 रुपए का. गवर्नमेंट हैज गिवन यू अ लमसम सब्सिडी ऑफ 5 रुपीज. व्हाट विल बी योर ओल्ड बजट लाइन बेटा? P1 X1 plus P2 X2 equal to income of the consumer. What will be your new budget line beta? P1 X1 plus P2 X2. What is your new income? Old income plus money given by government, grant given by government. Government ने आपको 5 रुपए का grant दिया है, right? So government has given you 5 rupees plus 20 rupees. 20 plus 5 will be 25. So 25. Right? Let's plot this budget. Good one. Good two. Income divided by P1. 20 divided by 5. 4. 20 divided by 5. 4. Join this. New intersect. 25 divided by 5. 5. 25 divided by 5. 5. Join this. So what is happening? Parallel shift.
parallel outward shift of budget line. क्या हो रहा है बच्चे? Parallel outward shift of budget line. What is happening to slope? Nothing. Slope is unchanged. What is the slope? Price of good X by price of good Y, 1. Here also. So, slope unchanged. Okay. So, these are the 3 kind of subsidies that we have to go ahead and understand better. I hope the lecture is absolutely clear to you. Okay. Thank you. Hello, good afternoon, beta. Welcome to the next class of budget line. And in today's class, we are going to go ahead and we are going to talk about rationing. Beta, rationing or ration, है ना? Ration means what? किसी चीज को जब हम कर्ब कर देते हैं, जब हम एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, जब हम फिक्स कर देते हैं, that is called as rationing. So in this, what we are doing is we fix level of consumption to be a certain amount. मतलब उस अमाउंट को वो चीज क्रॉस नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. I tell you, income of consumer is 100, price of good X is 5 rupees, price of good Y is 10 rupees. तो बेटा, how will we draw the budget line of the consumer? कैसी budget line बनेगी हमारे consumer की? Very simple. Good X, good Y. बेटा, what will be your X axis intercept? M by PX. माने 100 by 5, 20. What will be your y-axis intercept? M by py. 100 by 10 माने 10. So this will be my budget line. ये मेरा budget line हो जाएगा. Right? Now, suppose the government goes ahead and puts a ration on the consumption of good X. Government is going ahead and saying that no one can consume more than 15 units of good X. Government ने एक limit लगा दिया कि nobody can consume more than 15 units of good X. Even if it is affordable, आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसा है खरीदने का, but it is not available in the market. 15 super units market में ही नहीं है, right? So in this case, what is happening is the government is going ahead and putting a ration on the consumption, right? Government is saying that more than 15 units is not available in the market. So when we have this kind of scenario where we go ahead and we put a ration, हम एक ration लगा देते हैं कि इससे ज्यादा अब market में available नहीं है, right? That is called as rationing. So you cannot have this as part of your budget line. इस part को हम budget line से we will go ahead and we will remove this part from budget line. इसको हमने हटा दिया. Because this is not there. It's not part anymore. है ना? So what will be your new budget line, beta? This part and this part. You cannot consume more than 15 units. Clear? ठीक है. तो please write down. If good one is rationed, जैसे इस केस में हमने 15 units पे ration कर दिया है,
the section of budget set beyond the rationed quantity is looped off. तो ये वाला जो पार्ट था, this part, we have just removed that part. We have just looped that off. समझे? अच्छा, now very interesting. Sometimes, बेटा please write down. कभी कभी क्या होता है? Sometimes you have a combination of tax, subsidy and rationing. कभी कभी ये दोनों चीजें combine हो जाती हैं. There is a combination of the two things together. ठीक है? Sometimes there is combination of taxes, subsidies and your rationing. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आई एम टेलिंग यू दैट गुड एक्स जो है that represents the good which government does not want you to consume in excess. जैसे for example cigarettes. आपके लिए it is a good. You want to consume it. आपको तो अच्छा लग रहा है कि wow, I will consume cigarettes. But the government does not want you to consume cigarettes after a certain amount, right? So what government will do? Government will go ahead and say that I will impose tax on good X after consumption of X bar units. तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ. देखो here I have good X beta and here I have good Y, है ना? जैसे I am telling you that price of good X is P1 and price of good Y, that is P2. तो बेटा what will be the slope of budget line? कैसे निकलता है slope? Price of good X by price of good Y. P1 by P2 is your budget line slope. तो यहाँ पे मैंने एक budget line बना दिया है. This is my budget line. ठीक है? The slope of this budget line is minus P1 by P2 beta. Here you have M by P1 and here you have M by P2. Now government is changing the story. अब government story में एक twist लेके आ रही है. So what is government saying? Government is saying, wait, if you consume more than X1 bar units, if you consume more than this units of good one, I will put a tax on you. मेरे को चाहिए आप इसके बाद और consume ना करो. So if you will consume more than good one, I will put a tax. So more than X1 bar units, government imposes tax. Government ने tax लगा दिया कि if you consume more than these units, you have to go ahead and you have to pay a tax to me. अच्छा बेटा, tax is a quantity tax of T per unit. So can you tell me what will be the new price beta? New price of good one? क्या हो जाएगा नया price good one का? The new price of good one will be old price plus tax rate. है ना? Isn't it? What will be your new slope beta? Price of good one upon price of good two, of course with the negative sign. तो we have seen, हमने ये देखा है taxes वाले part में, that when tax is imposed on good one, जब भी हम good one पे tax लगाते हैं, because the numerator is increasing, absolute value में अगर मैं slope निकालूं, the numerator has increased. Whenever the slope increases, then budget line becomes steeper.
when slope increases. So whenever the slope increases, the budget line must become steeper. इतना बात समझ में आया? So now beta we know अगर जैसे if there would have been tax on good X completely, अगर गुड 1 पे पूरे पे टैक्स होता तो हाउ वी वुड हैव प्लॉटेड बेटा? गुड 1 और गुड X, गुड Y, ये हमारा ओल्ड बजट लाइन होता, दिस हैज स्लोप ऑफ P1 by P2 एंड ये न्यू बजट लाइन हो जाता. And this has slope of P1 plus T by P2. Of course, with negative sign. ऐसा ही होता है. With tax, budget line goes inwards. We have done this in tax lecture. हमने कर लिया अच्छे से. तो budget line को inwards तो जाना है. It has to go inwards. But it must go inwards. ये है if tax on all units of good X. Here tax is there only after X1 units. Tax imposed to कर रही है government. Government is imposing tax. But government is imposing tax only after X1 units. So there will be inward shift of the budget line. जैसे यहाँ हुआ. It will shift inwards. But only after X1 bar. उससे पहले तो कोई tax ही नहीं है. There is no tax. So it will pivot inwards, but only after X1 bar. So what will be your new budget line beta? This will be as it is. इतने units पे तो कोई tax ही नहीं है. You are not paying any tax. So you are facing the price P1 only. But after X1, what price will you face? P1 plus T by P2. So this will become your, this part will become your budget line. समझे? So we can say that what will be our final budget line? When tax imposed after X1 units, when tax is imposed after X1 units, what will be your budget line beta? Something like this. यहाँ पे slope is P1 by P2. In this part, there is no tax. This is X1 bar units. Post this, there is tax. And what is the slope here, beta? Minus P1 plus T by P2. Clear? This will be my budget set. ये पूरा मेरा बजट सेट है. सेट इज व्हाट? जो भी पॉइंट्स हम अफोर्ड कर सकते हैं. एनी पॉइंट दैट इज अफोर्डेबल इज पार्ट ऑफ बजट सेट. तो दिस एंटायर बिकम्स माय बजट सेट. क्लियर? सो बजट लाइन विल बिकम स्टीपर. बजट लाइन स्टीपर तो होगा, बट इट विल गो अहेड एंड बिकम स्टीपर ओनली आफ्टर X1 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. सिर्फ इसके बाद ही इट विल बिकम स्टीपर. ओके बेटा? ओके, थैंक यू. Okay, hello beta, good afternoon everyone. So now beta, today we are going to go ahead and talk about food stamp program. What is food stamp program? Whenever, देखो food, food means you're giving discount. Food stamp means you're giving discount only on food. तो बेसिकली ये फूड स्टैम्प प्रोग्राम, इसका हिस्ट्री ये है दैट दिस स्टार्टेड इन यूएस, right, in 1964 for poor people. And here what we started doing is we started giving the poor people a discount.
ठीक है, ऑन फूड आइटम्स अप टू सर्टेन लेवल। तो दो तरीके के प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए यूएस में। द एम इज टू अंडरस्टैंड द टू काइंड ऑफ प्रोग्राम। इससे कोई मतलब नहीं है हमें कि मतलब यूएस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, उसको समझने का जरूरत नहीं है आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड what are the type of programs that can be started. So there are two kind of food stamp programs that can be started. The first food stamp program that can be started is giving discount up to certain quantity of food. क्या बोल रहे हैं बच्चे? It is saying giving discount up to certain quantity of food. माने क्या? It means that I am telling you that, up to 10 kgs of wheat, I will charge a price of ₹5 per kg. But after 10 kgs of wheat, I will charge ₹10 per kg. तो वीट का प्राइस तो ₹10 पर केजी ही है। द प्राइस ऑफ वीट इज ₹10 पर केजी, बट आई एम गिविंग यू डिस्काउंट ऑफ ₹5 एंड आई एम चार्जिंग ओनली 5 पर केजी फॉर द फर्स्ट 10 kgs ऑफ वीट। पहले 10 kg के लिए आई एम गिविंग यू अ डिस्काउंट, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें क्या बोल रहे हैं हम। व्हाट आर वी सेइंग? that the actual price of wheat is ₹10 per kg. Wheat का असली प्राइस ₹10 per kg ही है, right? But what I am saying that I will offer you a discount of ₹5 per kg for first 10 units. पहले 10 यूनिट के लिए, पहले 10 किलो के लिए I will go ahead for the first 10 kgs. I will go ahead and I will offer you a discount. I will give you a discount. So what does this mean, beta? So if no discount is offered, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूं, if no discount is offered, तो what will be your budget line? Your budget line will be price of wheat into units of wheat plus price of other food into units of other food is equal to income of consumer. अगर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं होता है, if no discount is offered, then what will happen? We are saying that the budget line will be price of wheat into units of wheat, price of other goods into units of other good equal to income. Suppose price of other good is 1, न्यूमरेटर गुड पे ले लेते हैं, and price of wheat is 10. तो बेटा what will be your old budget line? Your old budget line will be 10 into W plus 1 into other goods is equal to, suppose income is 100, 100 is equal to 100. तो what will be your budget line बेटा? यहां पे आ गया wheat, यहां आ गया अदर गुड्स, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस, 100 divided by 10, that means here I will have 10, and income divided by price, 100 divided by 1, that means यहां पे I will have 100, है ना? तो this is my budget line. ये मेरा budget line है। अब मैं कह रही हूं that the first 5 units government is offering discount. Wheat के पहले 5 यूनिट पे, rather than 10 units, I will keep it for first 5 units. For the first 5 units, government is offering you a discount.
तो पहले 5 यूनिट के लिए गवर्नमेंट बोलता है दैट वी विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए का डिस्काउंट हम आपको देंगे फॉर फर्स्ट 5 यूनिट्स। आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। सो बेटा फॉर फर्स्ट 5 यूनिट्स what will be the price of wheat? The price of wheat was 10 rupees. Wheat का प्राइस 10 रुपए था. You are giving a discount of 5 rupees. 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया. So the net price of wheat will be 5 rupees. What will be the price of wheat? It will be 5 rupees. ध्यान से सुनना मेरी बात को. The first 5 units you are getting for 5 rupees. 5 रुपए में पहले 5 यूनिट्स मिल रहे हैं. क्लियर? अच्छा, नाउ टेल मी बेटा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन देन? वेरी सिंपल, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस ऑफ व्हीट divided by price of other goods. Price of wheat is 5, price of other goods is 1, so slope of budget line will be 5. Minus sign लगा लो of course because it is downward sloping. So slope of budget line will be 5 in absolute value. What about after 5 units? बेटा फर्स्ट 5 यूनिट्स के बाद क्या होगा? What will happen after 5 units? After 5 units, the price of wheat is 10 rupees. Wheat का प्राइस बढ़ गया. अब आपको एक्चुअल प्राइस पे करना है. You need to pay the actual price of wheat. Price of wheat has increased now. So when price of wheat increases, beta, price of other good is 1 only. What will be the slope of budget line? Price of wheat divided by price of other good, 10 divided by 1, that means 10. Of course, negative sign लगा लो, it is downward sloping. So slope is increasing in absolute value. Absolute में अगर सिर्फ positive number देखें, it is going from 5 to 10. So slope is increasing. What have I taught you? Budget line will become, क्या हो जाएगा budget line बेटा? Steeper. Budget line will become steeper. समझ रहे हो बात को? So what has happened is for first 5 units, budget line इसका slope क्या था बेटा? The old budget line represents price of 10 of wheat. ये तो तब बनाया था ना when there was no discount given. ये old budget line कब बनाया था? When no discount was offered. So what was the slope here बच्चे? It was price of wheat divided by price of other good. That means 10. So this slope is 10 only. इसका slope 10 ही है. Now for first 5 units, you are getting a discount. And when you get a discount, जब आपको ये discount मिलता है, the price of wheat becomes 5. है ना? तो what is the slope बेटा? क्या निकाला हमने slope? Slope became -5. Line became flatter. अच्छा, after 5 units, slope इसी के जैसा ही है. Slope is same as old budget line. After 5 units, there is no discount. कोई discount नहीं मिल रहा है. So after 5 units, you will get a line parallel to this line. Are you getting it? After 5 units, जो पुरानी budget line का slope था, whatever was the slope of old budget line, you will go ahead and get the same slope. So it will become parallel to the old budget line. Clear? This is a very tricky concept. इसको बहुत ध्यान से समझना हमें जरूरी है. It is very important to understand this carefully. So it will become parallel to the new budget, old budget line. Beta, this will be your new budget line. है ना? और इस पार्ट में क्या स्लोप है? What is the slope?
अरे इस पार्ट में तो कोई ऑफ नहीं मिला है, सो द स्लोप विल बी -10। अच्छा, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। बेटा, कैन यू टेल मी, थोड़ा सोच के बताना, हाँ, थिंक एंड टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस इंटरसेक्ट, ये वाला पॉइंट क्या होगा? इफ ऑल इनकम इज स्पेंट ऑन वीट, अगर मैं सारा पैसा वीट पे खर्च कर दूं, हाउ मच वीट आई कैन बाय? सो क्वेश्चन, what will be the amount of wheat if all income spent on wheat? We will think very carefully, सोच के करेंगे, हाँ। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इनकम कितना है? What is the income given to me? Income is given as 100, है ना? Income is given as 100। जो हमारे फर्स्ट 5 यूनिट्स हैं, फर्स्ट 5 यूनिट्स, I am getting those at discount। कितने पे मिल रहे हैं वो फर्स्ट 5 यूनिट? व्हाट इज द प्राइस यू आर पेइंग फॉर फर्स्ट 5 यूनिट्स? यू आर पेइंग ₹5 पर केजी। सो वो जो द फर्स्ट 5 यूनिट्स यू आर पेइंग 5 पर केजी। सो हाउ मच हैव यू पेड फॉर फर्स्ट 5 यूनिट्स? 5 into 5, that means 25। अच्छा, what is your remaining income बेटा? $100 minus 25 is equal to 75। 75 is your remaining income। और ये 75 में अब जब हम वीट खरीदेंगे, नाउ व्हेन वी विल गो अहेड एंड वी विल बाय वीट फ्रॉम दिस रिमेनिंग इनकम, व्हाट विल हैपन? यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू बाय दैट वीट एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी। अब जब वीट खरीदोगे तो उसका प्राइस ₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी होगा। नाउ व्हेन यू विल बाय वीट, you can only buy at ₹10 per kg. No discount will be given to you. So 75 rupees I have. 1 kg cost me 10 rupees. So I can buy 7.5 kgs. है ना? तो what is the total wheat purchased? कितना खरीदा टोटल वीट? I purchased 5 kgs each at 5 rupees, spent 25 rupees, and I purchased 7.5 kgs each at 10 rupees and spent 75 rupees, right? So the total money I have spent is my entire income, 100 rupees, and the total wheat I have purchased is 12.5 kgs. Clear? So this point, beta, will be 12.5. This point will be 12.5 kg. Clear? This is the first case of food stamp program when you are getting a discount on first few units. आपको पहले कुछ यूनिट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? सेकेंड केस बेटा, फूड स्टैम्प to be spent only on food. It is like providing free food. So now what we are doing in this food stamp program, we are saying, look, I am giving you a particular coupon. मैंने आपको एक कूपन दे दिया है, but you can exchange this coupon only for food. You cannot buy anything else with this coupon.
इस कूपन से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो. यू कैन नॉट बाय एनीथिंग एल्स विद दिस कूपन. व्हाट कैन यू डू विद दिस कूपन बेटा? यू कैन ओनली गो अहेड एंड बाय फूड. ठीक है. सो आई एम सेइंग सपोज दैट दिस कूपन it gives you suppose 5 kgs of wheat. जब आपको ये कूपन मिलता है गवर्नमेंट से, when you get this coupon from the government, it entitles you to 5 kg of wheat. इससे आप 5 kg wheat खरीद सकते हो free of cost. You don't have to pay anything, right? But you cannot use this on any other good. You cannot buy anything else with this money. You have to purchase wheat only, right? So now, beta, let's look at the budget line. Let me create, give me 1 minute. Let's create a line here. Okay. Fine. Now what we are going ahead and we are doing is that, see, this is my old budget line. This is food. ठीक है, this is other good. Right? Same. जैसे पहले old budget line लिया था ना. This is my old budget line and here nothing has changed beta. In this old budget line, everything is the same. Mane, you have price of wheat is 10 rupees. Price of other good is 1 rupee. Your budget line will be price of wheat into units of wheat, price of other good into units of other good is equal to income of consumer. ये आपका budget line हो गया. ठीक है. So I have drawn exactly same budget line. Income divided by price of good 100 divided by 10. तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया और 100 divided by 1 यहाँ पे 100 आ गया. Now I am saying that government has given a coupon which gives 5 units of wheat free of cost. तो अब हमें ये 5 units of wheat तो मिल रहा है. We are getting this 5 units of wheat, but we are getting it free of cost. So what will happen beta? ये first 5 units of wheat, even if I spend all my income on other goods, मैं सारा 100 रुपए दूसरे गुड पे खर्च कर दूं, I am spending all my income on other goods, then also I will consume these 5 units of wheat up to this point. It means that, ध्यान से देखो, ये what is this point beta? This point is 5, 100. 5, 100 माने 5 units of wheat and 100 units of other good. So now I am saying that this point is affordable. अगर मैं अपना सारा पैसा दूसरे गुड पे भी खर्च कर दूं, even if I spend my entire money on other good, still I will get 5 units of wheat. Still government is giving me 5 units of wheat. Clear? And then if I want one more unit of wheat, अगर मुझे 6th unit चाहिए, then I need to spend 10 rupees. क्योंकि wheat costs me 10 rupees. ना? So from after 5 units, if I need wheat, so I need to spend money. मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा. So after 5 units, there will be a trade-off. After 5 units, there is a trade-off. मतलब अगर इसके बाद फूड बढ़ाना है तो बाकी को कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. Like the usual case, usual budget line. But up to 5 units, I am getting it free of cost. मुझे एक भी रुपया खर्च नहीं करना. I don't have to spend a single penny of money. Right? So this is the second food stamp program. So please write this down, beta. So please write it with me. The first
5 units of wheat are available to the consumer free of cost. This means that even if consumer spends his entire income on other good, still he can consume up to 5 units of wheat. But why have I written the word up to? माने उसकी मर्जी. Maybe he just wants 4 units. उसका पेट 4 में ही भर गया. तो he will just take 4 from the government. But up to 5 it is free, right? Beyond the 5th unit, he must pay for wheat and hence the usual trade-off. तो after 5th unit वही सेम स्लोप होगा जो पहले था. ठीक है, मतलब 10 रुपए का वीट और 1 रुपी का अदर गुड. वीट कंज्यूम करना है तो 10 रुपए दूसरे गुड पे कम खर्च होंगे. If you need to consume wheat, you need to give up on the other good. So for 1 unit of wheat, you need to give up 10 rupees and 10 rupees less will be available for other good. So this is the same trade-off as before. Same trade-off means same slope as before. This budget line, this part of budget line and ये old budget line, slope is same. Price change नहीं हुआ wheat का. Price of wheat has not changed. Just that first 5 units are given free of cost. Clear? Okay, beta. So this is your answer to the 2 kind of food stamp program. ठीक है? I hope that the 2 food stamp programs are absolutely clear to all of you. I have a homework question for all of you. So please write down homework question. Right? If the income of consumer increases and one of the price decreases at the same time, will consumer necessarily be at least well off? ठीक है बेटा. So this is your homework question. If the income of consumer increases, example लेके करना, don't do without example. So take price of good X as 2, price of good Y as 3, income of consumer as 6. ठीक है. Income of consumer increases. So income को increase कर दो 12 पे. And one of the price of good decreases. तो price of good X को decrease कर दो 1 पे. Price of good Y unchanged है. Consumer will be well off than before. है ना? तो just plot the 2 budget sets. दोनों budget line बनाओ. If budget set has expanded, अगर अब ज्यादा पॉइंट्स हैं बजट सेट में, बजट सेट हैज एक्सपैंडेड, कंज्यूमर will be better off than before. है ना बेटा?
तो कंज्यूमर बेटर ऑफ हो जाएगा। तो दोनों बजट लाइंस बनाओ। अगर दूसरा बजट लाइन बाहर की तरफ है, आपके पास ज्यादा पॉइंट्स अब आ रहे हैं, देन कंज्यूमर विल बी बेटर ऑफ, राइट? सो विद दिस वी एंड chapter 2 of variant, which is budget line. We have completely ended chapter 2. All these notes, beta, whatever notes I have written of chapter 2, they will be available on the portal. You can go ahead and you can register yourself on the portal and get access to these notes also if you want, right? Otherwise, the lecture is available on YouTube and you can do it simultaneously on YouTube. So, just 1 minute. Okay. So, chapter 2 of variant budget constraint पूरा खत्म हो गया है. If you want the PDF of these notes, then notes are available on portal. You can register yourself on portal. I will share the link of portal just below in the comment section. I also want all the students to go ahead and to join the Telegram group so that I can keep updating you about the important questions. Exam में क्या questions important रहेंगे, कौन सा video lecture कब आ रहा है. So you should also go ahead and join the Telegram group. And the link to Telegram group will also be posted on the comment section. Okay, so now beta we will go ahead and we will start with the next chapter, chapter 3, जिसका नाम है preferences. Okay beta, thank you. Hi, good afternoon, everyone. So today we are going to go ahead and start with the next chapter. And this is called as consumer preferences. Consumer preferences. Now, when we talk about a budget line, we always go ahead and we always talk about what the consumer can afford. एक बजट लाइन हमेशा ये बताती है कि एक कंज्यूमर क्या क्या खरीद सकता है, right? But now we want to go ahead and we want to understand that given what a consumer can afford, क्या क्या वो खरीद सकता है, अगर हम ये सब बता दें, what is it that the consumer actually wants to buy, right? So we want to go ahead and we want to investigate which is the best bundle that the consumer wants, है ना? तो जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा योर इनकम इज 100 रुपीज एंड यू कैन बाय 5 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस एंड यू कैन ऑल्सो बाय 2 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस, ये दोनों ही आप चीजें खरीद सकते हो. सो अमंग डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, व्हाट यू विल गो फॉर, आप क्या खरीदोगे, दैट इज व्हाट वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू लुक इन दिस चैप्टर, राइट? To begin with, I want to go ahead and I want to define something which is known as a consumption bundle. Definition number 1. Consumption bundle. Right? So I want to start by talking about consumption bundle. अब क्या है consumption bundle? What is a consumption bundle? We call the complete list of goods and service that the consumer can buy, right? That is called as consumption bundle. Just for example, if I tell you 1 fridge, 2 TV, 5 orange, 7 apple,
whenever we go ahead and we give the complete list of goods and service that are involved in the choice problem, कि क्या क्या कंज्यूमर कर सकता है, उसका वो choice problem बताना, that is called as consumption bundle. उसको क्या बोल देते हैं? We call that as consumption bundle. So please write down. Write it with me, beta. Complete list of goods and services that are involved in the choice problem of consumer. So when we go ahead and we give a complete list कि ये consumer ले सकता है, that complete list is called as consumption bundle, right? Now we want to also go ahead and we want to talk about any bundle x1 comma x2. So although you can have many goods, right? But in economics, we always want to deal with a 2D problem. Goods तो बहुत सारे हो सकते हैं. Good 1, good 2, good 3, good 4, good 5, good n. Good can be many goods. But to simplify it, what we do is we only work with two goods, right? In order to make a 2D diagram also, where I can take good 1 here and I can take good 2 here. अगर मुझे एक 2D diagram के साथ काम करना है, if I want to picturize it, I want to graph it, so it is easy to work with 2D diagram and two goods. Good 3 के साथ होता तो 3-dimensional graph हो जाएगा. If it will be good 4 goods, then it will be a 4D graph, right? If it will be 5 goods, then it will be a 5D graph. So it will become difficult for me to show things graphically, right? So because I want to go ahead and I want to use a 2-dimensional diagram, I just want to show x-axis and y-axis, it is easier to work with two goods. दो ही goods के साथ काम करना ज़्यादा आसान रहता है. It is easier to work with two goods. So what I can go ahead and I can do is, I can call this as a consumption bundle. Any consumption bundle is represented by a capital alphabet, right? So I can say that this X, it is representing a consumption bundle, right? And I am saying that X1 represents the amount of good 1 consumed, and X2 represents the amount of good 2 consumed, right? So here what I am now doing is, I am telling how much individual is consuming of good 1, x1 units of good 1, and x2 units of good 2. Is this clear? Okay. Now, we want to define 3 kind of preferences. Preference number 1, beta. This is called as strictly preferred. What is it called? It is called as strictly preferred. Right? What is strict preference? It is represented by a sign like this. Right? Strictly preferred means, अगर मैं बोल रही हूं कि one bundle is strictly preferred over the other bundle, it means I will prefer that bundle over the other bundle. Just for example, if I tell you that I like 4 apple and 2 oranges strictly more than, this is strictly preferred over 3 apple and 1 orange. जिस बंडल में ज्यादा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होंगे, आई विल बी प्रेफरिंग दैट ओवर द बंडल विच हैज लेस एप्पल्स एंड लेस ऑरेंज. Then this means that the satisfaction that I am getting from this bundle,
जब मेरे को ये मिलेगा 4 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस, the satisfaction that I will be getting from 4 apple and 2 orange, it will be more than my satisfaction from 3 apple and 2 oranges, right? So it simply means that suppose I name this as bundle X and I name this as bundle Y, then it simply means that consumer is choosing bundle X over bundle Y. कंज्यूमर को जब भी ये दो बंडल दिखाए जाएंगे एक्स और वाई, हमेशा कंज्यूमर बंडल एक्स को चूज करेगा वाई के ऊपर. When the consumer will go ahead and do this, it is known as strict preference. Is this clear? Let's write this down. So given two bundles, X and Y, if X is strictly preferred over Y, it means consumer gets more. I don't want to use the word utility. अभी मैंने utility word define नहीं किया है, but it actually means that consumer is getting more utility from bundle X over Y. जितना, if you have heard the word utility before, it means that जितना utility X दे रहा है, Y उससे ज्यादा utility दे रहा है. Whatever utility X is giving you, Y is giving you, whatever utility Y is giving you, X is giving you more utility than Y, right? Then X will be preferred over Y. Am I making sense? But we haven't defined the word utility yet, right? So usually it means that when X is preferred over Y, strictly preferred over Y, utility from X should be more than utility from Y. जो यूटिलिटी एक्स दे रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई. But since we haven't defined utility yet, I am going to write in terms of satisfaction. So I will say it means that consumer gets more satisfaction from bundle X as compared to bundle Y. This is called as strict preference. Okay. The next thing that we want to go ahead and we want to work with is called as indifference. Or indifferent. So when we talk about indifference, इसका sign हो जाता है ऐसे बेटा. Right? So if I tell you that there is one bundle X, X bundle is X1, X2, and there is another bundle Y. Y1 is Y1, Y2. Just if I tell you, X is 4 apples, 3 orange, and Y is 2 apples but 6 orange. Okay. And I am telling you that X and Y के बीच में I am indifferent. Indifferent means equally satisfied. So I will use the sign like this. So indifference means that the satisfaction from X is exactly equal to my satisfaction from Y. So if you go ahead and you get the same level of satisfaction, I have not defined the term utility, but utility के terms में, if X and Y give you the same level of utility, utility simply means satisfaction as of now. So if X and Y give you the same level of utility, they give you the same satisfaction, then we can say that we are indifferent between X and Y. तो X and Y का indifference का क्या मतलब हो गया बेटा? If two bundles give you the same level of satisfaction, so please write down, if two bundles give consumer same level of satisfaction, then he is
indifferent between the two bundles. Then we can say that the consumer will be indifferent between the two bundles. क्या बोल सकते हैं हम कि consumer इन दो bundles के बीच में indifferent है, right? Now I want to define another thing which is known as weak preference. Third, weak preference. What is weak preference or weakly preferred? Weak preference basically means that either it includes two things. Either the consumer can prefer X over Y, or the consumer can be indifferent over X and Y. If I have any such kind of relation, right, it is basically we don't know one of the two cases. अगर मुझे नहीं पता, suppose मैं आपको ये बोल दूं कि अगर X bundle है 4 orange and 3 apples and Y bundle है 2 orange and 5 apple, है ना, and I am telling you that ठीक है, शायद मुझे X Y के ऊपर पसंद है या शायद मैं इनके बीच में इंडिफरेंट हूं, right? So basically what is happening is, all I can say is कि at least X Y जितना तो यूटिलिटी देगा ही, Y जितना satisfaction तो देगा ही, उससे ज्यादा भी दे सकता है. What I am saying, if consumer thinks that this bundle X is at least as good as Y, at least as good, मतलब Y जितना अच्छा तो है ही, उससे ऊपर भी हो सकता है. When we use the word at least as good as, at least X is at least as good as Y, or it can be more than Y also. So when we use terms like this, then basically it is weak preference. So when can we say that X, so weak preference sign is like this, X is weakly preferred over Y when X is either preferred over Y or I am indifferent between X and Y, right? So basically this is the case when X is at least as good as Y. So at least as good means कि Y जितना तो होगा ही होगा, but Y से ज्यादा भी हो सकता है. It can be equal to Y, it can give me satisfaction equal to Y, or the satisfaction can be more than Y. So when I have such kind of preferences, then it is called as weak preference. Then it is called as weak preference. Is this clear? Okay. Now, question first of all. Suppose I tell you that the satisfaction given by consumer is represented by the total amount of X and Y together. हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर रहे हैं कि उसका X and Y टोटल कितना है. The satisfaction of consumer is measured by the total amount of X and Y. ठीक है. So now you need to tell the relationships, beta. Case A. So bundle X is 4 units of good 1 and 3 units of good 2. And bundle Y is 2 units of good 1 and 5 units of good 2. So how have we given the formula, bache? What is the formula of satisfaction? The formula of satisfaction is total amount of X and Y together. So what is the total amount here? 4 plus 3 equal to 7. What is the total amount here? 2 plus 5 equal to 7. So therefore, what can I say in this case? That both give consumer same level of satisfaction. दोनों bundles consumer को same level of satisfaction दे रहे हैं. So if both bundles give consumer same level of satisfaction, consumer will be indifferent between X and Y. Clear? Acha. Now if I tell you that bundle X is 2, 5 and bundle Y is 3, 3.
So now if I use the same concept, what will be 2 plus 5 beta? 7. 3 plus 3, 6. 7 is more than 6. So I am preferring x over y. I am preferring x over y. Clear? So you will be given some way to calculate satisfaction. आपको पहले पता होना चाहिए कि हम satisfaction कैसे calculate कर रहे हैं. This way of calculating satisfaction or calculating utility can be different. जरूरी नहीं है हर बार ऐड करके ही satisfaction निकालें. This can be different. Like for example, I can go ahead and I can tell you that I am calculating satisfaction on the basis of product of the goods. So इस case में what will be my satisfaction beta if I do it on the basis of product of goods? 4 into 3, that means 12. And 2 into 5, that means 10. So now I can say that x is preferred over y. So basically, first of all, I should know the rule. On what rule I will calculate the satisfaction of individual. This rule I will be teaching you in the upcoming classes. Abhi nahi samajhna hai. But there are different ways to calculate satisfaction of the individual. Different ways to calculate utility of the individual. But इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. Today we are talking about different definitions of preferences. So we are saying that whenever the consumer gets more satisfaction from X as compared to Y, ये हो गया strict preference. If he gets the same level of satisfaction from X and Y, तो ये हो गया indifference. And if he doesn't know, either it is X more than Y or X equal to Y, that means X is at least as good as Y, then this is called as weak preference beta. Right? Now, I am also saying that these relations are not independent of each other. So, please write down dependence of these relationships. Let us try to now understand the dependence of these relationships. अब हमें ये समझना है कि ये relationship एक दूसरे के ऊपर dependent कैसे हैं. Dependence of these relationships. So, beta example. Right? Suppose I go ahead and I tell you that I have X weakly preferred over Y and also Y weakly preferred over X. Then what does this mean? इसका क्या मतलब है? What's the conclusion? Try to understand this thing. So I am saying that X is weakly preferred over Y. So if X is weakly preferred over Y, this means that my satisfaction from X, it will be greater than or equal to satisfaction from Y. And when I say Y is also weakly preferred over X, तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चे? That your satisfaction from Y will be greater than equal to satisfaction from X. अब इन दोनों को हमें combine करना है. It says and. We need to combine the two things together. So X satisfaction is more than equal to satisfaction from Y, and Y's satisfaction is more than or equal to satisfaction from X. So what can I conclude if both things are happening? X greater than equal to Y bhi hai or Y greater than equal to X bhi hai. So how can these two happen together? Only when the satisfaction from X will be exactly equal to satisfaction from Y. तभी तो ये दोनों चीजें satisfy हो पाएंगी. Only then both the statements are satisfied. So I have been able to find a relationship when two statements are given to you. Right? Similarly, suppose I give you another form. Suppose I tell you that X, this Y, and X indifferent Y not true.
दिस इज ट्रू। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड बेटा, दोबारा देखो। सो एक्स इज वीकली प्रेफर्ड ओवर वाई, एक्स इज वीकली प्रेफर्ड ओवर वाई, माने क्या मतलब हो गया, दैट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वाई, कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वाई। बट ये कह रहे हैं दैट एक्स इंडिफरेंट टू वाई इज नॉट ट्रू, मतलब एक्स indifferent to y is not true. So what does this mean beta, that satisfaction from x is not equal to satisfaction from y because you are not indifferent. तो दोनों चीजों को कंबाइन करो, you are saying that this utility or satisfaction from x is more than or equal to satisfaction from y, and you are also saying that satisfaction from x is not equal to satisfaction from y. So if I combine these two things together, yahan se aata hai greater than or equal to is not true. So therefore, can you say clearly that satisfaction from x is strictly more than satisfaction from y? Right? So if someone in exam gives you this statement, that x is weakly preferred over y and x is not indifferent to y, x y से तो ज्यादा हो सकता है, it is greater than equal to y but not equal to y, it has to be greater than y. So this goes ahead and this tells you that x will be strictly preferred over y, this will tells you that x will be strictly preferred over y. Clear? So this kind of statements can be given to you in exam and you need to go ahead and interpret these statements. ऐसे statements को interpret करना आना चाहिए, right? Okay, so this means that we can therefore conclude x is strictly preferred over y. इससे हमें समझ में आता है that x will be strictly preferred over y. Is this clear? So you can also go ahead and you can also find the dependence of the relationships. Right? Okay, beta. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. So we are going to today talk about the assumptions about preferences. Assumptions about preferences. ठीक है बेटा, this is one of the very important topic from the point of view of any exam. किसी भी एग्जाम में assumptions about preference ये बहुत ही important topic है, right? Now, first of all, whenever we talk about the assumption about preferences, we need to understand that we are talking about a rational consumer. We are talking about a rational consumer. And who is a rational consumer? Any consumer who is basically thinking about himself. कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जो अपने यूटिलिटी के बारे में सोच रहा है, will be called as a rational human being. What will we call them? We will call him as a rational human being. Is this clear? So who is a rational consumer? Any consumer who maximizes his satisfaction. जिसको अपनी satisfaction से मतलब है,
that can be called as a rational human being. Acha, now against a rational human being we have someone, तो rational तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि rational human being वो हो गया who is a selfish human being, है ना? But इसी के against a rational human being, we can also have a person who can think about the preference of another individual. जैसे, for example, our mothers, right? What do our mothers do, beta? Our mothers basically, they can derive utility or satisfaction from the consumption of their children. है ना? तो जैसे when their children will consume food, when their children will eat lunch, they will be more happy. So that is not a rational person. A rational human being is any human being who only thinks about his own satisfaction. जो भी selfish होता है, जो सिर्फ अपना satisfaction, अपना utility के बारे में सोचे, that person will be called as a rational human being. Clear हुई? So whenever we do any assumption about preferences, we assume that we are talking about these rational human individuals. ठीक है? तो इनको बोलते हैं assumptions of rationality. माने we are assuming that the individual is a rational human being. He cares only about his own utility. So please write down any individual who cares about his own satisfaction or utility. Any individual who cares about his own satisfaction, about his own utility, will be called as a rational human being. अब इसी में we have many assumptions about rationality. And these are also called as axioms of rationality. क्या बोल देते हैं इनको बेटा हम? These are also called as axioms of rationality. Right? The first axiom of rationality that we have is called as completeness. What is completeness? Completeness means given two bundles, you should be able to compare the bundles, right? So you should not say, I don't know. आपको ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता. You should be able to compare the two bundles, right? So for example, if I tell you this is an Adgel pen and this is a Renault pen. Another pen I have Renault pen. Do you prefer Adgel or Renault? Yeah. So you should be able to tell me, I prefer Adgel, ma'am. I prefer Renault. है ना? So what does completeness mean? Given any two bundle, you should be able to compare. Okay, so please write down. Given any two bundles, an individual should be able to compare them, right? So if I tell you that there is a bundle X, which is X1, X2, and a bundle Y, which is Y1, Y2, then individual should be able to tell. What this individual should be able to tell? Whether he prefers X over Y, or he prefers Y over X, or he is indifferent between X and Y. He should be able to tell. वो ये ना बोले I don't know. He should be able to tell whether he prefers X over Y, Y over X, or he is indifferent between X and Y. Right? So this is what is the meaning of completeness. ठीक है? When will completeness be difficult?
it will be not possible under extreme situations, like the situation of life and death. एक बात बताओ, if I tell you, would you like to die from a gunshot, or would you like to die from maybe a flood? So you will not be able to tell me, na? You don't know the pain in the two things, right? You will say, I don't know. I don't want to die only. Okay? Leave dying from gunshot or from flood. So such situations where an individual is not able to compare what he wants to do, right? Yes, correct. Emotional situations, right? So emotional situations where you cannot compare, right? They don't follow completeness. वहां पे completeness lack करता है ना? So comparing between mother and father, do you love your mother more or father more? Difficult to tell, right? So that's the first part, which is completeness. The second is called reflexive. What is reflexive saying? Reflexive says any bundle is as good as itself. Any bundle is certainly as good as its identical bundle. Mane, if I give you one blue ink Adgil pen and I give you another same blue ink Adgil pen, so these two are very similar in nature. So one is definitely as good as the other one. The first bundle is certainly as good as the second bundle, right? So this is called reflexiveness. इसको हम कैसे show करते हैं? How do we show reflexiveness? We show reflexiveness like this, that if this is bundle X, then bundle X is as good as its own bundle. The sign of as good as is weak preference. Remember we did this weak preference, beta? Weak preference. Weak preference translates to as good as. So when we say that a bundle is as good as itself, माने कि इस बंडल से जो हमें यूटिलिटी मिलेगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा, वो दूसरे बंडल के बराबर तो मिलेगा ही मिलेगा जो सेम ही बंडल है. This is what it means. Any bundle is as good as itself. Now, when is this violated? कब ऐसा होगा कि ये violate हो जाए? It will be violated in case of small children. So if there is a child, and I show him one blue lace pack, and I show him another same blue lace pack, right? He may prefer one over the other. He may violate this assumption. है ना? वो बोलेगा नहीं 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 ये वाला better लग रहा है इसके ऊपर. Both are blue lace, 10 rupees pack, everything is the same, but children may violate this assumption, right? They may prefer one over other even when both of them are same, है ना? तो तब वो ये violate हो जाता है. Okay, now let's talk about the third assumption. So the third assumption we have is called as transitivity. The third assumption is called as transitivity. ध्यान से समझना. Transitivity says that if you prefer bundle X over Y and you prefer bundle Y over Z, then you must prefer bundle X over Z. Similarly, if you are indifferent between X and Y,
and you are indifferent between y and z, then you should be indifferent between x and z. If you weakly prefer x over y and weakly prefer y over z, then you should weakly prefer x over z. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बंडल x है एंड उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ यूटिलिटी ऑफ 10 फ्रॉम बंडल x. देयर इज अनदर बंडल y और इसमें मुझे जो सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रहा है दैट्स 8. देयर इज अनदर बंडल z एंड उसमें जो मुझे यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट इज 6. The utility from bundle x is more than utility from y. So I prefer x over y. देखो 10 is more than 8. The utility from y is more than utility from z. देखो 8 is more than 6. So I should prefer y over z. So transitivity tells me that when x is preferred over y, y is preferred over z, then x should also be preferred over z. और वो हो भी रहा है. Utility from x is more than utility from z. Satisfaction from x is more than satisfaction from z. Utility is just satisfaction. So satisfaction from x is more than satisfaction from z. So we can say that, therefore, this is transitive. Transitivity is followed. Right? This is when we go ahead and we say that transitivity is followed. Okay. Now what we can go ahead and we can ask is, when is transitivity violated? Right? So when is it violated? So transitivity is violated whenever you have cyclical preferences. Right? Now, what are cyclical preferences? Let me give you an example of cyclical preferences. So, for example, I ask a person, do you like pizza or pasta? And he tells me, I love pizza. Then I ask a person, I'm giving you pasta and I'm giving you sandwich. And he tells me, I love sandwich. So transitivity tells me that if pizza is preferred over pasta, is preferred over sandwich, then pizza should be preferred over sandwich. Right? Now, I give this person pizza and sandwich, but he chooses sandwich. So when you go ahead and here I have pasta. So when he chooses sandwich here, there is a cycle that has been created, that among pizza and pizza was chosen. Among pasta and sandwich, pasta was chosen. And among pizza and sandwich was chosen. तो एक cycle create हो गया. Although होना ये चाहिए था that if pizza over pasta and pasta over sandwich, right? So you should have chosen pizza over sandwich. But when pizza and sandwich are given to you, the individual is choosing sandwich. उसने अपना preference change कर दिया, right? So when this happens, this is called as cyclical behavior. And this is when transitivity is violated, right? So transitivity gets violated with cyclical behavior. These are the three axioms, or these are the three assumptions of your rational behavior, right? Completeness, reflexivity, and transitivity. Okay, I hope that this is absolutely clear to all of you. Now, I'm just going to go ahead and give you a homework question. Just try to think about it, right? Question.
Consider a group of people A, B, and C. Consider the relation at least as tall as, right? A, is it transitive? B, is it complete? So the homework question is, you have to consider a group of people A, B, and C, and the relation is at least as tall as, right? Is this relation transitive? Is this relation complete? Okay, try to do this question. I will discuss it in the next lecture. Okay, thank you. Hi, good evening, everyone. So first of all, let us look at the homework question that I had given you in the last class. Let us try to solve this homework question that I had given you, right? So what is this question saying? Consider a group of people A, B, C and consider the relation at least tall as. Is this transitive? So देखो, suppose I consider that, beta, consider this, that A is this individual and this is B and this is C. So I am saying A is at least as tall as B. A का height B जितना है या B से ऊपर है. And then I am saying B is at least as tall as C. A is as tall as B, B is as tall as C. So can I go ahead and say that A is at least as tall as C? Can I say this? Yes. अगर A का height B से बड़ा है और B का C से, तो A का C से तो will be higher only, no? So I can go ahead and I can say this. So is this relation transitive? Answer is yes. Now talk about completeness. Completeness क्या बोलता है? Given any two bundles, I should be able to compare. तो इस केस में given any two individuals, can you compare their height? क्या आप इनका height compare कर सकते हो? Can you compare their height? You can say that, okay, this person is taller, this person is shorter. You can complete the relationship. So is this complete? Yes. Is this complete? Yes. So at least as tall as means या तो tall होगा या तो बराबर होगा. So you have covered all possible things. That either two people में one will be tall, one will be short, or the second possibility is that both will have same height. You have covered both when you are saying at least as tall as. So at least as tall means what? दो चीज हो गई, या equal height या one has more height. यही तो होगा, isn't it? One has equal height as other or one has more height as other. Both these relationships are covered here, isn't it? Right? So you can go ahead and you can understand here that this is a complete relationship. Right? So this is about it, right? Now, I hope that this homework question is absolutely clear to you. Let us now go to a new topic and we are going to talk about indifference curve today. Okay. What is an indifference curve? An indifference curve basically is combination
two goods. That means I am presenting a consumption bundle such that consumer gets same level of utility, right? An indifference curve shows all those consumption bundles that leave the consumer indifferent, which give the consumer the same level of utility. So if the consumer gets same level of utility, that curve which shows us those bundles, उसी को हम indifference curve बोल देते हैं. So let's try to plot an indifference curve. So I have good 1 here, and I have good 2 here. This is my indifference curve. I see 1. Indifference curve 1. Try to see this thing better. I am saying that point A, point B, point C, point D, and so on, all these points give consumer the same level of satisfaction. They give consumer the same level of utility. What is the word, beta? Utility. Utility means satisfaction. So all these bundles give consumer same level of satisfaction. तो देखो यहाँ पे, suppose here I have 1 unit of good 1 and 5 units of good 2. Here I have 2 units of good 1 and I have 3 units of good 2. Suppose here I have 3 units of good 1 and suppose I have 2 units of good 2. Here I have, इसको 6 कर देते हैं. Let's make this 6. Here I have 6 units of good 1 and 1 unit of good 2. ठीक है. And suppose I have defined my satisfaction. कैसे define किया मैंने बच्चे? My satisfaction from the two commodities is equal to the product of the commodities. This is how I have defined my utility. इस तरीके से मैंने अपने utility को define कर दिया. Now, how we define utility is a separate topic. I will talk about that separately in another lecture. अभी के लिए just take it as given. Just consider it given. अभी के लिए मान लो कि ऐसा दिया हुआ है आपको that your utility is the product of the consumption of the two goods. तो बेटा bundle A में क्या है? Good 1 के 1 units and good 2 के 6 units. So what will be your utility from A? 1 into 6 equal to 6. Now B beta. In B, you have 2 units of good 1 and 3 units of good 2. So what will be your utility from bundle B beta? Again, कितने units हैं good 1 के? 2 units. कितने units हैं good 2 के? 3 units. 2 into 3, 6. Bundle C beta. How many good 1 you have? 3 units. Good 2, 2 units. What will be utility from C? 3 into 2 equal to 6. Bundle 4 beta. How many units of good 1 you have? 6 units. Good 2, 1 unit. Utility from bundle D will be 6 into 1 equal to 6. 6 into 1 equal to 6. So you are getting the same level of satisfaction from different bundles. So we can say that bundle A is indifferent to B, indifferent to C, indifferent to D. They are giving you the same level of satisfaction. So two bundles that give you the same level of intersection, that give you the same level of satisfaction, that is called as your indifference curve. All these bundles, ये जो एक ही लाइन पे लाई करें,
such that इनसे जो utility मिले या satisfaction मिले, that is equal, becomes an indifference curve. Now we want to go ahead and we want to define something which is called as a weakly preferred set. But before I define this, I want to do another property of indifference curve. क्या property है बच्चे? The property is points that lie above indifference curve give higher level of satisfaction. Those points which lie above the indifference curve, है ना? They give you more level of satisfaction. So for example, this is an indifference curve. ये मेरा एक indifference curve है, ICA. ये हो गया good X, good Y. Those points which are above this indifference curve, माने जो भी point इसके ऊपर होगा, like point D, this is point D, point F, this is point C. Those points which lie above indifference curve, उनसे आपको ज्यादा satisfaction मिलेगी. Why? Because just see here बेटा, suppose I am looking at bundle D. तो D और B को अगर हम compare करें, if I compare D with B, D has more amount of good X and D has more amount of good Y, है ना? तो जैसे suppose point B is 2 units of X and 3 units of Y. तो what will be my utility बेटा? अगर मैं utility X into Y मानूं, 2 into 3, it means 6. This is the utility from bundle B. This is my utility from bundle B. What about utility from bundle D? Bundle D has 4 units of X and it has 4 units of Y. So what will be utility from bundle D beta? 4 into 4, that means 16. So bundle D is giving you more utility than bundle B, isn't it? तो यहीं से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है which is called as monotonicity. Mono means more. So monotonicity means more is preferred. So if you increase consumption of both goods or one good, holding other constant, utility will increase. Utility will increase. तो जब हम दोनों ही गुड्स को बढ़ाते हैं, जैसे पॉइंट बी पे जाते हैं, या अगर मैं पॉइंट सपोज यहां आऊं, पॉइंट एफ पे आऊं, तो एफ पे क्या हुआ? व्हाट इज द यूटिलिटी फ्रॉम एफ बेटा? आई एम कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड मैंने y का चेंज नहीं किया, यहां पे भी y is 3 units and f पे भी y is 3 units only. So 4 into 3, 12. So utility at f is also more than b. F and B have same amount of good Y. देखो Y का consumption same है, but F has more X. देखो X बढ़ गया. So utility has increased, isn't it? So whenever you increase both the goods, जैसे point D पे गए, X भी बढ़ा दिया, Y भी, I increased both, or I increase one good, then my utility will increase. So this tells me another thing, that higher the indifference curve, more
the utility. जितना ऊपर मेरा इंडिफरेंस कर्व होगा, the higher my indifference curve is, the more will be my utility. So, which means that if I have to go ahead and I have to draw indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3, good X, good Y. As I go on higher and higher and higher indifference curve, my utility will increase. My utility will increase. Now let's talk about weakly preferred set. So beta, if you remember, what was weak preference saying? क्या मतलब था weak preference का? X is weakly preferred to Y. It has two parts to it. दो चीजें हो सकती हैं इससे. One, either X gives you more than Y. Two, either X utility is equal to Y. So weak preference has two things in it. दो चीजें आ जाती हैं weak preference में. The first thing in weak preference is X is strictly preferred over Y. And the second thing in weak preference is I am indifferent between X and Y. I am indifferent between X and Y. So beta, when X is preferred over Y, matlab these are all points above indifference curve. Because जो point भी indifference curve के ऊपर होगा, they will give me more utility. And indifferent means all points on the indifference curve. All points on the indifference curve. So if I have to go ahead and if I have to combine the two, क्या combine कर रहे हैं बच्चे? Above indifference curve and on indifference curve. So what will I get? This is my indifference curve. Good X, good Y. This part. All points on indifference curve and all points above indifference curve. If I mark all these points, जो IC के ऊपर हैं और IC पर हैं, I hope I am right in the Hindi part. Those points which are on the indifference curve and which are above the indifference curve, if I include all such points, then that gives me weakly preferred set. What does it give me? It gives me weakly preferred set. Am I clear with this part? So weakly preferred set to any point. जैसे अगर मैं point ले लेती हूँ point A, यहाँ पे हो गया इसका डिमांड good 1 का x1 and good y का y1. And I ask you, what is its weakly preferred set? So weakly preferred set will be all those points which are on the indifference curve, क्योंकि वो A के बराबर का utility देंगे, they will give utility equal to A, and all points above the indifference curve because they will give utility more than A. Including these two kind of points will give you weakly preferred set. So please write down the shaded area consists of bundle at least as good as bundle A. At least as good as means what beta? Weakly preferred. कि या तो A जितना either equal to A or more than A या A से ज्यादा. So I'm including all bundles which are giving utility either equal to A or more than A. Am I clear with this? So this is your weakly. Hi, good evening everyone. So today we are going to go ahead and do an important proof from the point of view of exam, and that is going to be that two indifference curves
cannot intersect. The aim of this lecture is to prove that two ICs cannot intersect, right? Let us try to go ahead and let us try to prove this thing. How can we go ahead and how can we prove this? I'm going to go ahead and I am going to start by assuming that suppose two indifference curve intersect. ऐसा एक situation ले लेते हैं और बोलते हैं कि suppose the two indifference curves intersect. So what will happen? Indifference curve 1, indifference curve 2. Good X, good Y. Okay. So what am I saying? I am saying suppose two indifference curve intersect. Right? Then what will happen, beta? If I take 3 points, point A, point B, and point C, right? Consider indifference curve 1. IC1 को consider करो. Consider indifference curve 1. What has happened? Point A and C are on IC1. दोनों same indifference curve पे हैं. We know that when two ICs, they are on the same indifference curve, they should give the same level of satisfaction to the consumer. अगर दो पॉइंट्स एक ही इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं तो वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देते हैं. सो दिस मीन्स दैट यूटिलिटी फ्रॉम ए एंड यूटिलिटी फ्रॉम सी शुड बी द सेम, है ना? और I can say that consumer should be indifferent between A and C. A और C के बीच में consumer indifferent होगा. Consumer will get same level of satisfaction from A and C. Is this clear? Now what we can go ahead and we can do is we can consider another indifference curve. So now I will go ahead and I will consider indifference curve 2. So consider indifference curve 2. IC2 को हम consider कर रहे हैं. Now what happens with IC2 beta? Note that point A and B, they are on indifference curve 2. So we can say that A and B are on IC2. फिर से हम same property use करेंगे. What property we will use? 2 points which are on the same indifference curve should provide the same level of satisfaction to the consumer. So this tells me that utility from point A will be equal to utility from point B. Or I can say that consumer will be indifferent between A and B. कंज्यूमर ए और बी के बीच में इंडिफरेंट होगा. कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी बिकॉज पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. वो एक ही आईसी पर आ रहे हैं. क्लियर? नाउ बेटा लेट्स यूज ट्रांजिटिविटी. फ्रॉम ट्रांजिटिविटी क्या बोलेगा ट्रांजिटिविटी? That consumer is indifferent between A and B and consumer is indifferent between A and C. So what does this tell me beta? A और B का utility same है. A and C का utility भी same है. So this tells me that utility of B and C should also be the same. That means it tells me that consumer should be indifferent between B and C.
कंज्यूमर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में इंडिफरेंट होगा. कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. इज दिस क्लियर? बट अब ये देखो कि पॉइंट बी एंड सी हैव सेम अमाउंट ऑफ गुड एक्स. दोनों में एक्स तो सेम ही है, एक्स नॉट. बट पॉइंट बी हैज y naught amount of good y and point C has y1 amount of good y. So when I compare point C with B, अगर मैं C को B से कंपेयर करूं, comparing point C with B, C has same amount of good x. उसमें good x तो B जितना ही है, but more good y as compared to B. B के कंपैरिजन में as compared to B, C has more of good y. So in the last class, we had studied about monotonicity. So using monotonicity, which says more is preferred. जितना ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. Utility from C should be more than utility from B. So transitivity tells us that B and C should give same utility. Transitivity बोल रहा है कि B और C से same utility आना चाहिए. But monotonicity is telling me that C should give me more utility than B. Isn't it? So therefore, we have reached contradiction. Right? One is telling me that utility of C is more than utility of B. Other is telling me utility from C should be equal to utility from B. Both are not possible simultaneously. I cannot satisfy both. Either it will be more or it will be equal. How can it will be more also and equal also? So we have reached a contradiction. So therefore, we cannot have two ICs intersecting each other. Right? Therefore, two indifference curves, they cannot intersect each other. Am I clear with this? Okay, beta. So this is the only topic I wanted to discuss for today, that two indifference curves cannot intersect each other. In the next class, I will go ahead and I will start talking about the different examples of indifference curve. अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि what are perfect substitutes, what are complements. So we will talk about different kind of indifference curves. Okay, beta. Thank you. Hello, beta. Good evening, everyone. So today we are going to go ahead and talk about perfect substitute goods. ठीक है कि perfect substitute goods होते क्या हैं? We need to talk about that. ठीक है? Those goods which can be substituted in case of one another. जिन goods को हम एक दूसरे के against substitute कर सकते हैं, those goods are called as perfect substitute goods. For example, so let's write down, पहले definition लिखो.
those goods which can be substituted against one another at a constant rate are called perfect substitutes. Beta, mark the word constant rate. जिन गुड्स को हम एक दूसरे के अगेंस्ट एक कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट रेट, दे आर कॉल्ड एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू आर टेकिंग 1 टी फ्रॉम मी, अगर आप मेरे से एक चाय का ग्लास ले रहे हो, देन आई नीड 1 कॉफी इन रिटर्न. Then this is perfect substitute. The exchange rate should be constant. हमेशा ये जो रेट है जिसपे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वन गुड अगेंस्ट द अनदर, दैट शुड बी कांस्टेंट. उसको कांस्टेंट होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे, बेटा दिस इज टी, दिस इज कॉफी. हाँ, मैं क्या कह रही हूं कि अभी कंज्यूमर के पास करेंटली कंज्यूमर हैज 1 टी एंड 5 कॉफीज एंड माई रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज 1:1. मेरा जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो 1:1 का है. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट when you will give up 1 unit of coffee, जब आप कॉफी from 5 you will come to 4, you will get 1 unit of tea. आपकी टी 1 से 2 पे चली जाएगी. Similarly, when you will give up 1 unit of coffee, जब आप 4 से 3 पे आओगे, you will get 1 unit of tea. आपका टी 2 से 3 हो जाएगा. The rate is constant. When you give up 1 coffee, you get 1 tea. You give up 1 coffee, you get 1 tea. You give up 1 coffee, आप 3 से 2 पे आए, you want 1 tea. उसके एक्सचेंज में you get 1 tea. आपके पास एक टी आ गया. तो this point, point A, point B, point C, point D, when we join them, जो हमें लाइन मिल रही है, this becomes the indifference curve. This is called as indifference curve. Clear? The rate is constant. Rate constant है. बेटा कंपेयर दिस विद दिस केस, जो हम आईसीस पहले बना रहे थे, कंपेयर इट विद दिस इंडिफरेंस कर्व that we had drawn here. ये वाला इंडिफरेंस कर्व, ये वाला इंडिफरेंस कर्व. This indifference curve did not have a constant rate. इसमें rate constant नहीं था. So when we were talking about, अभी इधर ही I will somewhere just write down, well defined indifference curves. When we were talking about well defined indifference curve, माने हम कैसे indifference curve का बात कर रहे थे? We were talking about convex shape indifference curve. यहां पे मेरे पास है good x, here I have good y, है ना? Here my rate is not constant. यहां पे मेरा rate of substitution constant नहीं है. What is happening in this case? So suppose let's say that you are at point A, beta. Suppose हम यहाँ पे point A ले लेते हैं. And here I have 1 unit of x and suppose I have 4 units of y. तो जब हम point B पर गए, when I go to point B, I increase x by 1 unit. I am bringing y to 2 units. I am bringing y to 2 units. So what is happening here, बच्चे?
to increase the consumption of good x by 1 unit. जब हमने x को 1 यूनिट से बढ़ाया, to increase consumption of x by 1 unit, I am decreasing consumption of y by 2 units. Clear? आगे देखो. When I move from point B to point C, so C पे I am going to 4 suppose. मैंने x को 2 यूनिट से बढ़ा दिया, देखो. But I am only reducing y by 1 unit. तो rate is not constant. Rate constant नहीं है. Here, when I increase x by 1 unit, I am decreasing y by 2 units. And here, when I decrease x by increase x by 2 units, I am decreasing y by 1 unit. Rate is not the same. यहां पे 1y देने पे 2x मिल रहे हैं, देखो x कितना ज्यादा बढ़ रहा है. और यहां पे 2y देने पे 1x मिल रहा है, देखो x कितना कम बढ़ रहा है. The rate is not the same, right? This is my convex indifference curve. Now compare it back to perfect substitute. Perfect substitute में what am I saying? I am saying the rate is constant. Rate क्या है? Constant. What does constant mean? कि हर बारी जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, every time when I go from one point to another, जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी, whenever I will go from one point to another, I will do substitution at the same rate. मैं same rate से substitute करूंगी. Here also I increase x by 1 unit. I decrease y by 1 unit. Point B से C पे भी I increase x by 1 unit. I decrease y by 1 unit. C से D पे भी I increase x by 1 unit. I decrease y by 1 unit. This is decrease. समझ रहे हो? The rate is constant. When the rate is constant, that is called as perfect substitute good, right? So this is the definition of perfect substitute. Now, how do we ensure that the rate comes out to be constant when the lines are linear lines? Okay, so please write down. When indifference curve are lines, जब इंडिफरेंस कर्व नहीं है, एक लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्लोप. इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्लोप. समझे? द स्लोप नीड नॉट ऑलवेज बी 1 बेटा. ठीक है? स्लोप कैन बी एनीथिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकती हूं that when you will give 2 tea to me, then I will give up 1 coffee. I can say this thing now, that if you give up 1 coffee, जब आप 1 कॉफी दोगे तब तक आपको 2 चाय मिलेंगी. So how will this look? This is tea. This is coffee. Suppose I am at point A, beta. Point A is, suppose 2 tea and 6 coffee. Point A is 2 tea and 6 coffee. अब हमने क्या बोला कि जब आप 1 unit of coffee दोगे, you will get 2 units of tea. This is the rate of substitution. तो if I go to point 5, मैंने 1 कॉफी दे दी, I will get 2 units of tea. तो मैं यहां आ जाऊंगी 4 पे. I have got 2 units of tea for 1 unit of coffee and I have reached point B. Clear? अब देखो दोबारा.
आई एम गिविंग अप 1 यूनिट ऑफ टी कॉफी, फिर से तो मैं अब यहाँ पे 4 पे आ गई, एंड आई एम गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ टी, तो यहां कहीं पे 6, ये हो गया पॉइंट सी। तो एवरी टाइम यू आर गिविंग अप 1 टी, सॉरी 1 कॉफी, जब जब आप एक कॉफी दे रहे हो आपको 2 चाय मिल रही है, यू गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ टी। जॉइन दीज पॉइंट्स बेटा, दिस विल बी योर इंडिफरेंस कर्व। ऑफ कोर्स नीचे तक आएगा, इट विल गो टिल द एक्स एक्सिस, this will be your indifference curve. So are you understanding the concept? The exchange rate can be anything, but it needs to be a constant exchange rate. जब हम point A से B से C से D पे जाएं, every time it needs to be a constant exchange rate. Exchange rate needs to be constant. ये point है इसका. This is what is important, right? अच्छा, then in this case we can say that consumer always worries about the total number of goods. देखो कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स इज ऑलवेज द सेम। देखो यहां पर, देखो यहां पे पॉइंट ए पे, सी हियर 5 कॉफी एंड 1 टी, तो टोटल कितना है 6। ठीक है, टोटल इज 6 यूनिट्स, है ना। पॉइंट बी पे देखो बच्चे, 4 कॉफी एंड 2 टी, टोटल इज 6 यूनिट्स, है ना। 3 कॉफी एंड 3 टी, टोटल इज 6 यूनिट्स। टोटल इज द सेम ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, समझ रहे हो। तो जब तक टोटल सेम है, कंज्यूमर इज गेटिंग द सेम सेटिस्फैक्शन, सेम यूटिलिटी। ऐसे यहां देखो, पॉइंट ए हैज 6 कॉफी एंड 2 टी, total is 8. B has 5 coffee and I think I have written it in a little वो way. I need to make the right utility function here. तो इसको क्या कर लो ना, just let me give you some numbers here ताकि ये clear हो. So what we can do here, exchange rate को constant रखने के लिए, let's say I have x plus 2y is equal to 14 ले लेते हैं. Let's say, let me take it at 14. हाँ, तो when x will be 2, so this will be 6. When x will be 4, this will be 5. When x will be, I am doing the same thing only, हाँ, जो numbers पहले लिए थे ना, I am taking on very similar basis, but I just need to change the way I will explain you the points. When x will be, suppose 6 यहाँ पे, so this will be 4. ठीक है। Now अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना, हाँ, in this case it's a little tricky, धीरे धीरे समझ में आएगा, but we are concerned about the total number at any point. ठीक है, we are concerned about the total number at any point, but try to understand that बेटा यहां पर क्या हो रहा है, that either when I have to write this utility function, तो try to understand that the rate of substitution is not 1:1. Rate of substitution है 1:2. थोड़ा सा समझो इसको, the book has not taken this example, तो एक बारी थोड़ा समझ लेते हैं. The rate of substitution is 1:2, है ना। तो जब हम एक x एक y देते हैं तो हमें 2 यूनिट x के मिल रहे हैं, है ना। तो जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो what we do is we write our utility or satisfaction as x plus 2y. How will we write it? We will write it as x plus 2y.
please write a note here that I will redo this thing. In the next chapter, I will explain this concept again using the concept of MRS. ये अभी शायद थोड़ा इतना क्लियर ना हो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये मैंने डिराइव कैसे किया यूटिलिटी फंक्शन, हाउ आई फॉर्म्ड दिस. I will be able to explain you this thing only when I do chapter number 4, जहां पे हम utility functions को explain करेंगे, where I will explain what is MRS. But अभी के लिए just understand कि if I take that your satisfaction is x plus 2y, तो देखो कि आपको हमेशा हर पॉइंट पे सेम satisfaction मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x as 2 and I take y as 6, तो x plus 2y हो जाएगा 12 plus 2 14. फिर इफ आई टेक x as 4, इस पॉइंट पे b पे देखो x as 4 and y as 5, तो भी x plus 2y आएगा 14. So the level of satisfaction that I am getting is the same. यहां पे भी 14 and यहां पे भी 14. ठीक है, बट हाउ आई गॉट दिस, यहां पर ये कैसे आया है, दैट इज समथिंग विच आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. जस्ट लीव दिस फॉर नाउ. अभी के लिए आप बस इससे समझ लो दैट इफ द रेट इज 1:1, हर एक टी के लिए एक कॉफी. इफ द रेट ऑफ substitution is 1:1, then in that case consumer is always concerned about the total number. consumer को सिर्फ इससे मतलब है कि टोटल कितना बन रहा है. Here also he is getting 6 units. Here also he is getting 6 units. Here also he is getting 6 units. Just understand this much, huh? Okay, let's take one last example here. So suppose I tell you that there are two kind of pencils, right? One is a red pencil and one is a blue pencil. And consumer is concerned with the total number of pencil. अगर उससे एक रेड पेंसिल आप ले लो तो उसको एक ब्लू पेंसिल दे देना. द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1:1. ठीक है, सो हाउ विल वी ड्रॉ दिस बेटा? ऑन वेरी सिमिलर बेसिस. आई एम टेकिंग ब्लू पेंसिल हियर, आई एम टेकिंग रेड पेंसिल हियर. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट. हियर कंज्यूमर हैज 6 रेड पेंसिल्स एंड 1 ब्लू पेंसिल. अब मैंने क्या किया, आई टुक 1 रेड पेंसिल फ्रॉम द कंज्यूमर, उसके पास 5 रेड पेंसिल्स हो गया, बट आई गिव हिम 1 ब्लू पेंसिल इन रिटर्न, सो ही हैज 2 ब्लू पेंसिल्स नाउ. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हियर? 6 रेड and 1 blue, 7 pencils. Total number here beta 5 red and 2 blue, which means 7 pencils. Let's go to the next point. देखो यहाँ पे, here I have 4 red pencil and I have 3 blue pencils. So what is going to be the total here, बच्चे? 4 red and 3 blue, 7 pencils. And rate of substitution is constant. So what am I getting? I am getting perfect substitutes. Right? So please write down the consumer only cares about the total number of pencils. कंज्यूमर को सिर्फ इससे मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल क्या है, नॉट देयर कलर. सो ब्लू एंड रेड पेंसिल आर perfect substitutes of each other. Blue and red pencils, they are perfect substitutes of each other. And what is the slope of this indifference curve, bache? This means how much. So slope is what? Perpendicular by base. Perpendicular by base. So how much red pencil you have to give up to consume 1 unit of blue pencil? तो देखो, when you go from point A to B, blue pencil कितने से बढ़ रहा है? By 1 unit.
So change in blue pencil is by 1 unit. Red pencil is decreasing by 1 unit. So red pencil is decreasing by 1 unit. So what is the slope of this? -1. What is minus reflecting? क्या दिखाता है minus sign? That to increase good X, you should decrease good Y. Whenever you have to increase the consumption of one good, you must decrease the consumption of the other good, right? So please write down indifference curve are straight lines with slope of -1. The indifference curves are straight lines with a slope of -1. And this slope remains constant. Is this clear to everyone? What are perfect substitutes? I hope this is clear, huh? Okay, beta. So now in the next class, we will go ahead and we will do perfect complements. Okay, thank you. Hi, good afternoon, everyone. So today we are going to go ahead and we are going to talk about the next kind of indifference curve. And that is going to be our perfect complements, right? So what are complementary goods? So I'm going to use the word perfect complements. So perfect complements are those goods which are used together. Example, left shoe and right shoe, right? These goods are used together. And there is also, so we can say they are used in some fixed proportion, right? For example, I can say that I will wear one left shoe with one right shoe. This is the proportion. If you give me one left shoe and one right shoe, अगर आप दोनों का एक एक मुझे दे दोगे, एक left shoe और एक right shoe, then I will have one pair and I will use them together. If you give me one left shoe with two right shoes, then also it is of no use to me. ये जो extra right shoe आप मेरे को दे रहे हो, the extra right shoe you are giving me, that is of no use to me. उसका कोई भी use ही नहीं है, and I will just have still one pair, right?
So the point here is that as long as I am making one pair, my utility is same. Right? So, for example, if you, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ left and right. If you give me one left shoe and one right shoe, तो मेरे पास एक pair बनेगा. I will get one pair of shoe. If you give me one left shoe and two right shoe, तो भी मैं एक ही जोड़ी बना पाऊंगी. I will be only able to make one pair of the shoe. The extra right shoe is waste. If you give me two left shoe and one right shoe, then also I will get one pair. If you give me three left and one right, then also I will have one pair of shoes. If you give me four right and one left, then also I will have one pair of shoes. Right? Are you getting it? So, adding one of the shoes, अगर आप मेरे को सिर्फ extra right shoe दे दो या left दे दो या left दे दो या right दे दो, without adding the other one, is going to go ahead and give me the same level of satisfaction क्योंकि at the end of the day I just have one pair of the shoes. I just have one pair of the shoes. Right? Such goods, they are called as complementary goods. So how can I increase the satisfaction of consumer? So satisfaction or utility of consumer will increase if both shoe are increased. And it means if you give me two left and two right, then I will have two pair. तब मेरा satisfaction ज़्यादा हो जाएगा because now I have two pair of shoes. So how can I go ahead and how can I plot this? कैसे दिखा सकते हैं इस चीज को? Try to see here. I have taken left shoe here. I have taken right shoe here. Isn't it? So I am saying, अगर आप मुझे एक left दो and एक right दो, if you give me one left and one right, जो भी मेरा satisfaction है, whatever my utility is, it remains the same. If you give me two left and one right, तो भी मुझे वही मिलेगा, एक ही pair. If you give me three left and one right, then also I will get the same satisfaction. If you give me one left and two right, then also एक ही pair बन रहा है. One left and three right, then also same satisfaction. So all points that give consumer same level of satisfaction should be on the indifference curve. जो भी points consumer को same utility देते हैं, same satisfaction देते हैं, all the points that give the consumer the same level of satisfaction should be on the same indifference curve, right? So point A, B, C, D, E should be on the same indifference curve. Point A is one left, one right. Point B is two left, one right. Point C is three left, one right. Point D is one left, two right. Point E, one left, three right. All these points, ये सारे के सारे points से I am only able to make one pair of the shoe. मेरे पास सिर्फ एक pair जूते का आ रहा है. I am getting one pair of the shoes. So they should go ahead and give me the same level of satisfaction. So they should be on same indifference curve. है ना? अच्छा, if I want to increase the satisfaction of consumer, तो क्या करना पड़ेगा? I need to give him more pair of the shoes. और वो कब आएगा? When he will have two left and two right. अगर left का भी बढ़ा दो और right का भी बढ़ा दो, then he will have two pair of the shoes. If you give him two left and two right, he will have two pair of the shoes. Is that clear? So for this, what do I need to do? This will be my another indifference curve. देखो, point F is two left, two right.
point G is 3 left, 2 right. Point H is 2 left, 3 right. देखो, just match this. 2 left, 3 right. So this gives me 2 pair, 2 pair, 2 pair of shoes. So these points will give the consumer the same level of satisfaction because these points give rise to 2 pair of the shoes. इनसे 2 pair जूते के बन रहे हैं. You're giving rise to 2 pair of the shoes. Right? So the important thing about perfect complements is that consumer prefers to consume these goods in fixed proportion. To give you another example of this, I can tell you, suppose I tell you that there is one tea which I like with 2 spoons of sugar. I like my one tea with 2 spoons of sugar, right? Then this is also complementary goods. एक चाय हमेशा 2 चम्मच चीनी के साथ ही कंज्यूम करते हैं, right? The ratio need not be 1:1. यहाँ पे, for example, here you had the ratio 1:1. 1 left with 1 right, 2 left with 2 right. But the ratio will not always be 1:1. The ratio can be 1:2, 2:1, कुछ भी ratio हो सकता है. Am I making sense? And to increase the satisfaction of consumer, you need to increase consumption of both the goods. ठीक है, तो for example, as long as you were increasing only left or only right, so satisfaction was not increasing, एक पेयर ही बन रहा था. To increase the satisfaction of the consumer, you need to ensure that you increase both the goods. जब good X का भी left को increase किया from 1 to 2 and right को भी increase किया from 1 to 2. When you increased both of them, only then the satisfaction of the consumer increased. Am I clear with it? Okay, beta. So this is about perfect complementary goods, right? Okay. Now, I'm going to go ahead and give you a homework today. So the homework is the following. A college football coach says that given 2 linemen, A and B, he prefers the one who is bigger and faster. Is this relation transitive? Is it complete? Try to do this question based on whatever we have learned till now. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने की. Hi, good afternoon, everyone. So welcome to the next lecture in which I am going to talk about bad goods today. Okay. Before we do that, let us take the homework question. Let us see how
to solve this homework question, beta. देखो ध्यान से what the question is saying. A college football coach says that given two linemen, A and B, he prefers the one who is bigger and faster. Is this relation transitive? तो देखो जरा ध्यान से. Suppose if I tell you that A is bigger and faster than B. B is bigger and faster than C. तो क्या होगा? A will be chosen over B. B will be chosen over C. तो क्या हम कह सकते हैं कि if A and C are given, तो A will be chosen? Yes. If A is bigger and faster than B, A B के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा फास्ट है. B C के मुकाबले में, in comparison to C, he is more bigger and faster. So A will be more bigger and faster in comparison to C. So A will be chosen na in comparison to C also. So we can say that this is transitive. हम बोल सकते हैं that these are transitive preferences. So we can go ahead and say that therefore these preferences are transitive. ये preferences को हम transitive बोल सकते हैं. These preferences are transitive. Am I clear with it, बच्चे? ठीक है. Now बेटा completeness की बात करते हैं. ठीक है. तो suppose completeness means what? I should be able to tell what should be done in a particular situation. मैं दो bundles को हमेशा compare कर पाऊं. I should be able to compare two bundles. अच्छा, tell me something. Suppose I tell you that A का height is 5.8. And his speed is 70 km/h. Just an example. And B का height is also 5.8. And his speed is also 70 km/h. मतलब both of them have same, are equally big and equally fast. Equally big and equally fast. Does this question tell you what will be done in that case? क्या ये बताता है कि उस केस में फुटबॉल कोच किसको चूज करेगा? Does it tell you who will the football coach choosing? It does not. It does not tell you whether the football coach will choose person A or person B. ये बता ही नहीं रहा कि दोनों में से किसको फुटबॉल कोच चूज करेगा. So if it cannot tell you which person the football coach will choose, मतलब this is not complete. You cannot compare in all circumstances. यहाँ पे comparison हो नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहे कि A के साथ जाए या B के साथ जाए या दोनों के साथ चले जाए, किसी को भी ले ले randomly. So therefore these preferences are not complete since no comparison criteria is given for above case. है ना? तो therefore it is not complete. समझ गए बात को? Is this clear, बेटा? Okay. Now let us go to goods which are bad goods. What are bad goods? Any good which you don't like is called as a bad good. ठीक है? So a commodity that the consumer doesn't like is called a bad good. Any commodity which consumer doesn't like, जो consumer को पसंद ना हो, that is called as a bad good. For example, I don't like mushrooms.
ठीक है, बट आई लव चीज. सो चीज, when you increase the consumption of cheese, my satisfaction increases. मेरा यूटिलिटी बढ़ता है. ठीक है, बट फॉर मशरूम, when you increase the consumption of mushroom, my satisfaction or utility decreases. तो जब आप चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हो, when you increase the consumption of cheese, right, my satisfaction or utility will increase. But when you increase the consumption of mushroom, my satisfaction or utility will decrease. हाँ बेटा, तो cheese is a good for me and mushroom is a bad good for me. ठीक है. Now question is, how do we make indifference curve in this case? हम इस केस में indifference curve कैसे बनाते हैं? तो what is the property of indifference curve? All points on indifference curve should give you same level of satisfaction. जो भी points indifference curve पे आ रहे हैं, whatever points are coming on the indifference curve, they should give you the same level of satisfaction. They should give you the same level of utility. ठीक है. तो now what we can do now, suppose I go ahead and I take, अच्छा, this is okay, you can take good on x axis also and good on y axis also, किसी भी एक में ले सकते हो. ठीक है. So suppose I go ahead and I take mushroom here and I take cheese here. ठीक है. And I take any point, कोई भी एक point ले लो. Suppose I take point A. Point A पर I have x1 amount of cheese and y1 amount of mushroom. Now I am looking for a point जो मुझे same satisfaction दे as point A. It should give me the same satisfaction as point A. ठीक है. So consider point B बेटा. ठीक है. When I go to point B, I have increased the consumption of cheese. तो जब मैं point A से point B पर गई, from A to B, I have increased the consumption of cheese. है ना. When I increase the consumption of cheese, जब मैंने cheese का consumption बढ़ाया, cheese is a good for me. ये मेरे लिए good है. Right? So when I increase the consumption of cheese, it will increase the utility of the consumer. Consumer का satisfaction बढ़ जाएगा. ठीक है. But when I go from point A to B, I have increased the consumption of mushroom also. So increased consumption of mushroom. Mushroom का भी consumption बढ़ा दिया हमने. I have increased the consumption of mushroom also. So when I will increase the consumption of mushroom, बेटा mushroom is a bad good. तो अगर उसका consumption हम y1 to y1 dash करेंगे, when we will increase the consumption of mushroom, what will happen to my utility? There will be decrease in the utility. So one is increasing utility. One is decreasing utility. So what is the net effect? Utility is unchanged. एक ने utility को बढ़ाया, one increased utility,
One decreased utility, so utility remained unchanged. And as long as utility is unchanged, they will be on same indifference curve, same in IC pe honge. So what we can go ahead and we can say that if I join these 2 points, they will be on same indifference curve. This will be my indifference curve. Okay, same you can compare any other point, point C. Point C पे भी same हो रहा है. You are increasing cheese, utility is increasing. Increasing mushroom, utility is decreasing. एक से utility बढ़ रहा है, दूसरे से कम हो रहा है. One is increasing utility, other is decreasing utility. Net utility is unchanged. So we can say that utility at point A, that means satisfaction at point A, satisfaction at point B, satisfaction at point C is the same. Consumer is indifferent between point A, B and C. Okay. Now, beta, there is something which is known as direction of preference. Okay. Direction of preference. क्या होता है direction of preference? What is direction of preference? It tells us in which direction consumer wants to move. किस डायरेक्शन में वो अपने इंडिफरेंस कर्व देखना चाहता है. सो इफ वी यूजुअली सी फॉर वेल डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व, जो हमारे यूजुअल इंडिफरेंस कर्व हैं जो हम बनाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस बच्चे? जस्ट सी हियर, इफ दिस इज माय इंडिफरेंस कर्व, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, है ना? तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, consumer wants to increase the demand of good X and increase the demand of good Y. Consumer को X का डिमांड भी बढ़ाना है और Y का डिमांड भी बढ़ाना है. Since consumer wants to increase the demand of both the goods, we find the direction of preference from between. ऐसे माने higher the indifference curve, more the utility. Right? So we can say that in this case, consumer wants to increase the demand of both the goods, right? So direction of preference is, I can just label this, कुछ नाम दे देते हैं, A to B, है ना? Now consider the case of bad good. So now suppose I go ahead and I consider कि good Y is a bad good. Good good and bad good. Right? And this is my indifference curve. ये मेरा IC है, indifference curve. Now what does consumer want, beta? Consumer wants to increase good X. ये X वाला जो good है, X axis पे जो है वो तो good है. He wants to increase good X. But what does he want? He wants to reduce good Y. जितना कम मुझे bad good दोगे उतना better. The lesser good Y you give me, the better it is. So if I take good X and good Y, I want to increase the demand of good X. X तो मुझे बढ़ाना है. It is a good good. I want to decrease the demand of good Y. It is a bad good. I don't want good Y, so I want to lower good Y. So what will be the direction of preference? Direction of preference will be like this. It means that the indifference curve जो right side होता जाएगा, the indifference curve which will come towards right, right and right will give me more utility. जैसे here I am saying that utility from indifference curve 2 is more than utility from indifference curve 1. This indifference curve is giving me more satisfaction. ये मुझे ज़्यादा satisfaction दे रहा है. This indifference curve is giving me less satisfaction. Right? So now here I can say that if this is IC1, so indifference curve 2 will be here, beta.
Direction of preference is like this. So indifference curve 3 will be here. Clear? So I can say that my utility from indifference curve 2 is more than utility from indifference curve 1. Utility from indifference curve 3 is more than utility from indifference curve 2. Mane, the more right I come, the more is the utility. So this is giving me more utility than this. This is giving me more utility than this, and so on and so forth. Samajh rahe ho? Is this making sense? Okay. So the direction, so please write down. The direction of increasing preference is down and to the right. Right? That is towards the direction of decreasing bad good. Right? And increasing good good. So I want to decrease the bad good and increase the good good. Clear? Okay, beta. Now the last point here, please write down that the indifference curve are upward sloping. है ना? जब हमने bad good का indifference curve बनाया, they are upward sloping. Why, beta? Because when we increase the consumption of good, we must increase consumption of bad good to hold utility constant. तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पे आए, we increased the consumption of the good, तो हमें बैड गुड का कंजम्पशन भी बढ़ाया. जब गुड का कंजम्पशन बढ़ाया, यूटिलिटी बढ़ी. जब बैड गुड का कंजम्पशन बढ़ाया, यूटिलिटी कम हुई. एक से यूटिलिटी बढ़ रही है, दूसरे से कम हो रही है. नेट इज यूटिलिटी अनचेंज्ड है. Am I making sense? So when we are increasing the consumption of good, increasing the consumption of good, your utility is increasing. Increasing consumption of bad good, your utility is decreasing. So the net effect is utility is unchanged along an indifference curve. So क्योंकि we are increasing both of them, because we are increasing both, it is upward sloping. Clear? Homework beta. Now good X is a bad good. Good Y is a good. Plot indifference curve. Good X is a bad good. Good Y is a good. You need to plot indifference curve and mark direction of preference. दोनों चीजें बताना है. First, you need to go ahead and plot the indifference curve. Second, you need to tell what will be the direction of preference. Right? Okay, beta. Thank you.
Hi, good evening, everyone. So, beta, in the last class, we had gone ahead and we had talked about bad goods, right? And we had seen how to go about making the indifference curve for bad goods, right? Today, I am going to go ahead and I'm going to continue. And in today's lecture, we are going to go ahead and we are going to talk about neutral goods, right? So what is the name of the topic today? Neutral goods. Let me just write this down for you. Neutral goods. What are neutral goods? Those goods which neither increase nor decrease the utility of the consumer. जो गुड ना कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, दे नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर. उनके होने या ना होने से कंज्यूमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो वो जो गुड्स होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. द कंज्यूमर डज नॉट केयर अबाउट सच गुड्स, right? He doesn't care whether he has 1 unit, 2 unit or 0 units of those goods. They are called as neutral goods. Okay, is this making sense? Please write it down with me. So those goods which neither increase nor decrease the utility of consumer. The satisfaction of the consumer, the benefit that the consumer is getting, जो भी उसे satisfaction मिल रही है, जो भी उसे benefit मिल रहा है, it is neither increasing nor decreasing, right? If that is the case, then those goods are called as neutral goods. उन्हीं को हम neutral goods बोल देते हैं. Is that making sense? So please write down. These are the goods for which consumer doesn't care in one way or the other, right? So for example, let's say that for me, let's say that water is a neutral good. मतलब आप मुझे 1 unit पानी का दो या 2 unit या 10 unit, I don't care, right? So I am neutral about water. तो देखो जरा ध्यान से, how will be the indifference curve, beta? Suppose I tell you that I have taken water here, okay? And I tell you that I have taken, suppose, pizza here. Okay, what I am saying, beta? Pizza is a good. Pizza is a good. Good means what? Good means that when I will increase the consumption of pizza, my utility will increase. अगर हम पिज्जा का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी बढ़ेगी. My utility will increase, my satisfaction will increase. So if I increase the consumption of pizza, my utility will increase, beta. ठीक है जी. But if we increase consumption of water, utility unchanged. अगर
वाटर का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, देन द यूटिलिटी विल नॉट चेंज. बट इफ वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा, यूटिलिटी विल इंक्रीज. तो देखो ध्यान से, whether I have 1 unit of water, 2 unit of water, 3 unit of water, as long as I have one pizza, I am getting same utility from point A, B and C. है कि नहीं? Point A is one pizza, one water. Point B is one pizza, two water. Point C is one pizza, three water. But water is a neutral good. Water kitna bhi ho, I am not affected. It is a neutral good, right? Increasing water is not increasing my satisfaction, right? So what can I go ahead and say? That I can just pass an indifference curve and I can say this is how my indifference curve will look. Because A, B and C give me same level of utility, I am indifferent between A, B and C. A, B और C के बीच में मैं indifferent हूं. A, B और C मुझे same utility देते हैं. So what can I say? Utility from A, B and C is equal. तो बेटा अगर यूटिलिटी बराबर की है तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होना जरूरी है. दे विल बी ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, है ना? सो वी कैन से दैट these 3 points they will be on the same indifference curve. ये एक ही indifference curve पर होंगे. And if I want to increase the satisfaction of the consumer, अगर मुझे consumer का satisfaction बढ़ाना है, what will I do? I will increase the amount of pizza. So when I will increase the pizza quantity to 2 units, then I will reach a higher indifference curve, IC2. So I can say that my utility from indifference curve 2 is more than my utility from indifference curve 1. IC2, that means indifference curve 2, will give me more utility than indifference curve 1. This is what we can go ahead and we can say. Is it clear, beta? Clear hui ye baat? So this is how we can draw the indifference curve of neutral goods. Okay. Homework question. अब मैं रिवर्स कर रही हूं. Suppose good X is neutral good. Good Y is a good good. Then plot the indifference curve map. Map माने 2-3 indifference curve. So many indifference curve together are called as indifference curve map. So what am I saying? Now take the neutral good on the x-axis. Take the good on the y-axis and try to go ahead and plot the indifference curve map. Okay? Okay, beta. Thank you. Hi, good evening, everyone. So in today's class, we are going to go ahead and talk about satiation. What is satiation, beta? Satiation basically refers to bliss point, saturation point.
point after which any good becomes a bad good. Right? So consider this thing. Okay? For example, let's consider the case of the pani puris, the golgappas that we have, right? I don't know, I think I've drawn it correctly. The golgappas that you have every day. ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा? When you crave for pani puri, when you crave for golgappe, जब बहुत ज्यादा मन होता है वो खाने का, हाँ? The first bite of that golgappa, the first bite of that pani puri will give you so much utility. It will give you a very high amount of utility. बहुत ज्यादा utility देगा. Then you will have the second bite. It will give you a little less utility. Then you will have the third golgappa. Utility और कम हो गया, है ना? So we know that there is a concept which is called as the concept of diminishing marginal utility. What does it say? It says that as consumption of a commodity increases, the additional utility that we get declines. The first golgappa, वो जो पहली बाइट होगी गोलगप्पे की, that will give you very extra utility. The second one, थोड़ा कम. Third one, a little less. Fourth one, even lesser. What if I give you 10 pieces of golgappa? You will be full. If I again give you one more, maybe you will vomit. You will tell me, no ma'am, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते. I cannot have the 11th one. I cannot have the 12th one. Isn't it? So after some quantity, after having some units, you will go ahead and you will say, no, this is the maximum I can have, ma'am. इसके ऊपर नहीं होगा. अगर आपने और दिए तो I will vomit. Which means that good, the good that was giving you positive utility will start giving you negative utility. It will start giving you negative utility. So the good will become a bad good after a level. एक consumption level के बाद वही good, that good, it will go ahead and it will convert itself into a bad good. If you continuously eat something, keep eating it, एक point के बाद नहीं खाई जाएगी. You won't be able to have it and it will convert itself into a bad good. Am I clear with that? So now I need to plot this thing better. I am marking one best point for the consumer. He wants x1 bar of good one. Good one के उसको x1 bar units चाहिए. And he wants good 2 के x2 bar units. If I just mark this point, ये जो point यहाँ से आ रहा है ना, this point is called as the bliss point. It is also called as the saturation point. ठीक है? Satiation also. ठीक है? अब इस पॉइंट के बाद अगर मैं इससे भी ज्यादा कंज्यूम करूं, if I consume more than this is the maximum I want, right? At this point I will be saturated. Satiation, I will be saturated. मेरे को maximum हो चुका है. This is my point where I have got maximum utility. इससे ज्यादा utility I don't want, right? So something like this. So in your elementary classes also you would have learned something like this. हर 11th 12th में बच्चे को ये पढ़ाया जाता है that this is your total utility. Total utility is what, beta? The total satisfaction
attained by consumer, है ना? क्लास 11 12th में हमने पढ़ा ये बात. अच्छा, then I have something which is known as marginal utility. What is marginal utility, beta? The extra satisfaction consumer gets when he consumes an extra unit of the good. जब हम एक extra unit खाते हैं तो extra कितना utility मिलता है? What's the extra utility I get when I consume an additional unit? So for your example, I am taking Golgappas here. I had the first unit. You can call it by different name. I know you call it by puchka, by pani puri, by golgappa, whatever you call it. हाँ बेटा. अच्छा, first unit of golgappa is giving me 10 utils of satisfaction. 10 util का satisfaction मिला. What is utils? Utils is the unit in which utility is measured. जिस यूनिट में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूटिल्स. सो व्हेन आई हैव द फर्स्ट यूनिट, जब मैं पहला यूनिट लेती हूं, आई गेट अ सैटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स. सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज टोटल. टोटल इज ऑल्सो 10. देन आई हैव माई सेकेंड यूनिट बेटा. तो वो जो सेकेंड यूनिट है, इट गिव्स मी एक्स्ट्रा 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन. उतना तो नहीं मिलेगा जितना पहली बाइट में मिला. द फर्स्ट बाइट विल ऑलवेज बी समथिंग न्यू, वाओ डिलीशियस. सेकेंड विल गिव यू यूटिलिटी, दूसरे से भी यूटिलिटी आ रहा है बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन, थोड़ा कम आ रहा है. सो टोटल यूटिलिटी विल बी 10 प्लस 8 विच मीन्स 18. थर्ड वाले से आई एम ओनली गेटिंग 6 मोर. सो टोटल विल बी 18 प्लस 6 24. फ्रॉम फोर्थ वन आई एम गेटिंग सपोज 2 more, yeah, 4 more. Let's go in this gap. So 24 plus 4 will be 28. ठीक है. From the fifth one, suppose I am going ahead and getting 2 more. ऐसे कर करके we can go ahead and get extra utility. So from the fifth one, I am getting 2 more, right? So 28 plus 2, 30. Right? So as you go ahead and as you increase your consumption, as you go from first unit to second to third to fourth to fifth, you are getting more and more utility. Clear है बात? अच्छा, what about the sixth unit बेटा? जो sixth unit हमने लिया पानी पूरी का, it is not giving me any extra utility. बस इससे ज्यादा I don't want. ये sixth unit is giving me zero utility. Zero extra utility. So 30 plus 0 equal to 30. This is my point of satiation. इससे ज्यादा I don't want to consume. Point of satiation. Clear? This sixth unit is my point of satiation. I don't want to go ahead and consume beyond sixth unit. इसमें मेरा हो गया satisfaction पूरा. Now when if someone forces me कि नहीं एक और लो ना, take one more pani puri, take one more golgappa, I will vomit. I cannot have it. I will get negative utility. तो -2. So my satisfaction will go to back to 28. Right? So beyond this has converted to a bad good. Clear हुई बात? This is this. ये जो है ये 6 unit है. This is this point. x1 bar. Till x1 bar. जब तक हम x1 bar तक पहुंच रहे थे, my total utility was increasing. Marginal utility means extra utility I am getting. It was decreasing. At that 6th unit, ये जो मेरा 6th unit था, marginal utility became 0 and total utility became maximum 30. If you ask me to consume after the 6th unit, marginal utility will be negative. Total will
decline. Total utility will start falling. So this point, ये जो मेरा point है, this point is my point of satiation. This is my point of satiation or saturation. ये जो मेरा point है, जहां पे मेरा point of satisfaction maximum है, that is nothing but this x1 bar, 6 units. Good one can be Golgappas. Like that only I have some good too, beta. Here it is a good. After it becomes a bad good. जैसे यहाँ पे, here it was a good, पर consume करते जाओगे, then utility keeps falling and it becomes a bad good. Right? Now what we can go ahead and we can do is, we can plot an indifference curve around it. So what I am doing is, look very carefully. The indifference curve looks like a circle. Indifference curve looks like a circle. You can pick up any quadrant and look into the circle. ध्यान से समझना, हाँ. I want to reach the point of bliss. मुझे ये point reach करना है from any part of the circle. So if I am at point A, I want to reach here. If I am here, I want to reach here. If I am here, I want to reach here. If I am here, I want to reach here. क्योंकि इस point पे मेरा utility maximum है. I am getting maximum utility at this point. From any point, I want to reach this point. मुझे किसी भी हाल में इस point तक पहुंचना है. This is my point of bliss, point of satiation, maximum utility, right? So try to understand that these arrows, what are they, beta? They are giving you the line of preference. These are your line of preference. Is this clear? Now what you can do is, suppose I tell you, suppose अब मैं आपको बोलती हूँ, consider good 1 is a bad good. Good 2 is a bad good. ठीक है? And I ask you plot indifference map. है ना? Good 1 is a bad good. माने this part. Good 2 is also a bad good. माने this part. So when both of them are bad good, which quadrant will I be in? This one. Both of them are bad goods. है कि नहीं? What is the shape of my indifference curve? Concave. तो कैसे IC बन जाएंगे? Like this. Let's see. ये हो गया good X. Suppose एक bad good का नाम ले लो. Pollution is a bad good. Whenever you consume pollution, your utility falls. जब भी pollution लोगे तो utility गिरेगा. It's a bad good. Let's take good Y बेटा. ये भी एक bad good ले लेते हैं. तो number of COVID cases, COVID disease, ये भी एक bad good है. अच्छा, now let's see if the utility remains constant from one point to another or not. हमने क्या पढ़ा था? As long as we are on the same indifference curve, utility remains constant. So I take a point A, I take a point B, and let's see अगर हम A से B पे जाते हैं, utility remains the same or not. So let's see here. When I go from A to B, I am increasing. देखो, I am increasing pollution. तो अगर pollution बढ़ेगा, what will happen to your utility बेटा? Utility will decrease. Clear?
When I go from A to B, what is happening to number of COVID cases? They are decreasing. So I am decreasing COVID. So what will happen to utility beta? Utility will increase. So when I am increasing pollution, utility is decreasing. I am decreasing COVID, utility is increasing. One is decreasing utility, one is increasing utility. What happens net beta? Utility will be unchanged. Utility will be unchanged. That is why they are on the same indifference curve. इसीलिए तो same indifference curve पे. अच्छा, what will be your direction of preference? क्या है direction of preference? Let's try to understand this thing. सिर्फ इस केस में, हाँ. So I take both of goods as bad goods. Bad good, bad good. और ये मेरा इंडिफरेंस कर लेते हैं. For the direction of preference, what do we want? We want to, अगर मैं किसी भी इंसान से पूछूं, if I ask any person कि बेटा both of them are bad goods, what do you want? So what will you tell me? If both the goods are bad goods, we want to go ahead and we want to decrease the consumption of both the goods. मुझे गुड X का कंजम्पशन भी डिक्रीज करना है और गुड Y का कंजम्पशन भी डिक्रीज करना है. I want to reduce X and reduce Y. तो डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस इज ऑलवेज इन बिटवीन बेटा, है ना. सो आई वांट टू, कंज्यूमर wants to decrease good X, decrease good Y. So consumer wants to decrease the consumption of both the goods. दोनों ही गुड्स के कंजम्पशन को कंज्यूमर को रिड्यूस करना है. So we can go ahead and we can say that this will be the direction of preference, reducing the consumption of both the goods. ये बात clear हुई? Is this clear, बच्चे? Okay, so this is how you can analyze different cases. तो homework, हाँ? Create indifference curve map when good X is good and good Y is bad good. So good X is a good. That means good X is a good. Good Y is a bad good. That means better this segment. So how will the indifference curve look? I hope you will be able to draw it. Good, bad good. अच्छा, एक काम करो, just tell me कि ensure that दो points देकर that the utility remains unchanged along an indifference curve. Take any two points, point A, point B. So when you go from A to B, you are increasing good X. Good X is a good. So utility is increasing. You are increasing good Y. Good Y is a bad good. So utility will decrease. एक utility increase कर रहा है, एक utility decrease कर रहा है. So utility will remain unchanged. Utility will remain unchanged.
So when we go from point A to B, utility is unchanged. तो ये प्रूफ करता है that they will be on the same indifference curve. ठीक है, ऐसे ही बेटा just try to make the other two cases also. So when both of them are good goods, अगर दोनों ही good goods होंगे, that means you will be here, right? Well defined indifference curve. And when good X is bad and Y is good, तो कहाँ हो जाओगे? You will be here, right? Here. है ना? So you can make all four indifference curve now. What is the bliss point? ये point कौन सा है? Where your total utility will be maximum and marginal will be 0. Is this clear to everyone, beta? Okay, beta. Hello, beta. Good evening, everyone. So today we are going to go ahead and start our analysis with discrete goods. What are discrete goods? Those goods which can only be measured in, so I cannot write them in decimals. I can only write them in numbers and not decimals. Just for example, but I can say that either you have one car or two car, right? या तो one car होगा या तो two car होगा. You cannot have 1.1 car. You cannot have 1.4 cars, है ना? So car is cannot be described in continuous units. कार को हम continuous units में नहीं describe कर सकते. We cannot describe car in continuous units. Either car will be one car or two car, not four car, not 10 car. I mean, not 4.1 car, not 10.5 cars. है ना? So those goods which can only be described in integer values, not in decimal values, जिनको हम सिर्फ integer में लिख सकते हैं, पर हम decimal में नहीं लिख सकते हैं, they are called as discrete goods. उनको क्या बोल दिया जाता है? They are called as discrete goods. Am I clear with this part, beta? ठीक है. Now in this case, what will happen is, I will use the concept of composite good. तो हम good 1 को x1 represents quantity of good 1 बेटा. और ये जो हमारा good 1 है ना, this good 1 is a discrete good. So I am taking good 1 as a discrete good, और माने ये सिर्फ integers में ही available होगा. And then I am taking x2. This represents quantity of good 2. And beta, this is available. ये good 2 को हम कैसे define करें? Money spent on all other goods. जैसे हमने composite good define किया था. Money spent on all other goods. ठीक है. Now we need to go ahead and we need to make indifference curve for such goods. ठीक है बेटा.
So let us try to just represent this using an IC curve format. So on the x-axis, I am taking good one. Good one को मान लेते हैं कार. It's a discrete good. And on the y-axis, good two. Good two is income spent on all goods other than car. Income is a continuous commodity. समझने की कोशिश करो. पैसा कंटिन्यूअस होता है, इनकम इज कंटिन्यूअस. क्यों इनकम कंटिन्यूअस है बेटा? क्योंकि इनकम कैन बी 5 रुपीज ऑल्सो, 5.5 रुपीज ऑल्सो, 5.7 रुपीज ऑल्सो, 5 रुपीज 70 पैसा, 5 रुपी 80 पैसा. समझ रहे हो ना? तो इनकम इज अ कंटिन्यूअस गुड. तो गुड टू तो कंटिन्यूअस है, बट गुड वन जो है वो हमारा एक डिस्क्रीट गुड है, वो सिर्फ नंबर्स में ही मेजर हो सकता है. नाउ हाउ डू आई शो इंडिफरेंस कर्व ऑफ सच गुड्स? ठीक है, तो देखो ध्यान से. आई एम मेकिंग इंडिफरेंस कर्व. ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए. पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है जीरो कार एंड ऑल मनी ऑन अदर गुड्स. आई एम जस्ट कंज्यूमिंग अदर गुड्स. मैंने एक भी कार कंज्यूम नहीं किया. आई एम स्पेंडिंग ऑल मनी ऑन द अदर गुड्स. फिर बेटा यहाँ पे आई हैव वन कार विद मी सपोज, और ये कोई एक पॉइंट आ गया, पॉइंट बी. तो जैसे ही हमने कार को खरीदा, एज आई इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कार, तो यूटिलिटी सेम रखने के लिए व्हेन यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, टू कीप द यूटिलिटी अनचेंज्ड, यू शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी. बोथ गुड्स आर गुड गुड्स, दोनों ही गुड्स गुड गुड्स हैं. तो अगर हमने कार का कंजम्पशन बढ़ाया, गुड वन का कंजम्पशन बढ़ाया, तो गुड टू का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, टू होल्ड यूटिलिटी अनचेंज्ड, टू ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व. सो पॉइंट बी इज अ लिटिल लोअर. आई एम रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स. मैंने दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम कर दिया. आई एम इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ कार एंड आई एम रीचिंग पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट बी इज वन कार एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, सम मनी ऑन अदर गुड्स. फिर बेटा देखो पॉइंट सी. पॉइंट सी क्या है? आई हैव टू कार्स. सो अगेन आई एम इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कार्स टू होल्ड यूटिलिटी कांस्टेंट. अगर मुझे यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है और मैं कार्स का कंजम्पशन बढ़ा रही हूं, आई शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स. तो बाकी गुड्स पे कम पैसा खर्च होगा. आई मस्ट डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स. तो पॉइंट सी, आई एम इंक्रीजिंग कार फ्रॉम 1 to 2. बीच वाले पॉइंट्स दे आर नॉट कंज्यूमेबल. आई कैन नॉट हैव 1.1 car, 1.4 car, 1.6 car. That is not there. I don't have those bundles with me, right? So either it is one car or it is two cars. ठीक है. So how do I draw an indifference curve for these points, beta? By representing dotted line. So dotted point represent that this is not line. Line नहीं है ये. This is actually मेरे को indifference curve. So if you just compare it with the continuous good indifference curve beta, तो continuous good indifference curve क्या बोलता है? A well defined indifference curve looks like this. ऐसा होता है ना, convex. This is good 1, this is good 2. कुछ ऐसा दिखता है. Well defined indifference curve. What happens beta? When you go from point A to point B, you increase good 1, utility increases. You decrease good 2, utility decreases. Over and above, utility remains unchanged. That is why they are on the same indifference curve. इसीलिए वो same IC पर हैं. Now what has happened is that point A, suppose it represents one car. Suppose point B is representing 2 car beta. Suppose there is point C which represents 3 car. तो जैसे ही ये discrete good case हुआ, the moment it has become discrete good case, तो ये point A और बीच के जो points हैं,
the points in between A and B, they are not available to the consumer. Right? It's not about affordability. It's about the fact that these bundles are not available. Because suppose let's say a bundle D tells me that there is 1.5 car, but can I have 1.5 cars? क्या 1.5 cars हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना. So point D is not a point which we are talking about, isn't it? So therefore, any point between A and B is not available to the consumer. तो हम यहाँ पे we will represent it with dotted point. Point A and B, point between B and C. These are not available only to consumer. Like this. Same here. Between, so suppose this point is 0 beta, 0 car. Between 0 and A, no point is available to the consumer. So I cannot have that like this. And something like this will be there. Are you understanding? So it will cut the axis. Axis are possible. I can have 0 car. Maybe here also I can have maximum 4 cars. Axis is possible, but points in between are not possible. तो जब हम ऐसा कर देते हैं वो डिस्क्रीट गुड बन जाता है. इज दिस मेकिंग सम सेंस? तो क्या बोल रहा है डिस्क्रीट गुड कि या तो 0 कार हो, या 1 कार हो, या 2 कार हो, या 3 हो, या 4 हो, बट इनके बीच के पॉइंट्स नहीं हो सकते. Either you will have 0 car, 1 car, 2 car, 3 car or 4 car, but you cannot have points in between. You cannot have these points. ये points नहीं हो सकते. And since you cannot have these points, क्योंकि ये points हो ही नहीं सकते हैं, the indifference curve is just these dots. And utility from point A, B, C is equal. ये सारे points पे utility same है because they are on the same indifference curve. Clear हुई ये बात? Okay. I'm just going to remove this now. ठीक है. So you will write it with me. Please write it with me, beta. Right. Good one is only available in integer amounts. The dashed line connect together the bundles that the consumer is indifferent. तो ये जो bundles है जिसे ये dashed line connect कर रही है, the line that connects these points, I am saying that utility from bundle A, B and C is same. तभी तो ये एक indifference curve पे हैं. A, B और C के बीच में consumer indifferent है. Consumer is indifferent between A, B and C. Clear? अच्छा, now if I ask you that plot indifference map. तो indifference map means what beta? Many indifference curves. Indifference map means what? Many indifference curves. So now I need to go ahead and I need to show multiple indifference curves together. अब मुझे बहुत सारे indifference curve बना के दिखाने पड़ेंगे, तब उसे हम indifference curve map बोलेंगे. We will call that as an indifference curve map. So let us try to just plot that. This is good 2, good 1 बेटा. सपोज यहाँ पे है 1 यूनिट और ये है 2 यूनिट. दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व 1. ये 2 ले लेते हैं. ठीक है.
फिर ज्यादा यूटिलिटी के लिए क्या चाहिए होगा? द हायर द इंडिफरेंस कर्व द मोर द यूटिलिटी. लेट्स ड्रॉ एन हायर इंडिफरेंस कर्व. This gives me more utility. Then draw a higher indifference curve. यहाँ पे 2 units of car, 2 units of car है. So simply we are saying that higher indifference curve, more utility. तो ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3. क्लियर बेटा? ठीक है जी. So now what you can go ahead and do is next question. Plot weakly preferred set for this consumer. Plot weakly preferred set या weakly preferred bundle of this consumer. तो बेटा what is weakly preferred set? क्या था weakly preferred set? Weakly preferred set has 2 points in it. 2 तरीके के points आते हैं weakly preferred set में. One in which consumer is indifferent, and second, those points which consumer prefers. बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज पुराने लेक्चर्स को पहले हमें देखना है. वीकली प्रेफर्ड सेट वो सेट था जिसमें वो सारे बंडल्स थे जिसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट था या वो पॉइंट्स जिनको कंज्यूमर उस बंडल के ऊपर प्रेफर कर रहा था. So if I say that X is weakly preferred to Y, it can mean two things. Either X is preferred to Y or you are indifferent between X and Y. These 2 points together, bache, they form the weakly preferred set. Please try to understand first. Remember the concepts well. पुराने concepts भूलने नहीं है, उनको रिवाइज करते हुए आगे चलना है. ठीक है? We don't have to forget the old concepts. Keep revising. तो अब देखो, if I draw this indifference curve, एक IC बना लेते हैं यहाँ पे, point A. Why am I doing dotted line बेटा? क्योंकि it is a discrete good. Point B, point C. This is an indifference curve. So weakly preferred set means what? Those point between which I am indifferent. तो indifferent कहाँ पे हूं? Point A, B और C पे. These are indifferent to each other. A, B and C पे मैं indifferent हूं. I am indifferent between these points. And which point will be preferred over A? A के ऊपर कौन से point को preference मिलेगा? Whichever has more amount as compared to A. Whichever has more amount as compared to A. That means these points, beta. Anything above A. Which point will be preferred over B? Whichever has more as compared to B. That means these points. Anything above B. Which point will have more than C? किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे C के ऊपर? वो सारे बंडल जिनमें C से ज्यादा अमाउंट है कंजम्पशन के लिए. दैट मीन्स एनीथिंग अबव C. है ना? सो सपोज कंपेयर दिस बेटा. दिस टेल्स मी 1 कार and 40 rupees on other goods. और यहां पे एक पॉइंट है जो बोलता है 1 कार and 70 rupees on other goods. तो ये जो पॉइंट D है, this point D, which is 1 car and 70 rupees on other goods, and ये जो पॉइंट B है, which is 1 car and 40 rupees on other goods. तो बेटा क्लियरली D is preferred over B, isn't it? D is preferred over B, तो D will lie in weakly preferred set.
Am I clear with it? D will lie in weakly preferred set, है ना? तो प्लीज राइट डाउन, लिखो मेरे साथ बैठ के, द वर्टिकल लाइन represent the bundles that are at least as good as the indicated bundle. तो ये जो हमारा बंडल है, इसके ऊपर जो भी बंडल्स आएंगे, ऑल बंडल्स दैट लाई अबव पॉइंट बी आर इन फैक्ट प्रेफर्ड ओवर बी, right? So they will lie in the weakly preferred set of B. Am I clear? They will lie in the weakly preferred set of B. Okay. In the next class, we will take in detail the features of well-defined preferences. Well-defined preferences को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके बेटा? ओके, थैंक यू बेटा. Hi, good evening, everyone. So we are going to go ahead and talk about well-defined preferences today. Okay. We are going to go ahead and write all the features of a well-defined preference. What is a well-defined preference? So a well-defined preference is any preference which goes ahead and which represents the general indifference curve. What is general indifference curve, beta? An indifference curve which looks something like this. Good X, good Y, and this is my indifference curve. This kind of indifference curve, right, which we usually plot, that is a well-defined indifference curve. ठीक है? क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं एक वेल डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व को? क्योंकि कुछ जब हमें कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ बेसिक चीजें एक कंज्यूमर के बारे में बोलनी होती हैं, तो हम हमेशा वेल डिफाइंड प्रेफरेंस के साथ ही काम करते हैं. ठीक है? व्हाट आर सम ऑफ द assumptions of well defined indifference curve? First, monotonicity. Mono means more. So monotonicity means more is preferred. More is preferred. ठीक है? Monotonicity says that I can go ahead and I can compare bundles and I will always prefer the bundle which has more of the good. ठीक है? पर जब हम मोर ऑफ गुड का बात करते हैं, सो क्योंकि मैं ज्यादा गुड को कम के ऊपर प्रेफरेंस दे रही हूं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गुड गुड्स. क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन तो किसी को पसंद नहीं है. नोबडी लाइक्स मोर पॉल्यूशन, नोबडी लाइक्स मोर कोविड केसेस, बट यू लाइक मोर पिज्जा, यू लाइक मोर बुक्स, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट monotonicity माने more is better, more is preferred. We are considering good goods. हम हमेशा गुड गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉट बैड गुड्स.
ठीक है। अच्छा, अब देखो, इफ x1 x2 इज वन बंडल, आपको एक बंडल बोल दिया इज अ बंडल, और एक और मैंने बंडल ले लिया, एंड y1 y2 is another bundle, then x1 x2, पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूं, देन आई विल एक्सप्लेन, will be better or preferred over y1 y2 if it has more of at least one good and no less of the other good. If it has more of one good and no less of the other good, अगर ऐसा है तब हम उसको बोल सकते हैं that it is monotonicity. So let me try to go ahead and give you some bundles related to it. Example. So example number 1, beta. Let's say you have bundle A, which is 2, 3, and bundle B, which is 1, 3. तो देखो, A has ये good X है, good Y, good X, good Y. So A has more of good X, same amount of good Y. So I can say A is preferred over B. A को हम B के ऊपर क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? क्योंकि A के पास गुड X ज्यादा है, इवन दो गुड Y सेम है, बट गुड X तो ज्यादा है ना. A has more of good X, so A will be preferred over B. ठीक है बेटा. Now take the second case. अब देखो, I am taking A as, B as, अब देखो, A has more of good X, देख पा रहे हो? This is X Y X Y, ये है 1, ये है 2. A has more of good X and more of good Y. देखो यहाँ पे दोबारा 3 and 2. So A has more of good Y. Therefore, A is preferred over B. तो यहां से हमारे पास आ गया A is preferred over B. ठीक है. टेक द थर्ड केस बेटा. A is 1 2, suppose 2 3. B is 2 2. अब देखो फिर से, this is X Y X Y. A has same amount of good X, but A has more of good Y. Therefore, A will be preferred over B. This is monotonicity. या तो आपके पास दोनों ही गुड्स ज्यादा हो, you have more of both the goods, और you have more of one good. यहाँ पे A के पास X ज्यादा है, यहाँ पे A के पास Y ज्यादा है. So when you have more of at least one good or more of both the goods, then we can say that it is monotonicity. More is preferred. ठीक है. More is preferred. Clear हुई ये बात? ठीक है बेटा. Now we can go ahead and say that if suppose मैं ऐसा बोल दूं A is 1, 3
and B is 2, 2. तो अब देखो A has more of good Y. A के पास good Y ज्यादा है, 3 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 2 है, and B has more of good X. देखो 1 and 2. So B has more X, A has more Y, therefore not comparable. अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते मोनोटोनिसिटी के लिए. When can monotonicity be compared? कब हम बोलते हैं more is better? When you have same amount of at least one good and more of the other good, or you have more of both the goods, right? Or you have same amount of one good and more of other good, right? Then monotonicity can be considered. ठीक है, ये क्लियर हुई बात? ठीक है. So please write down implication. Right? So monotonicity implies, please write down, negative slope of indifference curve. Monotonicity implies negative slope of the indifference curve. ठीक है. क्यों नेगेटिव स्लोप बच्चे? बिकॉज आई वॉन्ट ऑल पॉइंट्स बिटवीन विच आई एम इनडिफरेंट. मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं इंडिफरेंट कर्व पे जिनके बीच में मैं इनडिफरेंट हूं, राइट? सो इफ आई इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स, अगर मैं दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दूंगी, आई विल नॉट बी ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व. Are you understanding it? So in order to go ahead and keep utility unchanged, अगर मुझे यूटिलिटी को अनचेंज्ड रखना है तो एक की कंजम्पशन बढ़ाते हुए मुझे दूसरे को कम करना होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट सपोज दिस इज बंडल A इज x1 y1. ये बंडल B है, B इज x2 y2. ठीक है. If both consumption are more, अगर x1 भी y1 से ज्यादा, x2 से ज्यादा है, y1 भी y2 से ज्यादा है, तो यूटिलिटी फ्रॉम A विल बी मोर देन यूटिलिटी फ्रॉम B. सो A एंड B सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं हो सकते. A एंड B कैन नॉट बी ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, राइट बेटा? उसी तरीके से सपोज इफ आई टेक A इज x1 y1, B is x2 y2. Suppose I tell you x1 is greater than x2 and I tell you y1 is equal to y2. अगर मैं ये बोल दूं that this is same and I am telling you this is more, so then also utility from A will be more than utility from B, beta. So I can again say that A and B cannot be on same indifference curve because of monotonicity. More is preferred, more is preferred. So when will A and B be on same indifference curve? Only when utility from A is equal to utility from B, A and B will be on same indifference curve. सिर्फ जब A और B का यूटिलिटी बराबर होगा तो ही तो A और B सेम आईसी पर होंगे. एंड व्हेन विल यूटिलिटी बी द सेम बेटा? ओनली इफ व्हेन आई हैव मोर ऑफ वन गुड. अगर मैं x1 और x2 को कंपेयर करूं और A के पास गुड x ज्यादा है, तो इट इज इंक्रीजिंग यूटिलिटी, तो A के पास गुड y कम होना चाहिए. सो y1 शुड बी लेस देन y2. So if I were to plot these points, beta, what will I get?
indifference curve, good x, good y, point A, point B, ये हो गया x1, y1, x2, y2. So, or I can take this as a beta, इसको a ले लो ताकि it is consistent with this theory. तो a has more of good x, a के पास x ज्यादा है, इसको हम x1 बोल देते हैं. Wait 1 minute, हाँ. I will call this x1, इसको x2 कर दो, इसको y1, इसको y2. अब देखो a का बंडल है x1, x2. a के पास गुड x ज्यादा है और b के पास गुड y ज्यादा है, तो तभी तो ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर है. ओनली देन दे आर ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व. अगर ए के पास दोनों गुड्स ही ज्यादा होते, इफ ए वुड हैव हैड मोर ऑफ बोथ द गुड्स, then A would have been on higher indifference curve. If A would have had even more of one good, then also A would have been on higher indifference curve. अगर मोनोटोनिसिटी के अकॉर्डिंग अगर A के पास एक दोनों में से एक भी गुड ज्यादा होता और दूसरा गुड बराबर होता, then we would have said that A is on higher indifference curve. So when can A be on the same indifference curve as B? Only when you increase consumption of one good and decrease the consumption of the other good. तो मोनोटोनिसिटी का implication ही है that more means higher indifference curve, and for same indifference curve you need that when you increase consumption of one good, other good should decrease. So if I draw this indifference curve again, beta, good x, good y, है ना? So better bundle, right? Worse of bundle. माने if I take, देखो ध्यान से, if I take point A here, beta, and point B here, तो can you see that at point B I have more of good x and more of good y. B has more of good x and more of good y. So please write down more of both goods is a better bundle for the consumer. Less of both goods represent a worse bundle for both goods. समझे? तो point C, suppose it has less of both the goods, na, as compared to A. So it is a worse off bundle. Or point B, it is a better off bundle. Okay. Okay, beta. Now let us go ahead and let us write down the second assumption. And the second assumption is basically second, convexity. Convexity. Okay. To prove convexity, what we can do is the following. Indifference curve, good x, good y.
ठीक है, लेट्स से आई टेक वन बंडल, मैंने यहां पे एक बंडल ले लिया, ये बंडल हो गया बेटा x1, हाँ, और यहां पे हो गया हमारा y1। ठीक है, या आप जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक x2 हियर और इसको बना दो गुड 2 और इसे बना दो गुड 1। तो ये हो गया x1 गुड 1 का कंजम्पशन एंड x2 गुड 2 का कंजम्पशन। और यहां पे मैंने एक और बंडल लिया, आई टेक अनदर बंडल एंड दिस विल बी y1 एंड y2। अब देखो दैट suppose I name this bundle A and I name this bundle B. तो bundle A which is nothing but x1, x2 and bundle B which is nothing but y1, y2, they are on the same indifference curve, एक ही indifference curve पे है। So consumer is indifferent between A and B. Indifferent. So consumer is indifferent between A and B. माने x1, x2 indifferent y1, y2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज इसको छोड़ दो अभी के लिए, जस्ट थिंक ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली सोचो। सपोज आई गो अहेड एंड आई टेक 2 पॉइंट्स, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पे एक पॉइंट हो गया सपोज 1, 1। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस इन अ बेटर स्पेस। सपोज आई टेक बेटा समथिंग लाइक दिस, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये गुड, ये मैं डोंट टेक गुड एक्स वाई, मैथ्स में सोचो। हाँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। यहां पे वी टेक अ पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, आई हैव टेकन 1 पॉइंट, एक मैंने यहां पॉइंट ले लिया पॉइंट ए, और एक मैंने ना यहां पे आई हैव टेकन अनदर पॉइंट, ये हो गया पॉइंट बी। इफ आई ज्वाइन देम, ये जो मेरी लाइन बनेगी ना, दिस लाइन का जो इक्वेशन है, दिस इज क्रिएटेड, ध्यान से सुनना मैथ्स का पाठ, हाँ, यूजिंग वेटेड एवरेज given to A and B, weight being some t and t between 0 and 1। ठीक है, मतलब अगर मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट एनी पॉइंट, सपोज बेटा आई वांट टू राइट डाउन दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मुझे चाहिए, पॉइंट 2,2। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट आई वांट टू आस्क कि क्या ये पॉइंट 2,2 इस लाइन पे है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट माय लाइन कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,1 और 4,4 हैं। मैंने कुछ वेटेज देनी है 1,1 को, सो वेटेज इज गोइंग टू बी t इंटू 1,1 एंड वेटेज हो जाएगी 1 माइनस t इंटू 4,4। और मैं कह रही हूं कि जो भी पॉइंट इस लाइन पे आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो एनी पॉइंट ऑन लाइन, जो भी इस लाइन पे पॉइंट आएगा,
जो इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में है, ए और बी. Whatever point will come on this line, it will go ahead and it will satisfy this equation. तो क्या हो गया यहाँ पे? t comma t plus 4 into 1 minus t comma 4 into 1 minus t. Right? Now, let us go ahead and just solve this. तो क्या मिलेगा? t, इसमें I am adding this up, plus 4 minus 4t and adding this here, 4 minus 4t plus t. 4 minus 3t, 4 minus 3t. ठीक है. All points on the line, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर हैं A and B के बीच में, all these points should be of this form. सारे के सारे पॉइंट्स इस फॉर्म में होंगे. I can take different values of t. तो अब देखो जरा एग्जाम्पल. जैसे मैंने t को ले लिया 0. So I will get 4 minus 3 into 0. 4 minus 3 into 0. That means 4 comma 4. This lies on the line. ये लाइन पे है. अब देखो, suppose I take t as 1. 4 minus 3 into 1. 4 minus 3 into 1. That means it will be 4 minus 3, 4 minus 3, 1 comma 1. This is also on the line. Now take t anything between 0 and 1. Suppose मैंने t को ले लिया half. 4 minus 3 into half. 4 minus 3 into half. So beta, this will give you what? This will give me 4 minus 1.5. 4 minus 1.5. 2.5, 2.5. तो मतलब इसी लाइन पे जो यहां पे कोई पॉइंट लाई करेगा ना, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन. ये हो गया 2.5 and 2.5. This point will lie on the line. ये इस लाइन पे होगा. Clear? Am I making sense? So as you will put different values of t, जैसे जैसे आप t में different values डालते जाओगे ना, you will get different coordinates and all those will lie on this line. सब के सब इस लाइन पे ही होंगे. Everything will be on this line. अब यहां पर हम ये क्यों समझ रहे हैं? It means that suppose I have taken point A. ये point A है. I have taken point B. ठीक है. And I want to ask you, can I draw a line through point A and B? क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ पॉइंट ए और बी के बीच में? यस, ये एक लाइन हो जाए. और कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका क्या इक्वेशन होगा? यस, समथिंग लाइक दिस. जैसे हमने यहाँ किया, जब हमें दो पॉइंट्स दिए हुए थे, टू वन ऑफ द पॉइंट्स हमने एक वेटेज दिया, टू द अदर पॉइंट हमने एक वेटेज दिया, और जो हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट आया, वॉट एवर कोऑर्डिनेट आई गॉट फाइनली, दैट रिप्रेजेंटेड ऑल डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी. अलग अलग वैल्यूज टी की थी. सेम इज हैपनिंग हियर. दिस इज वन पॉइंट A, this is another point B. Can I write the equation of this line? क्या मैं इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, क्या मैं इनके बारे में बता सकती हूँ? Can I tell something about the different points on this line? I can tell. And what can I tell? That I need to give some weightage to this bundle and some weightage to this bundle, and I will be able to get all bundles in between. Isn't it? So please write down. If we join A and B, we will get weighted average bundle. है ना बेटा?
We will get weighted average bundle representing all bundles on that line. Right? So your bundle A is x1, x2. I'm giving it a weightage of T. Your bundle B is y1, y2. Weightage 1 minus D and add. And add. Add. What will you get, beta? T x1, x2 plus 1 minus D y1, y2. Clear? Let's solve this. This is going to give you tx1 plus 1 minus ty1. So I can just take one step in between. थोड़ा आपको simplify हो जाएगा. tx1, tx2 plus 1 minus ty1. Clear? This is getting added with this. First coordinate with first coordinate. Second coordinate with second coordinate. यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया. समझे बात को? क्लियर हुई? अब हम कह रहे हैं इस लाइन पे ना कोई भी पॉइंट ले लो. टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. मतलब पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी. टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी. जैसे जैसे आप टी को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी बिटवीन 0 एंड 1, जैसे जैसे आप टी की अलग अलग वैल्यूज डालते जाओगे, आपको इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे. यू विल कंटिन्यू गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. क्लियर? ओके. नाउ what is the meaning of convexity? Convexity says that weighted average और एवरेज, वेटेड भी लिखने की जरूरत नहीं है, एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम. weighted average or average, they are preferred over extreme. They are preferred over extreme. माने if I take any bundle here, इस लाइन पर जो भी बंडल है बेटा वो weighted average बंडल कहलाएंगे. क्यों? Because I am giving some weightage to A. देखो मैंने A को कुछ weightage दिया और B को कुछ weightage दिया. A को क्या weightage दिया है हमने? T का, है ना? A has been given weightage of T. B को क्या weightage दिया है? 1 minus T का. B has been given weightage of 1 minus T. और उनको जब हमने ऐड किया, then we got this bundle which represents the bundle on the line, जो उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब हम बोलते हैं weighted average are preferred over extreme, it means any bundle on the line joining A and B is preferred over A और B. जो भी बंडल्स उस लाइन पर लाई करेंगे, एनी ऑफ दोस बंडल, माने जो भी बंडल उस लाइन पे लाई करेगा बच्चे, व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द बंडल्स दैट लाई ऑन दैट लाइन?
क्या इक्वेशन है उस बंडल का जो लाइन पे लाई कर रहा है? द इक्वेशन ऑफ द बंडल दैट लाइज ऑन द लाइन इज दिस, tx1 plus 1 minus ty1 comma tx2 plus 1 minus ty2. We are saying this is preferred over a. What is the equation of a, beta? x1 comma x2. I am using weakly preferred as of now. ऐसे ही tx1 plus 1 minus ty1 comma tx2 plus 1 minus ty2. This is preferred over y1, y2. मतलब ये जो हमारा वेटेड एवरेज बंडल है, this is preferred over A. And यही वेटेड एवरेज बंडल, this is preferred over B. समझे? अब देखो डायग्रामेटिकली समझो. गुड X, गुड Y. अच्छा हम 1 2 ले रहे थे. गुड 1, गुड 2. बंडल A, x1, x2. बंडल B, y1, y2. Now join it by a line. बेटा टेल मी समथिंग. सपोज मैं यहाँ पे बंडल C लेती हूँ एंड आई ट्राई टू पास एन इंडिफरेंस कर्व. सपोज मैं C के थ्रू एक इंडिफरेंस कर्व पास करूं. Isn't C lying on a higher indifference curve? देखो C तो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे. C satisfies the equation of this line. इस लाइन पे लाई कर रहा है, माने C का ये इक्वेशन है. C का ये इक्वेशन है. C is lying on this line, so it satisfies this equation. And C is on IC2, जबकि A और B IC1 पे है. तो C is preferred over A. C is on indifference curve 2. C is preferred over B. C is on indifference curve 2. B on indifference curve 1. तो C A के ऊपर भी प्रेफर्ड है, B के ऊपर भी. क्लियर? Therefore, एंड C क्या था? C is lying on the line AB. AB वाले लाइन पर है ना, और वो AB लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? वेटेड एवरेज बंडल्स, क्योंकि हमने कुछ वेटेज A को दिया है और कुछ B को. सो ऑल बंडल्स ऑन लाइन AB are weighted average bundle and they will lie on higher indifference curve. Suppose मैं point D ले लेती हूँ, then I can pass a higher indifference curve through point D also. As compared to indifference curve 1, वो higher indifference curve पे. So all points on line AB, ये हो गए weighted average bundles. They are weighted average bundles and they are giving more utility as compared to point A and B. Write this down. So all weighted average bundles that lie on the line AB will be on higher indifference curve and thus more preferred. Therefore, they will be more preferred. Is this clear? ठीक है. This concept is the concept of convexity. That the
averages are preferred over extremes. अब ये जो हमारी convexity है, this can be of two types. Strict convexity weak convexity. Strict convexity, weak convexity. Strict convexity बोलता है averages are strictly preferred over extreme. और weak convexity बोलता है averages are weakly preferred over extremes. तो strict convexity में बेटा we get tx1 plus 1 minus ty1 tx2 plus 1 minus ty2. ये जो हमारा एक बंडल है वेटेड एवरेज बंडल स्ट्रिक्टली प्रेफर होगा x1 x2 के ऊपर, एक्सट्रीम बंडल के ऊपर. Whereas weak preference says that tx1 plus 1 minus ty1 tx2 plus 1 minus ty2, it will be weakly preferred over x1 x2. So when we talk about weak preference, this is the sign. And when we talk about strict preference, this is the sign. Clear हुई ये बात? Is this clear? So strict preference means strictly हम इसको prefer करेंगे, और weak preference means या तो prefer होगा weighted average bundle या indifferent भी हो सकते हैं with weighted average bundle. Is this making some sense? Okay. Now we want to go ahead and we want to also understand the different kind of convexities through graphical approach. But I will go ahead and I will take that in the next lecture. Okay. So I want to go ahead and I want to talk about convexity. Number one, convexity की बात करनी है. Number two, I want to talk about graphical depiction of convexity, but I will be doing that in the next lecture. Okay, beta. Thank you. Hi, good evening, everyone. So, beta, in the last class, we were going ahead and we were talking about convex indifference curve. हमने एक line सीखी थी last class में that averages are preferred over extreme. ठीक है? Today in this class, I want to go ahead and I want to talk first of all about a convex set. What is a convex set? So, please write down with me that a convex set has the property that if you take any 2 points in the set and draw the line segment connecting those points, the line segment
lies entirely in the set. देखो क्या मतलब है इसका. So consider I take a circle and I am shading this part of the circle. मतलब जो मेरा set है वो circle के अंदर वाला एरिया है. My set consists of all points inside the circle. हाँ बेटा. And I am asking you, is this a convex set? क्या ये एक convex set है? The answer is, I take any 2 points, join it with a line segment. This line is within the set. इसी shaded area में आ रहा है. The line is within the set. So yes, it is a convex set. So is this a convex set? The answer is yes, it is a convex set. ठीक है. Okay बेटा. Take the next case. अब देखो, I have drawn this indifference curve. And I'm asking you 2 questions. One, mark weakly preferred region. 2, is it a convex set? ठीक है. 1, mark weakly preferred region. 2, is it a convex set? तो देखो, what will be weakly preferred region बेटा? All points on indifference curve और above indifference curve. इसी को तो weakly preferred region बोलते हैं. All points on indifference curve और above indifference curve. ये हो गया weakly preferred region. Is it a convex set? Take any 2 points. Join it with a line segment. Line segment इसी set के अंदर lie कर रहा है. So yes, it is a convex set. ठीक है. अच्छा, third question. Does it represent convex preferences? क्या ये convex preference को represent करता है? Does it represent convex preferences? तो what is the property of convex preferences बेटा? The property of convex preferences is averages are preferred over extreme. तो देख लेते हैं. This is my indifference curve. I take 2 points on indifference curve, point A, point B. I join it by line segment. ये एक एवरेज बंडल है, पॉइंट सी. पॉइंट सी कौन सी रीजन में लाई कर रहा है बेटा? वीकली प्रेफर्ड रीजन में. Isn't it? ये इसका वीकली प्रेफर्ड रीजन है. Anything above indifference curve. If I pass an indifference curve through point C, अगर मैं C से एक IC पास करूं, it will be a higher indifference curve. इस IC के ऊपर लाई करेगा, right? So does it represent convex preferences? Yes. Since indifference curve 2 is above indifference curve 1, it represents convex preferences. Average is preferred over extreme. हम एवरेज को एक्सट्रीम के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं. एवरेज इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम. तो यस, इट रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर, डायग्राम नंबर 2, नॉन कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस. तो देखो ध्यान से जरा. आई एम ड्रॉइंग एन इंडिफरेंस कर्व विच लुक्स लाइक दिस. Part A, shade weakly preferred region. Weakly preferred region means region
ऑन एंड अबव इंडिफरेंस कर्व, ये सारा रीजन वीकली प्रेफर्ड हो गया। पार्ट बी, इज इट कॉन्वेक्स सेट? कॉन्वेक्स सेट क्या बोलता है? टेक एनी टू पॉइंट्स इन द सेट, जॉइन इट विद द लाइन सेगमेंट। क्या ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा इस सेट के अंदर है? इज दिस लाइन सेगमेंट विद इन द सेट? नो, कुछ तो सम इज कमिंग इन द वाइट एरिया, सो नो, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इज इट कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस? क्या ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? देख लेते हैं अगेन। What can we do, beta? This is my indifference curve. I take 2 points, point A, point B, join it with a line segment, और मैं इसका एक एवरेज बंडल ले लेती हूँ पॉइंट C। लाइन सेगमेंट को जो एग्जैक्टली हाफ में ब्रेक करे, दैट इज द एवरेज बंडल। देखो, एवरेज बंडल से अगर मैं एक इंडिफरेंस कर्व निकालूं, इफ आई पास एन इंडिफरेंस कर्व थ्रू पॉइंट C, that indifference curve is lower than this indifference curve 1. So the IC passed through the average bundle is lower than the old IC. So the extreme bundles, they are on higher indifference curve, and the average bundle, it is on lower indifference curve. है कि नहीं है? So therefore average not preferred over extreme. एवरेज एक्सट्रीम के ऊपर प्रेफर नहीं हो रहा, वो लोअर आईसी पर है, सो वी कैन से नॉट कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस। ओके बेटा, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 बचे, कॉनकेव प्रेफरेंसेस। लेट्स ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 1, शेड वीकली प्रेफर्ड रीजन। क्या हो जाएगा बेटा वीकली प्रेफर्ड रीजन? ऑल एरिया अबव द इंडिफरेंस कर्व and on the indifference curve. This is my weakly preferred area. Question number B. Is it a convex set? क्या करेंगे? Take any 2 points in the set, join it by a line segment. Is this line lying completely in the shaded region? No. ये line shaded region में तो नहीं है. Some portion is lying in the white region. So no, it is not convex set. Beta, question number 3. Are these convex preferences? Are these convex preferences? Let's see. Take 2 extreme bundles, 2 extreme bundle ले लो, bundle A and B. Join it with a line segment. Average bundle, point C. Pass indifference curve through average bundle. Indifference curve is lower. क्या है indifference curve? पुराने indifference curve से नीचे है. The indifference curve is lower as compared to the old indifference curve. So the extreme bundle lies on higher indifference curve as compared to the
average bundle. Therefore, it is not convex preferences. In fact, beta, this is called concave preferences. Shape like this is called as concave preferences. क्या बोल देते हैं इसे? Concave preferences, right? Okay, beta. Now I just want to make you understand what are concave preferences. Two goods which cannot be consumed together reflect concave preferences. वो दो गुड्स जो एक साथ कंज्यूम नहीं किए जा सकते उनको हम concave preference से रिफ्लेक्ट करते हैं. For example, a consumer would like milk and wine, but cannot consume milk and wine together. कंज्यूमर को मिल्क और वाइन पसंद तो है, कंज्यूमर लाइक्स मिल्क एंड वाइन, but consumer cannot consume milk and wine together, right? You can either consume milk or wine, but to consume them together is difficult. Such goods which cannot be consumed together are called or represented with concave preferences. So such goods which provide positive utility but cannot be consumed together represent concave preferences. They represent concave preferences. Okay, but I hope this is absolute. Hi, good evening, everyone. So, beta, in today's class, we are going to go ahead and talk about the marginal rate of substitution, also called as MRS. शायद आपने पहले MRS के बारे में सुना होगा. You might have heard about it. But देखो, rate of substitution. Rate of substitution. मतलब the consumer is willing to substitute one good for another. Consumer is willing to substitute one good for another. इसीलिए इसको बोला गया rate of substitution. That is why it is called as the rate of substitution. So what do we go ahead and what do we do, beta? देखो ध्यान से. I am going ahead and taking an indifference curve. Good 1, good 2. And I am going ahead and drawing the slope of indifference curve. Slope कैसे किसी भी curve का बताते हैं? How do we draw the slope of anything? To understand the slope,
ऑफ अ कर्व, अगर मुझे किसी कर्व का स्लोप निकालना है, वी विल ड्रॉ अ लाइन tangent to the curve. If I want to understand the slope of any curve, अगर मुझे किसी भी कर्व का स्लोप जानना है, I will draw a line tangent to the curve. So I am drawing a line tangent to this curve. Slope is defined as perpendicular by base. Change in perpendicular by change in base. So change in good 2 by change in good 1. And this slope of indifference curve, IC के slope को बोला जाता है MRS. That is called as MRS. So what is the slope of indifference curve? It is called as MRS XY. MRS XY. What is MRS XY, beta? It is change in X2 by change in X1. That means, how do I define this thing, beta? The amount of good to consumer is willing to give up for an additional unit of good 1. Amount of good to consumer is willing to give up. कितना good to consumer देना चाह रहा है एक extra good 1 के लिए, for an additional unit of good 1, holding utility constant. Holding utility constant. देखो ध्यान से जरा, listen to me. Suppose, beta, this is my indifference curve. This is my utility function. This is good x. ये good x है. This is good y. Now consider I am on point A. मैं point A पर हूं. At point A, suppose I give some form to the utility function. Suppose मैं कह दूं my utility is amount of good x into amount of good y. ऐसे मैंने define कर दिया that utility is amount of good x into amount of good y. And I am holding utility constant at 4. So when I have 1 unit of good x and 4 units of good y, then I get my utility at 1 into 4. It means 4. Clear? Beta, now I move to point B. Point B पे amount of good x हो गया 2 और amount of good y भी हो गया 2. तो what is utility? Point A पे देखो, point A पे x is 1, y is 4, so 1 into 4, 4. बेटा point B पे x is 2, y is 2, 2 into 2, 4. Point C पे x is 4, suppose, and y is 1. X is 4, y is 1. तो ये हो गया 4. Suppose मैं एक बीच में I take one more point, बेटा I will make this as point D. इसको D बना देते हैं. और यहाँ पे I am just writing D here. यहाँ कहीं पे I have point C, बेटा. At point C, x is basically 4 by 3 and y is 3, so utility is 4. X is 4 by 3 and y is 3 and utility is 4. Clear है बात को? या रिवर्स इट, x को हम 3 ले लेते हैं. सॉरी, x is 3
y is 4 by 3, utility is 4. So you get 3. And here I have 4 by 3. Okay. So what is 4 divided by 3 beta? 1.3. 1.33333 है ना? तो I have just written, या तो उसको 4 by 3 ही लिख लो या 1.3333 लिख लो यहाँ पे 1.33. क्लियर? तो अब लिसन टू मी. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है 1,4. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2,2. पॉइंट सी कोऑर्डिनेट इज 3,1.33. Point D coordinate is 4,1. Clear? I am writing these. Point A pe how much x you have? 1. How much y you have? 4. What is utility? 1 into 4, 4. Point B pe how much x you have beta? 2. Y kitna hai? 2. X is 2. Y is 2. Utility is 2 into 2, 4. What is the amount of good y you are giving up for an extra unit of x? When you increased x by 1 unit, how much y have you given up? 2 units. 2 minus 4. There you are giving up. So I am putting a negative sign to show you are giving up. Here you are getting. From 1 you are going to 2. You are taking 1 unit, right? So plus 1. So when you are giving up 1 unit, minus when you are taking a unit, plus. So here I have increased consumption of good x, plus. I have decreased consumption of good y, minus. So this is going to be minus 2 by plus 1. That means beta minus 2. Okay, point C now. At point C, what is the amount of good x? 3 units. What is the amount of good y? 1.33 units. I am again increasing the consumption of good x. I am decreasing consumption of good y. How much good y is decreasing? Minus 0.67. How much x is increasing? 1. So earlier I am giving up 2 units of good y. Now I am giving up 0.67 units of good y. Now see point D beta. D point pe I have 4 units of x and 1 unit of y. So 4 and 1. So how much y I am giving up for extra unit of x? I am giving up only 0.33 units of y. इतने से ही तो कम किया y को. And I am increasing x by 1 unit. So I am giving up 0.33 units of y. So how much y I am giving up for an extra unit of x? कितना y हम दे रहे हैं x के एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, उसी को हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला है. दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इज दिस क्लियर? Absolutely clear to everyone. So here, how much y I am giving up? 2 units for 1 unit of x, perpendicular by base. How much y I am giving up for 1 unit of x? How much y I am giving up for 1 unit of x, and so on and so forth. Right? How much y you are giving up for 1 unit of x. Right? Now, please listen to me. Write down. MRS can be considered as the trade-off that consumer places on the two goods. The trade-off placed by the consumer on the two goods. कि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा मैं कितना छोड़ूं, so that I get the same level of utility, right? The rate at which I am willing to give up maximum 2 units of good y for 1 unit of good x. Maximum कितना देना चाह रहे हैं यहाँ पे? 0.67 units of good y for 1 unit of good x. So how much am I willing to give up
right, for an extra unit of good X, that is MRS, right? If you ask me to give more than 2 units of good Y, अगर आप बोलोगे कि क्या 3 यूनिट दोगे, I will say no. Will you give more than 0.67 units here? I will say no. So this is the maximum good Y that I am willing to give up. इससे ज़्यादा good Y I will not be giving up, right? This is the maximum amount of good Y that I am willing to give up for an extra unit of good X. Is this clear to everyone? So please write down. It can also be said that MRS also measures the marginal willingness to pay of the consumer. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा MRS है वो कंज्यूमर का मार्जिनल विलिंगनेस टू पे बताता है. वो ये बताता है कि कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा गुड एक्स के लिए कितना पे करना चाहेगा गुड बाय के टर्म्स में. हाउ मच विल ही बी विलिंग टू पे इन टर्म्स ऑफ गुड वाई फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स. अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग. सपोज बेटा आई गो अहेड and I take good X here. Suppose good X is, let's say books. Huh? And I take good Y here. And beta good Y is money spent on all other goods. Money spent on all other goods. जो भी पैसा हम बाकी सब goods पे खर्च कर रहे हैं, that is good Y. बेटा मैंने यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर दिया है. I've plotted an indifference curve here. Acha, now tell me something. When I go from point A to point B, so what is the slope? What is MRS telling me? Change in good Y upon change in good X. What is change in good X? Change in the number of books. What is change in good Y? The change in the amount of money spent. तो अब ये क्या हो गया? It is telling me that if I want to increase my books from 1 to 2, अगर मुझे अपनी books 1 से 2 करनी है, if I want to increase the consumption of books, तो मेरे को कितना पैसा देने का मन है? How much money I am leaving? मैं बाकी goods पे पहले 4 रुपए खर्च कर रही थी. Point A tells me that I am consuming 1 book and 4 rupees on other goods. And point B is telling me that I have 2 books and I am spending 2 rupees on other goods. और इन दोनों से ही आई एम गेटिंग द सेम यूटिलिटी. मुझे सेम आईसी पर है. दे आर गिविंग मी सेम यूटिलिटी. सो टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बुक, हाउ मच मनी एम आई विलिंग टू गिव अप ऑन अदर गुड्स? कितना कम पैसा मैं दूसरे गुड्स पे खर्च कर रही हूँ? आई एम विलिंग टू गिव अप 2 रुपीज. मैं 2 रुपए कम खर्च करूंगी बाकी गुड्स पे ताकि मैं एक बुक एक्स्ट्रा पढ़ पाऊं. Right? So this can also be said like the marginal willingness to pay. Right? This can be said as marginal willingness to pay. So we can say that now it represents the amount of money consumer is willing to give up on other goods for extra unit of good X. एक एक्स्ट्रा गुड एक्स के लिए हम बाकी गुड्स पे कितना कम खर्च करने के लिए रेडी हैं? हाउ मच एम आई विलिंग टू स्पेंड लेस ऑन द अदर गुड्स? दैट कैन बी कॉल्ड एज एमआरएस. क्लियर हुई बात? आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन. सो इफ गुड 1
is neutral good. ठीक है. Find MRS for good 2. Where good 2? Give me a minute. Pen got discharged. 1 second. Where good 2 is normal good. So good 1 is taken as neutral good. Good 2 is taken as normal good. और इस केस में आपको मुझे बताना है what will be the MRS. You need to tell me what will be MRS. Homework question, beta. Okay? Okay, beta. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. ठीक है बेटा, let us continue with this chapter that we were doing on indifference curve. I am first taking the homework question. देखो ध्यान से. It says good 1 is neutral good and good 2 is a normal good. So how will you draw indifference curve? Good 1, good 2. This will be your indifference curve. Good 1 का कुछ भी quantity हो, it does not matter. It is going to keep your utility unchanged. आपका utility change नहीं होगा. So now we talk about MRS. MRS is the amount of good 2 you are willing to give up for an extra unit of good 1. एक extra good 1 के लिए, good 1 जब 1 से 2 जा रहा है, how much good 2 are you willing to give up? No good 2. Your good 2 is fixed at x2 units. So when good 1 is increasing, are you changing the amount of good 2? No. You want to keep good 2 at x2 only. Because increasing good 1 does not increase your utility. Good 1 के बढ़ने से आपका utility नहीं बढ़ रहा. You are not able to increase your utility. So when good 1 is increasing, your utility is unchanged. Isn't it? So if your utility is unchanged, beta, अगर utility change हो ही नहीं रहा, so for an extra unit of good 1, you will give 0 units of good 2. So what will be MRS? 0. That is the answer to this homework question. तो क्या हो जाएगा MRS? MRS will be 0. Okay. Now, let us talk about the behavior of MRS. ठीक है बेटा, claim. My claim is that indifference curve, well-defined indifference curve, exhibit diminishing marginal rate of substitution. Well-defined indifference curve diminish marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution का क्या मतलब है? What is the meaning of marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution was the amount of good 2 you were willing to give up for an extra unit of good 1. है ना? और ये diminish करता है. Diminish means that as, देखो, take an example. Suppose I have good 1 unit and good 2 suppose I have 25 units. ठीक है, and I am here beta.
This is good 2, 25 units, and good 1, 1 unit. तो good 1 तो मेरे पास बहुत कम है. I have very less amount of good 1. Since consumer has less amount of good 1 at point A, he values good 1 more. ये good 1 है. This is good 2. Good 1, I just have 1 unit. सिर्फ एक unit है good 1 का. So I am valuing good 1 too much. It is very precious to me. So consumer is willing to give up more units of good 1, of good 2 for extra unit of good 1. Consumer ज्यादा good 2 देने के लिए ready है for an extra unit of good 1. So suppose I tell you that to get 1 more unit of good 2, good 1, good 1 को 1 unit से बढ़ाने के लिए consumer is willing to give up 10 units of good 2. You see this gap? This is 10 beta. 10 units of good 2 for extra unit of good 1. ठीक है. Now at point B, जब हम point B पे बात करते हैं, consumer has 15 good 2 and 2 good 1. But you ask the consumer again, how much are you willing to give up good 2 for an extra unit of good 1? 3 units पे जाने के लिए. Now consumer says कि okay, now I have 2 units of good 1. अब मेरे पास 2 unit पहले से हैं good 1 के. Since I have 2 units of good 1, now I am willing to give up, suppose I am willing to give up only 7 units of good 2 for extra unit of good 1. I am willing to give up 7 units of good 2 for extra unit of good 1, and you come to point C. Up at point C, consumer has 8 units of good 2 and he has 3 units of good 1. And you again ask the consumer what he wants to do. So you realize that as the amount of good 1 increases, as you move from point A to B to C, जैसे जैसे आप A से B से C पे आते हो, good 1 का consumption बढ़ रहा है. The amount of good 1 is increasing. And as the amount of good 1 is increasing, consumer is willing to give up less of good 2 for extra unit of good 1. Consumer कम good 2 देना चाहता है एक extra good 1 के लिए. So for example, at point D, consumer is willing to give up only 4 units of good 2. From 8, he is coming to 4 for an extra unit of good 1. So the amount of good 2 that consumer is willing to give up for an extra unit of good 1 is falling as you move along the indifference curve, because you already have a lot of good 1. So now consumer does not want to go ahead and give too much good 2 for an extra unit of good 1. Consumer बहुत ज़्यादा good 2 नहीं देना चाहता for an extra unit of good 1. And that is why there is diminishing MRS. Diminishing MRS means how much good 2 you are willing to give up will fall. यहाँ पे 10 यूनिट देना चाह रहे थे good 2 के ताकि एक एक्स्ट्रा गुड 1 मिल पाए. यहाँ पे सिर्फ 7 यूनिट्स यू आर विलिंग टू गिव अप फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1. देन 4 यूनिट्स यू आर विलिंग टू गिव अप फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1. राइट? सो as consumer moves from left to right along an indifference curve, he is willing to give up
less of good to, less amount of good to for an extra unit of good one. वो कम good to देना चाहेगा for extra unit of good one. This is called, what is this called beta? Diminishing MRS. Diminishing MRS. How do we show diminishing MRS? कैसे दिखा सकते हैं मैथमेटिकली? मैथमेटिकली a convex indifference curve implies diminishing MRS. अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, इफ इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, it actually goes ahead and it means diminishing MRS. Mathematically, this is the first thing, right? Secondly, if we want to go ahead and we want to check whether indifference curve are actually convex to origin or not, या अगर हमें चेक करना है कि diminishing MRS है या नहीं है, then mathematically we can differentiate MRS with respect to X, absolute value of MRS. And if this is less than 0, अगर ये 0 से कम आ जाए, if this is less than 0, then we can say that you have diminishing MRS. So there are two ways to check diminishing MRS beta. Method number 1 is you go ahead and differentiate with respect to X. अगर ये less than 0 आ जाए, then this is diminishing MRS. And method number 2, you check whether indifference curve are convex or not. If they are convex to origin, तो भी उसको बोल सकते हैं that there are diminishing MRS. Is this clear? ठीक है बेटा. Now I am going to go ahead and I'm going to give you a question here. So please write down. Homework question, right? So the question is, if both capsicum and mushroom are bad goods, will the indifference curve have negative or positive slope? Will the indifference curve have negative or positive slope? I am giving you a hint. If you remember beta, good, bad, circle. This is saying that both of them are bad goods. So bad, that means this quadrant. So this is your indifference curve. Okay. That is how you can go ahead and do this question. Okay, beta. So with this, we have talked about indifference curve. In the next lecture, we will introduce officially the concept. Okay, so now, hello everyone, let us start talking about indifference curve from utility function. In the last class, I had already gone ahead and talked about what is a level set. हमने level set की बात कर ली थी. We talked about what is a level curve. Now let us try to understand how can we go ahead and draw a typical indifference curve. So just for example,
Suppose I tell you utility is equal to x1 into x2. And we can keep utility constant. Why am I keeping utility constant? So we know along an indifference curve, utility is kept constant. किसी भी एक इंडिफरेंस कर्व के अलोंग यूटिलिटी को कांस्टेंट रखा जाता है. सो आई कैन कीप यूटिलिटी कांस्टेंट एट सम वैल्यू k. At some value k. So what will I go ahead and what will I get? K is equal to x1 into x2. Right, beta? So from here, I will get x2 is equal to k divided by x1. K divided by x1. This is how you can derive any indifference curve. Okay. अब जैसे for example, suppose beta I tell you k is equal to 1. So x2 becomes 1 divided by x1. So when x1 will be 1, beta x2 क्या हो जाएगा? x2 will be 1. When x1 will be half, x2 will be 1 divided by 0.5, that means 2. When x1 will be 2, x2 will be 1 divided by 2, that means 0.5. So we can now plot this. How will we plot beta? यहाँ पे x1 ले लो. Take x2 here. x1 is 1, x2 is 1. 1, 1, this point. x1 is half. x2 is 2. 1, 2 and half. x1 is 2. x2 is half. ये वाला point. Join these points. This will be my indifference curve. Then you can change the value of k to get another indifference curve. So suppose now I take k is equal to 2. तो अब क्या आ जाएगा? x1 into x2 is equal to 2. x2 is equal to 2 divided by x1. फिर से take x1 as 1. What will be x2 beta? 2 divided by 1, which means 2. Take x1 as 2. What will be x2 beta? 2 divided by 2, which means 1. Take x1 as 4. What will be x2 beta? 2 divided by 4, that means half. So you can plot the next curve. When x1 is 1, x2 is 2. When x1 is 1, x2 is 2. One point. When x1 is 2, x2 is 1. So when x1 is 2, x2 is 1. That means this point. When x1 is 4, x2 is half. Money 3, 4 with half. This point. So if I join these points, I will get next indifference curve IC2. So different values of k will give you different indifference curve. अलग-अलग k की वैल्यू से आपको अलग-अलग indifference curve मिलेंगे. Now suppose you are given that your utility function, that is x1 square, x2 square. ध्यान से देखना बेटा. It is x1 square, x2 square. So can I write this as x1 into x2 to the power 2? And you can see that this x1 into x2 is nothing but your old utility function that I had written. It is nothing but your old utility function. So isko can I write this as old utility function to the power 2? मेरा पहले utility function, what was my old utility function? x1 into x2. Right? x1 into x2. So I can write it as a square of the old utility function. Okay. But when we do this, when we reach the new utility function as a square product
adding the old utility function, इसको क्या बोल देते हैं? This is called as monotonic transformation of old utility function. This is called as monotonic transformation of old utility function. Whenever monotonic transformation means what? That the new utility function can be square of old. पुराने वाले को square कर दो. You can go ahead and multiply some number to old. You can add some number to old. These are all monotonic transformations, beta. Whenever you will have any kind of monotonic transformation, then the shape of indifference curve will remain the same. The shape of indifference curve will remain the same. ठीक है, तो जो इससे हम डिराइव करेंगे इंडिफरेंस कर्व, उसका व्हेन वी विल प्लॉट द शेप इट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम. दैट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है? Okay, so this is about how you can go ahead and you can derive your indifference curves. Now what we can do is we can look at some of the examples of indifference curve. And although अगर हम books में देखें then the book starts with substitute goods, but I want to take the first example as Cobb-Douglas preferences. Okay, सबसे पहले we will do Cobb-Douglas preferences. Cobb-Douglas preferences is when we write our utility function in this format: x1 to the power c, x2 to the power d. जब भी हम utility function को ऐसे लिखते हैं, x1 to the power c, x2 to the power d, then this is called as Cobb-Douglas utility function. The power c and d, it represents the importance or preference given to the two goods. Right? This is giving us the importance or preference to the two goods. For example, beta, if C and D are equal to 1, suppose we take the example where C and D are equal to 1. I am giving you 1 minute. Try to plot this thing. What will happen? So you will get U is equal to x1 to the power 1, x2 to the power 1, माने x1 into x2. ये तो हमने अभी बनाया. This is what x1 into x2 was looking like. U is equal to x1 into x2. So we know that when U is equal to x1 into x2, then we were getting our indifference curves like this. ऐसा indifference curves आ रहा था. IC1, IC2, etc. This was good 1 and this is good 2. Right? Now what we can go ahead and we can do is we can try to go ahead and we can try taking different powers. तो मैं आपको दो questions दे रही हूँ. You need to quickly try this one, beta. So question number 1. So U is equal to x1 to the power half, x2 to the power half. You need to plot this. And U is equal to x1 to the power 1 by 5, x2 to the power 4 by 5. You need to plot this. How can we plot this, beta? Very simple. I will take some value of U, कुछ U का value लेंगे और plot करेंगे. So if I go ahead and I take some value of U, जैसे if I hold U constant at 4. So I will get 4 is equal to the power half means root x1 into root x2. Clear? So suppose, beta, from here, what will I get? If I solve for x2, x2 is equal to 4 divided by root x1 whole square. तो ये हो जाएगा 16 by x1.
ये हो जाएगा 16/x1. If you feel 4 is a bigger number, you can take a smaller number also. माने आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, right? You can take 2 also here. Whatever simplification you can do this. So from here, we get that we want this x2 is equal to 4/x1. ठीक है बेटा? So what will happen when x1 is 1, x2 will be 4 divided by 1, माने 4. When x1 will be 2, 4 divided by 2, that means 2. When x1 will be 4, 4 divided by 4, that means 1. अब इसको देखते हैं. Suppose I hold utility constant at 2. यहाँ पे भी हम 2 पे constant रखते हैं. So 2 is equal to x1 to the power 1/5, x2 to the power 4/5. x2 के लिए solve करेंगे हम. We'll solve it for the value of x2 बेटा. So x2 is equal to 2 divided by x1 to the power 1/5. ये हो गया x2 to the power 4/5. And this 4/5 power उधर जाके it will reciprocal itself. It will reciprocate. So I will get x2 is equal to 2 upon x1 to the power 1/5 whole to the power 5/4. So this is going to be x2 is equal to 2 to the power 5/4 upon x1 to the power 4. Okay. Again, beta, you can take some values and try to take some value of x1, find x2. Use calculator. 2 to the power 5/4 को find out using scientific calculator. कुछ यहाँ से values आपके पास आ जाएंगे. And here also you have got some values. So you will see that in both cases I have held utility constant at 2. मैंने दोनों ही केस में utility को 2 पे constant रखा है. But you will notice that, so suppose better let me just solve this only for you. So let me quickly open the calculator. Give me a minute. So if I go ahead and I do 2 to the power 5 to the power 1/4, this is giving me 2.37. This is giving me 2.37. ठीक है? Divided by x1 to the power 4. So when I will take x1 को suppose मैंने यहाँ पे बेटा 1 लिया. So if x1 is 1, x2 क्या हो जाएगा? Plug 1. So you will get 2.37. Suppose बेटा x2 को मैंने x1 को 2 लिया. Right? So 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16. Denominator will be 16. So 2.37 divided by 16. This will be 0.148. So you see कि x1 का value जब यहाँ 1 था, x2 was 4. Here when x1 is 1, x2 is 2.35. Here when x1 was 2, this was 2. Here when x1 is 2, this is 0.48. Mane the shape will differ. The shape is not the same. So if I were to plot this first graph, if I take 1, 2, 3, 1, 2, 3. So 1 के साथ x1 1 के साथ x2 is 4. So 4. x1 1 के साथ x2 is 4. x1 2 के साथ x2 is 2. So x1 2 के साथ x2 is 2. x1 4 के साथ x2 is 1. So x1 4 के साथ x2 is 1. So this is my shape. This is going to be my shape in the first case, right? Now look at the second case. When x1 is 1, x2 is 2.37. When x1 is 1, x2 is 2.37. It means somewhere here. 2.3. Huh? When x1 is 2, x2 is 0.14. So when x1 is 2, x2 is a decimal, माने here. So you see कि ये वाला shape ऐसा कुछ आएगा. ये वाला है. It is becoming very steep like this. And the other one is flat. You notice? So माने as we change the powers, जैसे जैसे हम ये powers change करेंगे, the answer that we will be getting will be different. We will be getting different answers. Right? So there is some importance to these powers. ऐसे ही ये powers नहीं हैं. Right? There is some importance. एक और चीज देखो.
When x1 is increased by 1 unit, I am giving 2 units of x2 यहाँ पे. So when I increase x1 by 1 unit, I am giving how many units of x2 beta? 2 units. And यहाँ पे when I increase x1 by 1 unit, how many units of x2 am I giving up beta? 2.37 minus 0.18, more than 2 units, right? 2.37 minus 0.148, so 2.22 units. मेरा ट्रेड ऑफ भी सेम नहीं है. The amount of good 2 I am giving up for an additional unit of good 1 is also different, right? So please write down this with me. The shape of ICs depend on the value of C and D. It depends on the value of C and D. एक और बात लिखो. The Cobb-Douglas preferences are called well-defined preferences as they are convex to origin with diminishing MRS. तो देखो ये convex है. The shape is convex. You remember what convexity was? हमने पढ़ा था weighted average preferred over extreme values. So these are convex to origin, and therefore they can be called as the well-defined preferences. Now take beta. So write down log transformation of Cobb-Douglas preferences. तो अब हम क्या कर सकते हैं? We can do a log transformation बेटा. For log transformation, I want to teach two rules. Log m to the power n. अगर n power में है, then power comes down. Power नीचे आ जाता है. Second, if you are finding product log mn, तो you can rewrite this as log m plus log n. Third बेटा, if you have log m divided by n, so this will become log m minus log n. These are the three important rules of log. Okay, now let's take an example beta. Suppose your utility function is ln. Suppose आपका utility function है x1 to the power c, x2 to the power d. ठीक है, and we want to do log transformation. हमें इसका log transformation करना है. So I will take log on both sides. Log u is equal to log x1 to the power c, x2 to the power d. Beta, these are getting multiplied now. So whenever they will get multiplied, you can add. So just add this. ये क्या हो जाएगा? Log x1 to the power c plus log x2 to the power d. Then whenever you see power, power will come down. So this will become c log x1 plus d log x2. C log x1 plus d log x2. This is nothing but your log of u. Beta, this is called as monotonic transformation of the utility function. हमने अपने utility function में log लेकर utility function को transform किया है. तो when suppose someone asks you, suppose someone says in exam कि what will be, what will be the shape of plot u is equal to a log x plus b log y utility function. इस फंक्शन को प्लॉट करो a log x plus b log y. तो हमने क्या सीखा? That whenever you do a monotonic transformation of a utility function, then you will get the same shape. You will get the same shape. तो ये वाला जो utility function है, this is also a monotonic transformation only beta. In the background, the utility function is x1 to the power c, x2 to the power d. In the background, the utility function is x to the power a, y to the power b.
and we have seen that this is Cobb-Douglas utility function. ये Cobb-Douglas utility function होता है, and we know that for Cobb-Douglas utility function the indifference curve are convex ICs. ऐसे दिखते हैं ICs. So you will simply plot an indifference curve like this, कि ऐसा indifference curve लगेगा. This is how the indifference curve looks like. That is it, right? Another way of interpreting this indifference curve can be the following. So suppose I tell you that your utility function is x1 to the power c, x2 to the power d. ठीक है? अब one way of doing monotonic transformation is by raising the power. By raising the power. So मैंने क्या किया? I have raised both sides to the power of 1 upon c plus d is equal to x1 c upon c plus d x2 d upon c plus d. समझे? I have raised power. It is a monotonic transformation. Raising power is also allowed. वो भी कर सकते हो, वो भी monotonic transformation ही है. Now c upon c plus d, beta, that can be called as sum a. So suppose a is equal to c upon c plus d. ठीक है? तो बेटा एक बात बताओ मुझे, what can d upon c plus d be written as? क्या मैं इसको 1 minus a लिख सकती हूँ? Yes, ma'am, I can write this. 1 minus a means 1 minus c upon c plus d. माने this will be c plus d minus c upon c plus d. माने this will be d upon c plus d. So d upon c plus d को हम 1 minus a और c upon c plus d को a can be written like that. So this will become this. So this is another way of writing Cobb-Douglas utility function. This is also Cobb-Douglas utility function where the sum of power is 1. Where the sum of power is 1. ये एक तरीका है monotonic transformation लेने का, such that the sum of the power becomes 1. Is this clear? So these are different forms of the same function, beta. What is this called? It is called as Cobb-Douglas utility function, and it is also called as well-defined preferences. क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक टिपिकल इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है. इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट हैज डिमिनिशिंग एमआरएस. ये सारा इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. सो वी हैव सीन 3 मेजर वेज. द फर्स्ट वन जो हमने देखा, इट वाज x1 टू द पावर c, x2 टू द पावर d. द सेकेंड वन दैट वी सॉ वाज एनी ऑफ इट्स मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ऐसा कुछ c log x1 plus d log x2. And the third one we saw is when the power adds up to 1. All these 3 represent Cobb-Douglas utility function. Okay, beta. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. So now, beta, today we are going to go ahead and talk about perfect substitute codes. Okay. First of all, what are perfect substitutes? Those codes which can be consumed against one another, or which can be substituted against one another, are called perfect substitutes. जैसे बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रेड पेन एंड ब्लू पेन.
क्या कोई फर्क पड़ेगा हम किस कलर से लिख रहे हैं, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग द जॉब ऑफ अ पेन? नहीं ना. सो सपोज आई टेल यू दैट बेटा आई हैव 10 पेन्स. हाँ, तो यू विल बी ओनली कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ पेन्स. माने it does not matter to you whether you have 4 red and 6 blue pen, या 3 red and 7 blue pen, या 5 red and 5 blue pen. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज एन इंडिविजुअल. आई एम गेटिंग 10 पेन्स ना, then it is fine, right? So in such cases we always want to ask about the total number. हमें इससे फर्क नहीं है कि रेड कितना और ब्लू कितना. We are not concerned with that. We are always concerned with the total number. So what I can go ahead and what I can write, beta, that my utility function, this is going to be x1 plus x2. We are concerned with the total number of pens. We are not concerned with how many pen 1 and how many pen 2. Right? Also, this utility function can have multiple representations. इस utility function को हम अलग अलग तरीके से represent कर सकते हैं. We can represent it in multiple ways. First one, beta, when we will write a more generalized utility function, ax1 plus bx2. इसमें हमने इसको थोड़ा general लिख दिया, है ना? We have given some weightage to good 1 and good 2. जैसे आप बोलो कि नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए रेड और ब्लू पेन सेम है. आई डोंट थिंक दैट इज द थिंग. यू नो, आई लाइक रेड पेन्स मोर. थोड़ा रेड पेन के लिए मेरे को इंक्लिनेशन है. आई लाइक रेड पेन मोर देन ब्लू पेन, या आई लाइक ब्लू पेन मोर देन रेड पेन. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेट अस गिव सम वेटेज टू रेड पेन एंड सम वेटेज टू ब्लू पेन. समझ रहे हो? सो वी कैन गिव सम वेटेज टू गुड 1 and some weightage to good 2, and then write the utility function. उसके बाद हम utility function लिख सकते हैं. So when we go ahead and when we do this, then it is called a general utility function. So इसमें क्या हो गया? A and B, they represent the value of good. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये? इट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड टू कंज्यूमर. तो गुड 1 को हमने कुछ वेटेज दे दिया और गुड 2 को हमने कुछ वेटेज दे दिया. वी हैव गिवन सम वेटेज टू गुड 1 एंड सम वेटेज टू गुड 2. ठीक है, ठीक है बेटा. अब इसी में थोड़ा सा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो वी वांट टू डिफाइन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. The slope of indifference curve, that beta is called as marginal rate of substitution. क्या बोल देते हैं slope को? Slope is called as marginal rate of substitution, and the marginal rate of substitution is represented as marginal utility from good 1 divided by marginal utility from good 2. Marginal utility from good 1 क्या होता है? When you differentiate your utility function with respect to x1. अच्छा, with a negative sign, because to increase one good you have to decrease the other good. जब आप एक good का consumption बढ़ाते हो तो दूसरे good के consumption को कम करते हो. To increase the consumption of one good, you decrease the consumption of the other good. ठीक है? Divided by marginal utility of good 2. How utility changes when there is change in the consumption of the second commodity. Clear? ठीक है बेटा. अब हम क्या करेंगे ना, इस केस में u of x1 x2 को we will take x1 plus x2 and we will find out marginal rate of substitution. निकालो. Differentiate it with respect to x1, differentiate it with respect to x2 and put a negative sign outside. So with respect to x1 beta, x1 का कोएफिशिएंट क्या है? What's the coefficient of x1? 1. With respect to x2 beta, what's the coefficient of x2? 1. That means you're getting the answer as -1.
This -1, it tells us that the rate of substitution between the two goods is 1. Rate of substitution between two goods is 1. माने अगर मैं आपको बोलूं कि I have 4 red and 6 blue pencils and I tell you I am taking 1 red pencil for you from you, मैं आपसे एक red pencil ले रही हूं. So the rate of substitution between goods is 1. माने कितना मुझे blue pencil देना पड़ेगा? I will have to give you 1 blue pencil. So if I take 1 red pencil for you and you're left up with 3 red pencils, I should give you 1 blue pencil and you should have 7 blue pencils. Whenever this will happen, जब भी ऐसा होगा, it shows that your utility will remain unchanged. आपका जो utility है वो unchanged रहेगा. Is this making sense? So the rate of substitution between the two goods यहाँ पे क्या रहा है बच्चे? It is coming out as 1. Right? So ये वाला जो bundle है 4 red and 6 blue pencils, and this bundle 3 red and 7 blue pencils, both of these have same utility. इन दोनों में ही जो हमें utility दे रहे हैं हम, that is the same. The level of satisfaction is the same. Clear? Now let's go to the next case, beta. So now we will take this general utility function ax1 plus bx2. So utility function is ax1 plus bx2. Beta, what will be MRS? mu1 by mu2 with a negative sign. So you will differentiate with respect to x1, differentiate with respect to x2 and put a negative sign. So जब हम इसको with respect to x1 differentiate करेंगे, what will I get, beta? I will get the answer as A. When we will differentiate with respect to x2, what will we get, beta? B. So what is going to be the MRS? Minus A by B. What will be the MRS? Minus A by B. Okay, let's take an example of this one. So for example, if I tell you utility function is 2x1 plus x2. 2x1 plus x2. क्या हो जाएगा बेटा MRS? What will be MRS? mu1 by mu2. Differentiate utility function with respect to x1, utility function with respect to x2. So with respect to x1, what will be the differentiation, beta? 2. With respect to x2, what will be differentiation, beta? 1. So MRS will be minus 2. क्या आ जाएगा MRS? MRS will be minus 2. What does this minus 2 represent? क्या मतलब है इसका minus 2 का? It means that I have to value good 1 twice as much as good 2. अच्छा, MRS को एक और तरीका लिखने का होता है dx2 by dx1. ये भी हम MRS को लिखते हैं. You remember? MRS was equal to dx2 by dx1. माने, if I make an indifference curve, this is good 1, this is good 2. So for 1 unit of good 1, अगर मेरे को 1 यूनिट गुड 1 का देना पड़ेगा, आपको मुझे 2 यूनिट गुड 2 के लाके देने पड़ेंगे. Right? The reverse. If you need 1 unit of good 1, you have to give up 2 units of good 2. So माने, if I am going from 2 red pencil to 3 red pencil, I am increasing good 1 by 1 unit. तो आपको मुझे कितना good 2 देना पड़ेगा? 2 units. So you have to, अगर यहाँ पे मेरे पास 4 blue pencils थी, so I will go to 2 blue pencils. This is what the slope of 2 is representing. तो यहाँ हम कह रहे हैं that for if I give up 1 red pencil, I will get 1 blue pencil. Ratio is 1:1. ठीक. But here we are saying कि हमें 2 blue pencils देना पड़ेगा. dx2 change in good 2 is 2 units. 2 good 2 देने पड़ेंगे अगर मुझे 1 good 1 extra चाहिए. इतना ज्यादा good 1 की वैल्यू है कि मैं 2 यूनिट भी good 2 के दे सकती हूँ.
गुड वन को मैं इतना ज्यादा वैल्यू करते हैं, गुड वन को मेरी वैल्यू, मतलब माई वैल्यूएशन फॉर गुड वन इज वेरी हाई. समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? So we are saying, what we are saying here, that 2 units of good 2 are required. बेटा कंफ्यूज नहीं हो ना, एमआरएस को हम लिखते mu1 by mu2 हैं, but MRS represents dx2 by dx1. It represents amount of good 2 you are giving up for extra unit of good 1. Amount of good 2 you are giving up. कितना good 2 दे रहे हो एक extra good 1 के लिए. Although it is mu1 by mu2. You remember the formula we derived. This is mu1 by mu2. But this is the amount of good 2 you are giving up for an extra unit of good 1. एक गुड 1 लेने के लिए गुड 2 कितना दोगे, वो एमआरएस है. सो दैट इज कमिंग एज -2 by 1. माने एक एक्स्ट्रा गुड 1 के लिए मैं 2 गुड 2 भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ. गुड 1 दे दो बस, गुड 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई एम विलिंग टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग 2 units of good 2 for an additional unit of good 1. That is the amount of valuation I give to good 1. Good 1 is more precious to me, right? So 2 units of good 2 are required to compensate consumer for giving up 1 unit of good 1. ये रिवर्स में लिखा है मैंने कि मैं 1 यूनिट तो गुड 1 का दे दूंगी, बट फिर मुझे 2 यूनिट गुड 2 के दो. ये गुड 1 बहुत प्रीशियस है, बहुत दिल से दे रही हूँ, उसके लिए 2 यूनिट इसके लगेंगे. I have written reverse, right? So I'm willing to give up 1 unit of good 1, but I will take 2 units of good 2 from you. Is this clear? So which means good 1 is twice as valuable to me. Good 1 का ज्यादा valuation है. If you ask me to give good 1, तो good 2 ज्यादा देना पड़ेगा. You have to give up more of, you have to give me more of good 2. एक यूनिट गुड 2 देने से काम नहीं बनेगा. You have to give me 2 units of good 2 if you want 1 unit of good 1 from me, right? So the rate of substitution is 2:1 here. Try to understand this thing, right? Good 1 is more valuable in this case. Now, another thing which we want to go ahead and which we want to understand here is monotonic transformations of this function. तो मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि सपोज हमारा बेटा यूटिलिटी फंक्शन इज दिस x1 plus x2. ठीक है. सपोज बेटा आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो व्हाट विल आई गेट? x1 square plus x2 square plus 2x1 x2. दिस इज u square. u square मतलब कोई एक नया यूटिलिटी फंक्शन हो गया, which is x1 square plus x2 square plus 2x1 x2. सपोज समवन आस्क्स यू, बेटा किसी ने आपको ये यूटिलिटी फंक्शन दिखा के बोला कि व्हाट इज दिस यूटिलिटी फंक्शन, तो ये तो ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन को स्क्वायर करके आया है. व्हेन यू स्क्वायर्ड द ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन, यू गॉट दिस यूटिलिटी फंक्शन. देयर इज नथिंग न्यू इन दिस यूटिलिटी फंक्शन. इट इज जस्ट a monotonic transformation of the earlier utility function that you are deriving by squaring on both sides. You haven't done really any magic here. So this utility function should also represent substitute goods. Should also represent substitute goods. Because you have not done anything new here. You have just taken square on both sides. Right? And by taking square on both sides and deriving a utility function, there is no new process that you have undertaken. कुछ नया चीज नहीं किया है. Are you understanding this thing? So this utility function is also a substitute good utility function. At last, let us try to plot this beta. Plotting. So suppose I tell you u of x1, x2 is equal to x1 plus x2. Substitute goods. Let us hold utility constant at some level. I am holding utility constant at 10. And give different combinations of x1 and x2. x1 can be 0, x2 10. 0 plus 10, 10. x1 can be 1, x2 can be 9. x1 can be 2, x2 can be 8. x1 can be 10, x2 can be 0. This can be 5, this can be 5.
this can be 9, this can be 1, and so on and so forth. Plot this beta. x1, x2. x1, when x1 is 0, x2 is 10. When x2 is 0, x1 is 10. When x1 is 1, x2 is 9. When x2 is 1, x1 is 9. Just join these points together. This will be your indifference curve. So how is the indifference curve looking in this case? We will talk about this later also, but how my ICs look? They look like linear lines. My indifference curve is a linear downward sloping line. Clear? Okay. So this is all about the perfect substitute goods. Hi, good afternoon, everyone. So, beta, today we are going to go ahead and we are going to talk about perfect complements. Beta, perfect complements are those goods which are used together with each other. जो goods एक साथ use किए जाते हैं, they are called as perfect complements. For example, left shoe plus right shoe. They are used together with each other. Left or right एक साथ ही पहनोगे, right? So in this case, we are going to go ahead and talk about the function being a perfect complement. ठीक है? कुछ और examples भी हैं complementary goods के, but वहां पर ratio 1:1 नहीं होता. तो I will give you both examples. So I am first starting with the ratio being 1:1. 1:1 means what? That for every one left shoe, अगर मेरे पास एक left shoe है, so I need exactly one right shoe. तभी तो I will have one pair ना. Only then I will have one pair of shoes. Right? So every one left shoe must be matched with every one right shoe. Acha, let us go ahead and write the utility function of this kind of goods. So the utility function for perfectly complementary goods looks like this beta. Min of x1, x2. जरा ध्यान से देखते हैं. Suppose x1 represents the number of left shoe. x2 represents the number of right shoe. तो tell me something. अगर मैं आपको ऐसा कुछ बोल दूं that you have 4 left shoe and you have 7 right shoes, तो बच्चे कितने पेयर बन पाएंगे आपके पास? How many pair of shoes you will have? 4 pair. Remaining 3 right shoes are of no use to you. किसी काम के नहीं है बाकी के 3 right shoe, right? Similarly, beta, if I ask you that you have 3 left shoe and 2 right shoe, how many pairs you will have? 2 ही पेयर बन पाएंगे. 2 pair of shoes. 1 extra left shoe is of no use to you. If I ask you, you have 4 left and 4 right shoes, then how many pair of shoes you will have, beta? 4 pairs of shoes. है कि नहीं? So do you notice that always the number of pair of shoes are minimum? देखो, जब 4 left and 7 right थे, तो 4 और 7 का minimum क्या है? 4. 4 is less than 7, तो सिर्फ 4 pairs बन पाए. Extra 3 right shoes were of no use. जो 3 extra right shoes थे, वो किसी काम के नहीं थे. Similarly, when you have 3 left shoe and 2 right shoe, then the minimum of 3 and 2 is 2. तो 2 ही pair बन पाए. Extra left shoe was of no use.
and when you have 4 left and 4 right shoes, तो बेटा you have 4 pairs. अब can we try to check this through the utility function? एक बारी check कर लेते हैं. So utility from x1 comma x2, this is min of x1 comma x2. तो बेटा how many left shoe you have? कितना left shoe है? 4. How many right shoes you have? 7. So what will be min of 4 and 7 बच्चे? 4. तो 4 pair of shoes ही तो बना. Extra 3 shoes are of no use. Similarly, beta, if I go ahead and I find it here, U is min of, how many left you have? 3. How many right you have? 2. So min of 3 and 2 will be 2 beta. है ना? So how many pair of shoes you have? 2 pairs. यहाँ देखो बेटा, U is equal to min of 4 comma 4. That means दोनों ही same number है. So min of 4 and 4 will be 4. So 4 pair. So this utility function is very useful. ये बहुत ही useful utility function है. It is helping us understand finally we are able to make how many pair of shoes, जितना भी minimum होगा. यहाँ पर the extra 3 right shoes were of no use. Here extra 1 left shoe किसी काम का नहीं था, क्योंकि right तो 2 ही है, तो left भी 2 ही use हो पाएंगे. Right? Here both of them were equal, so you could use both of them together. ठीक है. But यहाँ पर the ratio that we had was 1:1. But not always the ratio will be 1:1. So for example, number 2. जैसे if I go ahead and I say you sugar and tea. Sugar and tea. So what we can do? We need 2 spoons of sugar with 1 tea. We need 2 spoon of sugar with 1 tea. तो रेशियो 1:1 नहीं है. एक चाय के साथ 2 चम्मच चीनी के चाहिए. Are you getting it? 2 teaspoons of sugar are required with 1 tea. अब ऐसे में how will we write the utility function? बहुत ध्यान से देखना. Let us say that x1 represents the number of tea and x2 represents the number of spoons of sugar. Number of spoons of sugar. ठीक है. तो अब हमें ये देखना पड़ेगा that I am using 2 spoons of sugar with 1 spoon of tea. एक चाय के साथ हम स्पून 2 चीनी के पैक यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग 2 spoons of sugar with 1 tea. अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फिर मैं आगे डिराइव करूंगी. अच्छा, सपोज बेटा आई टेल यू दैट आई नीड 10 टी. मुझे 10 चाय बनानी है, तो कितना शुगर लगेगा उसमें? 20 यूनिट्स ऑफ शुगर है कि नहीं? I will need 20 units of sugar. तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, when x1 is 10, जब मैं 10 teas बना रही हूं, when I am making 10 units of tea, I need 20 sugar spoons. So x2 will be 20. You are seeing this ना? Sugar is twice tea. 2 चम्मच चीनी के लगते हैं एक चाय में. Sugar is twice tea. Listen to me very carefully. It is very difficult to understand this thing. So when there is 10 tea, I need 20 sugar. Beta, suppose I tell you that I am making 40 tea. तो कितना sugar लगेगा? Double sugar, right? So you will need 80 units of sugar. Mane, if I were to write this, so I can say that beta x2 is equal to 2. Yeah, sorry, this is x1, huh? This is tea. This is sugar. So we can say that if I need 40 teas, अगर मुझे 40 चाय बनाना है, तो I need 80 spoons of sugar. So बेटा x2 is 2 times x1 ना? Isn't it? ध्यान से देखो, x2 is 2 times of x1. So when I need
10 यूनिट्स ऑफ टी, अगर 10 चाय बनाएंगे तो शुगर 20 चाहिए होगा. इफ वी मेक 20 यूनिट्स ऑफ टी, आई नीड 40 शुगर. इफ वी मेक 30 यूनिट्स ऑफ टी, आई नीड 60 शुगर, and so on and so forth. I need double sugar. So x2 is 2 times x1, right? Up. Beta, whenever we will write a utility function in terms of x1 and x2, यहां तो हमने लिख दिया min. अब एक रूल है. The rule is, please write down, whatever comes inside the min function is equated at equilibrium. ये point थोड़ा next chapter will make this point a little more clear. But at equilibrium, consumer consumes whatever by equating whatever comes inside the min. माने अगर my utility function is this, u is equal to min of left shoe and right shoe, तो इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर क्या करेगा? ही विल इक्वेट वॉट एवर कम्स इनसाइड द min. सो ही विल से लेफ्ट शू इज इक्वल टू राइट शू. whatever comes inside the min, जो भी min फंक्शन के अंदर आएगा, कंज्यूमर विल इक्वेट दैट फॉर कंजम्पशन, राइट? अब यहां पर आई नो आई हैव टू गेट x2 इक्वल टू 2x1. तो हाउ विल आई राइट माई यूटिलिटी फंक्शन बेटा? 2x1 कॉमा x2, 2x1 कॉमा x2, ताकि when we solve this, तो solve कैसे होगा? whatever comes inside the min function is equated, so we will equate x2 to 2x1, and this is exactly what we want. x2 is sugar, x1 is tea, and sugar is 2 times tea. अगर एक टी बनाना है तो 2 शुगर चाहिए, 2 टीज बनाना है तो 4 शुगर चाहिए. सो शुगर विच इज x2 बेटा, right? x2 represents sugar. Sugar is twice the amount of tea. Clear? Is this clear? So my utility function will become 2x1 comma x2. Many of the students will do this wrong. बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 2 शुगर 1 टी है ना, तो टी के आगे दे विल पुट कोएफिशिएंट 1 एंड शुगर के आगे दे विल पुट कोएफिशिएंट 2, क्योंकि शुगर इज रिप्रेजेंटेड बाय x2, तो x2 के आगे 2 लगा देते हैं. दैट इज इनकरेक्ट. दैट इज नॉट करेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. x2 is 2 times x1 बेटा. x2 is twice x1. x1 is t और शुगर उसका डबल है. सो देयरफॉर शुगर विल बी x2 और यहां पर हम 2x1 लगेंगे. we'll put 2x1 here so that when we solve this, जब हम इसको solve करें, so we will equate whatever comes inside the min. जो भी min में आएगा हम उसको equal करेंगे, so we will get x2 is equal to 2x1. और यही statement है that sugar is twice the amount of tea. Sugar is twice the amount of tea. So what is the general utility function now? The general utility function is min of ax1 comma bx2. ax1 comma bx2. अच्छा देखो, मैंने क्या बोला? We equate whatever comes inside the min. तो माने we will say ax1 is equal to bx2. तो माने x1 by x2 will be b by a. Will be b by a. So b and a ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? They represent the proportion in which the goods are consumed. दो गुड्स किस रेशियो में कंज्यूम करने हैं, दैट प्रोपोर्शन. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, समवन टेल्स यू दैट मेरा एक स्पेशल रेसिपी है
And in that recipe, I like adding 3 sugar with 2 sachets of milk. I like adding 3 sugar with 2 sachets of milk. और आपने बोला कि ठीक है, let x1 represent sugar, let x2 represent milk. x1 को हमने represent किया sugar से and x2 is representing milk. तो how much sugar बचे? कितना sugar यूज कर रहे हैं हम? 3 sugar, 3 units of sugar. और कितना मिल्क यूज कर रहे हैं हम? 2. सो शुगर बाय मिल्क क्या रेशियो है? आई एम यूजिंग 3 sugar with 2 milk. 3 sugar with 2 milk. क्लियर? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो दिस विल, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं, यहां से मुझे आएगा 2s इज इक्वल टू 3m. तो व्हाट विल बी माय यूटिलिटी फंक्शन बेटा? min ऑफ 2s, 3m. दिस विल बी माय यूटिलिटी फंक्शन. तो हिंट क्या है? व्हाट्स द हिंट? कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज ईच अदर. अगर हम 3 शुगर यूज करते हैं, सो 3 विल कम विद मिल्क. इफ वी आर यूजिंग 2 मिल्क, सो 2 विल कम विद शुगर. दैट इज द ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. दे आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें इस रेशियो को इंटैक्ट करना है. वी नीड टू कीप दिस रेशियो इंटैक्ट. And what's the ratio? That sugar is to milk ratio is 3:2. So sugar by milk is 3/2. So if I cross multiply बच्चे, 2s is equal to 3m. और जो यहां पे आएगा ना, whatever comes here, that will come as it is inside the min function. This is how you form the min function, right? This is how we can form the min function. I hope that this is absolutely clear to you as to how we can generate the min function or the complementary codes. Okay, beta. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. So, beta, today we will learn more about quasi-linear preferences. Quasi-linear preferences. But quasi-linear preferences basically mean those preferences. So, read the word. Quasi means partial. Quasi means partial. So quasi-linear preferences are those preferences which are partially linear, जिसमें एक linear component होगा और एक non-linear component होगा. That will be called as quasi-linear preferences. ठीक है? So for example, जैसे for example, so quasi means partly या partially. Linear is linear. Huh? This is for example, beta. Suppose I tell you utility function is equal to root x1 plus x2. Root x1 plus x2. So देख लो, root x1, this is a non-linear part. This is non-linear. But beta, this x2, this is linear part. Similarly, u is equal to log x1 plus x2. Non-linear part, linear part. U is equal to 1 by x1 plus x2. Non-linear part, linear part. U is equal to x1 plus root x2. Linear, non-linear part.
ठीक है। सो दोज यूटिलिटी फंक्शंस जहां पे एक लीनियर पार्ट होगा और एक नॉन लीनियर पार्ट होगा, दैट is a quasi-linear utility function. It is a quasi-linear utility function. ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शन हम लिख रहे हैं. So general form of this utility function can be written like this: v of x1 plus x2. कैसे लिख सकते हैं इसे हम? v of x1 plus x2. Now when we are writing it like this, v of x1 plus x2, माने it is a function of x1, non-linear function of x1. तो ये v of x1 कुछ भी हो सकता है. It can be root x1, it can be log x1, it can be 1 by x1, it can be any of these three things. कुछ भी हो सकता है इनमें से. It's a function of x1 but non-linear function. तो यहाँ आ गया, this is non-linear function of x1. Non-linear function of x1. And बेटा यहाँ देख रहे हो, this x2 is coming linearly. So ये हो गया हमारा linear part, linear portion. So x2 is coming linearly, so this is linear part, and यहाँ पर this is coming non-linearly, so non-linear part. बेटा क्या करते हैं हम usually in utility functions? We hold to plot utility functions. अगर हमें utility functions को plot करना है, we hold utility constant at some level. Suppose utility को k पे constant रख लिया. You remember when we were plotting x1 x2 is equal to 4, हमने utility को constant रखा था 4 पे. So we hold utility constant at some level. किसी level पे we need to hold the utility constant. So suppose here I am holding utility constant at k बच्चे. I have held the utility constant at k. So what will happen now? So I will get vx1 plus x2 is equal to k. So beta from here we will get x2 is equal to k minus vx1. x2 is equal to k minus vx1. समझे? So x2 is equal to k minus vx1. अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. See, suppose I go ahead and I want to plot this thing. इसको हमें plot करना है. Naturally सोचना है कि इसको कैसे plot कर सके. So suppose let us go ahead and let us say that vx1 का value 0 है. This part is 0. तो what will be x2 बच्चे? x2 का value k हो जाएगा. And as x1 will increase, जैसे जैसे x1 का consumption बढ़ेगा, तो of course vx1 is a function of x1. तो vx1 will also increase. So as vx1 will increase बेटा, तो x2 जो है which is nothing but k minus vx1, जैसे जैसे this will increase, the value of x2 will decrease. समझे? Let me try to explain this again. दोबारा सुनो. What I am saying, suppose I want to hold utility constant at 4. Suppose मेरा utility function ऐसे है, u of x1 x2 is equal to root of x1 plus x2. And suppose I have held utility constant at 4. मैंने 4 पे utility को constant रखा है. So बच्चे, what will I get from here? कि x2 is equal to 4 minus root of x1. x2 is equal to 4 minus root of x1. अच्छा, suppose now I want to plot this. तो हम कैसे plot करते हैं इसको? How do we plot this? We take different values of x1 and x2. So if x1 is 0, अगर x1 0 होगा, तो root x1 will also be 0. So if this is 0, तो x2 का value will be what? 4 minus root 0, that means 4. Suppose x1 is 1. So root of 1 is also 1.
So 4 minus 1 माने x2 will be 3. तो जैसे जैसे x1 बढ़ रहा है, as x1 is increasing, तो रूट ऑफ x1 भी तो बढ़ रहा है, रूट x1 is also increasing. So I am subtracting a bigger number from here. मैं एक बड़ा नंबर माइनस कर रही हूं. So this means that 4 minus root x1 will decrease. अगर मैं एक बड़ा नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x1 as 4 बेटा, so root of 4 is 2, so 4 minus 2 will be 2. अगर मैं यहाँ पे x1 की जगह पे 4 लगाऊं, root of 4 is 2, right? So I will get 4 minus 2 which is 2. So as x1 is increasing, जैसे जैसे x1 बढ़ रहा है, as x1 is increasing, the root of x1 is also increasing. That means ये वाला value is increasing. So I am subtracting a bigger number. In this case, यहाँ पे x1 0 था, so root x1 0 था, I subtracted 0. x1 was 1, root x1 was 1, I subtracted 1. x1 is 4, root x1 is 2, I subtracted 2. So as x1 is increasing, root x1 भी बढ़ रहा है. As root x1 is increasing, 4 minus root x1 is decreasing. 4 minus root x1 means what beta? x2. x2 ही तो है 4 minus root x1. So x2 is decreasing. So as x1 is increasing, x2 is decreasing. x2 is decreasing. समझ रहे हो बात को? This is what I have written generally here. कि x2 is k minus v of x1. k minus v of x1. तो अगर x1 ये वाला पार्ट 0 हो गया, if this is 0, so x2 will be k. जैसे यहां पर when this was 0, so x2 was 4. x2 was 4. और जैसे जैसे ये बढ़ता गया, x2 का वैल्यू डिक्लाइन होता गया. So as this keeps increasing, so I am subtracting more amount from k, तो x2 is decreasing. समझ रहे हो बात? ठीक है. Now try to understand something more. So now what I can go ahead and I can do is I can try to plot beta. So I will take x1 here and x2 here. When x1 is 0, x2 is 4. जब x1 0 है, so x2 is 4. When x1 is 1, x2 is 3. 1. 3. When x1 is 2, so जब हमने 4, जब हमने x1 को 4 लिया, x2 is 2, so x1 is 4. 2. This point. माने if you try plotting it, it will be somewhere like this, somehow like this, है ना? And what will be this height बेटा? ये height कितना आया यहाँ पे? x2 का maximum value कितना जा रहा है? Whatever utility you had kept, यहाँ पे utility 4 पे था. So when x1 was 0, x2 was coming out as 4. So what's the maximum value of x2? 4. So when x1 is 0, the height of this curve is coming out as 4. अच्छा, suppose I would have kept utility constant at 5. मैं 4 पे constant नहीं रखती. Suppose I would have said कि नहीं, I want to do this, that I want to plot root x1 plus x2 equal to 5. फिर क्या करते बेटा? You would have got from here x2 is equal to 5 minus root x1. I am holding utility constant at 5. 5 पे utility constant. So when x1 was 0 बेटा, x2 will be 5. अगर हम x1 को 1 लेंगे, so root 1 is 1, 5 minus 1 is 4. If we will take x1 as 4 बेटा, root of 4, यहाँ पे 4 डालो, root of 4 is 2, 5 minus 4 will be 3. If I want to plot this, ये points को हमें plot करना है. So when x1 is 0, x2 is 5. When x1 is 0, x2 is 5. When x1 is 1, x2 is 4. When x1 is 1, x2 is 4.
When x1 is 2, x1 is 4, x2 is 3. So when x1 is 4, x2 is 3. Mane, this will be a curve like this. This is representing utility of 4. ये 4 का utility represent कर रहा है. This is representing utility of 5. इसका maximum height at x2 will be 5. अगर आप यूटिलिटी को कांस्टेंट एट 6 रखते हो, इफ यू होल्ड यूटिलिटी एट 6, तो सब कुछ वन स्टेप अप हो जाएगा. एवरीथिंग विल स्टेप अप बाय 1. You just notice it, right? Here also everything stepped up by 1. This went from 4 to 5. This went from 3 to 4. This went from 2 to 3. Everyone is going one step up. एक step ऊपर जा रहे हैं. So if I have utility at 6, constant at 6, this point will be 6 beta. This point will be 5 beta. This point will be 4 beta. And you will get a curve like this. Same shape curve. This will be u equal to 6. Thoda or better I can plot this. This will be utility of, this is 4, something like this. Huh? They have exactly same shape. Vertically shifted version of the same indifference curve. तो अगर अब यहां पर हम k कांस्टेंट रखते हैं, आई एम होल्डिंग यूटिलिटी कांस्टेंट एट k, आई डोंट नो व्हाट k इज, तो क्या होगा? देयर इज, सपोज दिस इज k, तो दिस विल बी जस्ट k नाउ. यहां पे k आ जाएगा. k प्लस 1 होता है तो उसके एक ऊपर, एक और ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम? So each indifference curve is vertically shifted version of single indifference curve. माने आप एक बना दो और फिर आप उसको अपवर्ड शिफ्ट करते जाओ vertically. When are we shifting this vertically, beta? In the background क्या देख रहे हैं हम? That x1 was non-linear, but x2 was coming linearly. Only then this is the graph. x2 is coming linearly. x1 is coming non-linearly. तब जाके these are vertically shifted. These are vertically shifted. Homework. I want all of you to try and plot root x2 plus x1 equal to utility function. ठीक है? x2 is non-linear and x1 is linear. इसको plot करो. Right? For different values of utility. एक बार यूटिलिटी लेवल को 4 पे लो, फिर 5 पे, फिर 6 पे. For different levels of utility, try to plot this indifference. Okay. Now, what are some of the examples of quasi-linear preferences? So, quasi-linear में whatever is the non-linear good, that good is a necessary or necessity good, not affected by income, or those goods which are very small proportion of budget. Very small proportion of budget. तो कौन से goods होते हैं यहाँ पर? What are those goods which represent quasi-linear preferences? The goods, first of all, which are necessity goods. माने if I want to show that one of the good is medicine, तो बेटा मेडिसिन तो मैं लूंगी ही, चाहे मेरी इनकम 100 हो या 200, I have to spend money on medicine for sure, right? And medicine is not affected by income. So if my income increases from 100 to 1000, will I increase the consumption of medicine? No, I will not start consuming more medicines. ऐसा तो नहीं होगा. So those goods, so non-linear good माने non-linear part में किस good को दिखाएंगे? Which good will we show in the non-linear part? That good which is a necessity.
right? Which will not have increase in consumption when income increases. Income के बढ़ने पे consumption increase नहीं होगी, right? The other is which have very small proportion of budget. But for example, newspaper, for example, salt. You will not increase consumption when income increases or decreases. अगर income कम हो जाए या बढ़ जाए तो salt, newspaper, इनका consumption हम change नहीं करते हैं because they are very small proportion of budget. एक न्यूज़पेपर में 5 से 10 रुपए लगते हैं, right? A newspaper cost very small proportion of your income. So since it is costing very small proportion of income, it is not affected when your income increases or decreases. उसको income से फर्क नहीं. So those goods will be represented by a non-linear good. Is that clear, beta? So these are some of the examples of quasi-linear preferences. So with this, we have done 4 type of goods, beta. हमने Cobb-Douglas पढ़ा. We studied Cobb-Douglas. We studied substitute goods. We studied complementary goods. And we studied quasi-linear goods. In the next class, we will introduce the concept of marginal utility. And I will also take you to an example. जिसे बोला जाएगा utility for commuting. We will also see an example of it. Okay? ठीक है बेटा. Hi, good afternoon, everyone. So, beta, today we are going to go ahead and talk about marginal utility. Marginal utility क्या होती है, उसे कैसे derive करते हैं, we will try to understand all of that. So, very simply, marginal utility is basically nothing, but the marginal always means additional. Marginal means beta additional. So marginal utility is the additional utility that a consumer gets when he changes his consumption. ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी? सो सपोज आई वांट टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड 1. गुड 1 से मार्जिनल यूटिलिटी कितना? सो दिस विल बी एक्स्ट्रा यूटिलिटी, चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड 1. चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड 1. अब बेटा व्हेन इज यूटिलिटी चेंजिंग? यूटिलिटी कब बदलेगी? व्हेन there will be change in consumption. अब यहां देखो, आई एम फाइंडिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड 1. माने कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी वी आर गेटिंग, हाउ मच एक्स्ट्रा यूटिलिटी यू आर गेटिंग व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड 1. तो वी विल होल्ड good 2 constant. We will hold good 2 constant. अच्छा, कितना एक्स्ट्रा good 1 का हम कंज्यूम कर रहे हैं? हाउ मच एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ good 1 वी आर कंज्यूमिंग? इतना. चेंज इन x1, इतने एक्स्ट्रा good 1 हम यूज कंज्यूम कर रहे हैं. So how can I rewrite this thing, beta? How can we rewrite this thing? We can rewrite this thing as utility when x good 1 का consumption is increased by these many units, comma good 2 का consumption is x2 minus utility of x1 comma x2 upon change in x1 upon
change in x1. एक और तरीका है, let's try to understand this a bit more. तो for example, बच्चे if I tell you कि good 1 जो है अभी 4 units है and good 2 I have 5 units and good 1 को मैं increase कर रही हूं to 7 units. Now I am consuming 7 units of good 1. तो how can I write marginal utility of good 1? Utility from 7 units of good 1, comma, 5 units of good 2 minus utility from 4 units of good 1, comma, 5 units of good 2. ओरिजिनल बंडल आपका जो है, योर ओरिजिनल बंडल, हाँ बच्चे, दैट इज 4,5 एंड योर न्यू बंडल दैट इज 7,5. समझ रहे हो? So utility from new bundle minus utility from old bundle divided by change in consumption of good 1. Good 1 कितने यूनिट से चेंज हो रहा है? It is increasing by 3 units. This is marginal utility of good 1. अच्छा, can I write this 7? क्या मैं इस 7 को ऐसे लिख सकती हूँ? 4 plus 3, comma 5 minus utility of 4, comma 5 upon 3. I can write it like this also, बच्चे. अच्छा, just think about this. I am saying 4 plus 3, माने 4 क्या है? Original consumption. एंड 3 क्या है? हाउ मच एक्स्ट्रा, कितना मैंने गुड 1 को चेंज किया, हाउ मच एक्स्ट्रा गुड 1 आई एम कंज्यूमिंग. So I can write this now that this is initial consumption plus extra units of good 1, comma x2 minus initial x1, comma x2, and I am changing good 1 by 3 units. So change in x1. यही तो marginal utility of good 1 है. This is what marginal utility of good 1 is. Is this okay? Acha. So now, bitch, we defined marginal utility of good as change in utility when good 1 changes. So can I write that change in utility will be marginal utility into change in x1? I can take this here. इसको मैं यहाँ लेके जा सकती हूँ. So how much extra utility we will get जब एक good का consumption बढ़ता है? When we increase the consumption of a good, what is the extra utility we will get? Extra utility we will get? It will be nothing but change in consumption of that good multiplied with the additional utility you are getting. Multiplied with the additional utility you are getting. Mane, clear this thing? Acha, can you tell me on similar basis, what will be marginal utility of good 2? What will be marginal utility of good 2? Quickly solve it yourself. I'm giving you 1 minute. Marginal utility of good 2 will be what, beta? Utility. x1 को constant रखेंगे. x2 का consumption is increasing by change in x2 units minus utility x1, comma x2 upon change in consumption of good 2. Clear? तो मतलब marginal utility of good 2 is nothing but change in utility due to change in consumption of good 2. And I can take this here, bache. So marginal utility into change in consumption can be change in utility. Can be change in utility. समझे? तो utility जो है हमारा, our utility, it can change due to 2 reasons. 2 reasons से utility change हो रहा है. It can change when good 1 consumption changes. It can change when good 2 consumption changes. Either say change in utility will be
mu1 change in x1. And from here it will be mu2 change in x2. Clear? mu1 change in x1, mu2 change in x2. Okay. So now once we have understood this thing, we have understood how utility is changing. अब बच्चे एक बात हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. So try to understand this thing, huh? When we talk about MRS, when MRS का भी बाद में बात करेंगे. When we talk about indifference curve, this is point A, point B. When we talk about indifference curve and we go from one point to another, तो indifference curve का क्या property है? That along, what's the property of indifference curve? Along an indifference curve, utility is constant. Along an indifference curve, utility is constant. Mane, when I will go from point A to point B, utility should remain constant. Mane, change in utility will be 0. Utility will not change. When I go from one point to another, utility will not change. ये बात clear है? अच्छा. Now, beta, just try to understand this thing that when I'm going from point A to B, तो X2 good 2 consumption, it is changing. Good 2 का consumption is changing. Suppose by change in X2. Good 1 का consumption भी is changing. Suppose by change in X1. ये change can be negative or positive, does not matter. हाँ, जैसे point A पे good 2 होगा, suppose 10 units. यहाँ पे good 2 है 4 units. तो 4 minus 10 माने minus 6. यहाँ पे good 1 है 7 units. यहाँ पे good 1 है suppose 15 units. तो 15 minus 7 minus माने plus 8 units. Does not matter. It can be positive or negative. But there is some change in good 2 na, and some change in good 1. दोनों में ही कुछ change आ रहा है. There is some change coming. अच्छा, now tell me, if I ask you how can we measure change in utility, so we have seen change in utility will be because good 1 changes and because good 2 changes. तो हमें इन दोनों को add करना पड़ेगा. That will be total change in utility. So it will be mu1 change in x1 plus mu2 change in x2. But along an indifference curve, अगर मैं एक ही indifference curve पे हूं, along an indifference curve, utility does not change. Utility does not change. So along same indifference curve, change in utility will be 0. So this will become beta 0 is equal to mu1 change in x1 plus mu2 change in x2. Okay. Now let's talk about the slope of indifference curve beta. Slope किसी भी चीज का slope जो होता है वो perpendicular by base. Slope is always perpendicular by base. So what is perpendicular बच्चे? Change in x2. What is base? Change in x1. So what will be slope beta? Slope will be, ma'am, perpendicular by base. Change in x2 by change in x1. So slope can be written as change in x2 by change in x1. Can you find this value from here? Nikalo. Take this on the other side. So 0 is equal to mu1 change in x1 plus mu2 change in x2. Take this on the other side. Minus mu2 change in x2 is equal to mu1 change in x1. Better take this here and this here. Change in x2
by change in x1 will be minus mu1 by mu2. Minus mu1 by mu2. The slope of indifference curve is called as MRS. एक इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को MRS बोलते हैं. इट्स कॉल्ड एज MRS. MRS is marginal rate of substitution. What is MRS beta? Marginal rate of substitution. MRS क्या बताता है? What MRS is telling us? Change in x2 by change in x1. माने अगर good 1 को increase करना है, if I want to increase the consumption of good 1, how much good 2 am I willing to give up to hold utility constant? A और B पे utility तो same है. But what am I doing? I am increasing good 1 and I am decreasing good 2. Right? So what is MRS saying? MRS is telling us amount of good 2 that must be given up. Given up. देना पड़ रहा है. You're reducing good 2. That is why the negative sign. You are lowering one thing. You are reducing one thing. आप एक चीज को कम कर रहे हो दूसरे को बढ़ाने के लिए, इसीलिए नेगेटिव साइन है. जैसे यहां पर अगर मैं नंबर्स का बात करूं, so what is the number I was getting here बेटा? -6. What is the number I was getting here बेटा? +8. तो नेगेटिव होगा ना? It will be negative when you find the ratio. This is what exactly I am saying. So amount of good 2 that must be given up. अब दे रहे हो good 2. So amount of good 2 that must be given up for an additional, not an additional, for extra units of good 1 is also fine. Unit of good 1. But same indifference curve का बात है. So holding utility constant. Holding utility constant. Utility को constant रखते हुए, keeping utility constant, the amount of good 2 that must be given up for an extra unit of good 1, या for some extra units of good 1, that is called as MRS, marginal rate of substitution. किस रेट से आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक गुड को दूसरे गुड के लिए अपने यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए? What is the rate at which you will substitute one good for another, holding your utility constant? And how can you find this beta? What is the slope? It is mu1 by mu2. Marginal utility of good 1 divided by marginal utility of good 2. Confuse नहीं होना है. यहां पे change in x2 by x है और यहां पे mu1 by mu2 है. Don't get confused. Here marginal utility of good 1 is in the numerator. है ना? जो भी हम x axis पे लेंगे, whatever you will take on x axis, that will come in the numerator beta. Clear? Okay beta. Thank you. Hi, good evening everyone. Beta, today we are going to talk about an example of utility function, और example जो हम लेने लगे हैं that is called as utility from commuting. ठीक है? माने in this particular example we are going to go ahead and look at how utility functions can be used in the real life scenario. कैसे हम utility functions को real life में use करके how we can go ahead and learn something from them, right? So what we have gone ahead and we have done is, let us go ahead and let us try to link this to the transportation economics sector. और यहाँ पे let us make a utility function. So the utility function that I have, u x1, x2,
till xn, beta this is equal to beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on till beta n xn. ठीक है, ये हमारा एक यूटिलिटी फंक्शन है। अब इस यूटिलिटी फंक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। x1 x2 एंड सो ऑन आर डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x1 कैन बी द अमाउंट ऑफ ट्रैवल टाइम इन्वॉल्व्ड, amount of travel time involved. अब हमें पता है, we know that whenever there will be increase in the amount of travel time involved, then it should go ahead and it should lead to decrease in utility of the consumer, isn't it? अगर मुझे एक जगह ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो मेरा यूटिलिटी, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, दैट विल डिक्रीज. So if there will be increase in the travel time involved, then the utility should decrease. It means that beta this coefficient, we know that this should be negative. It should be negative. Negative माने ये दोनों opposite directions में हैं. These are moving in opposite directions. ठीक है. Similarly, suppose we go ahead and we say that x2 represents the waiting time for transport. जैसे अगर मैं बस से जा रही हूँ, suppose I am traveling via bus, so how much time I have to wait for that bus? How much time I have to wait for that bus? That can be my x2. ठीक है. Again बेटा, I know that if I have to wait more for a bus, अगर मुझे public transport के लिए ज्यादा wait करना पड़ेगा, then my utility should decrease. If I have to wait more for bus, then my utility should decrease. So beta, we can say that there is a negative relation between the two. Mane beta 2 should also be less than 0. Similarly, you can define different things. Just say you can define that let x3 be the pocket cost involved. कि travel करने में कितना cost लगता है. How much money is involved in traveling. तो ये भी हमें पता है that if more money is involved in traveling, then my utility will decrease. मेरा सेटिस्फैक्शन गिर जाएगा अगर ज्यादा पैसा लगेगा ट्रैवल करने में. सो इट मींस दैट द थर्ड कोएफिशिएंट बीटा 3 x3 का जो कोएफिशिएंट होगा, दैट शुड आल्सो बी नेगेटिव. देयर इज एन ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन x3 एंड यूटिलिटी. सिमिलरली बेटा, सपोज मैं कह रही हूं दैट x4 इज कंफर्ट, अमाउंट ऑफ कंफर्ट. So when x4 increases, more comfort, beta it should mean more utility. So beta 4 should be positive. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. More comfort, more utility. So beta 4 should be greater than 0. It should be positive. Right? So we are going ahead and we are labeling different things. कि x1 एक चीज हो गया, amount of travel time, x2 is the waiting time, x3 is the pocket cost, x4 is the comfort. ऐसे करके we are defining various variables, right? We are going ahead and we are defining various kind of variables. Is this clear? ठीक है. So now what we can go ahead and we can do beta, let's take some numerical example on this. इसी पे एक numerical example ले लेते हैं. So supposedly we make 3 variables. Example, suppose I tell you that utility TW, TT, C is equal to minus 0.147 TW minus 0.4104 1 TT minus 2.24 C. Suppose ऐसा utility function defined है. This is how the utility function is defined. ठीक है. And beta, I have defined these 3 things also. ठीक है. So what is TW saying? TW is the total walking time to the transport. माने अगर हम बस लेते हैं या कार लेते हैं या जो भी अपना ट्रांसपोर्ट लेते हैं, उस ट्रांसपोर्ट तक वॉक करने के लिए, टू वॉक टू दैट ट्रांसपोर्ट, हाउ मच टाइम इज इन्वॉल्व, दैट इज TW. ऑफ कोर्स बेटा, इफ आई हैव टू वॉक फॉर मोर टाइम, आई विल गेट लेस यूटिलिटी. नेगेटिव होना चाहिए रिलेशन. सो यू सी दिस नेगेटिव साइन, इट मीन्स दैट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, देन बेटा TT, it represents the total time
of trip in minutes. अब जब कॉलेज से घर आने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ऑफिस से घर आने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, व्हेन यू टेक मोर ट्रैवलिंग टाइम, यूटिलिटी डिक्रीजेस, पीपल गेट फेड अप, हाँ, दे गेट impatient, they get fed up. So of course beta, as travel time increases, your utility should decrease. There should be a negative relation. You see this negative sign? Yes. ठीक है. C represents the total cost of trip in dollars. Total cost of trip. Again बेटा, as cost increases, अगर ज्यादा पैसा लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मेट्रो का प्राइस इंक्रीजेस, मेट्रो टिकट इंक्रीजेस, यू आर incurring more cost, your utility will decrease, they will move in opposite direction. Again beta, you see this thing, huh? So negative sign shows that when you increase their consumption, then the utility from them is decreasing. Is this clear? ठीक है, ठीक है. अब क्या है कि the coefficients, if we look at the coefficients, let us try to interpret these coefficients beta. Coefficients interpretation. ठीक है, तो जैसे if I just rewrite this utility function, एक बार यहां लिख लेते हैं, u is equal to minus 0.147 t second. Yeah. So u is equal to minus 0.147 TW and minus 0.0411 TT minus 2.24 C. तो एक बात मुझे बताओ, if I differentiate utility with respect to TW beta, partial derivative, तो of course बच्चे these are constants, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें with respect to TW, so I will get the answer as 0.147. Similarly बच्चे, if I differentiate my utility with respect to TT, तो I will get minus 0.0411. Beta, if I differentiate my utility function with respect to C, तो I will get minus 2.24. Isn't it? यही आएगा. This is what you will get. Right? अच्छा, अब ध्यान से पहले वाले को समझो, हाँ. So this is telling me how the utility changes. Change in utility. When there is change in walking time, that is equal to minus 0.174. Change in utility when there is change in walking time. तो एक बात बताओ बच्चे, suppose we assume that walking time changes by 1 unit, denominator 1 है, so यहाँ पे numerator is change in utility. So change in utility divided by 1 will be 0.147. माने I can say that if 1 goes on this side, then change in utility बच्चे, it will become minus 0.147. Change in utility will become minus 0.147. तो इसका क्या मतलब है? What does this mean? It means that देखो walking time में हमने +1 से replace किया. Change in walking time we replaced with +1. So we are saying that when walking time increases, why increases? Because this is +1. Plus means increase. So when walking time increases by 1 unit, then utility decreases. Why decreases beta? Because change in utility negative aa raha hai. So utility decreases by 0.147 units. When walking time increases by 1 unit, utility decreases by 0.147 units. ठीक है? Is this clear? ठीक है. Let us try to go ahead and interpret the next one beta. This one. When travel time increases by 1 unit. कैसे? Change in travel time की जगह पे I am plugging +1. So change in utility and change in travel time की जगह we are putting +1
is equal to minus 0.0411. है ना? तो if this goes on the other side, तो बेटा what will I get? Change in utility is equal to minus 0.0411. ठीक है? So when travel time increases by 1 unit, then utility decreases by 0.0411 units. ठीक है? Similarly, third one beta, when cost increases by 1 unit, then utility decreases by 2.24 units. ठीक है? अच्छा, important thing. Another important thing here is that ये जो utility के coefficients हैं utility function में, these coefficients that we see here, these are the weights that the household is giving to different characteristics. Mane, if you look here it is 0.14. This is only 0.04. This is 2.24. It means highest weightage, absolute number में 2.24 is more than 0.14, which is more than 0.04. So I am giving more weightage to cost. I am giving more weightage to cost. उसके बाद I want to give weightage to traveling to the transport. कितना time मेरे को transport तक जाने में लगता है? How much time I need to give to traveling up to transport? And then बेटा this is the least. Absolute value में देखना, हाँ? In absolute value, this is the least. So traveling time is having the least weightage. Okay. Also, if you understand, बच्चे, तो can I say change in utility due to change in traveling time? I can call this as marginal utility of traveling time. इसको हम MUTT बोल सकते हैं, marginal utility of traveling time. Similarly, if you look here, change in utility due to change in this is travel till transport तक जाने के लिए कितना travel करना है. I can call this as marginal utility of travel till transport or walking time. Similarly, this is how utility changes as cost changes. Utility कैसे change होगा जब cost change होगा. So I can call this as marginal utility of cost. कह सकते हैं इसे? How utility changes when something changes is marginal utility of cost. है ना? अच्छा, one more thing बेटा. Suppose I ask you question, find MRS. Find MRS, traveling time cost. MRS, traveling time cost. So you remember that whenever we were finding MRS XY, it was MUX upon MUY. So MRS TT, C will be MUTT upon MUC. MUTT बच्चे, this one. How utility changes when TT changes? इसी को तो marginal utility of TT बोलेंगे. This will be called marginal utility of TT. So this will be minus 0.0411 upon marginal utility of C beta minus 2.24. And if you divide this, you will get 0.0183. 0.0183. It means the trade-off between traveling time and cost is this. This is the rate at which the consumer is trading off between traveling time and cost. Right? Is this clear? Is this clear? This is the trade-off between traveling time and cost. इस बात को समझ लो. ये MRS है. MRS was telling us trade-off between the two commodities. Right? So this is giving us the trade-off between these two things. Right? Okay, beta. So this is just an example of the utility function.
इसी तरीके से आप अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस को सीख सकते हो, उनको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एट द लास्ट. सो होमवर्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन why monotonic transformation doesn't change marginal rate of substitution. Explain why monotonic transformation doesn't change marginal rate of substitution. बहुत सिंपल है बेटा. So marginal rate of substitution is marginal utility of x upon marginal utility of y. It is ratio. It is ratio. When we do monotonic transformation, so it changes MUX and MUY, but not the ratio. वो MUX MUY को तो change करेगा. It will change MUX MUY. So for example, after monotonic transformation, you may get twice MUX, twice MUY, but the ratio will remain unchanged. Ratio नहीं बदलेगा. For example, beta consider a utility function xy and consider another utility function u dash, which is 2 times xy. तो क्या था monotonic transformation? What was monotonic transformation? I have already discussed in lectures. When you multiply, add, or divide, or take it to some power, है ना, or take log, these are all monotonic transformations, right? अच्छा बेटा, यहाँ पर what will be MRS of the first utility function? MRS can be written as MUX by MUY. So just try and find MUX by MUY in the first case. MUX by MUY. It means I will differentiate utility function with respect to x divided by differentiate utility function with respect to y. बेटा जब x से differentiate करते हैं तो y is assumed to be constant. So differentiation of x with respect to x is 1 and y is assumed to be constant. When you differentiate with respect to y, then you keep x constant and differentiation of y with respect to y will be 1. x constant रहेगा और y का differentiation y के साथ 1 होगा. It will be 1. So you will go ahead and you will get y by x. Now look at the second utility function, beta. Here I am finding MRX. This is MUX by MUY. Differentiate utility function with respect to x. Differentiate utility function with respect to y. तो जब हमने x से differentiate किया तो x के अलावा everything else is constant. Except x, everything else is constant. So 2 is a constant, beta. Differentiation of x with respect to x will be 1 and y is a constant. And differentiation with respect to y क्या हो जाएगा? 2 is the constant, x is a constant, differentiation of y with respect to y will be 1. So you will get here 2y by 2x. So 2 will cancel out and you will get y by x. So in both cases, MRS is coming out to be the same. MRS एकदम same आ रहा है. So we see that MRS is coming out to be the same, right? Because MRS is ratio. और जब तक ratio नहीं बदलेगा, MUX by MUY का ratio, as long as the ratio is unchanged, monotonic transformation will not affect MRS. Will not affect MRS. Okay. Just as a homework question,
everyone will go ahead and find if V is monotonic transformation of U. बेटा U क्या है? U is x1 plus root x2. What is V? V is x1 square plus 2x1 root x2 plus x2. Find if V is monotonic transformation of U. माने how can you check this? Very simple. आप MRS निकालोगे first utility function का. You will find MRS of second utility function. If MRS are same, then yes, V is monotonic transformation of U. Then V is monotonic transformation of U. Is this clear, beta? Okay. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Beta, today let us go ahead and talk about uncertainty. Uncertainty is something which is a part of your life, isn't it? चाहे हम एक बेसिक वॉक ले रहे हो or whether we are driving a car, right? We don't know what will happen in the next moment. Do we? No, we don't. We don't know when I will put my money in the stock market, whether I will get profit or loss, right? We don't know anything about life. Will we live for one more moment or not? क्या हम एक और पल जिंदगी का जी पाएंगे या नहीं, उतना भी सर्टेन नहीं है, right? तो uncertainty is a fact of life. Uncertainty हमेशा हमेशा जिंदगी में रहती ही है, हर चीज में. You are preparing for your exam. Are you certain how many marks you will get? No. You can increase the probability of getting good marks. अच्छे marks मिलने का probability बढ़ा सकते हो. Can you be certain कि मुझे इतना ही marks मिलेगा, यही rank मिलेगा? Can you be certain about it? No. You cannot be certain about it. So uncertainty एक fact है जो life में है ही है, right? Whenever there is uncertainty, there is presence of probability. कि अच्छा 50% chance है it will rain, 50% chance है it will not rain, 90% chance है कि I will reach home safely if I drive properly, 10% chance I can still meet an accident, right? So whenever there is uncertainty, जभी भी uncertainty होगी, there would be presence of probability. There will be presence of probability. Therefore, हम एक term introduce करते हैं जो statistics में पढ़ाया जाता है, which is called as probability distribution. Probability distribution. But what is probability distribution? Probability distribution means giving probability to each value of random variable. ये statistical definition है. This is the statistical definition. Giving probability to each value of the random variable. For example, when we toss a coin, okay, let's say that X represents the number of heads. Okay. So when you toss a coin, क्या हो सकता है? Either you will get head or tail. है ना? तो the number of head can be either 0 if you get a tail. अगर tail आ गया तो number of head 0 हो जाएंगे. Or the number of head will be 1. अगर head आ गया तो number of head will be 1. What is the probability associated with it? Half probability है that you will get tail.
and half probability है that you will get head, right? So we have gone ahead and we have made this table. हमने एक ये table बना दिया where we have said that when value of x is this, उसका probability है. When value of x is that, उसका probability है. So with each value of x, we are going ahead and we are giving the corresponding probabilities. हमने corresponding probabilities दे दिया, right? That is a probability distribution. So let's define a probability distribution in economics. So a probability distribution is when each consumption bundle is defined with corresponding probability. Each consumption bundle is defined with corresponding probability. हमने हर consumption bundle को उसका probability के साथ हमने define किया, right? जैसे for example, let's say that there is this person, and this person, he is playing a lottery, and he has $10 with him. उसके पास $10 है. And what he can go ahead and he can do is either he can put this $10 जब वो लॉटरी में कर रहा है, either he can win. If he wins the lottery, तो यही $10 it will become $20. He can win with probability half. या फिर he can lose. And he can lose with probability half. अगर वो lose करता है, if he loses, so this $10 it will become $0. वही $10 it will go ahead and become $0. So either he can go ahead and he can get $20, right? Or he can go ahead and get $0. So हमने एक consumption bundle define कर दिया. We have defined a consumption bundle that what is his payoff beta? कितना वो consume कर सकता है? Either he can consume $20 or $0. And what is the probability associated with it? Half and half, right? When we do this, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, when we define it like this is called as probability distribution. ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? Probability distribution. Is this clear? ठीक है. Now let us try to go ahead and let us try to understand another thing. देखो, whenever we talk about uncertainty, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनी मैटर करे, राइट? A lot of times it is consumption that will matter. Consumption matters. ठीक है? A lot of time it is the consumption that will matter. जैसे for example, बहुत simple है, एक example ले लेते हैं. So for example, if I go ahead and I tell you that there is, so suppose I tell you that there is this person, Mr. G, and he has a very old grandparent who is 90 years, right? And with probability 7/10, the grandparent will live for 1 more year. And with probability 3/10, he will not live 1 more year. ऐसा कुछ, ठीक है? Looking at his health, हमें लगता है कि he will live for 1 year with probability 7/10 and not live with probability 3/10. So here we are not talking about money.
Here we are talking about an individual, right? So this is a possibility where we are talking about consumptions or we are talking about individuals. ऐसा हो सकता है ना? But for simplicity's sake, we only consider monetary outcomes in our chapter. And हम ऐसे situations को consider नहीं कर रहे हैं. We are not considering these situations. We are only going ahead and considering situations which are involving money, जहां पे पैसा involved है, where money is involved. That's the first thing. Second thing is that it is possible. Yes, this is scenario number 1, beta. The second thing is that it is possible that there can be a lottery with many outcomes. जैसे example देती हूँ. How many of us have played Tambola? I'm not sure if you play it or not, but I know that whenever we have a Diwali Mela in our society, तो Tambola तो definitely is one of the games that is played. ठीक है? So in Tambola, you can win multiple amount with multiple probabilities. अलग-अलग amount आप अलग-अलग probabilities के साथ जीत सकते हो. जैसे for example कि if you have one row या one column या two rows या houseful या diagonal, हर एक का अलग-अलग probability रहता है and accordingly you win different money. है ना? तो तंबोला में जैसे फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स दे से द फर्स्ट टू गेट द सेंटर, हाँ ऐसा कुछ, द फर्स्ट टू हैव द डायगोनल लाइन कट, है ना? तो देयर आर वेरियस आउटकम्स, बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस प्रोबेबिलिटीज. बट in our examples, in our chapter, we will restrict ourselves to simple situations. हम वही simple situations पढ़ेंगे where there are only few possible outcomes. जैसे this is a simple situation कि हाँ there are only two outcomes, या money double या money zero, right? It's a simple situation. I can do the same thing with multiple situations also. कोई दिक्कत नहीं है, right? But we would restrict ourselves. हम simple situations की ही बात इसमें करेंगे. That is another thing which you can go ahead and understand in this chapter. ठीक. अच्छा, one example that I want to go ahead and give it to you. So example number 1, beta. Let's say that there is an individual. And this individual, he has $35,000 with him. $35,000 के उसके पास assets हैं, right? And there is a probability that he can lose $10,000. ठीक है? कब $10,000 उसका क्या है, क्यों lose करेगा? Why will he lose it? Because he can get his car stolen. उसका car stole हो सकता है, ठीक है? या there can be an earthquake that can damage his house. तो उसका 10,000 तक का assets can be lost. There is a possibility ये ऐसा कुछ हो जाए. So that means, and what is the probability that he will lose this $10,000? उसका probability है 0.01, very less probability, right? So basically what is going to happen, यहाँ पे हमारे पास एक uncertainty situation हो जाता है and correspondingly हम एक probability distribution को prepare कर सकते हैं. We can make a probability distribution. And what are we saying? That but if he loses $10,000 out of 35, तो कितना बचेगा उसके पास? How much he will be having? He will be left up with $25,000.
right? And the probability of that will be 0.01. इतना ही तो probability that he has lost the $10,000, right? And with 99% probability, there will be no car stolen, no earthquake, कुछ नहीं हो रहा, उसका asset intact है. So this will be 35,000. तो माने there is a 1% chance. Percent में how do we convert? Multiply with 100. तो अगर मैं इसको 100 से multiply करूंगी, I'll get 1. And if I multiply this with 100, I will get 99. So there is a 1% chance, beta. 1% chance that his money will become 25,000. वो 10,000 खो देगा. He will lose 10,000. And there is a 99% chance that he will not lose this money and his money will be intact to 35,000. उसका पैसा नहीं खोएगा and he will have these money intact. Now, whenever we have this kind of situation, जब भी ऐसा कभी भी होता है, and you would have seen this in your family also, but whenever we have this kind of situation, कि अच्छा, there can be a loss, we can lose money. So, in those kind of situations, what do individuals do? We want to cover the risk. क्या करना चाहेंगे हम? In these kind of situations, individuals want to cover risk. Individuals want to cover their risk. कैसे cover कर सकते हैं? How can individuals cover their risk? Very simple. One way of going ahead and covering the risk can be through insurance by taking insurance. So individuals can go ahead. Individuals can take insurance. एंड बाय टेकिंग इंश्योरेंस लेकर वो अपने इस रिस्क को कवर कर सकते हैं. दे कैन गो हेड एंड दे कैन कवर देयर रिस्क. बट व्हेनेवर यू टेक इंश्योरेंस, आई एम जस्ट गिविंग यू, बेटा इन दिस लेक्चर में बस एक अभी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लेके जा रही हूँ. आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड गिविंग यू सम डेफिनेशंस. ठीक. सो व्हेनेवर यू टेक एनी इंश्योरेंस, आपको पता होगा जैसे बहुत सारा एड्स आता रहता है, LIC का एड आता है, बजाज फाइनेंस का आता है, बाकी सब आते हैं. तो वो क्या बोलते हैं कि इतने कम प्रीमियम में हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं. सो प्रीमियम इज द फीस दैट यू पे टू बी पेड फॉर कवरिंग द रिस्क फॉर दिस इंश्योरेंस. माने इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस विद यू, आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, there is your car is stolen, there is an accident, there is an earthquake, the insurance company will pay you, right? The insurance company will pay you, but you have to pay premium every year to this insurance company. और ये करवाना ना कुछ कुछ जगहों पे कंपल्सरी है. जैसे फॉर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव सीन, हाँ, तो जब हम whenever we have a car, है ना, या whenever we have any vehicle, तो इंश्योरेंस करवाना कंपल्शन है, राइट? if you're caught without an insurance, you will have to pay a fine. तो getting insured is necessary. जरूरी है कि आप अपने आप को इंश्योर करके रखो, right? So this is what it means. So premium is what you are paying to the insurance company. जो पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं to get ourselves insured, right? That is called as insurance premium, right? Okay. So now we will go ahead and we will look at some numerical on insurance premium in the next. Hi, good afternoon, everyone. So today we are going to go ahead and talk about insurance. We already started talking about insurance in the previous chapter, previous lecture, but we will go ahead and we will continue our discussion around insurance. Now, see, let us go ahead and let us take an example. Here, we are going ahead and we are saying that there is going to be, so
whenever there is going to be a loss, whenever there will be a loss, right? This is just example beta. Whenever there will be a loss, then the person will go ahead and purchase an insurance. The person will go ahead and purchase an insurance. This insurance, for this insurance, you have to pay premium, है ना? अब ये जो प्रीमियम रहेगा, this will be paid whether loss occurs or not. माने अगर तो फायर होती है, suppose I am insuring my house against fire. So if there will be fire, then also I have to pay insurance. If there will be no fire, then also I have to pay insurance. So insurance has to be, premium. Then premium has to be paid whether or not loss occurs. Premium आपको हर situation में pay करना होता है. So write this important point that premium on insurance has to be paid whether or not the loss occurs. Premium has to be paid in both kind of situation. Loss होगा तो भी pay करना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी pay करना पड़ेगा, right? Now suppose an example of insurance contract is that person will pay $1 premium for covering every $100 amount of loss. तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि जब हमें 100 रुपए तक का लॉस कवर करना है, whenever we have to cover an amount equal to $100, I will pay a premium worth $1. I have to pay a premium worth $1. अब ध्यान से देखना, listen to me very carefully. It is very tricky. I am going back to this example बेटा. हम इस example पे चलते हैं एक बार के, right? In this example that we studied, there were two situations, right? 99% of the time, my money was intact and I had 35,000 intact with me. 1% of the time, I had a loss and I had only 25,000 left. सिर्फ 1% चांस है कि मुझे लॉस होता था. There is only 1% chance that the person had a loss, right? And when the person had a loss, then his amount was becoming 25,000. Is this clear? Now what we are going ahead and saying is that this person is buying this insurance contract. उसने ये contract खरीद लिया. So बेटा, how much loss is he incurring? कितना gap है? So the loss incurred will be 35,000 minus 25,000, which means 10,000. इतने का loss इसको हो रहा है. This individual is incurring a loss of 10,000 बेटा. अब देखो, ये loss उसको cover करना है. He wants to cover this loss कि even ये 1% of situation में मेरे को insurance company ये पैसा दे दे. The company should pay me this 10,000. I want to cover this loss. So now what this person is doing is he is buying insurance. तो बेटा जब उसको 100 रुपए कवर करने थे, when he had to cover $100, how much premium he was paying? He was paying premium of $1. Now he has to cover how much loss? $10,000. So to cover $10,000, but how much premium he will pay? नहीं आता, no problem. Do unitary multiplication. Always multiply this with this. Opposites multiply and divide by this. So 10,000 into 1 divided by 100. It means that beta he will pay a premium of
$100. He will pay a premium of $100. तो माने when he wants to cover $10,000, अगर उसको इतना पैसा कवर करना है, he will have to pay a premium of $100. ये बात क्लियर हो? Okay. Now let us go ahead and let us rewrite this situation. इसी situation को दोबारा लिख लेते हैं. So 99% of the time he had 35,000 and 1% of the time he had 25,000. But now he has purchased insurance and he has got a coverage of entire loss. माने उसने पूरे $10,000 को कवर कर लिया है. He has covered entire $10,000 in the insurance. समझे? Now, but 35,000 is when there was no loss. But क्या बोला मैंने आपको? What did I say? He has to pay premium in all situation. कंपनी बेवकूफ थोड़ी है, कंपनी प्रीमियम तो हमेशा लेगी. So you have to go ahead and pay the premium in all situation. So whether it is loss or no loss, दोनों ही situation में premium will be paid. But so here you are left up with 34,900. But यहां पर when there is a loss, बेटा, when there is a loss, so company will bear your loss, क्योंकि आप उसको हमेशा प्रीमियम देते आए हो. So company will pay you the amount of your coverage. जितना भी आपने कवरेज लिया होगा, whatever insurance coverage you would have taken, company will go ahead and pay you that money. So company will pay you 10,000. तो अब what will be the amount here, बेटा? यहाँ पे भी you will get 34,900. 34,900. So notice that by taking insurance, please write with me, after taking insurance, individual has the same wealth in all situations. Therefore, he has covered his risk. So now the individual is in the same position. Here also individual has 34,900 and here also individual has 34,900. So he has the same money in all situations. ये बात समझ में आई? ठीक है. Now what we can go ahead and we can do is we can go ahead and we can generalize this case. So please write down general case. Under general case, but let's say that the insured amount is $K. जैसे यहां पर insured amount was $10,000. माने whenever you will have loss, company will pay you 10,000. Now I am saying that insured amount is $K, right? And premium is some percentage of insured amount. जैसे this gamma can be any number बेटा. जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा insured amount 10,000 है और गामा 1% है, तो 1% of 10,000 कितना आ जाएगा बच्चे? $100. तो premium will be 100. Example is clear? So I am saying that premium is some amount, some percentage of the insured amount. Of the insured amount. ठीक है? Now, if I want to go ahead and I want to do the same case. So 99% of the time there is no loss and you have 35,000 intact. And 1% of the time you have loss and you have just 25,000 with you. आपको लॉस हो गया और आपके पास 25,000 ही बचे.
Now we don't know how much money we have insured here. जैसे here in this case we knew कि अच्छा हमने पूरा मनी इंश्योर करवा लिया, जितना लॉस था we have done full insurance, we have covered fully, जितना भी लॉस हो रहा था, whatever was the loss, we were taking insurance exactly equal to the loss. Here we are not doing that. इधर हम बोल रहे हैं that we are taking insurance equal to k dollars. ठीक है. So beta, in this case, tell me something. What will be the amount left when there is no loss? 35,000. You will pay premium minus lambda k or gamma k. This is called gamma. And beta, in case of loss, 25,000. प्रीमियम तो भी देना पड़ेगा, बट कंपनी से कुछ अमाउंट वापस आ जाएगा जितना भी आपने कवर किया होगा. यू विल गेट बैक सम अमाउंट ऑफ अमाउंट बैक फ्रॉम द कंपनी. इज दिस क्लियर? नाउ हाउ मच अमाउंट यू विल इंश्योर? इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंज्यूमर, कि क्या वो कंज्यूमर ज्यादा रिस्क लेना चाहता है या कम रिस्क लेना चाहता है. So what kind of amount will he cover the entire loss? क्या वो अपने आप को fully cover करेगा? Or will he only cover some loss? It will depend on the preference of the consumer. It will depend on the type of the consumer, right? Whether the consumer is very scared of risk, उसको बहुत डर लगता है पैसा खोने से, या whether the consumer is loving risk, कि आने दो ना, 1% चांस ही तो है, or whether the consumer is indifferent between taking risk or not taking risk. So basically what happens is that how much money the individual will insure, ये K का value कितना आएगा, it will depend on the preference or the type of the consumer. वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर किस तरीके का है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now these different outcomes that we are getting, जैसे एक यहां पे आ गया अमाउंट, एक यहां पे आ गया अमाउंट, these different outcomes that we are getting, these are called as different state of nature. So please write down different outcomes obtained are called different state of nature. Different state of nature. There is another word that I want to define today. इसे बोल देते हैं हम contingent. Contingent. Contingent means dependent on something which is not certain. जहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो वो होता है कंटिंजेंट. सो समथिंग which is not certain is called contingent. Is called contingent. And but from here only we get another term, contingent consumption plan. It means that अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे कैसे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, right? We don't have certainty here. We have uncertainty. That 99% this will happen, 1% this will happen. So under different state of nature, how we will be going ahead and we will be consuming, that is called as contingent consumption plan. So please write down consumption plan under different state of nature is called
contingent consumption plan. It is called contingent consumption plan. ठीक है. अब जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम इस कंटिंजेंसी को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, हम इस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं. सो व्हेन वी बाय इंश्योरेंस we basically try to lower the amount of contingency, to lower the amount of uncertainty. So please write down. By purchasing insurance, consumer aims to lower the amount of uncertainty. ठीक है. He wants to lower the amount of uncertainty that exists. Is this clear, beta? ठीक है. Now, one last thing that I want to highlight here. So, ये जो हम contingent consumption plan की बात कर रहे हैं, all of this can be analyzed just like a usual way, like we have gone ahead and we have analyzed the budget line and indifference curve in the general concept. Similar, in the contingent consumption plan also, we can go ahead and analyze budget line and the indifference curve concept. तो जो भी चीज हमने अभी तक सीखी है उसी चीजों को हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं. बस यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी हम बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे उसमें हम कंटिंजेंसी की बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी देयर. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. Hi, good afternoon, everyone. Beta, today we are going to learn how to draw budget line for contingent consumption plan. अभी के लिए जो हम क्वेश्चन लेंगे it would be the same that we had been doing in the last class. So this was our equations for no loss case. Our expected payoff after paying the insurance premium, बेटा वो आया था 35,000 minus gamma k, and in case of loss हमारा जो अमाउंट आया था that was 25,000 minus gamma k plus k, right? Minus gamma k plus k. Let us try to go ahead and let us try to plot this thing. In order to plot this thing, देखो क्या कैसे करेंगे हम, इसका बजट लाइन कैसे बनाएंगे. We will go ahead and we will take CB here. ठीक है बेटा. CB means what? CB means consumption under bad outcome. Consumption under bad outcome. ठीक है. Consumption under bad outcome. और हम यहां पे लेंगे CG. CG means what? Consumption under good outcome. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ मुझे. When you are starting, जब आपने इंश्योरेंस नहीं खरीदा, when you are just starting, when you enter the market. Enter the market means जब आप एकदम शुरू ही करते हो, you haven't purchased any insurance. At that time, जिस अमाउंट के साथ हम एंटर करते हैं मार्केट को, that is called as our endowment bundle. उसको क्या बोला जाता है? It is called as our endowment bundle. So endowment, please write the word endowment. Bundle is the bundle a consumer
enters the market with. माने इस केस में जब हमने एंटर किया मार्केट, जब हमने कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदी थी, सो हमारा गुड स्टेट में कितना पैसा था, हाउ मच मनी वी हैड अंडर गुड स्टेट बेटा? अंडर गुड स्टेट विदाउट इंश्योरेंस वी हैड 25,000 एंड अंडर बैड स्टेट विदाउट इंश्योरेंस वी हैड 25,000. तो गुड स्टेट में 35,000 एंड बैड स्टेट में 25,000 है कि नहीं है? दिस बंडल माने 25,000 कॉमा 35,000, this bundle is called as our endowment bundle. इस बंडल को हम endowment bundle बोलते हैं. So if I draw a budget line, अभी हमें नहीं पता what points we are talking about, but if I draw a budget line, तो इस budget line पे ये budget line एक endowment bundle से जरूर पास करेगी, because this is what you have entered the market with. This is what you have entered the market with. तो जिस बंडल के साथ हमने मार्केट को एंटर किया है, वो बंडल हमेशा बजट लाइन पर होगा ही होगा. The endowment bundle will always be on the budget line because that is the bundle which you enter the market with, जिसके साथ आप इस मार्केट में घुसे हो, right? So therefore this bundle is what beta? 25,000 and 35,000. Okay. Now beta with insurance. So good state में क्या हो गया था? Once you had purchased insurance, आपका consumption इतना हो गया था 35,000 minus gamma k. You had to pay some premium. आपको कुछ premium pay करना था. So your consumption was after paying the premium, right? So it was 35,000 माइनस गामा के, माने 35,000 में से समथिंग वाज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, तो 35,000 से कुछ अमाउंट कम हो रहा था. 35,000 माइनस गामा के. और बैड स्टेट में क्या हो रहा था? हाँ, अंडर बैड स्टेट आई वॉज गोइंग अहेड एंड आई वॉज पेइंग प्रीमियम, बट आई वॉज ऑल्सो गेटिंग सम मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. मुझे के अमाउंट कंपनी से वापस मिल रहा था एंड आई वाज पेइंग अ प्रीमियम ऑफ गामा के, राइट? सो अंडर बैड स्टेट बेटा, बैड स्टेट में मेरा जो फाइनल कंजम्पशन था इट वाज मोर देन 25,000. देखो, इट वाज मोर देन 25,000. ये देखो, दिस इज 25,000. मैं के कॉमन लेती हूँ, 1 माइनस गामा, एंड गामा हैज टू बी सम परसेंटेज. गामा 0 और 1 के बीच में है ना? जैसे प्रीमियम क्या था? 10%, 20%, 30%. प्रीमियम तो कुछ परसेंटेज है ना. तो दिस गामा इज अ डेसिमल. 10% हुआ तो 0.10, 20% हुआ तो 0.20. सो दिस गामा इज सम परसेंटेज. तो समझो इस बात को, दैट बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, your consumption in bad state exceeded 25,000. आपका जो बैड स्टेट का कंजम्पशन था वो 25,000 को एक्सीड कर रहा है. इट इज 25,000 प्लस समथिंग, 25,000 से ऊपर जा रहा है. सो दिस इज दिस अमाउंट बेटा, यहां पे मैंने मार्क कर दिया. 25,000 से एक्सीड कर रहा है. सो 25,000 प्लस के 1 माइनस गामा. अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन की. बेटा, हाउ हैव आई एक्सप्लेन्ड यू द स्लोप? क्या होता है स्लोप ऑफ एनीथिंग? द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, या किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर बाय बेस. इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस. So if I come to this budget line,
what is going to be my perpendicular beta? This amount, ये वाला, है ना? So perpendicular is 35,000 minus 35,000 minus this is equal to गामा के। ये जो गैप है इन दोनों का, द गैप, दिस इज गामा के। ठीक है बेटा, व्हाट विल बी द बेस? बेस इज दिस, ये अमाउंट। सो व्हाट विल बी बेस बेटा? 25,000 प्लस के 1 माइनस गामा माइनस 25,000, ये हो जाएगा के 1 माइनस गामा। अच्छा, यहां पे आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक बेटा। हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वी टेक whenever we subtract, so if you are starting by taking 1 point, जैसे अगर हमने यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 25,000 प्लस के 1 माइनस गामा में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, है ना? तो हमने पहले ये वाला पॉइंट लिया, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, माने पहले हमने पॉइंट ए लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं दोनों जगह पे, और फिर पॉइंट बी लिया। देख रहे हो, फर्स्ट आई टुक दिस पॉइंट and then I subtracted this point. So I have to follow the same thing for perpendicular also. So in perpendicular, first I will take this point beta. That means I will do 35,000 minus gamma k minus 35,000. This will give me minus gamma k. ये बात समझे? Is this making sense? So here, if I am doing this point minus this point, टू फाइंड द बेस, अगर मैंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पहले लिया है, इफ आई हैव टेकन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए फर्स्ट माइनस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, फिर मैंने बी का कोऑर्डिनेट लिया और इसका डिस्टेंस निकाला, सो टू फाइंड परपेंडिकुलर ऑल्सो आई विल टेक द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए फर्स्ट माइनस कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी, है ना? मतलब कोऑर्डिनेट्स शुड मैच, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर हमने टू फाइंड द बेस, if I am doing this point minus this point, तो इसके corresponding perpendicular में ये point है, so to find the length of perpendicular you will do this point minus this point. Is this clear? So यहाँ से what will be our slope beta? Slope will be perpendicular distance by base distance, k and k will cancel, so slope will be minus gamma upon 1 minus gamma. ठीक है, सो व्हाट विल बी द स्लोप? माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड बजट लाइन, है ना? जस्ट लाइक यूजुअल, जैसे हम यूजुअल बजट लाइन करते हैं तो हमारा स्लोप माइनस पी एक्स बाय पी वाई आता है ना। सो दिस नेगेटिव रिप्रेजेंट्स की डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन है, सो दिस नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन, एंड जो हमारा स्लोप है दैट इज एक्चुअली द स्लोप इज गामा अपॉन 1 minus gamma. That is the slope of the budget line. ठीक है? Okay. Now what you can go ahead and do is बेटा, एक बारी हमें ये पता चल गया, तो अब हमें we need to go ahead and we need to ask कि how to find equilibrium. How to find equilibrium. So we have already found out the budget line. ठीक है? अच्छा, now we know that under usual circumstances, whenever we were finding the equilibrium, जब भी हमें equilibrium निकालना होता था, so equilibrium always used to be the tangency condition. Wherever there was tangency of indifference curve to budget line, that was our equilibrium condition. वहां से हमारा equilibrium निकलता था, isn't it? बेटा, in this case the slope of budget line हमने निकाल के देख लिया है। Slope of budget line is minus gamma upon 1 minus gamma.
है ना। और हम हमेशा whenever we equate, हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं स्लोप का. सो इफ आई वुड हैव टेकन इट इन एब्सोल्यूट वैल्यू, माने हमारा स्लोप वुड हैव बीन गामा अपॉन 1 माइनस गामा. ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट एमआरएस, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको इक्वेशन दिया हुआ है इंडिफरेंस कर्व का. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि मेरा यूटिलिटी फंक्शन बिटवीन गुड स्टेट एंड बैड स्टेट इज गुड स्टेट इनटू बैड स्टेट, यही मेरा यूटिलिटी फंक्शन. ठीक है. और अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रीमियम जो है वो 10% है, गामा इज 10%, है ना. तो व्हाट विल यू डू बेटा, वेरी सिंपल मैम, हम क्या करेंगे ना, वी विल गो अहेड एंड वी विल फाइंड एमआरएस. एमआरएस विल बी mu x by mu y. इस केस में ऑन द x axis we have bad state, on the y axis we have good state. So if I will differentiate this with respect to b, cb, तो मुझे मिल जाएगा cg. cb की तरफ से करेंगे तो this is a constant और इसका differentiation will be 1. And if I will differentiate with respect to cg beta, if I will differentiate with respect to cg, तो इसका differentiation हो जाएगा 1 and this is a constant, तो it will be cb, है ना. तो mrs in this case, mrs will come out as cg by cb. तो mrs will be cg by cb equal to the slope of budget line. budget line का slope क्या है, gamma upon 1 minus gamma. So gamma upon 1 minus gamma. That means cg by cb will be 0.10 divided by 0.90. तो cg by cb will be 1 by 9. तो ये हमारा टेंजेंसी कंडीशन आ गया. दिस इज अवर टेंजेंसी कंडीशन. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट अवर इक्विलिब्रियम इज, अगर हमें ये जानना है कि इक्विलिब्रियम क्या है, if I want to understand the equilibrium condition, I should be finding the tangency between indifference curve and budget line. और tangency किस पे डिपेंड करेगा कि what equation is given to me for the indifference curve. indifference curve का क्या equation मुझे दिया हुआ है उस पे डिपेंड करेगा the tangency condition. Is this clear? Okay बेटा, thank you. Hi, good evening, everyone. Beta, in today's class, we are going to take one example, and this is going to be about the catastrophe bonds. Okay. Now, when we talk about insurance, किसी भी transaction में there are two sides to a transaction. One side is the person who is buying, and the other side is the person who is selling. In insurance market also, we have two sides. एक तो हो गया the person who is buying insurance, and the second is the person who is selling insurance. है ना? Today we want to focus in this lecture on the part of the person who is selling insurance. The person who is selling insurance. अब ये selling side insurance का, this selling side is divided in multiple parts. The first part is called as the retail component. It's called as the retail component. बेटा retail component माने जब कोई कंपनी डायरेक्टली एंड यूजर को सेल करे, मतलब आई वॉन्ट टू बाई इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ and I am purchasing it from a company. When you are directly dealing with end users, directly dealing
with end users. When you are directly dealing with end users, so that is called as retail component. The other component that we have, but that is called as wholesale component. उसको बोल देते हैं wholesale component. Wholesale component is one where one party is selling to another party. ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेचा, but this party is not the end user. This party can sell to third party, right? So wholesale component is where insurer, मतलब इसने पहले अपने आप को इंश्योर करवाया, is selling the risk to other party और उसने फिर आगे किसी और को sell off किया, right? This wholesale component is called as reinsurance market. It's called as reinsurance market. So it is not always the case that you are selling to end user. अगर आप end user को नहीं sell कर रहे हो, then you are part of reinsurance market. ठीक है, reinsurance market में, within the reinsurance market, it is dependent on large investors. The reinsurance market is dependent on large investors, like, for example, pension funds. Right? Which provide financial backing for risk. माने वो क्या कर रहे हैं, जैसे for example, इस केस में एक reinsurance market के केस में क्या होगा, there will be a financial intermediate, like reinsurance company या investment bank. Okay. And this, so it will be the case that suppose there is an insurance company, यहाँ पे एक insurance company है, इस कंपनी ने लोगों को नहीं इंश्योरेंस बेची, बट एक बहुत बड़ी फर्म को, जिसे हम बोल रहे हैं री इंश्योरेंस कंपनी, एक बहुत बड़ी फर्म को उसने क्या किया, उसने बेच दिया कि ठीक है, ये लो, ये छोटे छोटे इंश्योरेंस के वो हैं, आप अलग अलग लोगों को बेच सकते हो, हमने आपके साथ ओवरऑल इतने बड़े अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन कर लिया कि आपने हमसे खरीद ली. मतलब नाउ दिस इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट हैविंग द हेडेक टू सेल टू द फाइनल कंज्यूमर. इट हैज गॉट द रीइंबर्समेंट, उसको पैसा यहां से ही मिल गया, ही इट हैज गॉट मनी फ्रॉम द री इंश्योरेंस कंपनी. Now this reinsurance company is involved with the final consumers and selling to them. ये इसका काम है कि वो final consumers को बेचे, right? So this is how this is working, right? Now within this, तो बेसिकली ये जो रीइंश्योरेंस कंपनी, इट्स अ बिग इन्वेस्टर, इसने एक साथ इस इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लिया, जितने में उसने खरीदा वो उससे ज्यादा प्रीमियम पे आगे सेल करेगा, एंड इट विल मेक प्रॉफिट इन दिस सिचुएशन. नाउ reinsurance companies have brought a new product. They are experimenting with the product, and उस प्रोडक्ट को कहा जाता है catastrophe bonds or catastrophic bonds. Different people call it by different pronunciation. ठीक है, और ये जो कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स हैं, these are more flexible ways, better ways, more flexible way to provide reinsurance. ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब देखो,
So for example, there is a company XYZ, ठीक है, ये कंपनी को अपना इंश्योरेंस सेल करना है, राइट? What this company will go ahead and do is it will sell this insurance to a reinsurance company. Now, in this reinsurance company, there will be large investors, बड़े बड़े बहुत पैसे वाले investors होंगे. There will be large investors or large institutions, right? Now, suppose let's say that I am selling insurance, और क्योंकि इंश्योरेंस इज लिंक्ड टू नेचुरल डिजास्टर, माने मुझे कब किसी को कब जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की? अगर कभी उसका कुछ घर में इशू हो गया, गाड़ी में इशू हो गया, ड्यू टू सम, इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक आल्सो, हरिकेन आल्सो, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दीज लार्ज इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बीन टाइड टू नेचुरल डिजास्टर्स. इनको हमने नेचुरल डिजास्टर से लिंक किया हुआ है. They are linked to natural disasters, right? Like earthquake, like hurricanes, etc. ठीक है? तो अब क्या होगा? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ व्हाट विल हैपन? सपोज हमने एक बॉन्ड इशू किया जिसको हमने बोला कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड. वी इशू दिस बॉन्ड और हमने बोला कि ये जो बॉन्ड है ना, ये एक इवेंट से लिंक्ड है. दिस बॉन्ड इज लिंक्ड टू एन इवेंट, ठीक है? और ये इवेंट को हमने बना दिया कि दिस इज एन अर्थक्वेक इवेंट. क्या इवेंट है? अर्थक्वेक, ठीक है? एंड नाउ वी आर सेइंग दैट दिस बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद एन इंश्योरेंस क्लेम. एंड इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है $500 million, ठीक है? इफ देयर इज नो अर्थक्वेक, अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, राइट, इफ देयर इज नो अर्थक्वेक, देन इन दैट केस जिस भी इन्वेस्टर ने मुझसे ये बॉन्ड खरीदा होगा उसको मैं बहुत हेवी इंटरेस्ट दूंगी, क्योंकि उसने ये रिस्क लिया ये वाला बॉन्ड खरीदने का. सो इंटरेस्ट विल बी पेड टू दैट इन्वेस्टर. हेवी इंटरेस्ट, हाँ, बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको अपने पैसों पर. बट इफ देयर इज अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो हम देखेंगे कि कितने लोगों को असली में नुकसान हो. ये तो टोटल वैल्यू है कि टोटल इंश्योरेंस अमाउंट इतना हमने रखा था, इतने लोगों का हमने टोटल इंश्योरेंस किया था, दिस इज द अमाउंट वी इंश्योर्ड. बट जरूरी नहीं है ना दैट एवरीवन विल एक्चुअली हैव इश्यूज, राइट? सो वी विल सी दैट हाउ मेनी क्लेम्स केम, ठीक है? एंड इफ जो लोगों ने जो क्लेम किया है वो ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, इससे भी ज्यादा अमाउंट से, 500 से, राइट, देन जिस इन्वेस्टर ने खरीदा होगा, whoever investor has purchased it, they will have to sacrifice, let go of their principal amount also and their interest also. समझे? माने इट इज अ रिस्की सिचुएशन कि मैंने एक ऐसा बॉन्ड खरीदा है, आई हैव परचेज्ड सच अ बॉन्ड विच इज एसोसिएटेड टू एन इवेंट. अगर वो इवेंट नहीं हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, तो मेरे को पैसा मिलेगा. क्योंकि जब आपने लोगों को इंश्योरेंस की, जब लोगों की इंश्योरेंस करी आपने, तो वहां पे आपने लोगों से प्रीमियम तो इकट्ठा किया ही है. उस प्रीमियम से आपसे जो भी आगे बॉन्ड खरीद रहा है, अर्थक्वेक से रिलेटेड बॉन्ड, आप उसको वो रिटर्न दे सकते हो, आप उसको इंटरेस्ट पे कर सकते हो, है ना? बट अगर अगर अर्थक्वेक आता है तो जिसने आपसे बॉन्ड खरीदा है वो लॉस में हो जाएगा. सो इट इज लाइक अ रिस्की सिचुएशन. ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स रिटर्न बहुत हाई देते हैं,
है ना, क्योंकि एक तरीके से इसमें जितनी बारी भी किसी के साथ चोरी नहीं हुई, अर्थक्वेक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, उतनी बारी जिसने ये बॉन्ड खरीदा उसको रिटर्न आएगा। बट ये रिस्की भी है कि अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर कोई हरिकेन हो गया, इफ समथिंग हैपेंस, then you are in a situation which is where you have to let go of your principal and you have to let go of your interest rate. So catastrophe bonds, they are having some very interesting features. The first interesting feature is that the first and very important interesting feature is that they help spread risk evenly, right? And can be subdivided infinitely, where each investor has small part of the risk. तो एक बार थोड़ा और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो, दीज आर द पीपल बेटा जिनको इंश्योरेंस चाहिए था अर्थक्वेक के अगेंस्ट। These people, they want insurance against earthquake. Want insurance. Okay. The total money that they have got insured कि अगर earthquake आता है तो कितना पैसा उन्हें लौटाना पड़ेगा, that is $500. They have purchased insurance from some company. In return, the company has gone ahead and has spread this risk. ये $500 जो हैं, जो कंपनी को इनको देने पड़ सकते हैं, कंपनी ने क्या किया कि इतने अमाउंट के बॉन्ड्स इशू कर दिए मार्केट में। एंड दीज बॉन्ड्स कैन बी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये बॉन्ड बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू के हो सकते हैं। माने आई कैन इशू 500 बॉन्ड्स ऑफ $1 ईच। एक डॉलर के 500 बॉन्ड्स हमने इशू कर दिए। सो आई कैन सब डिवाइड इट, इस वैल्यू को जितना मेरा मन करे मैं उतना सब डिवाइड कर सकती हूँ, उतना छोटे छोटे पार्ट्स में आई कैन जस्ट मेक इट। नाउ देयर इज दिस पर्सन, ही गोज अहेड एंड ही बाइज वन बॉन्ड। उसने एक बॉन्ड खरीदा। सपोज इन दिस ईयर 1 देयर इज नो अर्थक्वेक। तो ये कंपनी को इनको कुछ नहीं देना, द कंपनी हैज टू नॉट पे एनीथिंग टू देम, बट द कंपनी विल गेट प्रीमियम इन रिटर्न। क्योंकि कंपनी ने आगे ये स्प्रेड किया था रिस्क को इन लोगों के अंडर, कंपनी ने ये रिस्क नहीं लिया लोगों को इंश्योरेंस बेच के, कंपनी हैज स्प्रेड द रिस्क, सो कंपनी हैज टू पे रिटर्न। तो ये जो दिस पर्सन जिसका $1 का बॉन्ड था, he will get back $1 and he will get suppose $0.3 as interest, so he will get back $1.03, वो उसको वापस मिल जाए। In this way, this company will act as an intermediary. Intermediary between what? Between people who don't want to take risk and between people who want to take risk. और इसके बीच में कुछ प्रॉफिट कंपनी विल कीप फॉर इटसेल्फ। ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। नाउ सपोज ईयर 2 देयर इज अर्थक्वेक। नाउ द कंपनी हैज टू पे दीज पीपल मनी। ठीक है, प्रीमियम तो इन लोगों से हर साल आ रहा है, बट रिटर्न में कुछ पैसा जा भी रहा है। Suppose the money that company has to pay is more than what the company has. तो कंपनी इनको ये वापस नहीं दे पाएगी. It will not be able to pay them back. So year 2 में this person who has purchased $1 of bond, he will get no return. उसका ये $1 भी he will lose. But he is not losing $500. उसको छोटा लॉस ही हो रहा है. The risk that anyone is taking is just small. Right? Is this clear? And whatever money the company is insuring, it is already backed up. उतना पैसा वो इकट्ठा कर चुकी है. So the company will never default. कंपनी हमेशा जब भी आपको कोई नुकसान होगा यहाँ पे, इन लोगों को हमेशा पे करेगी. कंपनी will never default. So there is no default risk from the side of company because that money has already been collected by selling bonds.
No default risk from the side of companies. From an economist point of view, there is something which is called as cat bonds. एक चीज है जिसे बोलते हैं cat bonds. Cat bonds are a form of state contingent security. State contingent security. ठीक है. State contingent security word read out करो बेटा. State means किस state की बात हो रही है? Earthquake, no earthquake, what form of state? है ना? So event. State means event. Contingent security. It means linked to a particular event. So those securities which pay only if a particular event occurs. जैसे अगर earthquake नहीं हुआ तो इनको पैसा वापस मिला, earthquake हुआ तो इनको पैसा नहीं वापस मिला. So those securities means what? Bonds means what? कुछ भी रिटर्न है ना. सो इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड यू विल नो एनीथिंग दैट इज फेचिंग यू अ रिटर्न, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को पे बैक करना होता है आपको. सो दीज सिक्योरिटीज दे आर कॉल्ड कैट बॉन्ड्स एंड दीज आर स्टेट कंटिंजेंट सिक्योरिटी. माने दीज सिक्योरिटीज दे पे ऑफ if and only if a particular event occurs or does not occur. ठीक है. एक event linked return है. And this concept was first launched by Kenneth J. Arrow. It was published in 1952 in his paper. And he thought when he published it, he thought कि ये सिर्फ एक theoretical concept है. He considered it as a theoretical concept. Right? But later, people actually started using this in the Wall Street and in the exchange market, in the derivative market. So it actually became a practical concept. है ना. असली में हर जगह पे ये यूज होना शुरू हो गया. Right? So this is all about the state contingent securities. Okay, beta. Thank you. हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. बेटा आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ यूटिलिटी फंक्शंस कैन बी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटीज. In other words, we are going to talk about something which is called as an expected utility function, right? So we know, अभी तक हमें एक बात समझ में आ गई है that whenever we talk about uncertainty, uncertainty happens because there are events which occur with some probability. There are events which occur with some probability. ठीक है. But these events, they are mutually exhaustive events. Mutually exhaustive events plus mutually exclusive events. What are mutually exhaustive events? Exhaustive माने जो पूरा sample space खत्म करते हैं, मतलब कुछ बचे ना.
हाँ, जैसे if I toss a coin, then either you will get head or tail. तो इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा चीज तो नहीं है. There is no third thing that can happen. It will be either head or tail. So they are exhausting the sample space. They are exhausting the sample space. So we can say that they exhaust sample space. मतलब सब कुछ खत्म करते हैं. Head और tail मिलाकर there is nothing left. That is why they are called mutually exhaustive events. Then you have mutually exclusive events. Exclusive means nothing in common. Like if it is head, then it cannot be tail. There is nothing common. Like if it will rain and not rain, these are two exclusive events. इनमें कुछ भी common नहीं है. या तो बारिश होगी या नहीं होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश है भी और नहीं, right? So they don't have anything in common, right? Then they are exclusive events. Only one of them can happen. इनमें से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है. Both cannot happen, right? Now let's say that there are two states beta defined. States means like rain and no rain are two separate states, two separate events. So we are saying that there are two states defined. एक state हो गया जब बारिश हो रही है और एक state हो गया जब बारिश नहीं हो रही है. दो अलग चीजें हैं. हाँ? So there are two states defined, state 1 and state 2. And state 1 occurs with probability pi1 and state 2 occurs with probability pi2. माने if I do it in terms of rain, no rain, तो state 1 supposes rain and state 2 is no rain. हाँ? और rain का probability suppose है 1/4 and no rain का probability है 3/4. So each state has a probability कि कितना % chance है. What's the chance that they will happen? And sum of probability is always 1 beta. So pi1 plus pi2 is simply 1. हाँ, या एक है या दूसरा है और दोनों मिलाकर sum of probabilities has to be 1. So sum of the probabilities is 1. In this case, 1/4 plus 3/4 will be 1, right? But a consumption in state 1 is C1 and consumption in state 2 is C2. ये consumption है कि अच्छा अगर बारिश हुई तो शायद मुझे थोड़ा नुकसान हो जाएगा. उस दिन मेरी शॉप पे कम लोग आएंगे तो मैं कम पैसा अर्न कर पाऊंगी तो कम कंज्यूम करूंगी. और अगर बारिश नहीं हुई, if there is no rain, then I will be in a benefit. More people will come to my shop. I will have more consumption. So consumption can be related to states बेटा कि क्या event है. हाँ, what event take place? Correspondingly, there is some consumption. And different states can have different consumption. मतलब जो event होगा, suppose it can be lottery also. हाँ, तो lottery में what can be the two states बेटा? State 1 can be that you win the lottery and state 2 can be that you lose the lottery. Now, if you win the lottery, आपके पास अलग पैसा बचेगा and if you lose the lottery, you will have different money. So consumption can be different in different states. अलग-अलग situations में under different situation, consumption can be different. Now we are saying that utility can be represented. Utility is represented in something which is known as expected utility terms. Utility is represented in expected utility terms. Expected utility का क्या मतलब है? What does it mean to have expected utility? Expected utility means utility is given weightage. Utility is given weightage in form of probabilities. With the help of probabilities. Example number 1. But
you remember जब हमने perfect substitute goods किया था, when we did perfect substitute goods, so our utility function was AC1 plus BC2, माने हमने या AX plus BY लिखा था हमने. So we had given weightage to two goods, है ना, कि किस रेट से हम एक गुड और दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करेंगे. We had given weightage to the two goods and that weightage was A and B respectively. And this was called as a perfect substitute function, isn't it? Now, we are writing this perfect substitute function for case of uncertainty. So we are saying that your utility function should be a function of consumption in the two period and uska corresponding probabilities kya hai, right? And this will be pi1 probability of event 1 occurring, और अगर वो इवेंट होता है तो उस पीरियड में कितना कंजम्पशन होगा C1 प्लस pi2 probability of event 2 occurring, और अगर वो इवेंट होता है तो कितना कंजम्पशन होगा C2. When we write utility function linearly like this, लीनियर है ना, सिर्फ एक प्लस का साइन है, किसी को कोई भी पावर नहीं है, देयर इज नो पावर, यहाँ पे 2 4 8 कोई पावर नहीं है, राइट? इट्स अ लीनियर फंक्शन, पावर इज 1. So when we write utility function linearly, this is a perfect substitute expected utility function. क्यों expected? Because there is presence of the probabilities, right? So here we are saying that this is, जैसे suppose this is probability of rain into consumption when rain plus probability of no rain into consumption when no rain. ठीक है. Similarly बेटा, example number 2. Suppose your utility function is this. C1 to the power pi1, C2 to the power pi2. तो बेटा क्या यूटिलिटी फंक्शन लग रहा है ये? हमने ऐसा यूटिलिटी फंक्शन देखा है, एंड दिस यूटिलिटी फंक्शन इज Cobb-Douglas utility function. And since weightage is by probabilities, it is expected utility function. है? अच्छा, one more thing here. बेटा you remember कि इसी का we can do a monotonic transformation. कैसे? If my utility function is C1 pi1 into C2 pi2, then I can take log on both sides. We can take log on both sides. We have done like this. So log U is equal to log C1 pi1, C2 pi2. But a log U, यहाँ रूल लगेगा, log m to the power n is n log m, and log m into n is log m plus log n. So if we apply these two rules together, what will we get? Pi1 log C1 plus pi2 log C2. Pi1 log C1 plus pi2 log C2. Power comes down and ये multiplication है, so this will convert into addition, right? So better this form of utility function also represents the same, ये और ये same ही है, तो ये क्या हो गया? This is probability of event 1 into log of consumption during event 1, probability of event 2 into
log of consumption during event 2. During event 2. Is this clear, beta? Okay. So this is how we can write the utility function in different cases. Okay. Acha, now one more thing I have here. Question for you. Homework question. Try to think this. So, which of the following utility functions have expected utility property? Okay. A. U of C1, C2, pi 1, pi 2 is A, pi 1, C1 plus pi 2, C2. B. U of C1, C2, pi 1, pi 2 is pi 1, C1 plus pi 2, C2 square. C. U of C1, C2, pi 1, pi 2 is pi 1 ln C1 plus pi 2 ln C2 plus 70. Try to do this question yourself, then we will discuss it in the next class. Okay, thank you. Hi, good afternoon, everyone. But today we are going to learn more about expected utility function, and then I will be taking this question which I had given as a homework question, right? So we will take this question in some time. Let's learn more about expected utility function. Expected utility function. Okay. Now, when we talk about expected utility function, one thing that we learned is that in case of expected utility function, we always have utility which is probabilistic, जहां पे probability का कोई role है, right? We have utility which is probabilistic, right? One particular form of expected utility function जो हमने देखा था last class में, it was this. U of consumption in 2 period. It's also a function of probability attached to the 2 state. इसको हमने ऐसे लिखा था. Probability in period 1 into utility from period 1. Probability in period 2 into utility from period 2. अब देखो यहाँ पे. When it was a perfect substitute case, if we consider utility function to be a perfect substitute case, so it will become pi 1. Utility from consumption in period C1 is just C1, क्योंकि substitute तरीके से देख रहे थे, plus pi 2, utility from consumption in period 2. यहाँ पर when we have it like this, beta, so our utility function that we had written, it was pi 1 log C1 plus pi 2 log C2. ऐसे लिखा था utility function. So it can be pi 1 utility from consumption in period 1 plus pi 2 utility from consumption in period 2. तो जो general form हो गया expected utility function का, the general form of expected utility function can be like this. Pi 1 utility from consumption in period 1. This utility function can be any utility function. Utility function can take different forms.
यूटिलिटी फंक्शन, ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ये अलग अलग फॉर्म ले सकता है. सो दिस यूटिलिटी फंक्शन इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल बेटा आई कैन से दैट योर यूटिलिटी फंक्शन is just C, consumption in that period. Utility function is just C. तो utility from C1 consumption हो जाएगा C1, utility from C2 consumption हो जाएगा C2, and expected utility function will become pi1 C1 plus pi2 C2. pi1 C1 plus pi2 C2, where pi1 is probability of that event 1 into utility from consumption in period 1. Pi2 is probability of period 2 into utility from consumption in period. Now if this same utility function is LNC, suppose अब utility function आपको दिया हुआ है, you are given that the utility function is LNC. So what is your expected utility beta? Pi1 utility in period 1 plus pi2 utility in period, है ना? तो period 1 का utility क्या होगा? If C will be replaced with C1, so this will be pi1 into ln C1 plus pi2 into ln C2. This will be your expected utility. So this expected utility can take different forms. इसका अलग अलग तरीका हो सकता है. It can take different forms depending on what the base utility function is. कि ये background में utility function क्या है. But this is the general form. ये एक general form है expected utility function का. ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है क्योंकि इसमें हमने एक यूटिलिटी का पर्टिकुलर फॉर्म लिया है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्म. So this is a general form of expected utility function and this is a particular form of expected utility function. This expected utility function, but this is also the expected utility function this is also called as von Neumann Morgenstern utility function. Von Neumann Morgenstern utility function क्योंकि these people had developed this utility function. सबसे पहले इन्होंने ही इस utility function के बारे में बात किया था. Their history is very intriguing. अगर आप कभी जानना चाहो, if you ever want to read about von Neumann Morgenstern, you will realize that it is a very interesting way in which they derived this utility function. They were not even economist. वो इको के बैकग्राउंड से भी नहीं थे जब उन्होंने ये expected utility function derive किया, right? But you just have to remember that the expected utility function is also called as VNM utility function. VNM utility function, right? Now, just like we have done for the usual utility function, we can go ahead and we can talk about positive affine transformation. We can talk about positive affine transformation. पॉजिटिव अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि हम यूटिलिटी फंक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं एंड द न्यू यूटिलिटी फंक्शन विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द ओल्ड यूटिलिटी फंक्शन. माने सपोज आई हैव डिराइव्ड दिस यूटिलिटी फंक्शन. दिस इज माय एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को कभी कभी ई ऑफ यू भी लिखते हैं. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन. Now this expected utility function, if I multiply it with some number or I add some number to it, तो हमें जो नया utility function मिलेगा,
it will have the same properties as original expected utility function. It will have the same properties as original expected utility function. This thing, when you go ahead and you do it like this, जब आप एक transformation करते हो, how can we transform? What is positive affine transformation? Positive affine transformation is when you add something or multiply something or do both. दोनों भी कर सकते हो. A should be positive. You're multiplying with a positive number. Then this is called as पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, पॉजिटिव एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आप कर रहे हो तब तक आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्रॉपर्टीज विल रिमेन अनचेंज्ड. इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर? ओके. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन वी गो अहेड and can we take the question which I had given you the last time? ठीक है, this is a question from variant back questions, back exercise. Let us try to read this question. तो क्या कह रहे हैं? Which of the following utility function have expected utility function properties? Look at the first one बेटा. ये तो हमारा एक general expected utility function है, isn't it? Because this is nothing but probability into utility from consumption in period 1. In this case, it must be the case कि हमारा जो utility function रहा होगा वो सीधा C रहा होगा. So utility in period 1 would have been C1. Utility in period 2 would have been C2. So our expected utility function would have been pi1 C1 plus pi2 C2. Probability into utility, probability into utility. Clear? अच्छा. Now if I multiply it with a number, then also it is okay. It is just positive affine transformation. किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके यूटिलिटी फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but there should be a condition that I can only multiply it with a positive number. There is a condition that I can only multiply it with a positive number. So I need that this a should be greater than 0. ये a negative नहीं हो सकता है. This a should be greater than 0. So answer will be yes. This is expected utility function only when a is greater than 0. Only when a is greater than 0. Clear? ठीक है बेटा. Come to the second question now. अब देखो, here there is a problem. Here there is a problem. What is the problem? That my utility function is not the same. ये देखो, यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 square है. So what is my utility function? अगर मेरा utility function C होता, if my utility function would have been C, तो period 1 का utility आता C1 and period 2. Period means event. Event means जैसे 1 can represent that I win the lottery and 2 can represent that I lose the lottery. है ना? Then it can represent that 1 is representing rain and 2 is representing no rain. हाँ, तो period 1 means कोई एक event. By 1 I mean it is an event. ठीक है? Event can be rain. Event 2 can be no rain. So this is utility from event 1 and utility from event 2 हो जाता बेटा C2. So in this case, my expected utility function would have been this. Or in other case, if my utility function would have been C square, suppose utility function C square hai, then utility in period 1 or event 1 would have been C1 square and utility in event 2 would have been C2 square and expected utility function would have been pi1 C1 square plus pi2 C2 square. So either this is possible or this is possible. But this is not possible. This is representing different things. So this is not the correct expected utility function. It is not the correct expected utility function.
Clear? Clear? ठीक है. Okay, now look at the third one, beta. So third one में there is no issue. If you look here, if my utility function is ln(c), so event 1 will have utility as ln(c1), event 2 में हो जाएगा utility ln(c2). So my expected utility function will be probability, utility from event 1, probability of event 2, utility from event 2. And we have studied that there is something called as positive affine transformation. Positive affine transformation, means we can multiply it to any positive number and we can add any number here, any positive number here. So in this case, if I multiply with it 1 and I add 17, so positive affine transformation will be what, beta? It will be pi 1 ln c1 plus pi 2 ln c2 plus 17. Pi 1 ln c1 plus pi 2 ln c2 plus 70. So this expected utility function has no problem to it. ये एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. It is just positive affine transformation of this. इसका positive affine transformation है, which is fine. We can work with that. So yes, this has properties. It has properties of expected utility function. Right? Is this clear? Okay. So with this, we complete the topic of expected utility. Now we will go ahead and continue the chapter in the next class. Thank you. Everyone. So today, let us go ahead and let us ask very important question. Why expected utility is reasonable? Why should we talk about expected utility? Right? Okay, now just try to understand this thing. See, expected utility का मतलब क्या है? Expected utility means that we have some outcomes and these outcomes are uncertain. That means that there is presence of probability. And since there is presence of probability, so we are finding expected utility, which is occurrence of event 1 into utility from event 1, occurrence of event 2, probability of occurrence of event 2 into utility from event 2, right? So basically what is happening is that one second. So basically what is happening is that we have these events which are taking place randomly. Kabhi it can be, suppose event 1 can represent good state. Event 2 can represent bad state. So we can be in any state. We can either be in good state or we can be in bad state. दोनों में से हम किसी भी एक state में हो सकते हैं. Isn't it? अच्छा, now try to understand this thing. But ultimately only one of them will occur. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं that there is a probability 50% chance that it will rain. ठीक है? If it rains, my consumption is C1. Probability 50% chance that it will not rain. If it doesn't rain, then my consumption is C2. But ultimately only one of the outcome is going to occur. या तो rain करेगा या नहीं करेगा, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती. So there is a 50% chance that it will rain. 50% chance है कि बारिश होगी. There is a 50% chance it will not rain. But one of these two things can happen, ना? Either it will rain or not rain. दोनों तो नहीं हो जाएंगे, right? Only one of them will happen.
right? So therefore, what is happening is that we are saying now that only one of the two things will go ahead and happen, right? Not both of them, right? So we can say that we will write out a line, beta, usko samajho pehle. Only one of the contingent consumption plans will actually be realized. Only one of the contingent plans will actually be realized. कोई एक चीज ही होगी, या बारिश या no rain, either rain or no rain. One of the two. Contingent plans means, why is it contingent, beta? It is contingent because there is presence of uncertainty. है ना? और उनमें से कोई एक चीज ही होगी दोनों में से. Only one of them will be realized. Now this has very interesting implications. इसकी बहुत अच्छी सी implications हो जाती हैं. So let us consider that example 2. Let us consider that you are considering purchasing fire insurance for your house. आपको अपने घर के लिए एक fire insurance खरीदना है, ठीक है? Now there are three situations, ठीक है? Your current wealth, that wealth is C naught, ठीक है? If house burns, अगर आपका घर जल जाता है, your wealth becomes C1, and if it doesn't, अगर वो नहीं जलता, then your wealth will be C2, right? Now there is probability pi1 that the house will burn and probability pi2 that it will not burn, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, होगी तो एक ही चीज, या तो जलेगा या नहीं जलेगा. Both things cannot happen, right? Only one of them can happen, not both of them, right? So but there is a trade-off, right? What is the trade-off? Trade-off is between the wealth now and one of the possible outcomes. इनके बीच में एक ट्रेड ऑफ है. माने मेरा वेल्थ अभी C नॉट है और बाद में मेरा वेल्थ या तो C1 हो सकता है या तो C2 हो सकता है विद प्रोबेबिलिटी pi1 एंड pi2. बट इनमें एक ट्रेड ऑफ है. देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू, राइट? व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? द ट्रेड ऑफ इज हाउ मच मनी you are willing to sacrifice now to get little more money if the house burns. माने अगर मैं आपसे पूछूं एज एन इंश्योरेंस कंपनी कि अभी आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, अभी आप कितनी अपनी वेल्थ कम करने के लिए तैयार हो, व्हाट इज द मनी यू आर विलिंग टू गिव अप सो दैट इफ देयर इज अ फायर, ठीक है, देन यू विल गेट सम मनी फ्रॉम द कंपनी एंड इट विल इंक्रीज योर कंजम्पशन इन दैट पीरियड. तो एक ट्रेड ऑफ हो गया ना कि जब आप अभी पैसा दोगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो फ्यूचर में अगर ये होता है, इफ देयर इज अ फायर, देन यू विल बी गेटिंग सम मनी फ्रॉम द कंपनी, राइट? इज इट क्लियर? सो नाउ दिस डिसीजन दैट यू हैव टू मेक कि ठीक है अभी मैं कुछ पैसा दे देती हूँ, कम से कम अगर आग लगी तो मेरे पास कितना पैसा और आ जाएगा कंपनी से. This decision should be independent of how much consumption you have in the other possible outcome. माने अगर आग नहीं ही लगती तो कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई. It is independent. But if there is a fire and my consumption is lowered, है ना? If there is fire and my consumption is lowered, then I can increase this consumption by taking insurance and paying some money now. Is it making sense? So please write it with me, beta. There is a trade-off between
wealth now and one of the possible outcomes. इसके बीच में wealth now and possible outcome, एक possible outcome, one of the possible outcome के बीच में एक trade off है, right? That is how much money consumer is willing to sacrifice now to get a little more money. If the house burns down. तो मैं कुछ पैसा अभी देना चाहूंगी to the company so that I get some money if the house burns down. Right? So there is a trade-off between how much money I want to sacrifice today. कितना पैसा मैं आज देना चाहूंगी ताकि मुझे फ्यूचर में मिल पाए. Right? That's the trade-off you have. How much money you are willing to give today to get more tomorrow. Right? But this decision is independent, not is, right? Don't should be. Should be independent of how much consumption you will have in the other state of nature. That is how much wealth you will have if house is not destroyed. तो ये जो चीज है कि मैं आज कितना दूंगी ताकि मुझे फ्यूचर में जब घर बर्न हो कितना मिले, how much I get if the house is burned, it should be independent of this scenario when the house doesn't burn, right? It should be independent of this scenario. Is this making some sense? Right? So if it happens to burn down, okay, the extra wealth you are getting shouldn't depend on how much wealth you have if it didn't burn down. माने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे, मेरा ये डिसीजन कि मैं आज कितना दे रही हूं ताकि मुझे जब आग लगे कितना मिले, it should not be affected by my wealth under this scenario. How much I get if there is no fire, it should not be affected by that scenario. Is this clear? Okay. Note, however, that this is an assumption about individuals' preferences. And this is, please write down, assumption about individuals' preferences, and it may be violated. ये violate हो सकती है, right? It can be violated, right? So for example, let's try to write an example here, huh? कभी-कभी, suppose I ask you कि whether you want to have tea or coffee. Now, it should not depend on any third thing, but it does. Sometimes, whether people want to have tea or coffee, it depends on the amount of cream that the people have. तो ये कॉफी में ज्यादा क्रीम चाहिए होता है और चाय में कम क्रीम चाहिए होता है ना? तो अगर ज्यादा क्रीम है तब लोग कॉफी लेना चाहेंगे और अगर कम क्रीम है तब लोग टी लेना चाहेंगे, राइट? सो द अमाउंट ऑफ क्रीम दैट यू माइट गेट shouldn't, हम तो ये बोल रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे
कि क्रीम शुड नॉट अफेक्ट द डिसीजन बिटवीन कॉफी एंड टी, बट वो अफेक्ट कर रहा है ना कि आप क्या चूज कर रहे हो. Similarly, here we are saying how much wealth you are willing to give today should not affect on how much wealth you have when there is no fire. पर कभी कभी वो affect करता है. Sometimes it goes ahead and it affects. So this independent assumption that we have made, right? Sometimes this independent assumption is in fact violated. कभी कभी ये independent assumption violate हो जाती है. आई होप दिस इज मेकिंग सम इंट्यूटिव सेंस, कुछ सेंस बन रहा है. हाँ, तो हम कह रहे हैं कि सपोज जो आज के दिन में मेरे पास 100 रुपए है, अगर फायर हो जाता है आई एम लेफ्ट अप विद 10 रुपीज, अगर फायर नहीं होता है तो आई एम लेफ्ट अप विद 100 रुपीज एज इट इज. अब मैं आज कितने रुपए दूं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर के अगेंस्ट, ये इस पे डिपेंड करना चाहिए कि जब फायर लगता है मेरे पास कितना वेल्थ है. ये इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जब फायर नहीं लग रहा तो मेरे पास कितना वेल्थ है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए डिसीजन पे. बट वी आर सेइंग दिस इज द इंडिपेंडेंट एजम्पशन, बट वी आर सेइंग दैट दिस इंडिपेंडेंट एजम्पशन कैन समटाइम्स बी वायलेटेड. इज दिस मेकिंग सम सेंस बेटा? ठीक है, प्लीज राइट डाउन द इंडिपेंडेंट एजम्पशन. इंडिपेंडेंस एजम्पशन, right? Independence assumption. So please write down the independence assumption states that the choices that people plan to make in one state of nature should be independent from the choices that they make in another state of nature. समझे बेटा? तो व्हाट चॉइस आई एम मेकिंग विद वन स्टेट ऑफ नेचर, कि मैं कितना पैसा देना चाहूंगी अपने आप को फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे इट शुड नॉट बी अफेक्टेड विद हाउ मच मनी आई हैव व्हेन देयर इज नो फायर. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस assumption, what we therefore get, so because of this assumption we get a very special form of यूटिलिटी फंक्शन. हमें एक बहुत ही अलग तरीके का यूटिलिटी फंक्शन मिलता है, एंड दैट यूटिलिटी फंक्शन इज कॉल्ड एज एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन. अब एक एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है दैट एनी टू गुड्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल if I say utility from good x and y is equal to utility from x plus utility from y, मानिए there is no dependence, x का utility और y का utility add करो तो x और y का together utility आ गया. But x is not dependent on y and y is not dependent on x. I am just adding separate utility from x and y. So this is the independence assumption. Similarly, if I want to apply this concept here, so what kind of utility function I can get? Utility from period 1 consumption, utility from period 2 consumption, utility from period 3 consumption by, and I'm giving them some weightage. I'm giving them some weightage. जैसे यहाँ पे मैं I can give it some weightage, alpha and beta. तो I'm giving it some weightage. और ये weightage यहाँ पे क्या हो जाएगा? Probability. So this becomes nothing but your, यही तो expected utility function था. This is nothing but expected utility function. So expected utility function indeed is a utility function which satisfies
independent. It satisfies independent assumption. Expected utility function, indeed it satisfies beta the independence assumption. वो इस assumption को satisfy करता है. Okay, now what we can do is, let's find out beta MRS between good 1 and 2. MRS between good 1 and 2. तो MRS क्या होता है? How utility changes when good 1 changes, है ना? Upon how utility changes when good 2 changes. So when you will differentiate with respect to C1, so C1 is only coming here, you will get pi 1 u dash C1. And when you will differentiate with respect to C2, so beta C2 is only coming here, so pi 2 u dash C2. तो यहाँ पे C3 कहीं नहीं आ रहा. Nowhere C3 is coming. So independence assumption also means that MRS between consumption of 2 period is independent of consumption of the 3rd period. तो अगर MRS of good 1 2 good 3 के कोई नंबर को यूज नहीं कर, it's not having C3 anywhere, तो we can say that it is independent in nature. We can say that it is independent in nature. Is this clear, beta? Okay, so we will stop here now, beta. This is a very important assumption and you need to go ahead and you need to revise this assumption well. Okay, thank you. Hi, good evening, everyone. So, beta, today we will be going ahead and talking about risk aversion. ठीक है? In this chapter, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स कैसे होते हैं. What are the different kind of consumers that we have? To understand this, let's begin with a basic example. तो example एक ले लेते हैं. But we are saying that there is a consumer, right? And the wealth of consumer is $10. Okay. And consumer is playing a gamble. कंज्यूमर एक गैम्बल खेल रहा है और 50% चांस है, देयर इज अ 50% चांस that he will go ahead and he will win the gamble. वो जीत जाएगा. So he will win $5. And there is a 50% chance that he will lose $5. तो बेटा 50% चांस है कि he will win $5. So if he wins $5, so $10 plus $5 will give him $15. And 50% chance है कि he will lose $5. So $10 minus $5 बचे, that will just give you 10 minus 5, $5. ठीक है. So there is a 50% chance that he will have $15 and 50% chance that he will have just $5, right? But if I ask you what is going to be the expected utility of the consumer, expected utility कैसे दिखते हैं? Probability of winning 50%, 50% माने half, into utility from $15, क्योंकि अगर वो जीतता है तो उसके पास he will have $15, plus probability of losing,
that means again half, into utility from this amount. If he loses, he has only $5. So this will become his expected utility function, right? Let us try to go ahead and let us try to plot this expected utility function. हमें इसको plot करना है. In order to plot the expected utility function, beta, we need something which is known as the nature of the consumer. हमें क्या चाहिए? We need to know the nature of consumer. Okay, बच्चे. इसी में the first kind of consumers that we have, that is called as risk averse individuals. उनको बोला जाता है risk averse individuals. Who are risk averse individuals? Those individuals who prefer a certain or a fixed amount over the same lottery amount or the expected amount. तो वो लोग जो फिक्स्ड अमाउंट प्रेफर करते हैं, who prefer fixed amount over the lottery amount, over the expected amount, they are called as risk averse individual. माने मैं आपको बोलूं कि देखो, एक सिनेरियो है where you have $10 fixed and एक सिनेरियो है जहां पे 50% चांस है that you will have $15 और 50% चांस है that you will have $5. 50% चांस है कि 15 होंगे और 50% चांस है that it will become $5. तो बेटा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 10 ही आएगा. The expected value from both are same, है ना? यहां पे लॉटरी अगर खेलोगे, if you play the lottery, sometimes you will win, तो 15 हो जाएगा, 10 की जगह 15 मिलेगा. Sometimes you will lose, so instead of 10 you will get 5. So on an average आपको यहाँ पे भी 10 ही मिलेगा, कभी 15, कभी 5, कभी 15, कभी 5. On an average you are getting 10 here. And if you don't play the lottery, then also you are getting 10, beta. So the amount is the same, but this individual, ये जो risk averse individual है, he prefers this scenario. उसे ये वाला सिनेरियो ज्यादा पसंद है जहां पे ये अनसर्टेनिटी ना हो. He prefers this scenario. So he gives more utility from certain 10 over. यहां से यूटिलिटी क्या निकलता है बेटा? Whenever you play lottery, we have expected utility. And expected utility को हमने पहले ही लिख लिया था. This is my expected utility function. Right? With probability half, I will get utility from 15. With probability half, I will get utility from 5. So those individuals who prefer the fixed amount over the expected amount, है ना? दोनों ही केस में on an average he will have $10 only. But he's a डरपोक kind of individual. He's an individual who is very scared. He does not want to take risk. उसको नहीं रिस्क लेना, उसको नहीं लॉटरी खेलना, है ना? तो his utility from $10, but ये $10 certainty से आ रहे हैं. That is more than his expected utility. जब वो लॉटरी खेलता है तो उससे कितना यूटिलिटी मिलता है. Such kind of individuals, they are called as risk averse individuals. उनको हम risk averse individual बोल देते हैं. Now for such kind of individuals, we can go ahead and make indifference curve बच्चे. And the indifference curve looks like this. Not indifference curve, actually utility function. वो ऐसा दिखता है. So I can take wealth here. I can take utility here. ध्यान से देखना, हाँ, ये है $5, ये है $10.
जब हम $10 को यूटिलिटी फंक्शन पे लेके जाते हैं तो यहां से हमें यूटिलिटी मिलता है $10 का, यहां से हमें यूटिलिटी मिलता है $10 का। ऐसे यहां से हमें यूटिलिटी मिलता है $5 का। सिमिलरली दिस इज $15। When I take 15 to the utility function, I get utility from $15. माने this. Utility from $15. अब राइट हैंड साइड देखो बच्चे, व्हाट इज राइट हैंड साइड? हाफ यूटिलिटी ऑफ 15 प्लस हाफ यूटिलिटी ऑफ 5। माने हमें इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है एंड इसको हाफ से, एंड वी नीड टू ऐड देम टुगेदर। ग्राफिकल अगर हमें इस चीज को दिखाना है, it means we are giving half weightage to this and half weightage to this. To show this, what we do is we draw a line from 5 to 15. But what will be average of 5 and 15? Half 5 plus half 15 माने 10। तो लॉटरी भी ऑन एन एवरेज 10 ही दे रहा है। और ये जो हमारा पॉइंट होगा ऑन द लाइन है ना, this point will be where you have exactly half of 15 and half utility of 5। ये पॉइंट corresponding to यही। अब ध्यान से देखो what we are saying, listen very carefully, this is very tricky and very important। देखो with and without lottery दोनों में ही on an average you have 10। यहां पे जब लॉटरी नहीं खेल रहे तो 10 रुपीज के साथ स्टार्ट किया था, you had started with $10, you have those $10। So if you're not playing lottery, you started with $10 and you have $10 intact. But if you play lottery, sometimes you will have 5, sometimes you will have 15। आधे टाइम 15 मिलेंगे, आधे टाइम 5 मिलेंगे। But on average, you will have 10 here also. So 10 here and 10 here. तो बेटा both are 10। With or without lottery, on an average पैसा जो आ रहा है वो $10 है। But this ये वाला जो पॉइंट है जो यूटिलिटी फंक्शन पर है, यूटिलिटी ऑफ वेल्थ पर है, ये पॉइंट बेटा दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूटिलिटी फ्रॉम $10। माने अगर $10 मेरे को सर्टेनिटी से मिले, माने मैं लॉटरी नहीं खेल रही हूं, आई एम नॉट प्लेइंग लॉटरी, दिस इज यूटिलिटी फ्रॉम $10 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। माने आई एम प्लेइंग लॉटरी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। Expected is always when uncertainty is involved, when lottery is involved. So in this case बच्चे, in this case क्या कह रहे हैं हम, what are we saying? That utility from certain 10, ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना amount, it is more than half of utility from 15 plus half of utility from 5। माने utility from certain amount is greater than expected utility। Is this making sense? Is greater than expected utility। तो बच्चे this is the nature of risk averse individual। इसी को हम risk averse individual बोल देते हैं। This is called as risk averse individual। Is this clear? Okay, ठीक है, this is the first kind of individual। ठीक है, okay बेटा, thank you। Hi, good afternoon, everyone. Beta, in the last class, we had started talking about the risk aversion, the type of individual who is a risk averse individual. है बेटा आज हम देखेंगे other two kind of individual. The first kind of individual is called as a risk lover individual. And the second kind of individual is called as a risk neutral individual. So risk averse individual was who? Risk averse individual was that kind of individual who was getting more utility from a certain amount than the expected utility। माने उसको risk नहीं लेना था।
Just the opposite of this is my risk lover individual. A risk lover individual is that individual whose utility from the certain amount is less than his expected utility. Is less than his expected utility. माने क्या हो रहा है इस केस में बच्चे कि suppose without lottery one individual has $100 and with lottery 50% of the time he has $150 and 50% of the time he has $50. तो on an average यहाँ पे भी he has $100. तो जो risk lover individual होगा, the risk lover individual, he will want to take risk. He wants to take risk. The risk lover individual, he wants to take risk. माने his utility from lottery, जब lottery के साथ utility होता है तो उसको expected utility बोलते हैं. His expected utility will be more than his utility from no lottery amount. That means the certain amount. Okay. From as compared to the no lottery amount, that means the certain amount. Okay, beta. Achha, now in this case, what happens is that if we talk about the utility function, अगर हम यहाँ पे utility function को plot करें, if we talk about plotting the utility function, then the utility function looks like this, बच्चे. Just the opposite of this. ठीक है. So what will happen? ये रहा $50. ये $50 से utility है. ये रहा $150. This is the utility from $150. हाँ बच्चे, this is $100. This is utility from $100. और expected utility के लिए what you will do? Join these two and take it to 100. क्योंकि amount तो यहाँ पे भी on an average it is 100 only, but it is average of, so with probability half utility from 50 मिलेगा and with probability half utility from 150. This is your expected utility. है ना? So that will come down to this amount, beta. This is expected utility. And यहाँ पर जो हमारा expected utility है, देखो, it is more than utility from certain amount. Clear? ठीक है. Okay, beta. Third kind of individual. Risk neutral individual. Risk neutral individual. Risk neutral individual are those kind of individual जो दोनों के बीच में indifferent है. माने वो लॉटरी खेले या ना खेले, whether they play or don't play lottery, they are indifferent between the two. So utility from lottery and no lottery is the same. माने expected utility, जब लॉटरी खेलते हो तो हमेशा expectation के terms में आता है, probability terms में, should be equal to utility from certain amount. तो बेटा अगर मैं if I take the same example, suppose there is without lottery, ये individual के पास $100 है and with lottery, with probability half, individual has $150 and with probability half, individual has $50. ठीक है. So now what we are saying is that both should give the same value. माने utility from this 100 and expected utility
both should be same. Utility from 100 and expected utility both should be same. So when this happens, जब ये होगा, then you will have risk neutral individual. ठीक है? But for a risk neutral individual, the utility function looks like this straight line. Okay. This is 50, but a utility from 50. 100, utility from 100. 150, utility from 150. And अच्छा, now what we are saying कि if we expected कैसे निकाल रहे थे, we were joining a line from these two and passing through 100. तो वो भी same ही आएगा if I join a line through these 2 points. So this is also my expected utility. यही point. So both of these are exactly the same. Both of these are exactly the same. Is this clear, bache? So these are the 3 kind of individuals that we have: risk averse, risk lover, and risk neutral individual. Okay, beta. Hi, good evening, everyone. Beta, let us today talk about diversification. Diversification money, there is a very famous quote that you don't put all your eggs in one basket. मतलब आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हो. You don't put all your eggs in one basket. You diversify. माने suppose I give you 5,000 rupees. ठीक है? And I ask you, beta, I want you to invest this money. ठीक है? Put this money somewhere. Will you buy shares of only one stock? नहीं ना. What you will do? You will buy share of stock A, stock B, stock C. माने you will be buying shares of different stocks. That is called as diversification. ठीक है? तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि अगले साल चांसेस हैं कि either it will rain or it will be sunny, 50-50% चांस है, तो what will you do? Will you only buy raincoat? No. Will you only buy sunglasses? No. You will buy some money on sunglass and some money on raincoat. माने you will diversify. है ना? So diversification का मतलब क्या होता है? That you will not put all your money in one basket. You will go ahead and you will spread out your money. आप अपने पैसे को divide and conquer करोगे. Right? So take an example, beta. Suppose you have $100 with you. ठीक है? There is 50% chance that it will be rainy. There is 50% chance that it will be sunny. है ना? 50-50% चांस है रेन होने का और सनी होने का, राइट? नाउ वी ऑल्सो नो दैट देर आर 2 कंपनीज. ठीक है? कंपनी 1 is the company which makes raincoats. Company 2 is the company which makes sunglasses. ठीक है? Make raincoat, make sunglasses. Now, if it is rainy season, ठीक है, तो कंपनी 1 जो हमारा ये रेनकोट बना रहा है उसका एक शेयर है फॉर $10, which in rainy season will become $20. In rainy season it will become $20. ठीक है? और
In sunny season, it will become $5. माने the company is selling its share for $10. अगर रेनी सीजन हुआ तो वो डबल हो जाएगा, अगर सनी सीजन हुआ तो इट विल बिकम हाफ. Similarly, the company that is making sunglasses, it is also selling its share for $10. In rainy season, its value will go to $5. And in sunny season, its value will go to $20. It will double. ठीक है बेटा? Now, the question is that what happens if you go ahead and you put all your money in company 1. You put all your money in company 1. माने ये कंपनी, ये जितना आपके पास ये $100 है, आपने कंपनी 1 में इन्वेस्ट कर दिया. So with 50% chance it will be rainy. अगर रेनी हुआ तो मनी विल डबल. With 50% chance it will be sunny, money will half. तो माने with 50% chance it will become 200, and with 50% chance it will become 50. माने on an average you will have $125. But what happens if I will put all my money in company 2? Put all my money in company 2. तो अगर मैं सारा पैसा कंपनी 2 में लगाती हूँ, if I put all my money in company 2, फिर से either my money will half or double. So with 50% chance my money will double. With 50% chance it will become half. On an average मेरे पास $125 होगा. I will have $125 with me. ठीक. Now, what happens if I go ahead and I diversify? If the person diversifies, माने वो पर्सन क्या कर रहा है ना, कि वो पर्सन के पास जो $100 है उसने $50 कंपनी 1 में लगा दिया और $50 कंपनी 2 में लगा दिया, है ना. $50 कंपनी 1 में लगा दिया एंड $50 कंपनी 2 में लगा दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? बेटा ये $50 50% चांस होगा कि ये डबल हो जाएगा. अच्छा अब देखो, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन? बेटा इफ इट इज रेनी, अगर वो रेनी सीजन है तो कंपनी 1 वॉज मेकिंग रेनकोट, तो माने ये वाला जो $50 है ये तो डबल हो जाएगा. एंड कंपनी 2 वॉज मेकिंग सनग्लासेस, तो ये वाला इट विल बिकम हाफ. So he will have 125 in rainy season with certainty. With certainty. Sure है कि ये 125 होगा ही होगा उसके पास. He will have 125 in the rainy season with certainty. क्योंकि हमने बोल दिया कि rainy season में ये 50 डबल हो गया, ये 50 हाफ हो गया. He will have 125 with certainty in the rainy season. बेटा और क्या हो सकता है कि सीजन सनी हो सकता है. If season is sunny, so this will become half. This will double. माने here you will have $125. तो अगर sunny season भी है, he will have this $125 with certainty. Now you will ask me, मैम वो तो यहाँ पे भी आ रहा था. What's the difference? क्या difference है? बेटा, here this $125, it was expected. ये प्रोबेबिलिस्टिक था. माने अगर आपने अपना सारा पैसा कंपनी 1 में डाला तो 50% चांस है दैट इट विल डबल, 50% चांस है दैट इट विल हाफ. दोनों में से कोई एक चीज ही होती. वन ऑफ द टू थिंग्स वुड हैव हैपेंड. 50% ऑफ द टाइम्स आपको 200 मिलता एंड 50% ऑफ द टाइम्स आपको 50 मिलता. हाँ, ऑन एन एवरेज आपको 125 मिल रहा है. Still you're getting 125 on an average, but not with certainty. There is uncertainty, beta. 50% of the chance you will get 200 if it will be rainy, and 50% of the chance you will get 50 if it is sunny.
तो हियर प्रोबेबिलिटी इज इन्वॉल्व्ड, बट यहां पे हमने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगाया। हमने बोला देखो अगर रेनी होगा तो ये तो डबल हो गया, ये हाफ हो गया, देर इज नो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड। और अगर सनी होगा तो दिस बिकम्स हाफ एंड दिस बिकम्स डबल, बट एवरी टाइम आई विल गेट 125 विथ सर्टेनिटी। यहां पे यही 125 सर्टेनिटी से आएगा। और यहां पे क्या होगा ना कि अगर हमने रेनकोट वाला कंपनी में, आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी इन रेनकोट कंपनी ऑल $100, तो या तो वो डबल हो जाएगा 50% ऑफ टाइम और इट विल हाफ, but there is probability that this will happen 50% of time and this will happen 50% of time. Here there is no probability, I am getting 125 with certainty, है ना? तो basically what has happened is, please write down the line, by diversifying we have managed to reduce overall risk of investment while keeping expected payoff to be the same. So यहाँ पे also I'm getting 125 and here also I'm getting 125. So my payoff is the same. But here this is expected payoff. This is expected payoff because this is probability into payoff. Probability into payoff. और यहाँ पे कोई probability into payoff नहीं है. This is my actual payoff. There is no presence of probability. ठीक है. अच्छा, when can diversification work? But when can diversification work? It can work if both assets are negatively correlated. डाइवर्सिफिकेशन तब काम करती है जब बढ़ रहा है तो दूसरा गिरे. Suppose I would have said you that, if it is sunny, then both share will increase. If it is rainy, then both share will decrease. तो फिर फायदा ही नहीं है पैसा आधा आधा करने का, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो दोनों पे होगा, फायदा होगा तो दोनों पे होगा. तो फिर डाइवर्सिफाई करके फायदा क्या? नुकसान यहाँ पे दोनों केस में हो रहा है, दोनों ही शेयर में नुकसान होगा अगर रेनी है तो. If I lose money on both of them if it is rainy. That is not something I want. Diversification can work only when the directions are opposite. माने here in sunny, one share is increasing, other is decreasing, and in rainy, one share is decreasing, other is increasing. They are moving in opposite direction. Tab you can diversify. Then it is useful to diversify. ठीक है? Is it clear? So please write down. There will be no profit from diversification if assets are perfectly, beta this is asked in exam, positively correlated. माने अगर asset same direction में जा रहे हैं, if the assets are moving in the same direction, there is no benefit from diversification. Is this clear to everyone? Right? Okay, beta. Thank you. Hi, good evening, everyone. Beta, in today's lecture, we are going to go ahead and we are going to talk about risk spreading. Risk spreading means ways to spread the risk of an individual. And how can an individual spread risk? Example, take an insurance. By taking insurance,
So when an individual takes insurance, the risk gets spread. ठीक है? Let's take one case, right? So consider an individual who had 35,000 and he faced 1% probability, 1% माने 0.01% chance that he will lose $10,000. माने he will be left up with $25,000. है ना? And 99% probability, 99% chance that his money will be intact. उसके पैसे को कुछ नहीं होगा. Now let us go ahead and imagine that, suppose that there are 100 individuals. ऐसे 100 लोग हैं, है ना? तो बेटा out of 100 suppose 1,000 people are there, not 100, 1,000 people are there. So बेटा out of 1,000 people किसी भी एक इंसान का लॉस होने का चांस सिर्फ 1% है ना? There is only 1% chance that the person will lose. So out of these 1,000 people, बेटा on an average कितने people will lose? On an average 1/100 into 1,000, there is a chance that 10 individuals will lose. माने किसी भी साल में in any 1 year, ठीक है, out of 1,000 individuals 10 will have a loss and बाकी 990 individuals उनको कोई लॉस नहीं होगा. They will not have any loss, right? अच्छा, suppose these 10 individuals lose बेटा, तो हर एक individual how much money will he lose? $10,000. So what is the total money lost? Total money lost. What is the total money lost बेटा? There are 10 individuals और हर individual को जो loss होगा that will be for $10,000. The total money lost will be $1 lakh. Total money lost will be $1 lakh, है ना? Total money lost will be $1 lakh. ये बात clear होती है? ठीक है? Okay. Now we need to understand that what is the expected wealth of any individual. किसी भी individual का expected wealth कितना है? With probability 1, the person will have 25,000. And with probability 99%, the person will have 35,000. Okay. So if I solve this, I will get $34,900. $34,900. Okay. So on an average, अगर हम देखें, हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के पास $34,900 हैं. बट ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये जो 1% के साथ लॉस हो रहा है, जो लॉस का अमाउंट है वो 10,000 का है, $100 का नहीं है. ऑल्दो हियर इधर देख के आप बोल सकते हो कि मैम इतना क्या बड़ी बात है, 35,000 की जगह 34,900 ही तो बच रहा है. Instead of 35,000, this individual has 34,900. So what's the big deal, ma'am? इतना क्या बड़ी बात हो गई, है ना? Don't think like that. Think like that अगर एक इंडिविजुअल को लॉस होता है, if he is in this 1% of the individual, अगर वो उनमें से है जिनको लॉस हो रहा है, then he will lose $10,000. The amount that he will lose is not less. He will lose $10,000. ठीक है? तो sometimes the expected wealth, this does not give a true picture. ये तो बोल रहा है कि देखो ठीक है, ऑन एन एवरेज आपके पास 34,900 बचेगा 35 की जगह.
तो आप बोलोगे अरे वाह मैम दिस इज नॉट बैड, इट्स फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच इंडिविजुअल हु इज लूजिंग, जो भी पैसा लूज कर रहा है, बेशक ही 1% चांस है लूज करने का, बट इफ यू लूज, यू आर नॉट लूजिंग 100 रुपीज, बट यू आर लूजिंग $10,000. हाँ, ये जरूर बात है दैट चांसेस ऑफ लॉस आर लेस, बट इफ यू लूज, अगर लूज करोगे तो 10,000 का नुकसान होगा, यू विल हैव अ लॉस ऑफ 10,000, विच इज लॉट, राइट? सो देयरफॉर एन इंडिविजुअल हैज टू डाइवर्सिफाई. द क्वेश्चन इज हाउ कैन द इंडिविजुअल स्प्रेड हिज रिस्क? वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है? ही कैन डाइवर्सिफाई बाय सेलिंग सम ऑफ द रिस्क टू other individuals. Some of the risk to other individuals. है? माने फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो 1,000 इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, दे इंश्योर ईच अदर. इंडिविजुअल्स इंश्योर ईच अदर, है ना? इंडिविजुअल्स इंश्योर ईच अदर. तो इसमें वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि देखो, हम में से ये हम 1,000 इंडिविजुअल्स हैं, एंड सो ऑन, जिसे भी लॉस होगा, हुएवर विल हैव लॉस. माने सपोज इस साल इंडिविजुअल 1 को ये 10,000 रुपए का लॉस हो गया, ही इज अमंग दिस 1% इंडिविजुअल जिसे लॉस हुआ. हमें पता है कि 1% ऑफ 1,000 इज ओनली 10 इंडिविजुअल्स. सो आउट ऑफ ऑल 1,000 इंडिविजुअल्स, जो भी यहाँ पे हमारे पास ये पूल ऑफ 1,000 इंडिविजुअल्स है, हमें पता है कि सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स विल हैव लॉस. 10 individuals will have loss. We know that remaining 990 individuals will not have loss. No loss. 990 individual will not have loss. So what we are now going ahead and saying कि ये 990 individual decide करते हैं, they decide that anyone who is going to go ahead and have a loss, we will contribute money for that individual. We will contribute money for that individual. ठीक है? तो अब देखो क्या हुआ इसमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 990 इंडिविजुअल्स बोल देते हैं कि इफ यू हैव अ लॉस, वी विल गिव यू $10 ईच. तो उसको कितना मिल जाएगा बच्चे? 9900. ही विल गेट 9900. तो व्हाट विल बी हिज नेट लॉस? ओनली $100, क्योंकि उसको 9900 बाकियों से मिल गया. एंड हाउ मच मनी ईच ऑफ देम इज लूजिंग? ओनली $10. उन्होंने तो सिर्फ $10 कॉन्ट्रीब्यूट किया. सो नन ऑफ देम इज लूजिंग, बट एटलीस्ट दिस पर्सन ही इज सिक्योर्ड. इसको एक सेफ्टी मिल गई. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? इज दिस मेकिंग सेंस? सिमिलरली दे कैन चेंज दिस प्लान ऑल्सो. वो बोल सकते हैं कि लॉस हो ना हो, everyone has to, जितने 1,000 के 1,000 इंडिविजुअल हैं, everyone has to contribute $10. And whatever money we will receive, we will give this money to the person who had loss. लॉस हो या ना हो, सारे 1,000 लोगों ने $10 दिए. वी कलेक्टेड 10,000, और जिसको भी ये 10,000 का नुकसान हुआ था, हमने उसको ये दे दिया, राइट? और फिर अगली बारी नेक्स्ट टाइम समवन एल्स विल हैव अ लॉस, वी विल गिव टू देम. नेक्स्ट टाइम समवन एल्स विल हैव अ लॉस, वी विल गिव टू देम. सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क स्प्रेडिंग. इससे क्या हुआ कि एट एनी पॉइंट एनीवन इज ओनली स्पेंडिंग हाउ मच बेटा? At any point of time, any individual is only losing $10. $10 से ऊपर तो कभी भी लॉस नहीं हो रहा. अगर आप लॉस वाले लोगों में नहीं हो, then also you are contributing $10. और अगर आप लॉस वाले में हो, then also you contributed $10 only, क्योंकि बाकी 10,000 तो वापस आ गए.
So at any point of time, you are not losing a lot of money. So your risk has been spread, right? And her individual ke saath yahi hoga, everyone will have a similar thing. So in that ways, what has happened is that you have been able to spread out your risk. Your risk is now more spread out, right? And this is what is called as risk spreading. इसी को हम risk spreading बोलते हैं. So what is risk spreading? Risk spreading is when each consumer spreads his risk over all the other consumers and thereby reduces the amount of risk he bears. Reduces the amount of risk he bears. तो सबने अब क्या करा ना, अपना अपना रिस्क कम कर दिया. Is this making sense? Clear? Okay. Now let's talk about one last thing beta today, which is called as role of stock market. Role of stock market says that stock market is very similar to insurance market in risk spreading. Because in stock market, what you do is you can convert your non-risky situation to a risk or a risky situation to a non-risky situation. माने क्या कर सकते हो ना कि you will put your money in different shares. Right? And at any point of time, the different shares will be moving in different direction. जरूरी नहीं है ना कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर एक साथ लॉस दे या एक साथ प्रॉफिट दे. They can move in different directions. So that's the first thing. Secondly, what happens is that जो हमारे ओरिजिनल ओनर्स होते हैं कंपनी के, original owners of the company, they issue share to multiple shareholders. They issue share to large number of shareholders, and because there are a large number of shareholders, माने किसी भी एक shareholder के पास बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं है. हाँ, एक कंपनी होगी who will go ahead and have about 1,000 or 10,000 shares, and they will go ahead and give each share to allocate each share to different individual. हाँ, तो अगर एक कंपनी के सपोज 10,000 शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में और आपके पास सिर्फ 4 शेयर है, so even if those 4 shares they are in loss, you are not having a lot of loss because out of 10,000 shares you only had 4 shares, right? So your loss is lowered, right? So in stock market, one, you can lower the risk by putting your money in different shares, and secondly, there are multiple shareholders related to any particular company, right? But this is it. इसको बहुत ज्यादा हमें explore नहीं करना है stock market के topic को. This is the end of the stock market topic. ठीक है, इतना ही है. Okay. So this is the end of our chapter number chapter 12 of variant, which talks about uncertainty. Now, if you go towards the end of chapter beta, तो chapter के end में there are 2 appendix given to you. ठीक है, appendix दिया हुआ है और उसमें एक example दिया हुआ है, effect of taxation on investment risky assets. That appendix is important and it will be good if you can just look at that appendix also, right? Okay beta, thank you.
Hi, good evening, everyone. But today we are going to start with an important chapter, which is called as buying and selling. ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं what this chapter is about. I want to go ahead and I want to define two things today. Net and gross demand. Net and gross demand. ठीक है. To understand net and gross demand, we know that there is something which is called as an endowment bundle. Right, beta? What is the endowment bundle? What the consumer enters the market with. कंज्यूमर किस बंडल के साथ मार्केट में एंटर करता है, that is called as endowment bundle, and I am representing this endowment bundle with omega 1 and omega 2. With omega 1 and omega 2. ठीक है, it's like this. You can go ahead and think it like this कि let omega 1 represent number of carrots the farmer enters the market with. माने एक फार्मर है, उसने कुछ कैरेट्स उगाई हैं, वो कितनी कैरेट के साथ मार्केट में एंटर कर रहा है, that is omega 1, right? And similarly omega 2 can be number of potatoes farmer enters the market with. ठीक है, तो बेटा this is omega 1 and omega 2, right? Now after the farmer enters the market, तो फार्मर ना सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा, now I have entered the market. He observes the price of carrot and potatoes. वो मार्केट में एंटर करके प्राइस देखना शुरू करता है कि कैरेट का क्या प्राइस है, पोटैटो का क्या प्राइस है. सो ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज गुड्स. ठीक है, इट्स लाइक अब जैसे अगर आपके टुमारो योर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर दे गिव यू अ लैंड, वो आपके लिए एक जमीन छोड़ के जाते हैं, व्हाट विल यू डू बेटा? यू विल गो एंड सी द प्राइस ऑफ दैट ना, कि अच्छा ठीक है, मार्केट में जाके देखे तो सही इसका कितना वैल्यूएशन है, how much does it value, isn't it? Won't you do that? The same thing, this farmer has produced two things beta. This farmer has gone ahead and this farmer has produced carrot, the farmer has produced the other thing as potatoes, and wahan enter karke market he is thinking ki okay, what's the price of good? He's observing the price, right? And after observing the price, he is deciding how much to buy and sell. So he is deciding कि अच्छा ये तो मेरे पास था ही, should I sell this or should I buy more? What should I do? What should be my final bundle in that I should be consuming? मेरा final consumption bundle क्या होना चाहिए, वो सोचता है. So now we define two things beta. One is called as gross demand and one is called as net demand. Gross demand is how much is the amount of good consumer ends up consuming. Amount of good consumer ends up consuming माने वो कितना फाइनली घर लेके जा रहा है, फाइनल बंडल उसका क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फार्मर, बेटा जब वो मार्केट में एंटर किया ही हैड 4 कैरेट्स एंड 7 पोटैटोज, और जब उसने मार्केट से एग्जिट किया, व्हेन ही एग्जिटेड द मार्केट ही हैड 2 कैरेट्स एंड 10 पोटैटोज. ठीक है, so what he is exiting the market with, it is represented with x1 x2.
and this is called as gross demand. And what he entered the market with, कितने के साथ वो market enter किया, that is omega 1, omega 2. And this is called as endowment bundle. Endowment bundle. And the difference between the two, है ना बेटा, that is called as net demand. तो यहाँ पे नेट डिमांड हो गई x1 minus omega 1, x2 minus omega 2. In this case, net demand क्या है बेटा? 2 carat minus 4 carat, 10 potato minus 7 potato, है ना? That means minus 2 carat and 3 potato. माने माइनस क्या शो कर रहा है कि वो एंड में ही इज टेकिंग लेस होम. ही स्टार्टेड विद 4 कैरेट्स एंड ही हैज ओनली 2 कैरेट्स, माने उसने ज्यादा बेच दिया, वो अपने लिए कम घर लेके जा रहा है. सो नेगेटिव मीन्स दैट ही इज कंज्यूमिंग लेस देन व्हाट ही हैड. जितने के साथ उसने मार्केट में एंटर किया उससे कम वो घर लेके जा रहा है. Right? So negative means that the consumer wants to consume less of good one than she had. So consumer has sold good one. Ultimately, उसने sell किया 2 unit. He has sold good one. He is consuming less than what he entered the market with. जितने के साथ मार्केट में एंटर किया उससे कम फाइनल में कंजम्पशन है. ही इज ओनली कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स. ही एंटर्ड द मार्केट विद 4 यूनिट्स, माने 2 उसने सेल कर दी. ही हैज सोल्ड ऑफ 2 यूनिट्स. यहाँ पे ही एंटर्ड विद 7, ही हैज 10, माने ही हैज 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स ना. सो यहाँ पे कंज्यूमर परचेज्ड additional units of good 2. He is consuming more than what he entered the market with. जितने के साथ he entered the market, he entered with 7 units. He has finally 10 units. माने उसने 3 extra खरीदे हैं. He has purchased 3 more, right? So he has 3 more units of potatoes. But when this consumer is selling 2 units of carrot, so this 2 unit of carrot, it acts as net supply in the market. तो ये 2 यूनिट उसने मार्केट में बेच दिए ना. He has sold these 2 units now. So if he has sold these 2 units, it means that he has supplied those 2 units in the market. Right? So we can say that negative net demand is equal to amount supplied. Negative net demand is the amount supplied. Similarly, positive net demand is amount demanded. Is the amount demanded. Is this clear, beta? So, abhi ke liye there are 3 concepts that you have to understand in this. First, what is endowment? Second, what is gross demand? And third, what is net demand? Clear, beta? Okay. Okay, beta. Thank you. Hello everyone, welcome to the portal of ArthaPoint, which is courses.arthapoint.com learn. And here on this portal, beta, you can go ahead and have a look at various categories of courses, which is IIT JAM, CUET, MA Economics, DEPR, DU semester courses and whatnot. If you click on DU semester courses,
you will be able to see the various courses on the portal which are available to you. A lot of these courses are an initiative of ArthaPoint, which means that we are not charging any fees, beta. This is only the portal fees, in which you have introductory mathematical methods for economics, introductory microeconomics, introductory statistics for economics. Then you have intermediate microeconomics, semester 3, intermediate microeconomics, macroeconomics. This is a paid course. Only this is for 5,000. So you can clearly see that in the paid course, if you click, you will also go ahead and get access to various assignments, and you will get access to various other concepts also. So you see here, you also have additional lecture, you have notes, you have assignments. Everything is part of the paid course. For all the subjects, you can see past year papers being solved. You can see past year papers being solved and important numericals being discussed in the paid course. So this is a paid course which is for macroeconomics. But if you go ahead and if you look into the other courses of the economic semester, they are available for no fees. This is only the portal fees that we are charging. Similarly, if you go ahead and you look into the 5th semester, game theory is a paid course in which we are solving various problem sets also. But other than game theory, other courses like economic growth and business cycle, like introductory development economics, these are all the initiative. Only portal fees is being charged. And if you go ahead and you look into this introductory development economics, you can see that I have gone ahead and I have covered a lot of the course, even though it is an initiative. You can see that unit 1 is completely covered. You can see that unit 2 is covered, and you can see that unit 4 is also completely covered. In unit 3 also, we have covered one chapter. So this is the link to our portal. You can go ahead, you can have a look at the various courses. Similarly, if you go ahead and you have a look at the IIT JAM courses, here you will be able to see the different mock test series for IIT JAM that have been launched. At the same time, you will be able to also see the question bank for CUET, which has been now launched, and you will be able to see the different other courses also, right? These are only few of the courses, beta. We do provide more courses also. These are the courses which you can directly access. But if you want a full-fledged course on IIT JAM or a full-fledged course on MA Economics entrance or a full-fledged course on Indian Economic Service, you can always contact Rohit sir, and he will go ahead and he will talk about the different courses that we have. So I just wanted to quickly show you the portal of ArthaPoint, and all of you can go to this portal and you can have a look at different courses. Okay, beta, thank you. Hi, good afternoon, everyone. Let us go ahead and now let us talk about the budget constraint, which we will go ahead and use in case of buying and selling. Now, we have already introduced the concept of what is, what is basically endowment bundle, what is gross demand, and what is net demand. We're going to go ahead and we're going to take it from there, and we're going to talk about the budget constraint now. So usually speaking, beta, budget constraint kya hota hai? What is budget constraint? The budget constraint that we have is this: P1 X1 plus P2 X2 equal to income of consumer. यही होता है budget constraint. But in this case, ये जो consumer था, he was like a farmer. The consumer was someone new. The consumer was like a farmer.
And what was the consumer actually going ahead and doing? The consumer was going ahead and taking his product to the market. Consumer अपना product market में लेके जा रहा था. And by selling his product in the market, he will earn some income. And from that income, he will go ahead and he will purchase the commodity. So the consumer in this case will earn income by selling his endowment. जो भी उसने पहले अपना प्रोड्यूस किया है. So in this case, for example, the farmer had gone with the bundle 4C and 7P. है ना? So this was his endowment bundle. So वो पहले वो मार्केट में सेल करके he can earn income. So income will be P1 price value of endowment of good 1, value of endowment of good 1 plus beta P2 omega 2, value of endowment of good 2. So value of endowment of good 1 plus value of endowment of good 2 together gives you the income of the consumer. Together it gives you the income of the consumer. So we can rewrite the budget line. How beta? We know P1 x1 plus P2 x2 equal to income. So P1 x1 plus P2 x2 will be equal to P1 omega 1 plus P2 omega 2. क्योंकि इनकम endowment bundle को सेल करके मिल रहा है. You're getting income by selling the endowment bundle. Now beta, what we can do is we can take this on this side. We will get P1 x1 plus P2 x2 minus P1 omega 1 minus P2 omega 2 equal to 0. ठीक है. Now we can club beta. P1 x1 minus P1 omega 1 इसको club कर दो. So take P1 common. x1 minus omega 1. Similarly, P2 x2 and P2 omega 2 को club कर दो. So take P2 common. x2 minus omega 2 equal to 0. Equal to 0. ठीक है. बेटा listen to me very carefully. अब जो मैं लाइन बोलने लगी हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. You need to listen to me very very carefully. ठीक है. बहुत ध्यान से समझो कि if x1 is more than omega 1, माने आपने जो कंज्यूम किया वो उससे ज्यादा है जो आपने प्रोड्यूस किया था. If x1 is more than omega 1, it means x1 minus omega 1 will be positive. If it will be positive, it means you were a net buyer. आपने खरीदा है मार्केट से और you were a net buyer, net demander. And beta, if x1 is less than omega 1, then beta x1 minus omega 1 will be less than 0. So it means that you will be net seller. आप मार्केट में सेल कर रहे हो. You're not buying. You are selling in the market. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है which is very important. Under what circumstances this equation can be satisfied? ये जो हमारा this equation that I have written here, when this be satisfied. तो एक केस तो ये हो गया बेटा कि if हमें right hand side 0 है, so which means हमारा left hand side भी 0 होना चाहिए. Our right hand side is 0, so left hand side भी 0 ही होगा, right? So one condition is if x1 is equal to omega 1, अगर हम इन दोनों को equal कर देते हैं, so we will get x1 equal to omega 1. ठीक है. अगर मैं ये करती हूं, if I put x1 equal to omega 1, what will I get? P1 into 0 plus P2 x2 minus omega 2 equal to 0. So from here, beta, I will get x2 equal to omega 2. माने if I have x1 equal to omega 1, then I will get x2 equal to omega 2. उस केस में मेरा x2 और omega 2 equal आएगा. So what does this mean? It means that if in market 1 में consumption is exactly equal to endowment,
आप जितना लेके आए मार्केट में वही खा रहे हो, उतना ही कंज्यूम कर रहे हो. इफ इन मार्केट वन कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू endowment, then we get what condition beta, that in market 2 also consumption should be equal to endowment. तो फिर मार्केट 2 में भी कंजम्पशन एंडोमेंट के बराबर होगा. कंजम्पशन विल बी इक्वल टू एंडोमेंट. क्लियर? केस 2 बेटा. सपोज आई टेल यू x1 is more than omega 1. तो बेटा if x1 is more than omega 1, माने यहां पे कोई एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है. सो व्हाट इज द इक्वेशन आई हैव रिटन? आई हैव रिटन p1 x1 minus omega 1 plus p2 x2 minus omega 2 equal to 0. If x1 is more than omega 1, माने x1 minus omega 1 it is positive. Suppose बेटा यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, प्राइस इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स दैट दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव. ये चीज एक पॉजिटिव चीज है बेटा. इफ दिस इज पॉजिटिव और मुझे दो चीजों का सम जीरो करना है, इफ आई वांट टू मेक द सम जीरो, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना जरूरी है. ओनली देन द सम कैन बी जीरो. सो इफ वन इज पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव, only then the sum can be zero. माने if the consumer is net demander in market 1, मार्केट 1 में कंज्यूमर नेट डिमांडर है, ही इज डिमांडिंग नेट परचेज कर रहा है, देन बेटा यहां पे हमें नेगेटिव चाहिए, विच मीन्स x2 शुड बी लेस देन ओमेगा 2. he should be, this is very important question in exam, net supplier in market 2. he should be net supplier in market 2. if he is net demander in market 1, अगर वो market 1 में net demand कर रहा है, he should be net supplier in market 2. is this clear? Similarly बेटा case 3, p1 x1 minus omega 1 plus p2 x2 minus omega 2 should be 0. If x1 minus omega 1 is less than 0, अगर ये नेगेटिव है तो बेटा दिस टर्म इज नेगेटिव. तो वी नो कि समथिंग विच इज नेगेटिव, उसमें हमें कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा टू गेट 0. सो इट मीन्स दैट वी विल गेट x2 minus omega 2 greater than 0. So x2 will be more than omega 2. x2 will be more than omega 2. बात क्लियर हो रही है? So if the individual is net supplier in market 1, ये negative है means net supplier, he is consuming less than what he has entered the market with, उसका consumption कम है. So if consumer is net supplier in market 1, he will be net demander in market 2. He will be net demander in market 2. ये तीनों points clear हो? ये बहुत important है from the point of view of exam. So what we have learned, if a consumer is net demander in market 1, he will be net supplier in market 2. If he is net supplier in market 1, he will be net demander in market 2. If he is demanding equal to his endowment, माने अगर उसका जो इक्विलिब्रियम बंडल है वो ऐसा है कि x1 इक्वल टू ओमेगा 1 ही हो रहा है, देन ही विल ऑल्सो डिमांड इक्वल टू एंडोमेंट इन मार्केट 2. बात क्लियर हो गई है? ठीक है. इफ दिस इज क्लियर टू यू बेटा, देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन लुक एट द बजट लाइन. टू लुक एट द बजट लाइन हम एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. The slope of budget line can be written, अगर आप यहीं से देखें तो स्लोप क्या था बेटा? रेशियो ऑफ द प्राइसेस, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स. तो यहाँ पे भी प्राइस ऑफ टू गुड्स तो P1 P2 ही है ना. सो स्लोप ऑफ बजट लाइन विल रिमेन द सेम ओनली बेटा. सो स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन विल बी P1 by P2. Slope will be P1 by P2. अच्छा, now what we can do is three things. बेटा ये हो गया x1,
ये हो गया x2, ये मेरा बजट लाइन है, ये है स्लोप इस बजट लाइन का p1 by p2 with a negative sign. ठीक है, each budget line has to pass through this bundle, bundle number 1. देखो जो भी इंसान मार्केट में आया है, सपोज मैं बोलूं कि मैं एक फार्मर हूं एंड आई हैव एंटर्ड द मार्केट विथ 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंज. So at any point I can exit the market with 4 apple and 6 orange. भाई जो मैं प्रोड्यूस करके मार्केट में लेकर आई हूँ, whatever I have produced and got in the market, I can consume that bundle itself, isn't it? वो बंडल तो मेरे लिए हमेशा अफोर्डेबल रहेगा, वो तो मैं हमेशा कंज्यूम कर सकती हूँ. सो दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग, that I am consuming exactly equal to my endowment. Whatever I entered the market with, I am consuming exactly equal to my endowment. So that is always possible. So this is a bundle beta that x1 can be equal to your endowment bundle and x2 your endowment bundle. ये बंडल ये रिप्रेजेंट करता है that x1 is equal to omega 1 and x2 is equal to omega 2. माने this consumer is consuming equal to his endowment bundle. ये तो हमेशा पॉसिबल होगा ना, that you can consume equal to your endowment bundle. This is always a possibility. So if this is always a possibility, it means that budget line can always pass through the endowment bundle. Budget line can always pass through the endowment bundle. Better take any bundle here. Suppose bundle B का बात करें, ये bundle A है. So in bundle B, what has happened? देखो मैं यहां पर हूं, x1 dash, x2 dash. So in bundle B, what has happened? Consumption of good 1 is more than endowment. माने I am a net buyer of good 1. और यहां क्या हो रहा है? That consumption of good 2 is less than endowment. That means I am a net supplier of good 2. यही तो ये केस था. This was this case. If you are a net buyer of good 1, माने this is positive, this is more than endowment, so you will be net supplier of good 2. You will be net supplier of good 2. Clear? Beta case 3. Take a point here, point C. Point C पे क्या हो रहा है? What is happening at point C, beta? Your bundle is x double dash and x2 double dash. At point C, you are consuming less than endowment. Good 1 का कंपेयर करो endowment से तो आपका कंजम्पशन कम है, और गुड 2 का कंज्यूम करो तो endowment से ज्यादा है. So for good 1, your consumption is less than endowment. It means you are a net supplier. And for good 2, your consumption is more than endowment. It means you are a net buyer. So, but these are the different points. Point A, B, and C. Clear? Is this budget line clear to everyone? Okay, beta. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Beta, let us now try to understand what happens when we go ahead and when we change the endowment bundle. Okay. Suppose your initial endowment bundle क्या था बेटा? What you enter the market with. ठीक है. So suppose your initial endowment bundle is omega 1, omega 2. ठीक है. And your new endowment bundle that is omega 1 dash,
ओमेगा 2 डैश। तो आपका जो एंडोमेंट बंडल है वो चेंज हो गया, जो आप मार्केट में एंटर कर रहे हो। जैसे पहले आप मार्केट में आपने एंटर किया 4 एप्पल 3 ऑरेंज के साथ, और अब आपने मार्केट में एंटर किया 5 एप्पल एंड 6 ऑरेंज के साथ। तो व्हाट यू आर एंटरिंग द मार्केट विथ दैट हैज चेंज्ड, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो सपोज नाउ यू आर एंटरिंग विथ मोर वैल्यू। माने पहले पहले आप जो अपना इंडोमेंट के साथ एंटर कर रहे थे, इफ यू वुड हैव सोल्ड दैट, सपोज आपको 100 रुपीज मिलते, और अब जो उसी इंडोमेंट बंडल जिसके साथ आप एंटर कर रहे हो, इफ यू सेल दैट, सपोज यू विल गेट 500। सो व्हेन यू विल बी सेलिंग योर इंडोमेंट बंडल, you will go ahead and you will be able to you will be able to get more value, right? Is that making sense? So now what has happened is your endowment bundle is worth more. So let us go ahead and let us try to write this down. How can we write this in terms of maths? We can go ahead and do something like this. So हमारा value of new endowment bundle क्या होगा बेटा? P1 omega 1 dash, P2 omega 2 dash। ये हो गया value of new endowment bundle, है ना। जब हम किसी को भी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू इंडोमेंट बंडल, राइट। एंड हमारा वैल्यू ऑफ ओल्ड इंडोमेंट बंडल क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ ओल्ड इंडोमेंट बंडल है P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2 प्लस P2 ओमेगा 2। बेटा देखो ध्यान से समझो, इफ P1 omega 1 plus P2 omega 2 is greater than P1 omega 1 dash plus P2 omega 2 dash। इसका क्या मतलब है कि पहले जब हम अपने endowment बंडल को सेल करते थे, when we were earlier selling the endowment bundle, we were going ahead and we were getting more value, and when we are now selling our endowment bundle, we are getting less value. Value of the new endowment bundle is less, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया value of new endowment bundle is less। और बेटा अगर इसको रिवर्स कर दे, if P1 omega 1 plus P2 omega 2 is less than P1 omega 1 dash plus P2 omega 2 dash, इसका क्या मतलब है? This means value of new endowment bundle is more। जो जिसके साथ अब हम एंटर कर रहे हैं मार्केट में, व्हाट वी आर एंटरिंग विद एंटरिंग द मार्केट नाउ, जिसके साथ अब हम एंटर कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो बेटा जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। इफ द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट बंडल इज मोर, जिसके साथ अब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, अगर उसका वैल्यू ज्यादा है, हाँ, इट मीन्स कि व्हाट यू विल सेल विल अर्न यू मोर। what you will sell, जो आप बेच रहे हो मार्केट में, whatever you are entering with, you will sell that. So what you are selling is worth more. So this represents beta increase in income of consumer. This is representing increase in income of consumer. और अगर जो नया endowment bundle है जिसके साथ अब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं, if its value is less, so beta it represents decrease in income of consumer, है कि नहीं? Because consumer was earning income by selling the endowment bundle. Consumer के पास पैसा कहां से आ रहा था? Endowment bundle को बेच के, right? So this is the value of the endowment bundle. If new endowment bundle has less value, consumer will have less income. And if new endowment bundle it has more value, consumer will have more income. समझ रहे हो ये बात? Are you understanding this thing? So बेटा we know that एक चीज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, that every budget line
must pass through endowment bundle. एवरी बजट लाइन मस्ट पास थ्रू इंडोमेंट बंडल। तो ये बात भी हमें क्लियर है कि कोई भी अगर बजट लाइन होगा तो इट हैज टू पास थ्रू इंडोमेंट बंडल। तो बेटा इस केस में देखो, इफ द वैल्यू ऑफ न्यू इंडोमेंट बंडल इज लेस तो इनकम हैज डिक्रीज्ड। तो हाउ कैन वी शो डिक्रीज इन इनकम? ये हमने पढ़ा हुआ है। डिक्रीज इन इनकम कैन बी शोन बाय बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। अगर इनकम कम होती है तो वी शिफ्ट द बजट लाइन बैकवर्ड्स। सो व्हाट विल दैट मीन बेटा? बजट लाइन हैज शिफ्टेड बैकवर्ड्स। ठीक है। अच्छा एक बात और है, एवरी बजट लाइन पासेस थ्रू द एंडोमेंट बंडल। तो जो हमारा ओल्ड बजट लाइन है इट विल पास थ्रू ओल्ड एंडोमेंट बंडल, और जो हमारा न्यू बजट लाइन है इट विल पास थ्रू न्यू एंडोमेंट बंडल। बट सिंस वैल्यू ऑफ न्यू एंडोमेंट बंडल इज लेस, नए एंडोमेंट बंडल की वैल्यू ही कम है ना? सो व्हाट विल हैपन? लेस इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो बजट लाइन विल शिफ्ट इनवर्ड्स। ठीक है। अब यहां देखो, वैल्यू ऑफ न्यू एंडोमेंट बंडल इज मोर, so income of consumer has increased. So if income of consumer has increased, how can we show that beta? Rightward shift of budget line, income बढ़ता है तो budget line parallelly rightward shift होता है. So we can show this by outward shift of the budget line. Outward shift of the budget line. Also, every budget line passes through the endowment bundle. तो ये पुराना बजट लाइन पुराना एंडोमेंट बंडल से पास करेगा, W1 कॉमा W2, और न्यू बजट लाइन न्यू एंडोमेंट बंडल से पास करेगा। वेयर द न्यू एंडोमेंट बंडल इज डज नॉट मैटर। नया एंडोमेंट बंडल यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, उससे फर्क नहीं, उसका वैल्यू ज्यादा है ना। सो इट इज ऑन अ हायर बजट लाइन, सो दिस विल बी W1 डैश W2 डैश। क्लियर? बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अर्लियर you had 2 orange 3 apple. Now ये endowment है, हाँ, you have 1 orange 5 apples. 1 orange is for 10 rupees and 1 apple is for 5 rupees. तो बेटा अर्लियर आपका कितना वैल्यू था एंडोमेंट बंडल का? 2 ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ओ है, हाँ, 2 into 10 rupees, 3 apple 3 into 5 rupees. अर्लियर आपका इनकम था 20 plus 15 35. बेटा व्हाट इज योर न्यू इनकम? 1 ऑरेंज 10 rupees, 5 एप्पल 5 एप्पल, हर एप्पल 5 rupees का है, 10 plus 25 35. So both endowment bundle give you the same level of income. So both will be on same budget line. तो ये हमारा एक बजट लाइन है। बजट लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा? प्राइस px by py, प्राइस ऑफ गुड x by प्राइस ऑफ गुड y, 10 divided by 5 2. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन ऐसा कुछ है। ठीक है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज एप्पल। अर्लियर एंडोमेंट बंडल क्या है बेटा? 2 ऑरेंज 3 एप्पल, 2 ऑरेंज 3 एप्पल। ठीक है, न्यू बजट लाइन बेटा 1 ऑरेंज 5, न्यू एंडोमेंट बंडल क्या है? 1 ऑरेंज 5 एप्पल, 1 ऑरेंज 5 एप्पल, और दोनों का वैल्यू सेम है, बोथ गिव यू द सेम वैल्यू। तो बेटा 1 ऑरेंज 5 एप्पल, 2 ऑरेंज 3 एप्पल, ये हो गया आपका ओल्ड एंडोमेंट बंडल, न्यू एंडोमेंट बंडल, दोनों बोथ आर ऑन
same budget line because they have same value. Same budget line because they have same value. Is this clear? ठीक है बेटा. होमवर्क क्वेश्चन. टेल मी व्हाट विल बी दिस पॉइंट. इस पॉइंट को आप क्या नंबर दे सकते हो? व्हाट विल बी दिस पॉइंट? ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट बेटा, सपोज न्यू एंडोमेंट बंडल is 0 orange, 6 apple. Then plot old and new budget line. Suppose आपका old endowment bundle 2 orange 3 apple है. Price of 1 orange is 10 rupees. Price of 1 apple is 5 rupees. And new endowment bundle is 0 orange and 6 apples. So you need to draw the two budget lines. Okay? ठीक है बेटा. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Beta, in today's lecture, we will try to go ahead and see how the budget line changes when there are change in the price of the good. अगर good का price change हो जाएगा, तो budget line कैसे change होगी, हम उसको देखेंगे in the presence of the endowment bundle. बहुत simple है, it's not very difficult, हाँ. So, case 1 बेटा. एक example के लिए ले लेते हैं. Suppose initially आपका जो endowment है, that is 4 units of good 1 and 6 units of good 2. Right बेटा? बेटा good 1 का जो प्राइस है, that is 2 rupee per unit. Good 2 price, that is 1 rupee per unit. Can you tell me what will be the income of the consumer? Beta, income is nothing but value of endowment bundle. So it will become P1 omega 1 plus P2 omega 2, माने 2 into 4 plus 1 into 6, 8 plus 6, 14. 8 plus 6, 14. ठीक है बच्चे, each budget line passes through endowment bundle. Budget line endowment bundle से तो पास होगी ही होगी. What will be the slope of this budget line? P1 by P2. What is P1 beta? P1 is 2. P2 is 1. So the slope of budget line will be 2. Budget line का slope क्या हो जाएगा? The slope of budget line will become 2. ठीक है. Now let us just try to go ahead and write everything down. अगर मुझे ये सब कुछ कहीं पे mention करना है एक ग्राफ में, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ? How can I show this? बेटा good 1, good 2. ठीक है. X axis is what? M by P1. इनकम है 14, प्राइस ऑफ गुड 1 2 है, सो X axis हो गया 7 units. Y axis is what? M by P2. इनकम हमने 14 निकाला, प्राइस ऑफ गुड 2 1 है, 14. ये हो गया Y axis पॉइंट. So here I have 7, here I have 14 and बेटा ये हो गया मेरा बजट लाइन. दिस इज माय बजट. Budget line has to pass through the point of endowment. तो endowment bundle क्या था? What's the endowment bundle? Endowment bundle is 4, 6, right? But somewhere here is 4,
This is 6. This is my endowment bundle. What is the slope of budget line? Slope is -2. Minus shows downward sloping and वैसे 2 है. ठीक है. Suppose बेटा that your initial equilibrium is here. ये आपका equilibrium point है. Okay. How do we find equilibrium? Through tangency of indifference curve and budget line. जहां पे indifference curve of budget line tangent होते हैं वो हमारा equilibrium point होता है. Now listen to me very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये बहुत important है. When consumer equilibrium point is point E, तो equilibrium point का एक property है. Equilibrium point has a property. What is the property of equilibrium point बेटा? Property ये है that this point is preferred or revealed preferred over all other affordable bundles. This point is revealed preferred over all other affordable bundle. माने अगर मैंने ये point choose किया है, if I have chosen this point, then all other points that are affordable. कौन-कौन से points affordable हैं? Anything on or below budget line is affordable. So all these points बेटा ये affordable हैं. All these points they are affordable. All these points they are affordable. So as compared to all affordable points, मतलब any point which are my affordable bundles beta, all points on or below budget line. जो भी points budget line के ऊपर हैं या budget line के अंडर हैं, all points on or below budget line, above them I am choosing my equilibrium bundle. मैंने अपने equilibrium bundle को choose कर लिया. I am choosing my equilibrium bundle. Is this clear बेटा? ये clear हो गई इतना बात? Now Case 1. Suppose price of good one decreases. Suppose बेटा मैं आपको बोल दूं कि price of good one is now 1 rupee. तो can you tell me what will be income of consumer? Income of consumer is value of endowment bundle. Income of consumer is value of endowment bundle. तो हमारा endowment bundle क्या है बच्चे? What is my endowment bundle? My endowment bundle is 4,6 है ना? तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2. P1 चेंज हो गया. It is 1. P2 is also 1. 4 6. तो इनकम क्या आ जाएगा बेटा? 10 rupees. बेटा what will be x-axis point? It will be m by px. तो 10 by 1 10. बेटा what will be y-axis point? So I will write p1. m by p2. इनकम है 10, ये भी 10 10. बेटा what is slope of budget line now? P1 by P2. 1 by 1 minus 1. बेटा हमें पता है, we know this thing, that all budget line pass through endowment bundle. All budget line pass through the endowment bundle. Endowment bundle has not changed. Endowment bundle unchanged है. So new budget line will pass through this endowment bundle बेटा. और अब x axis का हमारा intercept क्या है? 10. Y axis intercept is what? 10. So new budget line will be this. New budget line will be this. है कि नहीं? तो बेटा this is my new budget line.
ये हो गया हमारा न्यू बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अब आता है, वेयर विल बी, ये क्वेश्चन 1 है, केस 1 नहीं, इसको क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, कि प्लॉट न्यू बजट लाइन। बेटा क्वेश्चन 2, वेयर विल न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई, मतलब अब नया इंडिफरेंस कर्व कहां होगा, वेयर विल यू सी न्यू टेंजेंसी बंडल, वेयर विल बी न्यू कंजम्पशन बंडल, नया कंजम्पशन बंडल कहां होगा। सो बेटा ट्राई टू सी समथिंग, जो भी मैंने ऑरेंज से मार्क किया है उसके ऊपर अर्लियर इक्विलिब्रियम बंडल वाज प्रेफर्ड, बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम्ड दिस बंडल, जब हमने ये पॉइंट ई चूज किया, व्हेन वी चोज दिस पॉइंट ई, all points marked with orange were affordable, फिर भी हमने पॉइंट ई चूज किया। सो व्हेन वी वेंट अहेड एंड व्हेन वी चोज पॉइंट ई, जब हमने इस पॉइंट को चूज किया, ये जो हमारा ऑरेंज सेट है दिस ऑरेंज सेट, ये सारा अफोर्डेबल था, ऑल दिस वाज अफोर्डेबल, ठीक है, ऑल दिस वाज अफोर्डेबल। सो व्हेन कंज्यूमर chose बंडल ई, पूरा जो हमारा ऑरेंज सेट है, इट वाज अफोर्डेबल, बट ई वाज प्रेफर्ड, बट हमने ई को प्रेफरेंस दिया, वी प्रेफर्ड ई, व्हेन द व्हेन ऑल अदर वर अफोर्डेबल वी प्रेफर्ड ई, ठीक है। सो इफ वी प्रेफर्ड ई व्हेन अदर बंडल्स वर अफोर्डेबल, तो अब हम वो वर्स ऑफ बंडल पे तो नहीं जा सकते ना, कंज्यूमर शुड नॉट गो टुवर्ड्स वर्स ऑफ बंडल, सो कंज्यूमर कैन नॉट go towards worse of bundles। समझो ध्यान से, इफ द कंज्यूमर कम्स हियर, अगर कंज्यूमर अपने इंडिफरेंस कर्व को यहां ले आया, तो वो तो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे हो गया ना, ही विल बी ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, if he will be on a lower indifference curve, his utility will decrease, right? So he will become worse off, we don't want this, हमें ये नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर अब कहां जा सकता है, he cannot go in the orange region, ऑरेंज रीजन से ऊपर वाला बंडल तो वो पहले ही प्रेफर कर रहा था, he was preferring this bundle, so he cannot go in the orange region, so where he can go beta, he can go here, his new equilibrium can be anywhere on this black part of the budget line, समझे। so he can only, his new equilibrium can lie only in this part of budget line, new equilibrium region। अगर वो, so green budget line is the new budget line, है ना, हमारा green budget line new budget line था, but in this new budget line if I am in this region बेटा, तो I will become worse off, मैं worse off हो जाऊंगी, right, I will become worse off, है ना, I don't want to become worse off, so therefore मैं उस रीजन में जाऊंगी जहां का प्रेफरेंस से रिलेशन नहीं होगा, एनीथिंग इन द ऑरेंज पार्ट, उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी आई वाज कंज्यूमिंग, सो आई विल बिकम वर्स ऑफ, सो आई वांट टू गो टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द न्यू बजट लाइन, सो दिस विल बी माय न्यू इक्विलिब्रियम रीजन, दिस विल बिकम माय न्यू इक्विलिब्रियम रीजन, ठीक है। अब अगर मेरा नया इक्विलिब्रियम सपोज इट इज हियर, माने आई एम कंज्यूमिंग मोर देन एंडोमेंट, और अर्लियर आई वाज कंज्यूमिंग लेस देन एंडोमेंट, माने पहले अर्लियर आई वाज अ सेलर, क्योंकि मैं एंडोमेंट से कम कंज्यूम कर रही थी, आई वाज सेलिंग, एंड नाउ आई एम अ बायर, सो कंज्यूमर विल कन्वर्ट फ्रॉम अ नेट सेलर टुवर्ड्स अ नेट बायर, कंज्यूमर विल कन्वर्ट टुवर्ड्स फ्रॉम अ नेट सेलर टुवर्ड्स अ नेट बायर, बात समझ में आई। दिस इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम, ठीक है। सो द न्यू इक्विलिब्रियम
consumer will be net buyer of good one. Consumer will become net buyer of good one. नया इक्विलिब्रियम ऐसा होगा that consumer will become net buyer of good one. Okay? ठीक है बेटा. Homework question. Consider a situation when consumer is initially net buyer of good one. Price of good one increases. How will equilibrium change? Try to do this question for the next class. Okay. Hi, good afternoon, good evening, everyone. Better now, we will go ahead and take this homework question first because this is very important question. देखो पढ़ो ध्यान से, try to read the question. It says, consider a situation when consumer is initially net buyer. तो माने, I have a budget line. ये good 1 है. This is good 2. But it is passing through the endowment bundle. यहाँ कहीं पे हमारा endowment bundle है. Omega 1, omega 2. And initially consumer is net buyer. Net buyer माने initial equilibrium यहाँ कहीं पे. It is consuming more than endowment. So हमारा initially equilibrium point A है. Initial equilibrium point A. बेटा मतलब अगर if the consumer is preferring A, so he is preferring A over all possible affordable bundles. तो क्या क्या इस टाइम पे वो खरीद सकता था? Anything on the budget line or below the budget line. So A is preferred over shaded region. A is preferred over shaded region. अब देखो ध्यान से, try to read it out what it is saying. It is saying price of good one increases. तो बेटा ध्यान से समझो, if price of good one increases तो क्या हो जाएगा? P1 by P2 भी increase हो जाएगा. If P1 will increase, P1 by P2 will also increase. तो बेटा slope of budget line increase हो जाएगा. नेगेटिव साइन मत सोचो, जस्ट थिंक लाइक दिस. सपोज इफ आई टेल यू प्राइस ऑफ गुड 1 2 है, प्राइस ऑफ गुड 2 भी 2 है, तो स्लोप अभी तक है 2 डिवाइडेड बाय 2 1. स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है. ये लाइन है बजट लाइन. नाउ प्राइस ऑफ गुड 1 हैज इंक्रीज्ड. माने सपोज प्राइस ऑफ गुड 1 3 हो गया. सो व्हाट विल बी स्लोप? P1 by P2 3 by 2 1.5. तो अब परपेंडिकुलर 1.5 है और बेस 1 ही है. सो लाइन विल बिकम स्टीप. So whenever price of good one will increase because the slope is increasing, तो क्या होता है? Budget line becomes steeper. Budget line becomes steeper. But budget line passes through the endowment bundle. Endowment bundle अभी भी affordable है. It is still affordable. So budget line will pass through the endowment bundle. Is this making sense? So I have to draw a
steep budget line passing through the endowment bundle, माने मेरा budget line ऐसा कुछ हो जाएगा, like this. You can take example also. कोई एक endowment bundle ले लो, W1 W2 is 1,1, है ना? तो earlier आपका income क्या आ जाएगा? What could be your earlier income बेटा? It would be 2 into 1 plus 2 into 1, it will be 4. And beta, what will be your new income? It will be 3 into 1 plus 2 into plus 2 into 1, which means it will be 5. So what will be your earlier intersection points? X-axis intersection will be income by price of good 1. 4 by 2, 2. Y-axis intercept will be what beta? Income by price of good 2. 4 by 2. That means 2. What will be your new intercept point beta? X-axis intercept point will be income by price of good 1. 5 divided by 3. 1.33. And y-axis intercept क्या हो जाएगा बेटा? Income by price of good 2. 5 divided by 2. 2.5. So y-axis intercept earlier it was 2. Now it is 2.5. X-axis intercept earlier was 2. Now it is 1.33. Is this clear? Is this clear? So budget line has become steeper. Budget line has become steeper. समझे? Now it is saying that which will be your new bundle? How will your equilibrium change? So we cannot consume in the orange region. Orange region में तो हम नहीं consume कर सकते हैं, because over that bundle A was preferred. A को हमने पहले ही prefer कर दिया, तो हम इसमें नहीं, यहाँ नहीं consume कर सकते. We have already given preference to bundle A, so we cannot consume in this part of the budget line. No. So where can we consume beta? We can consume here, in this part of the budget line. नए बजट लाइन पे we cannot consume in this part. हम इस वाले रीजन में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, because this region will give me a lower indifference curve. It will make consumer worse off. So we can only consume in this region beta. So somewhere here can be your new equilibrium. And at new equilibrium अगर हम देखें तो consumption is less than endowment. So it means that consumer will now become net seller of good 1. Consumer will now become net seller of good 1. ये बहुत important है from exam point of view. It's very, very important. Consumer will now become net seller of good 1. Is this clear now? ठीक है बेटा. Now let's talk about offer curve and demand curve. Offer curve and demand curve. तो बेटा what is price offer curve? POC क्या था? Price offer curve is joining all equilibrium points when price of good changes. Joining all equilibrium point when price of good changes. है कि नहीं? That was the price offer curve, right? And beta, what is the demand curve? When we draw price on one axis and demand on other axis, तो बेटा वो demand curve हो जाता है. तो let us try to go ahead and let us try to see this now. इस पे आ जाते हैं. Let us try to go ahead and let us try to see what we have learned here, beta. So try to notice here, beta,
इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था? पॉइंट ए. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट बी. पॉइंट बी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हियर? इट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन इंक्रीजेस. यही तो हमने दिखाया, that when price of good one increases, how demand of the good will change. है कि नहीं? So when we are talking about price offer curve, it will join all equilibrium points. माने if I join point B and point A, जो मुझे मिलेगा that will be my price offer curve. Joining all equilibrium points, अगर हम सारे equilibrium points को join कर देते हैं as price changes, when we join all equilibrium points, that is my price offer curve. बात समझ में आई? Similarly, if I go to one more diagram here, बेटा, ये जो हमने last class में किया था, one more diagram. So if you notice, here we were showing decrease in price of good one. Initial equilibrium point ये था बेटा, you remember? New equilibrium point ये था. If I join all equilibrium points, let me do it with a separate color. If I join all equilibrium points, as price changes, जैसे जैसे price change हो रहा है, जो हमारे different equilibrium points आ रहे हैं, as I go ahead and I join all different equilibrium point as price changes, that is called as price offer curve. So this is my price offer curve. Clear हुई बात? So price offer curve is nothing but the different equilibrium points joined together. Locus of different equilibrium points. जब हमने अलग अलग equilibrium points को join किया as price changes, it is the price offer curve. Now let's talk about the demand curve. To plot the demand curve, we can take price on one axis and demand of good on other axis. So price of good one, demand of good one. ठीक है. बीच में मैंने I have just made one point here, beta. This is my endowment bundle. This is my endowment bundle. ठीक है. अच्छा, now tell me something. बेटा, पहले जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस, उस पे हमारा डिमांड कितना था? ए, है ना? इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट था ए एंड डिमांड इतना था. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ बी डैश एंड डिमांड इतना हो गया. So when my price increased, जब price of good one increase हुआ, when price of good one is increasing, demand of good one is decreasing. पहले हम endowment से ज्यादा डिमांड कर रहे थे, अब हम endowment से कम डिमांड कर रहे हैं. So when price of good one was suppose some P1, कुछ एक प्राइस था, we were demanding more than endowment. यहां पे हम endowment से ज्यादा डिमांड कर रहे थे. And when price increased, so we are demanding less than endowment. तो जब प्राइस इंक्रीज हो गया, we are demanding less than endowment. If I join these points, but I get the demand curve. When we join these points, we get the demand curve. So demand curve is showing relationship between price and demand of good X. What it is showing? Price and a relationship between price and demand of good X. समझे बात को? Is this making sense? Right? So this is how we can plot the demand curve. ठीक है. अच्छा, one last thing here I want to explain. Sometimes they ask, find net supply
तो बेटा नेट सप्लाई क्या होगा? when is there a supply? सप्लाई कब होती है? You will be supplying if you consume less than endowment. अगर मेरा कंजम्पशन endowment से कम है, only then I will be supplying the commodity. भाई I came with 10 units, I am consuming 4 units, तभी तो मैं 6 units सप्लाई कर पा रही हूँ. Only then I am able to supply 6 units. So supply can be written as the difference between endowment and consumption. ये endowment that minus 10 minus 4 ये ही तो supply है, this 6 units. So net supply will be endowment minus consumption, right? As long as it is positive. As long as it is positive. ठीक है. अच्छा, if बेटा endowment suppose 10 units था and consumption 12 units हो गया, तो am I supplying anything in the market? No, I am not supplying anything in the market. अब भाई I came with 10 units, I am consuming 12 units, so there is zero amount supplied in the market. उल्टा मैंने मार्केट से 2 और यूनिट्स ले लिए. I purchased 2 more units from the market. So my supply curve will be 0 if it is not positive. अगर ये अमाउंट endowment minus consumption नेगेटिव आता है, जैसे यहां पे endowment 10 units था, consumption 12 हुआ, I am not supplying anything to the market. मैंने मार्केट को कुछ सप्लाई नहीं किया. I purchased from the market, so supply is 0. This is the equation of supply curve. इसको बोल देते हैं equation of the supply curve. Right? ठीक है बेटा. Again, let me go ahead and give you one homework question. So, price of good 1, 2 rupees. Price of good 2, 3 rupees. Endowment bundle 5,6. New price of good 1, 1 rupee. Find offer curve and demand curve of good 1. Find offer curve and demand curve for good 1. ठीक है? Just try to do this on your own. Okay, beta. Thank you. Hello, beta. Good afternoon, everyone. So, beta, give me a minute. Okay. Hi, good afternoon, everyone. Beta, today we will go ahead and we will talk about the application of buying and selling in endowment. ठीक. अब इस केस में first of all we want to go ahead and we want to examine what happens when the price of the good changes. तो अब देखो ध्यान से. See, in this particular case, when price of good will change, when price of good will change, तो बेटा इससे क्या हो जाएगा when price of good changes? It is going to go ahead
and it is going to change value of endowment. It will change value of endowment. जैसे ही price of good change होगा, it will go ahead and it will change the value of endowment. और अगर value of endowment change हो गया, so it will change income of consumer. तो ये एक additional, this is an additional effect. This is an additional effect. अभी तक क्या होता था? What was happening till now? That okay, your budget line was P1x1 plus P2x2 equal to income of consumer, and when price of good one, if it was changing to P1 dash, the budget line was changing to P1 dash x1 plus P2 x2 equal to income of consumer. माने price के change होने पर the budget line was changing, right? But there was no impact on income of consumer. Income of consumer was constant, right? अभी तक income पे कोई change नहीं था. The income of consumer was constant. But beta, in the presence of endowment bundle, जैसे ही हमारे पास endowment bundle आया, in the presence of endowment bundle, what is income of consumer? Value of endowment bundle. जो endowment bundle का value है, whatever is the value of the endowment bundle, that will become the income of the consumer, है कि नहीं? And when this endowment bundle value will change, whenever price or endowment changes. But what is the value of endowment bundle? P1 omega 1, P2 omega 2. तो माने जब भी प्राइस चेंज होगा तो जो बंडल हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, वॉट एवर बंडल वी आर एंटरिंग द मार्केट विद, दैट विल ऑल्सो चेंज. एंड व्हेन दैट विल चेंज, सपोज प्राइस डिक्रीजेस, तो बेटा वैल्यू ऑफ एंडोमेंट बंडल विल डिक्रीज. है कि नहीं? अगर किसी चीज का प्राइस गिरेगा, सपोज आई bring one orange and two apples. One orange price was 10 rupees. Now the same orange is for 5 rupees. So price of orange has decreased. So when price of orange will decrease, तो मेरा जो इस bundle का value है, it will also decrease. When the value of endowment bundle will decrease, it will decrease the income of consumer. है कि नहीं है? It will decrease the income of the consumer. But this is called as the endowment effect. This is called as the endowment effect. Is this clear? So what is endowment effect? What is the endowment effect? Endowment effect is understanding कि जब आपका price change होगा, the value of endowment will change. When this will change, तो आपका जो income है वो change होगा, और जब वो change होगा तो आप जो good demand कर रहे हो वो भी change हो जाएगा. Demand of good will change. Whatever good you are demanding, that will change. When we try to find this effect, that is called as the endowment effect. उसी को हम endowment effect बोलते हैं, right? Is this clear? ठीक है. अब ध्यान से एक बारी let's try to understand this a bit more. थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. So till now, whenever we were writing our Slutsky equation, we had two kind of effects. हम लिख रहे थे total और price effect is equal to income effect plus substitution effect. ये लिख रहे थे.
So we were saying that when price of good decreases, तो first relatively good becomes cheaper. वो good सस्ता हो जाता है जब उसका प्राइस गिरता है. So you increase the demand of that good. This is called as substitution effect. Whenever price of the good decreases, relatively the good becomes cheaper. वो गुड दूसरे के मुकाबले सस्ता हो गया तो आप उसका डिमांड इंक्रीज कर दोगे. दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. बट द अदर थिंग दैट वी स्टडीड इज income effect, which says that when price of good decreases, real income increases. जब भी एक गुड का प्राइस डिक्रीज होगा तो रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी. And when real income will increase, then for normal goods, demand will increase. For normal goods, demand of the good will increase. Clear है? But now we have an additional effect. एक तीसरा effect आ गया, which is the endowment effect. ये हो गया additional effect, which is the endowment effect. जो क्या कह रहा है? That when price of good decreases, then value of endowment bundle will also decrease. जो बंडल मैं मार्केट में लेकर आ रही हूं उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. So this will decrease the income of the consumer. And because income कम हो गई, this will change the demand of good. Right, beta? So, beta, this effect that we are studying here, ये हो गया आपका endowment effect. This is your third effect, and this is called as your endowment effect. So there are three effects. One is called as substitution effect. Other one is called as income effect. Other one is called as endowment effect. तीन effects हो गए, right? Now, if we go ahead and if we look at our Slutsky equation, so what was the equation, beta? Change in demand due to change in price. इसका दो components थे, substitution effect plus income effect. यही derive किया था हमने, substitution effect plus income effect, right? So we were saying that there are two impacts. इसको बोल रहे हैं हम substitution effect, and this is called as income effect. Now we are saying that we are rewriting this equation. इसी Slutsky equation को, this Slutsky equation, I am rewriting this equation, और इसी में हम एक नया effect include कर रहे हैं, and that effect is called as endowment effect. That effect is called as endowment effect. So there is a third effect in Slutsky equation, beta. This is your new Slutsky equation in which हमारे पास एक additional effect आ जाता है, which is the effect of the endowment effect. We have an additional effect, right? And what is my endowment effect? Endowment effect is basically nothing but change in demand due to change in income into change in income due to change in price. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Let's try to understand this thing. तो बेटा क्या हुआ?
When suppose price of good one decreases, तो वैल्यू ऑफ इंडोमेंट डिक्रीज हो जाएगा P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2. व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन विल डिक्रीज, तो ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल डिक्रीज, है कि नहीं है? वैल्यू ऑफ द इंडोमेंट बंडल विल डिक्रीज. बेटा इफ वैल्यू ऑफ इंडोमेंट बंडल विल डिक्रीज, तो आपका इनकम विल डिक्रीज. सो प्राइस के चेंज होने से इनकम इफेक्ट हो गया. दिस चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस. एंड व्हेन इनकम विल डिक्रीज, सो डिमांड ऑफ गुड शुड चेंज. तो ये वाला हो गया चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम. ठीक है. सो दिस इज माय इंडोमेंट इफेक्ट. दिस इज माय इंडोमेंट इफेक्ट. समझे? इज दिस क्लियर? ओके. नाउ बेटा वी नो कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इस केस में इज वैल्यू ऑफ एंडोमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट? P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2. लेट अस ब्रिंग चेंज थ्रू आउट. हर जगह चेंज लिख दो. सो चेंज इन इनकम P1, चेंज इन P1. ओमेगा 1 एक कांस्टेंट मेरे पास बंडल है जो मैं मार्केट में लेकर आई हूं, राइट? सो दैट इज कांस्टेंट प्लस चेंज इन P2 इंटू ओमेगा 2. बट करेंटली आई एम ओनली इवैल्यूएटिंग चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वन. हम सिर्फ एक गुड का प्राइस चेंज कर रहे हैं. वी आर ओनली चेंजिंग वन गुड प्राइस. सो चेंज इन P2 को हम 0 एज्यूम करेंगे, राइट? सो आई विल गेट चेंज इन इनकम इज इक्वल टू ओमेगा 1 change in P1. So change in income by change in P1 will be omega. Clear हुआ? So this is this part. How income changes when price changes. देखो, how income changes when price changes. This is omega 1. Clear? ठीक है. तो what can be written as endowment effect बेटा? ध्यान से देखो, what is endowment effect? How demand changes when income changes. How X changes when income changes, into how income changes when price changes, जिसका वैल्यू हमने निकाल लिया है ओमेगा 1. So into omega 1. This will be your endowment effect. So this endowment effect, अगर मैं इसी इक्वेशन पे वापस आ जाऊं, I can rewrite this equation as this. है ना? अच्छा, from this can I take this common beta? So I can rewrite this equation as this. I can rewrite this equation as this. Is this clear? So this is my Slutsky equation. ये मेरा Slutsky equation हो गया. Okay? Okay बेटा. चैप्टर है जो क्वेश्चन करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों पढ़ी जाए इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट एंड व्हाट शुड वी लर्न इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. उस पर ये चैप्टर है, राइट बेटा? सो द क्वेश्चन इज व्हाट macroeconomics is about. Macroeconomics क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है, that is what we want to understand. अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चे. मैक्रो मीन्स बिग, माइक्रो मीन्स स्मॉल. तो मैक्रो का इंप्लीकेशन हो जाता है बिग और माइक्रो का इंप्लीकेशन हो जाता है स्मॉल. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट मीन्स आई एम टेकिंग द कंट्री एज अ होल. मैं पूरे नेशन की एक साथ बात कर रही हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट नेशन एज अ होल. So we can say that macroeconomics, it is the study about the structure and performance of the national economy.
जब हम पूरे नेशन की एक साथ बात करते हैं, इंडिया का जीडीपी कितना, यूएस का जीडीपी कितना, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन एज अ होल ना, हम पूरे नेशन की एक साथ बात कर रहे हैं. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेशन एज अ होल, उसको बोल दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट बेटा? सो वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of the structure and performance of the nation as a whole. जब हम पूरे के पूरे देश की एक साथ बात करते हैं, when we talk about nation as a whole, और हम उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो. क्लियर है बच्चे? ओके. अब हम बात करते हैं इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. किस किस इशू पे बात करनी होगी अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किस किस बारे में हमें बात करनी चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट determines nations long run economic growth. अब अगर मैं सोचूं कि यार इंडिया 1991 में कैसी थी और इंडिया आज कैसी है, और अब मैं पूछूं कि अच्छा इंडिया 2050 में कैसी होगी, सो आई एम ट्राइंग टू आस्क कि लॉन्ग रन में इंडिया की ग्रोथ कैसी. हाँ, 1950 से आज तक हमने कितना ग्रो किया, और आज से लेके 2050 तक हम कितना ग्रो करेंगे, व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 6 months, इन द नेक्स्ट 50 years, इन द नेक्स्ट 20 years, उसे बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव. अब ये किस पर डिपेंड करेगा? कैसे पता चलेगा कि इंडिया ज्यादा ग्रो करेगा या चाइना ज्यादा ग्रो करेगा या यूएस ज्यादा ग्रो करेगा? किन फैक्टर्स पे इस बात को हम एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा? क्या वो लिविंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करेगा? क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, एक्सेट्रा? तो किस बेसिस पे मुझे पता चलेगा, व्हाट विल बी द बेसिस टू एस्टिमेट लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ? लॉन्ग रन में इंडिया कैसा परफॉर्म करने वाली है, हाउ विल अ कंट्री परफॉर्म? वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें बताएंगी कि कंट्री कैसा परफॉर्म करेगी? दैट इज बच्चे द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी वांट टू एड्रेस. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है कि व्हाट डिटरमाइंस नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये हमें पहले जानना जरूर. सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट. थोड़ा सा समझो जरा बात को बेटा. न्यूज में कभी कभी सुना है ना कि दिस ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई इन इंडिया. इस साल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी इंडिया में, राइट? या वी हैव गॉन अहेड एंड वी हैव हर्ड कि इस साल ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन विल बी वेरी हाई, बहुत महंगाई आने वाली है ना? तो बेटा क्वेश्चन इज कि व्हाट विल गो अहेड एंड व्हाट विल डिटरमाइन कि कैसे इंडिया परफॉर्म कर रही है, ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है? कैसे पता चलेगा कि क्या इंडिया में इन्फ्लेशन हाई होने वाली है या लो होने वाली है, क्या महंगाई आने वाली है या महंगाई नहीं आने वाली है? ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. व्हाट कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ टू फ्लक्चुएट? इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है और कब कब फ्लक्चुएट करती है, वो फैक्टर्स जानना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है. दैट इज द एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट बेटा? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस रीजन से हो रही है, किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है। क्यों ऐसा है कि अगर मैं कंट्री ए की बात करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और जब मैं कंट्री बी की बात करती हूँ तो वहां पे सबके पास जॉब है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री में जॉब है और किस कंट्री में जॉब नहीं है? हाउ विल वी गो अहेड एंड नो दैट? दैट इज द थर्ड थिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करती है, राइट? सो द थर्ड क्वेश्चन दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर, दैट इज व्हाट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होती है और किस रेट पे रहती है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट 2% रहेगी, 4% रहेगी, कितनी रहेगी ये कंट्री में? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करती है, राइट बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करेगी, व्हाट कॉजेस prices to rise? अब थोड़ा सा समझो, प्राइजेस जब बढ़ते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। पहले लिख लेते बच्चे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। माने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि 2010 में ना एक चॉकलेट का पैक 10 रुपीज का आता था, एक किटकैट, उसमें 4 स्लाइसेस होते थे, हाँ, और 2020 में वही चॉकलेट का पैक 20 रुपीज का आ रहा है। तो प्राइसेस हैव डबल्ड इटसेल्फ ना, प्राइस डबल हो गए हैं। तो किस वजह से इन्फ्लेशन आई है? क्या वो रीजन है कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है? दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल आंसर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है व्हाट कॉजेस प्राइसेस टू राइज, किस वजह से इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है, हाउ डज बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम affect nations economies? देखो बच्चे, दो तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। वन इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच डज नॉट ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इकोनॉमी जो अपने अंदर ही अंदर सारे काम करती है, अपने अंदर ही प्रोड्यूस करती है, अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेती है, दैट इकोनॉमी विच डज नॉट ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर के देशों के साथ कुछ भी उसका लेन देन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जो बाहर के देशों के साथ ट्रेड करती है, जैसे इंडिया, बच्चे इंडिया बाहर से पेट्रोल खरीदती है, बाहर अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करती है, बाहर अपनी सर्विसेज देती है। सो द इकोनॉमी विच ट्रेड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इकोनॉमी जो बाहर के देशों के साथ लेन देन करती है, दैट इकोनॉमी विच टेक्स एंड सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेटा दैट इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ बेटा, क्लियर हुई ये बात? अब समझो, we are saying that macroeconomics tells us how being part of global economic system affect nations economy। मतलब जब मैं closed economy से open economy बनती हूँ, when I go from being closed to open economy, जब मैं close से open बनी तो कैसे मेरी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा? जब इंडिया, अभी तक इंडिया किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर रही थी, ना यूएस के साथ थी, ना यूके के साथ थी, किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर रही थी। अब इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम आपसे चीजें खरीदेंगे, आपको चीजें बेचेंगे। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी में कैसे फर्क पड़ा? हाउ इज इट अफेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी? वो इंडिया की इकोनॉमी को कैसे फर्क पड़ाता है?
That is the question which we are asking. Beta, next question. That macroeconomic answers. Can government policy be used to improve nation's economic performance? ये क्या बोल रहे बच्चे? ये बोल रहा है कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जिससे नेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए? कुछ भी। क्या गवर्नमेंट जब फ्लाईओवर बनाती है तो उससे लोगों को इनकम मिलती है? क्या गवर्नमेंट जब कोई कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी जिससे चीजें इंप्रूव हो पाए? तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज यूज हो सकती हैं उसके इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज बी यूज्ड? क्या हम गवर्नमेंट की पॉलिसी यूज कर सकते हैं उस नेशन को इंप्रूव करने के लिए? ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इधर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में ईस्ट एशियन टाइगर के बारे में बताना चाहूंगी। ईस्ट एशियन टाइगर में हमारी इकोनॉमीज आती हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया। अब इन इकोनॉमीज ने क्या किया ना बच्चे, यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, लोगों की एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहा, और उसकी वजह से इनका जो इकोनॉमी का जीडीपी है, जीडीपी मींस व्हाट, इकोनॉमी की जो इनकम है वो मेनी फोल्ड्स इंप्रूव हो गई, वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये ईस्ट एशियन टाइगर ने गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उन्होंने बोल दिया एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसीज की वजह से क्या हो पा रहा है, यहाँ के लोगों को एजुकेशन मिली, जिसकी वजह से उन लोगों की इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा। राइट? सो यस, हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होंगी, will the government policies be such that it can improve the economy of the country, कि वो एक कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव कर। क्लियर हो गई बच्चे बात? ओके, अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, बच्चे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? बेसिकली क्या कभी ऐसा हुआ है, अब बहुतों के साथ अभी तो नहीं हुआ होगा बच्चा, मैंने भी बहुत रिसेंटली जाके बाहर ये देखा, इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। क्या होता है कि जब हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो कंट्री तो बहुत एडवांस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपको दुबई जाने को मिले तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ तो यार क्या कार्स चल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्स हैं। हाँ, या क्या क्या रियलाइज होगा हमें? हमें रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो बहुत बहुत ही लोगों की इनकम तो बहुत ही हाई है। हाँ, या फिर हमें क्या रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्राइम नहीं हो रहा। यहाँ पे तो मैं अगर अपना एक एक रिसर्च हुई अभी, एक रिसेंटली आई वाज सीइंग दिस थिंग, जहां पे क्या बोला जाता है कि अगर आप दुबई में अपनी कार के अंदर एक बैग भूल जाओ तो किसी भी तरीके से आपको ट्रेस करके आपका बैग आपको वापस कर देंगे। मतलब कोई आपका बैग चोरी नहीं करेगा, आपके बैग को कुछ नहीं होगा, वो बैग आपको वापस मिल जाएगा। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कैसे देखा जाता है कि हर देश में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अलग है, और ऐसे कैसे देखा जा रहा है कि यूएस जो है वो बाकी देशों से बहुत आगे चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दुबई फास्ट फास्ट ग्रो कर गया? ऐसा क्या अलग कर रहे हैं ये लोग? क्या चीजें हैं जो हम वहां देख रहे हैं जो डेवलपिंग नेशन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जो हमारा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक है, ये यही पूछ रहा है कि
क्यों हो रहा है कि कुछ नेशंस तो बहुत रिच होते जा रहे हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, दूसरे नेशन उतने रिच नहीं हो पा रहे हैं? ये कौन सा फैक्टर है कि रिच और पुअर नेशंस के बीच में डिफरेंस आ पाए? ठीक है, तो लेट्स राइट दिस डाउन बेटा। तो इसमें क्या है? फ्रॉम, प्लीज राइट डाउन, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, there is difference between developed, डेवलप्ड को ऑथर रिच बोल रहा है बच्चों, रिच नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। हाँ बेटा, तो ऑथर बोलता है कि देखो रिच नेशन और डेवलपिंग के नेशन के बीच में डिफरेंस तो है। अब उसने देखा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, यूएस का आज तक का पूरा ग्रोथ पैटर्न हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उसने इवैल्यूएट किया कि यूएस का जो ग्रोथ पैटर्न है ना, कैसा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यूएस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, व्हाई इज यूएस ग्रोइंग, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें ऑथर को रियलाइज हुआ कि पहला रीजन ये रहा है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, राइजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? तो बेटा देयर इज कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, डेमोग्राफिक डिविडेंड। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब एक नेशन शुरुआत करता है अपनी, तो शुरुआत में ना इसके पास बहुत सारे ओल्ड एज के लोग होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो जब एक नेशन अपनी शुरुआत करता है, व्हेन द नेशन स्टार्ट्स, उस टाइम पे उसके पास बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये सारे के सारे ना इस वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। तो शुरू में ये देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो बहुत हाई है, हाई डिपेंडेंट्स, बट जो नंबर ऑफ वर्किंग है, वर्किंग एज पीपल हैं, वो लो है बेटा। ऐसे में एक देश कभी ग्रो नहीं करेगा। तो ऑथर ये बोलता है कि यूएस में ऐसा देखा गया कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्टेडी थी। स्टेडी मतलब कांस्टेंट थी, एक कांस्टेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन थी। ये देखा जा रहा था कि हाँ, हमेशा इतने लोग तो काम कर ही रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं थी, ये बढ़ रही थी। तो क्योंकि ये लोग बढ़ रहे थे, तो अगर ज्यादा लोग काम करने के लिए होंगे, इफ आई विल हैव मोर पीपल टू वर्क, तो क्या होगा बच्चे? देयर विल बी मोर आउटपुट that will be created. So we saw that there was high working age population or a steady working age population, and this meant that there was continuous increase in the output of the economy. Right बेटा? तो पहली चीज क्या देखी गई? ये देखी गई कि पॉपुलेशन प्रॉपर थी। और कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा थी यूएस में? वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा थी। और क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो कंटिन्यूअसली आपका इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा था, इकोनॉमीज आउटपुट वाज इंक्रीजिंग। ये पहली चीज हो गई बेटा। बेटा पॉइंट नंबर 2 क्या देखा गया? हमने ये देखा कि ना ही सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर आउटपुट पर यूनिट लेबर वो भी बढ़ रहा था। सो आउटपुट पर यूनिट लेबर वाज इंक्रीजिंग। अब बेटा आउटपुट पर यूनिट लेबर कब बढ़ता है? वो तो तब बढ़ता है ना अगर लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। खुद सोचो, आज तक मैं 10 यूनिट्स बनाती थी, कल मैं 15 यूनिट बना पा रही हूँ, मतलब मशीन बहुत बेटर हो गई होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई।
एंड मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ पाई? मे बी आपने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी मुझे. सो व्हाट वाज सीन वाज दैट आउटपुट पर यूनिट लेबर वाज इंक्रीजिंग. और ये आउटपुट पर यूनिट लेबर का बढ़ने का मतलब ये था दैट एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी was increasing. हाँ बच्चे, ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेड अ रोल. तो ये देखा गया कि अरे सेम वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा काम कर पा रहा है. तो इसलिए भी धीरे धीरे यूएस जो है वो डेवलप्ड बनना शुरू हो गया. तो बच्चे इसमें ना द ऑथर हैज गिवन यू अ डायग्राम. उस डायग्राम में ऑथर ने यहां पर ईयर लिया है और यहां पर ना आउटपुट लिया है. एंड द डायग्राम इज अपवर्ड स्लोपिंग. मतलब विद टाइम अगर मैं यहाँ 1870 ले लेती हूँ और अगर मैं यहाँ पे 2008 ले लेती हूँ, तो विद टाइम जो हमारा आउटपुट था वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था. इट वॉज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. तो दो चीजें हुई. क्या क्या चीज हुई बेटा यूएस में? फर्स्ट, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ने लगी. जो लोग काम कर रहे थे वो प्रॉपर थे, डिपेंडेंट कम थे, काम इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा थे. एंड सेकेंड, लोगों की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी. राइट. सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई देयर वाज ग्रोथ इन यूएस. पहली चीज इस पे हमारे ऑथर ने फोकस किया. राइट. बेटा सेकेंड थिंग जो ऑथर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बिजनेस साइकिल. बेटा एवरीबडी विल रीड दीज पेजेस टुडे इटसेल्फ. आज ही बुक उठा के इन पेजेस को साथ में ही आप पढ़ोगे ताकि ये बाद के लिए बैकलॉग ना बन जाए. राइट. यू मस्ट फिनिश दिस टुडे इटसेल्फ. ओके बेटा नेक्स्ट चीज आती है हमारी बिजनेस साइकिल. अब बिजनेस साइकिल के बारे में हम एक बारी बात करते हैं. तो बिजनेस साइकिल पॉइंट ये बोलता है बेटा व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल इज बेसिकली द मूवमेंट्स इन द इकोनॉमी. मतलब लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. So we can say that any economy goes through this. देखो कोई भी इकोनॉमी पहले अपने बूम पे होती है, मतलब बहुत अच्छा हाई आउटपुट, बहुत ज्यादा आउटपुट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सबके पास नौकरी है, हाई एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी बहुत अच्छा है, हाई जीडीपी. आफ्टर बूम एक इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाती है. दिस पार्ट व्हेन द इकोनॉमी इज फॉलिंग ना बेटा, दिस पार्ट इज द पीरियड व्हेन यू हैव वी कैन से फॉल इन द आउटपुट, fall in employment, increase in unemployment, fall in GDP. Right beta? बच्चे in this period when everything is falling, जब सब गिर रहा होता है ना, that period is called the period of recession. फिर there is a time when the economy is at its lowest. Economy सबसे low point पे होती है. This point is called as the period of depression. This is the lowest point. सबसे कम आउटपुट है इकोनॉमी में. इकोनॉमी हैज वेरी लेस आउटपुट, इकोनॉमी हैज वेरी लेस पीपल एम्प्लॉयड. बहुत ही कम आउटपुट, कम एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में चल रहा होता है. देन बेटा व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग? देयर इज इंक्रीज इन द आउटपुट अगेन. हाँ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन. अब वापस आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इकोनॉमी रिकवरी कर रही है, ऑल्सो कॉल्ड एज रिकवरी. राइट. तो ऑथर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में ये बिजनेस साइकिल जो कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपेंशंस होते हैं क्यों होते हैं?
ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देगी आपको इस चीज का. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आस्क्स द वेरी क्वेश्चन कि व्हाई बिजनेस साइकिल्स हैपन इन द इकोनॉमी. ये बिजनेस साइकिल्स एक इकोनॉमी में क्यों होते हैं? बहुत रीजन हो सकते हैं. जब आउटपुट गिरा हुआ है, व्हेन आउटपुट इज लो, वर्ल्ड वॉर के पीरियड में आउटपुट वाज लो, इट कैन बी अ वॉर सिचुएशन, इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ थिंग्स लाइक कोविड-19. उस टाइम पे भी आउटपुट बहुत लो था, हम बोल रहे थे कि इकोनॉमी तो डिप्रेशन में चली गई है. सो देयर मल्टीपल रीजंस, बट उन रीजंस को इवैल्यूएट करना वही काम है एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट का, राइट? सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से, प्लीज राइट दिस डाउन बेटा विद मी, that business cycle describes short run fluctuations in the economy. इकोनॉमी में जो भी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन हो रही हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन हो, उसको बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन करता है. लाइक कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस, ये हो गई बिजनेस साइकिल. ठीक है, अब क्या बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या काम है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with identifying reason behind business cycle. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछ रहे कि ये बिजनेस साइकिल हो क्यों रही हैं, क्यों हम इकोनॉमी में इस पॉइंट पे हैं, या इस पॉइंट पे हैं, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, क्यों हैं हम यहाँ पर? दैट इज व्हाट दिस इज आंसरिंग. क्लियर है बेटा? कि बच्चे, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? दोज पीपल हु वांट टू वर्क, मैं काम तो करना चाहती हूँ बट मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही. सो दे आर लुकिंग फॉर वर्क, दे वांट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई बच्चे? दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, उनको मन है कि वो काम करें, दे आर विलिंग टू वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, मतलब ढूंढ रहे हैं काम. बट आर नॉट फाइंडिंग जॉब, बट उनको काम नहीं मिल रहा. आर अनएम्प्लॉयड, राइट बेटा? अच्छा, एग्जाम्पल देखो. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद से बोल रही हूं कि मेरे को नहीं काम करना, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू सिट एट होम, मेरे पेरेंट्स बहुत रिच है, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर वर्क, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर वर्क ओनली, मैं तो काम ढूंढ ही नहीं रही हूँ. दोज पीपल हु लुकिंग फॉर वर्क, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं ना, वो, और उनको काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है. जो काम ढूंढ ही नहीं रहे वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. सो वी कैन से दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेबर फोर्स बच्चे, राइट बेटा? बेटा, व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. या तो लोगों के पास नौकरी है, ईदर दे हैव जॉब, या लोगों के पास नौकरी नहीं है, दे डोंट हैव जॉब, पर वो ढूंढ रहे हैं. दोनों को मिलाकर हमारे पास आता है लेबर फोर्स. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स. जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं पर उनके पास नहीं है, डिवाइड बाय टोटल लोग जो काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हेन एंड व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साल ज्यादा क्यों है या इस साल कम क्यों है? कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं? दैट डिटरमाइन
अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमाइन करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में कम क्यों होती है? ये क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर, दिस इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल आंसर। ओके बच्चे, नेक्स्ट इन्फ्लेशन। बेटा व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है कि इन्फ्लेशन हो क्यों रही है, क्या रीजन है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई है, और जब हाई होगी तो उससे क्या होगा, हाउ विल इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी? These are the questions that macroeconomics will answer. So macroeconomics क्या ढूंढ रहा है, किस चीज का आंसर ढूंढ रहा है? Why is inflation high in particular economy? किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई क्यों है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा एक बात समझो जरा, बेटा सोचो, आपके पेरेंट्स आपको 3000 पर मंथ पॉकेट मनी देते हैं। पहले आप मेट्रो से आते थे और मेट्रो की आपकी जगह से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने की टिकट सपोज 40 रुपीज थी। अब उसी मेट्रो से जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हो तो सपोज ये 60 रुपीज की टिकट होगी। व्हाट विल हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट इंक्रीजेस? आप नंबर ऑफ विजिट्स कम कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव। सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, जब भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। व्हाट यू कैन परचेज विल डिक्रीज, सो द नंबर ऑफ योर विजिट्स विल डिक्रीज। हाँ, तो हाई इन्फ्लेशन is associated with low purchasing power. Clear बच्चे? Okay. Now बेटा next question बेटा, international economy. ओके बेटा, ट्राई टू सी। देखो, जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया दो तरीके की इकोनॉमी होती है, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब वो इकोनॉमी जो बाहर के लोगों के साथ ट्रेड नहीं कर रही है, और ओपन वो इकोनॉमी जो बाहर के साथ ट्रेड कर रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पूछता है कि जब हम क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम क्लोज्ड टू ओपन इकोनॉमी, how will the nation's economy be impacted? नेशन की इकोनॉमी कैसे चेंज होगी जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनेंगे? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे इसमें देयर आर टू वर्ड्स, एक बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जब आप बाकी देशों को अपना सामान बेचो, व्हेन यू सेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया से बाहर पैसा, बाहर चीजें जा रही हैं, जैसे कॉटन गया, कॉटन बेचा, वीट बेची, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी सर्विसेज बेची। व्हेन इंडिया इज सेलिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन रिटर्न इंडिया के पास पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग इन, वो हो गया एक्सपोर्ट। बेटा व्हाट इज इंपोर्ट? When India is purchasing, इंडिया ने पेट्रोल खरीदा, इंडिया ने कुछ और खरीदा, when India is purchasing, it is import. बेटा when export is more than import, तो export माइनस import को बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस।
क्या बोल देते हैं? ट्रेड सरप्लस. सो व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट वी हैव ट्रेड सरप्लस इन द इकोनॉमी. उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो उसको बोल देते हैं ट्रेड डेफिसिट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछती है कि ट्रेड सरप्लस होगा या डेफिसिट, और एक इकोनॉमी के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि सरप्लस है या डेफिसिट. व्हाट विल डिटरमाइन वेदर देयर विल बी सरप्लस और डेफिसिट इन द इकोनॉमी, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, दैट इज व्हाट इट गोज अहेड एंड टेल्स. क्लियर हुआ बात को? ओके बेटा, लास्ट फैक्टर दैट वी वांट टू डू, that is basically the factor of your policies. So please write down macroeconomic policy. बच्चे macroeconomic policy दो तरीके की होती है. It is of two types. One is called as fiscal policy and one is called as monetary policy. Fiscal, monetary. बेटा फिस्कल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट के खर्चों से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड. फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. मतलब जब भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या गवर्नमेंट ने किसी को सब्सिडी दी कि ठीक है ये चीज सस्ते में ले लो, सब्सिडीज, या गवर्नमेंट ने कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर किया, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट किए, टैक्सेस, दैट इज ऑल फिस्कल पॉलिसी. बेटा मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई के अंडर आता है. हाँ, और ये क्या है? ये एज द वर्ड सजेस्ट ये बताता है कि एक इकोनॉमी की मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, हम किस रेट से इकोनॉमी को मनी सप्लाई करें, तो वो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी. अब ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है. मतलब अगर रिसेशन होगा सो वी विल बी यूजिंग देम वेरी डिफरेंटली. अगर डिप्रेशन का पीरियड हुआ तो हम इनको बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे. अगर बूम का पीरियड हुआ तो हम इनको बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि गवर्नमेंट को इन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को कैसे यूज करना है. हाउ विल वी यूज दीज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट द नेशन, इससे मेरे नेशन को कैसे फर्क पड़ेगा. दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बताता है. एम आई क्लियर विद इट बेटा? ओके, नाउ बेटा बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करती है जिससे हम बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम. बेटा देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या कहते हैं? कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है. खर्चा मतलब क्या? गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्लाईओवर, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग. हाउ इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? इट इज मेकिंग फ्लाईओवर, इट इज मेकिंग हॉस्पिटल, इट इज मेकिंग स्कूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारा खर्चा है गवर्नमेंट का. हाउ इज गवर्नमेंट अर्निंग मनी? टैक्सेस कलेक्ट करके. सो इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट कम रही है और खर्च ज्यादा करके, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू, इट विल हैव अ डेफिसिट. This is the first. बच्चे what's the second? Second is called as trade deficit. Trade deficit मैंने आपको बताया ना, if exports are less than imports, import ज्यादा कर रहे हो और export कम कर रहे हो, तो that is trade deficit. These two problems together are called as twin deficit problem. और किसी भी गवर्नमेंट का क्या एम है? The aim of any government is to resolve both. हमें
बजट डेफिसिट को भी कम करना है और हमें ट्रेड डेफिसिट को भी कम करना है. वी वांट टू रिड्यूस बजट डेफिसिट आल्सो एंड ट्रेड डेफिसिट आल्सो. क्लियर है बात? These are the two problems of the government. ये दोनों ही गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज हाउ टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बारे में है कि हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एग्रीगेशन. बेटा एग्रीगेशन वर्ड कम्स फ्रॉम एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब है कंबाइंड. तो एग्रीगेशन का क्या मतलब हो गया? व्हेन वी कंबाइन इंडिविजुअल वेरिएबल्स टुगेदर. जब हमने सारी प्रॉब्लम्स को कंबाइन किया तो हमें एग्रीगेशन मिला. और एग्रीगेशन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल से. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बता देगा कि अच्छा फर्म्स अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, अच्छा कंज्यूमर्स अपना यूटिलिटी कैसे बढ़ाएं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक्सेट्रा. बट मैक्रोइकोनॉमिक्स बेटा, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज डीलिंग एज अ होल. पूरे नेशन के साथ मैक्रोइकोनॉमिक्स डील कर रहा है. सो इट इज डीलिंग विद एन एग्रीगेट प्रॉब्लम, कंबाइंड प्रॉब्लम के साथ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज डीलिंग. बेटा आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेशन एंड देन वी एंड. सो प्लीज राइट डाउन द प्रोसेस of summing individual economic variables to obtain economy-wise total is called aggregation. नेशनल इनकम की दी थी. ही वॉज वन ऑफ द अर्ली पीपल, जो ट्रेडिशनल लोग थे ना, जैसे मार्शल, पिगो, फिशर. दीज वर द ट्रेडिशनल पीपल. ये एकदम ही बेसिक डेफिनेशन इन लोगों ने हमें नेशनल इनकम की सजेस्ट की थी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या होती है ये, इसका क्या मार्शल ने बोला, एक बारी हम ये लिख लेते हैं. लेट्स राइट दैट डाउन. सो प्लीज राइट डाउन द लेबर एंड कैपिटल of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind. तो जो एक इकोनॉमी का लेबर और कैपिटल होता है, वॉट एवर इज द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, वो जो भी एग्रीगेट प्रोड्यूस करता है कमोडिटीज का, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा हो या बनानास प्रोड्यूस कर रहा हो. और नेट, यहाँ पे वर्ड नेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये नेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज आफ्टर डिडक्टिंग all the things like depreciation, like wearing out of capital. ये सब डिडक्ट करने के बाद जो नेट एग्रीगेट बचता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. तो ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन हमें दी थी मार्शल ने. उसके बाद अनदर डेफिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट इज पिगो की डेफिनेशन. सो पिगो सेड दैट नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव income of the commodity, of the community
including income derived from abroad, which can be measured in money. तो जितनी भी इनकम बेशक ही अब्रॉड से आ रही हो या हमारी अपनी कमोडिटी से आ रही हो, if I can measure that income in terms of money, then it is called national income. This definition was given by Pigou. ऐसे ही फिशर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी, and according to Fisher, national income was nothing but it was consumption. तो अगर national income में हम consumption criteria include कर दें तो फिशर की national income थी. तो अगर आप कोई भी डेफिनेशन देखते हो जिसमें वो बोलता है दैट नेशनल इनकम अल्टीमेटली इज द इनकम कंज्यूम्ड और रिसीव्ड बाय कंज्यूमर्स, द अल्टीमेट इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वो डेफिनेशन हमारी फिशर की नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो जाती है. तो बेसिकली ये तीन इंडिविजुअल्स की डेफिनेशन, मार्शल, पिगो एंड फिशर, इनकी डेफिनेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल. So when we talk about the concept of national income, the first important thing that we have is gross national product. Gross national product और GNP जो basically होता है, इसमें actually gross national से भी पहले we can talk about gross domestic product. Gross domestic product जो होता है वो हमेशा within the region होता है, within the boundaries of the country. Whether it is produced by residents or non-residents, but it is always within the boundaries of the country. Only that is why it is called the GDP of the country. इस GDP से हम GNP की तरफ जा सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं. जब भी हम नेशनल की तरफ जाते हैं डोमेस्टिक से, सो व्हाट वी डू फ्रॉम डोमेस्टिक टुवर्ड्स नेशनल, what becomes important is net factor income from abroad. National income basically वो income होती है which consists the income of the residents. चाहे वो resident within the boundaries हो या outside country boundary. But if I am only taking the income of the resident, then it is called national income. And if I'm taking the income of resident or non-resident, but within boundary, then it is domestic. तो ध्यान से समझो, यहाँ पे मेरे पास domestic income है. Domestic income में मेरे पास दो चीजें हो गई, resident, non-resident, but boundary के अंदर अंदर. यहाँ पर मेरे पास national income है. नेशनल इनकम में आ गए रेजिडेंट, सिर्फ रेजिडेंट, चाहे वो बाउंड्री के अंदर हो या अब्रॉड में बैठे हो, बट रेजिडेंट होने चाहिए. अब अगर मुझे यहां से यहां जाना है, आई शुड सब्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट का इनकम एंड आई शुड ऐड रेजिडेंट अब्रॉड का इनकम. सो इफ इन डोमेस्टिक इनकम I subtract the income of non-residents within country, of non-residents within country, ये subtract कर दो, and I add the income of residents outside India, तो I will get the national income. यही तो करना है. So domestic income, कोई भी doubt हो please write it in the chat section below. So domestic income plus net factor income from abroad gives me national income. This is my definition. I hope this is making sense. ये definition को अच्छे से समझ लो. Okay, इस definition के बाद आगे बढ़ते हैं. So now what I'm going to go ahead and do is we are going to talk about net versus gross. तो gross minus depreciation.
ये हो जाता है नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया हमारे पास नेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फैक्टर वर्सेस मार्केट प्राइस। बड़ा ही आसान है समझना। देखो, जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में होता है तो वो जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में आता है वो प्रोडक्ट में हमेशा टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स, जब आप मैकडोनल्ड्स में भी जाते हो तो आप जो उसमें प्राइस पे करते हो वो, जैसे अगर 25 रुपीज का बर्गर है तो आप 28 रुपीज पे करोगे, है ना। आप उसमें विद टैक्सेस पे करोगे। सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, और अगर कोई सब्सिडी मिली होगी तो सस्ता हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी। सो इट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट गिव्स यू द मार्केट प्राइस। ये 3 डेफिनेशन हमें याद रखनी जरूरी है। तो अब हम यहां से किसी भी चीज से किसी भी चीज पे पहुंच सकते हैं। जैसे जीडीपी एमपी से अगर मुझे एनएनपी एफसी पे जाना है सपोज, तो क्या करना पड़ेगा, इस जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए नेट में जाना है। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट हो गया। इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल हो गया। इस मार्केट प्राइस को फैक्टर में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, मार्केट से फैक्टर पे जाना है तो माइनस एनआईटी। अगर मैंने इतना कर दिया देन आई विल गेट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, आई विल गेट एनएनपीएफसी। तो एक आपके लिए, जस्ट वेट, जस्ट गो अहेड एंड आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो द क्वेश्चन फॉर यू इज, you are given NDP FC and you have to convert it to GNPMP। कैसे करोगे, पॉज लो और ये मेरे को एक बारी करके दिखाओ, ठीक है। बेटा वेलकम टू अ न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम रोज एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम CUET PG इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी पूरी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जो आज का हम फॉर्मूला लेने वाले हैं वो है प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला रहता है उसमें हम बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, जिसमें हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। बेसिकली हम इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड हो रही है उसी को ही इंक्लूड करना होता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या इंश्योर करते हैं यहाँ पर, हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी डबल काउंटिंग ना हो और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड। हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब एक बार हमारा जीडीपी एमपी निकल गया तो नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपी एफसी निकालना होता है। एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम ये 3 स्टेप्स करते हैं तो जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो एनएनपीएफसी मिल जाता है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट मेथड से एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकल सकता है। इनकम मेथड से सबसे पहले हम एनडीपीएफसी निकालते हैं। एनडीपीएफसी में सबसे पहले आ जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसी में हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसी में हम ऐड कर देते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये सब ऐड करने के बाद हमें इनकम मेथड से एनडीपीएफसी मिल जाता है।
अगर हमें इससे NNPFC पे आना है, माने नेशनल इनकम निकालना है, तो NDPFC में हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और हमें NNPFC का आंसर मिल जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों के खर्चे देखते हैं। अब वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, फर्म्स हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली, एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली हमें GDP MP देता है और इसमें आ जाता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंजम्पशन, जो भी लोग खर्चा करते हैं ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फर्म्स कर रहे हो। गवर्नमेंट का खर्चा, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। और नेट एक्सपोर्ट, जहां पे नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस। आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट को डिनोमिनेट करते हैं। डेप्रीसिएशन ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू का डिफरेंस होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल वैल्यू माइनस डोमेस्टिक वैल्यू होती है। GDPFC GDPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। NDPMP GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन होता है। और एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन को हम एक और तरीके से बता सकते हैं, दैट मीन्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल जो भी हो रहा है, कभी कभी उसको भी डेप्रिसिएशन बोल दिया जाता है। हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब एक बार ही हमारा GDPMP निकल गया तो नेशनल इनकम के लिए हमें NNPFC निकालना होता है। NNPFC निकालने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम ये 3 स्टेप्स करते हैं तो जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो NNPFC मिल जाता है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट मेथड से NNPFC यानी कि नेशनल इनकम निकालते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम टोटल इनकम है जो भी लोगों को मिलती है, इंडिविजुअल्स को मिलती है अलग अलग सोर्सेस से। चाहे ही वो पैसा वो वेजेस के थ्रू कमा सकते हैं या अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं या और किसी भी सोर्स के थ्रू जो भी उनको पैसा मिलता है वो पर्सनल इनकम है। पिछली क्लास में हम प्राइवेट इनकम पहले ही पढ़ चुके थे। प्राइवेट इनकम से ही पर्सनल इनकम निकलती है। प्राइवेट इनकम में हम पहले ही गवर्नमेंट की इनकम को हटा चुके थे और हमने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम को लिया था। अब इसी प्राइवेट इनकम में से अगर हम टैक्स को हटा दें, कॉर्पोरेट टैक्स को, और अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी हटा दें तो जो हमें आंसर मिलता है उसी को हम पर्सनल इनकम बोल देते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम की तरफ बढ़ेंगे ताकि अगर हमें न्यूमेरिकल में प्राइवेट इनकम निकालने को आए तो हमें पता रहे कि कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आपको एग्जाम में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है तो इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप डायरेक्ट पर्सनल टैक्स को ऐड करोगे और जो भी हमारा मिसलेनियस फीस या फाइन हाउस होल्ड ने दिया होगा, फीस या फाइन दिया होगा, उसे भी ऐड करोगे और ये करने के बाद आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगा। एक बार ये पर्सनल इनकम मिल जाए तो इसमें आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड कर दोगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे और जो आपको आंसर मिलेगा वो ही आपका प्राइवेट इनकम होगा।
आज हम प्राइवेट इनकम से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। पिछली क्लास में हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम की तरफ गए थे। अब हम इसी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हटा दें, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को भी हटा दें, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट भी हटाएं और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हटा दें, तो हमें जो यहां पर आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी एग्जाम में ये निकालना आ जाता है। पिछली 2 क्लासेस में हमने ये कोशिश की है कि हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़े। आज हम यहां से नेशनल इनकम तक का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर यहां पर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज ऐड कर देते हैं तो हमें एनडीपीएफसी मिलता है। इस एनडीपीएफसी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमें एनएनपीएफसी मिल जाता है और इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसी का उल्टा चार्ट आप खुद से प्रिपेयर करो। नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल About labor market, the first thing that arises is you have to understand that not everyone in the population is a working population. You have the entire population and you can divide the population in 2 parts: people who are working and people who are not working. People who are not working is called the dependent class. Don't worry, we will write everything down. पहले समझ लो. People who are not working is the dependent class. Just for example, people from age 0 to 18 can be dependent on their parents. So that's the dependent class. People from 60 till the end, they have retired and maybe they are dependent on their children. That's also the dependent class. So I must divide my entire population into people who can work and people who cannot work. Okay, so what will I say? But I will say that if I have the total population, isko you can give the title as flow of workers. So if I have my total population, this population can be divided in 2 parts. One is dependent and one is non-dependent. In dependent, I will include all people till the age of 18 or 16, depending on which country you are from. कुछ countries में 18 तक work करना allowed नहीं है, कुछ में 16 तक. And then anybody above the age of 16. Now, the people who are not dependent, मतलब वो काम कर सकते हैं, they are between the age of 19 to 18 plus to below 60. But these people, they can further be divided in 2 parts: institutional and the other can be non-institutional. Civilians. बेटा इंस्टीट्यूशनल वो हो गए जो मिलिट्री में है, उनको हम वर्किंग में नहीं काउंट करेंगे, वो हमारी जनरल वर्किंग में नहीं आएंगे, राइट? सो अदर देन दीज, जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड नहीं है कंट्री के, that is the general civilian population that I have. Now, out of these civilians,
I can divide it in two parts. There may be people who want to work and there may be people who don't want to work. Just for example, there may be people who are housewives. Housewives, they are non-institutional civilians. वो किसी institute से connected नहीं है, but they are just going ahead and they're working within their home, right? Similarly, there may be people who say, supposedly, I want to take a break for 1 year from my regular work. Then I am also a non-institutional civilian, but I'm not working. So I can divide this again in two parts. One becomes your civilian labor force, and other becomes out of labor force. तो बेटा ये लेबर फोर्स कौन सी हो गई? ये लेबर फोर्स वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं. People who are willing to work. They may get job or they may not get job, but they should be willing to work. Then they are part of the labor force. So we can say now we should define the labor force first. So please define it, beta. Labor force. The civilians who are willing to work. Form labor force. So they may or may not get a job. वो बात की बात है. But they are looking out for a job, na? They want to work, na? They don't want to stay at home. Then they are part of this labor force. So then labor force can be divided in two parts. One becomes employed and one becomes unemployed. Who are employed? Employed are the people who have job, who are currently working. And who are unemployed? People who are not working, but they want to work. They are looking out for job. So I want to define unemployed as those people who are willing to work. They want to work, but do not currently have a job. So those people who are willing to work, काम तो करना चाहते हैं, but job नहीं है, that is an unemployed person. Now, beta, when you will get this in exam, you have to make this flow. If you don't make this flow, then things will be difficult for the faculty to understand. Okay. So this diagram, which is the flow of workers, this is very, very important. Now, there is another diagram that we need to understand, and I can call that diagram as the relationship between employed, unemployed, and labor force. And I want to do this with some numbers. तो ध्यान से समझो अब हम क्या कर रहे हैं. Say, I make a circle and this represents employment. And I'm saying that there are 127 million people who are employed. वो लोग जो अभी employed हैं currently, वो 127 million लोग हैं एक country के अंदर. And beta, I am saying that unemployed. There are 7.0 million people who are unemployed. And then I have out of labor force. There are
66.7 people who are out of labor force. अब पहली बात समझो. Suppose I ask you, find the labor force. So beta, what is the labor force? Those people who are either employed or unemployed. या तो वो employed है या unemployed है, but they are part of the labor force. They are willing to work. Then that is labor force. So beta, my labor force will be employed. L will be employed plus unemployed. Employed will be 7. Unemployed will be 7. And employed will be 127. So I will get this as 134 million. That is going to be my labor force. Now, suppose I ask you question number 2, find the total population. So beta, यहाँ पे कुछ civilians, non-civilians, dependent, non-dependent, कोई information नहीं दी है. So I can simply say in this case that total population will be people in the labor force plus out of labor force. Either वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Either they are willing to work or not willing to work. And this means that these people who are out of labor force, it already includes younger children and old retired people. Because no third information is given. यहाँ और कुछ भी नहीं दिया हुआ. मतलब out of labor force में वो लोग भी होंगे जिनकी जॉब खत्म हो चुकी है. People who have retired, automatically they are not looking for job. So they are out of labor force. And children, like for example, people who are studying currently, right? They are also not looking for job. They are also out of labor force. So it means that this out of labor force would have included people who are basically dependents. That is why this is the thing, right? So this may also happen. So I can just say that beta labor force was 134. This is what I calculated. And my out of labor force is going to be 66.7. So this is going to be, calculate this 9 and 10, 200.7. This is going to be my total population. Third thing. So beta, these kind of numericals can come in exam as a 5 marker. So you should be aware of these. Now just think about it. But I am saying that labor force is employed plus unemployed. Suppose I divide throughout by L. I am dividing throughout by labor force. So क्या हो जाएगा? L by L is equal to E by L plus UE by L. Beta L by L तो simply 1 हो गया. This thing, number of people employed by the labor force, beta this is known as employment rate. Employment rate. And number of people unemployed by labor force, beta this is called as unemployment rate. Unemployment rate. So what are we saying? We are saying that employment rate plus unemployment rate, that is equal to 1. Now, suppose I ask you, calculate employment rate. So beta, what will you do? Employment rate is going to be how many people are employed? 137. What is the labor force? Population se divide nahi karna hai. Many people make this mistake. How many people are unemployed? Employed? 127. What is the labor force? 134. So beta, this is going to be, employment rate will be 127
by 134. Please calculate this for me in the decimals. Okay. Similarly, if I ask you calculate unemployment rate, again, beta, unemployment rate will be people unemployed by labor force. Nobody will divide it by population. No mistake should be done here. So people unemployed are 7 and total labor force is 134. So this is going to be 7 divided by 134. This will be your unemployment rate. So I hope this is clear how we can find the employment rate and how we can find the unemployment rate. Now, let us make few notes here. Important notes. First point, पहले समझो फिर लिखेंगे. देखो बेटा, जो हमारा out of labor force है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, people who are not working. I have told you that because there is no other value, matlab it includes dependents also. Now imagine a person, suppose a person like you. Suppose you are currently in your 3rd year of college. Now next year, you look out for a job and you get a job or you don't get a job, but you start looking out for a job. The moment you start looking for a job, it means you have become a part of the labor force, right? So people who are out of labor force every year, from those people, few will become part of the labor force because they will start looking out for job. When will they look out for job? Who can look out for job? Number 1, students who turn 18 plus, or in other words, who now become non-dependent students, right? Or graduates. Once they have graduated or post-graduated, can start looking out for job. Thus, becoming part of the labor force. So earlier they were out of labor force, but now they have become part of the labor force. They may or may not be employed. Ekdam se zaruri nahi hai they will get a job. So they may or may not get a job. But they're looking out for job now. So they are becoming part of the labor force. Is this clear? That's the first part. Second, suppose imagine that there was this mother who was working earlier, but she just left her job to take care of her child. Now her child is big enough. Okay. Now, because the child is big enough and the child is now capable of doing work, the mother wants to get back and start looking out for job. So she will also be part of the workforce. So in other words, any person who immediately starts looking out for job. This is other example. So housewives who now want to look out for job. Again, they may, this is V beta, they may or may not get a job, but they're looking out for job now. So therefore, they're becoming part of the labor force. So first thing that we have to understand is that from this out of labor force, अब हम आगे concept को बढ़ा रहे हैं, that some people will become part of the labor force. दोनों डायरेक्शन में आधे लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे और आधे अनएम्प्लॉय हो जाएंगे. Some will get a job, some will not get a job, but they are becoming part of the labor force, right? Like housewives or any person. For example, any person
who left a job because he thought that I want to take a break. Now he wants to again look for a job. So any person who's looking out for a job is becoming part of the labor force. He may or may not get a job. If he gets a job, he becomes employed. If he doesn't get a job, he becomes unemployed. But nevertheless, he's looking out for a job. So ऐसा हो सकता है, supposedly some numbers are given that let's say that 1.5 million people, they get a job. And let's say that 1.1 million people, they don't get a job. But they are looking out for job na. So they have become part of the labor force. ये पहली बात हो गई. Second beta. Second pointer. Note 2. Imagine that I am looking out for a job since last 4 years. I was part of the labor force. Now, all of a sudden, I think I don't want to look anymore. बहुत हो गया यार, 4 साल से ढूंढ रहे हैं, नौकरी तो मिल नहीं रही है. I get very distressed and I stop looking out for a job. So people who stop looking for job, they become out of labor force. There are people who don't have incentive to look for a job. कि यार अब नहीं हो पा रहा और नहीं ढूंढ पा रहे हैं. So there may be people who no more want to look out for a job because they no more have an incentive attached to it. So अभी तक तो मैं job ढूंढ रही थी, but now I think it's too much. I don't want to anymore look out for a job. So because I've stopped looking for a job, अब मैं job ढूंढ भी नहीं रही हूँ. I don't want to work. I will go out of labor force. अब मेरे को कोई unemployed नहीं बोलेगा. अब मेरे को labor force के ही बाहर माना जाएगा. So every year, some people become distressed. And they stop looking out for a job altogether. So they become out of labor force. ठीक है बेटा? Now, every year, note 3. बेटा आपने बहुत देखा होगा LinkedIn पे 2 चीजें हो रही होती हैं. One is called hire, and the other that many people have hashtag open to work, that I have got they have just asked me to leave the job. There are separations from the job. Separations. So these 2 things happen quite often. Hire means what? Hire means that unemployed become employed. एंड दूसरा क्या हो सकता है? जो लोग एम्प्लॉयड हैं अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया. सो एम्प्लॉयड become unemployed. These 2 things are also possible. So what will happen, beta? That means that there will be some people who were employed, but they have lost their job, and they have become unemployed. उनको फिर से ढूंढनी पड़ेगी नई नौकरी. They have to again look out for a job. And there are some people who were unemployed, but now they have been hired. And they have got a job. ठीक है जी? So this can also take place. At last, next note. Let's write that down. Note 4. Beta, imagine that you were employed. अच्छी खासी नौकरी थी. But now, all of a sudden, you think, I don't want to work anymore. Let me just retire. Or you may think that I want to dedicate some time to my house
I want to take care of my family and I will rejoin sometime later. So there may be people who retire, who were working, but now they have retired, or people who willingly quit job to rest for a while. Or maybe again, I gave you an example. Maybe, I am a new mother. I want to leave for some time and I want to take care of my family. So other reasons, like taking care of family. Due to these are those people who were better employed, but now they are not even looking for a job. Unemployed nahi ho rahe hain. They're going out of labor force. So this direction is also possible, that from employed, you will simply go out of labor force. That is also possible. Now, one last thing here. So write down the last note, note 5. Now, but suppose I'm employed in XYZ company. It might be possible that now I switch my job, right? Or I am employed as, let's say, a professor. It might be possible that now again I switch my job and I go into some other kind of job. So it is possible that people who are employed switch job, but remain employed. So this is shown by something like this. They were employed, they remain employed, but they keep switching their jobs. So you have to consider all of this. This is now the complete relationship that we have drawn. This relationship takes into consideration all these things that I have written. There can be separations, there can be hires, there can be quits, there can be layoffs. Layoff matlab ki people who were employed, but now they have become unemployed. This is a layoff. Right? So considering all of these things, this is the entire diagram that you can draw as a relationship between these things. And these relationships are very, very important, even from exam point of view. Now, I want to define something which is known as average duration of unemployment. वैसे तो ये वर्ड ही अपने आप में समझा देता है कि इसका क्या मतलब है, but let's understand. The average time that you spend being unemployed, that is known as average duration of unemployment. So we can simply say, in very simple terms, we can say that the average length of time people spend unemployed is called average duration of unemployment. Okay, beta. Now, different countries will have different this thing. ठीक है, तो मैं अपनी इंडिया के डेटा को एनालाइज करके आई कैन लुक इनटू द डेटा एंड आई कैन टेल अच्छा कितने टाइम के लिए ऑन एन एवरेज इट टेक्स अ पर्सन टू गेट अ न्यू जॉब. सपोज टुडे आई बिकम अनएम्प्लॉयड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर मी टू गेट इनटू अ न्यू जॉब? So different countries have different data set, and your book suggests that I think so for US it is 2 to 3 months. Okay, so again this differs from country to country.
Okay. It can be different for each country. Okay. Now, we want to go ahead and we want to talk about something which is very, very important in this chapter, and that is the peaks and lows. But usually empirical result or empirical data does not come in exam. मतलब ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि 1990 में यूएस में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था या 1994 में यूएस में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था. People will not ask that. But still, because you are an economics student, you should be aware about some of the graphs and how to interpret those graphs. Okay, so I am just going to go ahead and I'm going to take you through one of that graph, and I'm going to go ahead and explain to you what it means. So let's say I take year here, and let's say I take unemployment rate here. Right? This is again a US data that I'm teaching you. Let's say that beta, the data set looks something like this. ये important नहीं है, समझो कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. Beta, note that this is going high to high to high to high. Lows भी आ रहे हैं, but it's going from high to high to high to high. Whenever you see such graphs, from those graphs, you can find what is called as a trend. What is a trend? A trend is a line that you draw through the graph. So if I were to draw a line through this much part of the graph, I will understand that it must be an upward line. I cannot draw a downward sloping line. No, वो तो नहीं बन रही है. So if I draw a line through these points, I clearly see it should be an upward sloping line. And if I see a line through these points, I see that this should be a downward sloping line. Because this line that you draw, that is called as trend. And what does a trend tells me? A trend tells me a long run movement. So a trend is telling me, if I draw an upward slope line, it means that over time, unemployment rate is increasing. More people are becoming unemployed. And if I draw a downward sloping line, it means that over time, people are getting jobs and unemployment rate is decreasing. Okay? So you can just make a note of this point. ये किसी भी ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको, as I told you, कोई एक ग्राफ इसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं है. We don't have to remember one particular graph because these are just empirical data. But you should understand how to read a graph in general. So we can say that there is a trend, and a trend represents long run situation. In this case, so if you go to the data point, बस एक यहाँ का मैं बता रही हूँ, this data point, it is 1980. So in this case, it is showing that till 1980, unemployment rate was increasing. Post which it started to decrease. Okay, beta. Post which it started to decrease. Let us do the next part of it, beta, which is known as wage determination. Okay. And in this, the first thing I want to talk about, let's write them down together only. That is known as collective bargaining. What is collective bargaining? Wage determination means that we have to find
what are the different ways in which wage can be determined? क्या क्या तरीके होते हैं कि हम wage को calculate कर सकते हैं, कि हम wage find कर सकते हैं? उसके अंदर the first technique that we want to talk about is collective bargaining. First of all, read the term. But a collective means together. Bargaining का मतलब हमें पता है, I am bargaining with someone. So collective bargaining means when you bargain together. Now, you would have seen these movies in the old era. I think so, all these Anil Kapoor movies, right? क्या होता था उन movies में? So in those Anil Kapoor movies, you would see that he was the head of a labor union. And then there were multiple laborers. And then he would go ahead and he would bargain the wage on their behalf, right? He would say, ki, we will not work if you don't give us this much wage. He would set a bar that anything below this wage, I am not going to work. That is collective bargaining. When you have a labor union and one person is not asking for a different wage, all those people together, they go ahead and they ask for a particular wage. That is an example of collective bargaining. So let us write down the formal definition of it. So please write down bargaining between a union of labor or a group of unions and a firm or a group of firms is called collective bargaining. So beta, on the one side, I can have either one union or multiple unions. बहुत अलग-अलग unions एक साथ इकट्ठा हो गए हैं. On the other side, I will either have one firm or multiple firms. And the bargaining that takes place between them, that what wage we should be setting up, that is called collective bargaining. Now, this collective bargaining, it is again different from countries to countries. Same तो तरीके से follow नहीं हो सकती है. So, the book gives you multiple examples that, you know, in US, the collective bargaining takes place in one way. In Europe, the collective bargaining takes place another way. So we can go ahead and we can say that this differs from country to country. Now, I want to go ahead and I want to talk about something very important about the bargaining part here. सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे भी समझना और यूनियन के लेवल पे भी समझने की कोशिश करो. See, there are jobs which don't require a lot of skills. जैसे for example, let's say that the job of going ahead and distributing a newspaper, or the job of in McDonald's collecting money, right? These jobs are very different from the job of a CEO. The job of a CEO is very difficult, right? His skills will be very difficult. He has to do many degrees. He has to take a lot of experience before he can reach that level. So I can divide the jobs in two parts. The first job can be a job which is better a high-skilled job. And the second job is a take it or leave it job. मतलब अगर ऐसा कि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है टाइप. So if it is a very high-skilled job, right, which means it requires a lot of your skills to be put into place, right, then this person will have less substitutes available. इसको कोई easily replace नहीं कर सकता. Like I cannot go ahead and replace Ratan Tata, or I cannot go ahead and replace Mr. Mukesh Ambani, right? It's a very high-skilled job that they are doing. So people who are into a high-skilled job have more bargaining power. वो ज़्यादा wage command कर सकते हैं.
वो बोल सकते हैं कि हमें इतनी पैसा दो ही दो, बट पीपल हु आर इनटू अ लो स्किल्ड जॉब, right, they can not have a very high bargaining power, because if they will not work, somebody else will work. So here, write down next point under this itself. So please write down that the amount of bargaining or the level of bargaining differs from job to job. बेटा मैक्रोइकोनॉमिक्स से थोड़ा लिखना जरूरी है. You should know the right words that you have to use, है ना? A lot of times you know the concept well, but if you don't have these written notes, then it will become difficult for you to write the answers in exam. So we have to write this thing also down. Okay, so please write down the higher the skills required to do the job, the more likely there will be bargaining. So if you require more skills, just a CEO ka job, then he can command any wage, right? So please write down wages offered at entry level jobs, or take it or leave it jobs, cannot have high bargaining attached to it. फिर से समझो. जैसे for example, even if it is a new graduate, right? Just for example, let's say I am in the industry from last 8 years, and now there is a new person who has just done economic honors and entered the industry. The amount of bargaining that I can do, jitni high wage I can command, it will be different from what that person can command. So I can say that new college graduates can negotiate only on a few aspects. वो बहुत कम negotiate कर सकते हैं, but CEOs can negotiate a lot more. So we also want to talk about कि कितनी bargaining possible है, and here अभी तक हमने दो चीजें बताई हैं, that bargaining can differ from country to country, and bargaining can also differ from person to person depending on their skill. Now we are saying that when it comes to countries like, तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, bargaining differs from country to country. So I will continue, just write an example here, beta. Like for example, in Japan, you can just continue below this. इसके नीचे शुरू कर दो. That in Japan and in European countries, bargaining, collective bargaining plays an important role. Right? And these, ये जो bargain कर रहे हैं हम, it can take place at individual firm level, it can take place at the industry level, or it can even take place at the national level. So write down, it can take place at firm, industry, or national level. Let me give you an example. तो बेटा जब हम आंसर लिखते हैं एग्जाम में, why am I emphasizing always? Because ultimately we want to score good marks, है ना?
एंड गुड मार्क्स में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता हो, गुड मार्क्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको आंसर को लिखना आता हो. सो जैसे अगर हमने लिखा वेज डिटर्मिनेशन के फैक्टर्स, दे आर आस्किंग हाउ वेज इज डिटरमाइंड, हमने उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड देन वी रोट व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, हमने उसे एक्सप्लेन किया. देन वी रोट दैट बार्गेनिंग डिफर्स फ्रॉम जॉब टू जॉब. Then we wrote that bargaining differs from country to country. ये हमने लिखा. इसमें जब हमने जॉब टू जॉब वाला पॉइंट डाला, अगर उसी में if you make a diagram, marks ऐसे, so you have to understand how to write the answer. So यहाँ पर ना हमने एक डायग्राम बना दिया that there is a job which can be high skilled and a job which is low skilled. And यहाँ आपने लिख दिया that this means you have high bargaining capacity and you have low bargaining capacity. Right? And you just highlight this. That adds to your answer. That not only the person knows, यहाँ पे again, here while you're writing, first of all, here you can write definition. Right? This is how the answer should be written. Here you will write beta factors. हमने दो फैक्टर बताए ना, skills और country. तो यहाँ पे आपने लिख दिया factors. ठीक है, अब हम लोग country के बारे में बोल रहे हैं. So as I said, this differs from country to country. Now, इधर भी एक important part है. तो मैंने यहाँ पे लिखा that you can bargain at firm level, industry level और national level. ठीक है, just take an example. जैसे for example, let's say that in steel industry, first समझ लो, then I will make you write that. So let's say that in the steel industry, beta, everyone starts demanding a high wage. They say कि हम इससे कम पैसे में तो काम करेंगे ही नहीं. This is the minimum wage at which I want to work. Now, when they start demanding a particular wage, कॉपर इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि अरे स्टील में तो इतना पैसा मिल ही रहा है. This is the wage that they are getting. Why should we get lower wage? They also start demanding higher wage. फिर तीसरा कॉटन इंडस्ट्री के वर्कर्स को लगता है that steel industry and copper industry, they are asking for a high wage. Why should I work for a low wage? They also start asking for a high wage. So a movement starts. Movement means one thing starts turning into other into third and so on. That is how bargaining starts happening at the national level. People look at each other, and when they see that acha, other people are getting so much, why are we working at a lower wage? They also start asking for higher wage, and that is how a movement starts in the nation. So what we can say, let's finish this answer. So we can say that beta, sometimes bargaining in one sector automatically extends to other workers working in other sectors or even the entire economy. So sometimes this movement starts in such a way that it simply extends to the entire economy. Determination में we had already gone ahead and talked about collective bargaining. उसकी हम बात कर रहे थे last lecture में कि collective bargaining क्या होती है. Today I want to go ahead and I want to start by talking about two factors which are used in wage determination. पहले समझ लो फिर लिखेंगे. सबसे पहले बेटा you have to understand something which is called as reservation wage. हर इंसान की एक वेज होती है, एक मिनिमम वेज होती है
जिससे नीचे वो कभी काम नहीं करता। जैसे इफ यू आस्क मी, मैम यू वांट टू डिलीवर दिस लेक्चर, हाउ मच विल यू चार्ज पर आवर, एंड आई टेल यू बेटा आई विल टेक maybe 1,000 rupees per hour. It means that I will not work below 1,000 rupees. That is my reservation wage. So बेटा reservation wage क्या है? वो wage जिसके नीचे आप काम नहीं करोगे, that is reservation wage. मैं 1,000 से नीचे में काम नहीं करूंगी, that's my reservation. Then it is also defined as the wage at which you are indifferent between working and not working. माने अगर वेज 1,000 है तो उस पे मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, आई एम इंडिफरेंट बिटवीन द टू। अगर वेज 1,000 से नीचे है देन आई विल नॉट वर्क, अगर वेज 1,000 से ऊपर है आई विल डेफिनेटली वर्क, राइट। सो रिजर्वेशन वेज से ऊपर वेज होने पे एक वर्कर हमेशा काम करेगा ही करेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड, वी विल राइट इट, डोंट वरी। सेकंड, वेजेस जो होती हैं वो लेबर मार्केट कंडीशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। मतलब बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, किसी के पास भी जॉब नहीं है, नोबडी हैज अ जॉब, तो उस केस में लोग बहुत सस्ते में काम करेंगे, पीपल विल बी रेडी टू वर्क एट अ वेरी लेस वेज। इन दैट केस द wage that will exist in the market will be low because people are willing to work at a lower wage. But beta, if the wages, if the unemployment rate is low, सबके पास नौकरियां हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड ही नहीं है, तो अगर मुझे उस टाइम पे किसी को जॉब पे रखना है तो मुझे उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके जिसको मैं रख रही हूं उसके पास बहुत सारी जॉब ऑफर्स है और कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, राइट। सो वी कैन से दैट जो भी हमारी वेज डिटर्मिनेशन होती है उसमें दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद दैट टुडे, सो प्लीज राइट डाउन। देयर आर टू फैक्टर्स that stand out in case of wage determination. बेटा पहला फैक्टर क्या बताया मैंने? रिजर्वेशन वेज। सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। रिजर्वेशन वेज, ये क्या है बेटा? द वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज indifferent between working and not working is called reservation wage. तो बेटा जिस वेज पे एक इंडिविजुअल इंडिफरेंट है काम करने और ना करने के बीच में, उसे हम रिजर्वेशन वेज बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन। मोस्ट employers will pay a wage greater than reservation wage. तो ज्यादातर जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिजर्वेशन वेज के ऊपर पैसा देते हैं। अब वो क्यों देते हैं वो हम बाद में समझेंगे, आज ही समझेंगे, थोड़ी देर बाद में, बट समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला बेटा? सेकंड पॉइंट हमने बोला लेबर मार्केट कंडीशन। इसको भी मैं इलैबोरेट थोड़ी सी देर में करूंगी, बट अभी के लिए अंडर लेबर मार्केट कंडीशन एक चीज लिख लो, दैट द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, जितने कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, मार्केट में ज्यादा लेबर्स नहीं होंगे, उतनी ज्यादा वेज देनी पड़ेगी। द हायर
द वेज। ओके बेटा, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इसी को हम इलैबोरेट करते हैं और इसमें हम एक सब पॉइंट लिखते हैं विच इज कॉल्ड बार्गेनिंग। ठीक है बेटा, अब समझो बेटा बार्गेनिंग क्या होता है। बार्गेनिंग पावर वो पावर है जो बताता है कि वर्कर्स जब एम्प्लॉयर से सैलरी मांग रहे हैं तो वो कितनी सैलरी मांग पाएंगे, कितनी वेज मांग पाएंगे। ये जो बार्गेनिंग पावर है ये दो फैक्टर्स से डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पहली डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ जॉब पे और दूसरी डिपेंडेंट होती है लेबर मार्केट कंडीशन पे। नेचर ऑफ जॉब समझो। नेचर ऑफ जॉब ये कहता है कि आप जिस काम में लगे हुए हो वो काम कैसा है। अगर आपका काम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके काम में बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मैं मैकडोनल्ड्स में सर्व कर रही हूँ फूड, आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, तो बेटा उस केस में मैं बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकती हूँ और मुझे कम वेज एक्सेप्ट करनी होगी। बट अगर मैं सीईओ हूं किसी कंपनी की तो मैं कितनी भी वेज मांग सकती हूँ और मेरी बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होगी। सो फर्स्ट फैक्टर जिसपे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है आपका स्किल सेट। बेटा सेकंड फैक्टर जिसपे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है लेबर मार्केट कंडीशन। ठीक है, ये वाला चीज जो हमने बोला ना, इसी को हम इलैबोरेट करेंगे। तो सेकंड फैक्टर हो गया लेबर मार्केट कंडीशन। तो बेटा प्लीज राइट डाउन द बार्गेनिंग पावर of the worker depends on two main factors. ओके बेटा, तो आपका पहला फैक्टर क्या हो गया। फर्स्ट फैक्टर इज हाउ मच, नहीं डायरेक्टली लिख लो, सॉरी। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है बेटा, सो नेचर ऑफ जॉब क्या हो गया। इफ द रिक्वायर्ड स्किल सेट for the job are not very high, बहुत बेसिक स्किल सेट चाहिए, उस जॉब को कोई भी कर सकता है अगर, है ना। सो एंड यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब। बेटा प्लीज समझो, एक एस्ट्रोनॉट को या किसी भी एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होंगी उस जॉब के लिए, बट शायद एक लो स्किल जॉब के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इजीली आ जाएंगी, है ना। सो वी आर सेइंग दैट अगर आपका जो स्किल सेट चाहिए जॉब करने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है और बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं उस जॉब को भरने के लिए, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू फिल आउट द जॉब, ठीक है, for the job, then the wage offered will be low. तो उस केस में आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपकी जॉब बहुत हाई स्किल्ड है और आपको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, आप जो आपको चीज आती है वो और कोई नहीं कर सकता आपके फर्म में, तो बेटा फिर आपकी बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी। So in contrast, if the job requires high skills and it is difficult to replace the individual, then he or she will have high
बार्गेनिंग पावर। क्लियर हुआ ये? तो बार्गेनिंग पावर तब ज्यादा होगी जब आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो हाई स्किल्ड है। बेटा सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सो लेबर मार्केट कंडीशन रिलेटेड। सो सेकंड पॉइंट हो गया लेबर मार्केट कंडीशन। ठीक है बेटा? बेटा लेबर मार्केट कंडीशन का सेम है। अगर मैं सपोज इमेजिन करो आप एक जगह पे इंटरव्यू देने गए, वहां पर लाइन है, बहुत लंबी लाइन इंटरव्यू देने वाले लोगों की, तो बेटा आप कम पैसा मांगोगे, आप कम वेज में काम कर लोगे। बट आप एक जगह इंटरव्यू देने गए और आपको दिखता है कि आसपास रिसेप्शन में कोई नहीं बैठा हुआ, यू आर द ओनली वन सिटिंग फॉर द जॉब, देन यू विल आस्क हाई वेज, राइट? सो लेबर मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, देन देयर विल बी हाई कंपटीशन। और बेटा अगर कंपटीशन ज्यादा होगा, implying that you have to work for low wages, implying lower bargaining power. So if there is high unemployment in the economy, there will be high competition, which will imply low bargaining power and thus lower wages. ठीक है बेटा? बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो फर्म्स को इजीली कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है मतलब जॉब्स तो बहुत है, नौकरियां बहुत हैं, पर लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वर्कर इजीली नई जॉब ढूंढ सकता है, फर्म इजीली वर्कर नहीं ढूंढ सकता, तो फर्म हाई वेज ऑफर करेगा। सो प्लीज राइट डाउन ऑन द कॉन्ट्रेरी, if there is low unemployment, then it is more difficult to find acceptable replacement worker and workers can easily find a new job. So bargaining power will be high. I hope this is clear बेटा। तो हमने दो पॉइंट्स लिखे हैं बार्गेनिंग पावर से रिलेटेड। पहला हमने लिखा है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, और दूसरा हमने इस चीज पे हाईलाइट किया है कि लेबर मार्केट कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एफिशिएंसी वेजेस थ्योरी, एफिशिएंट वेज थ्योरी। पहले एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। बेटा एफिशिएंट वेज थ्योरी क्या कहता है कि यूजुअली जो फर्म्स होते हैं ना, वो आपको आपकी रिजर्वेशन वेज से ऊपर पैसा देना चाहते हैं। क्यों? बेटा पहली चीज वो ये सोचते हैं कि सपोज इमेजिन करो, पहले ये लिख के बनाने की जरूरत है, जस्ट इमेजिन कि मेरे फर्म के अंदर आज 10 न्यू वर्कर्स आए हैं। अब मेरे फर्म के हिसाब से मुझे उनको न्यू सॉफ्टवेयर स्किल्स देनी है, मुझे उनको न्यू टेक्निकल स्किल्स देनी है, मुझे उनको पूरा प्रोसेस समझाना है। इस पूरी ट्रेनिंग को करने के लिए मेरा बहुत सारा पैसा गया, मैंने अपने कुछ बाकी एम्प्लॉयज को ये करने के लिए लगाया और इसमें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। मैंने कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया इस काम को करने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए। तो इन न्यू वर्कर्स पे मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अब इमेजिन करो
कि अगर मैंने इन पे बहुत सारा पैसा खर्च करके इनको ये ट्रेनिंग दी और अगर 2 महीने बाद ही इनमें से 4 वर्कर्स छोड़ के चले गए किसी और कंपनी के पास, तो बेटा दैट इज माई लॉस. आई ट्रेन्ड देम, I gave them all the skills, and just after 2-3 months they're just leaving my company. It's a loss for me. So since it is my loss, तो बेटा मैं ये लॉस तो नहीं बियर करना चाहूंगी. उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, इनको रिटेन करके रखने के लिए मैं इनको हायर वेज ऑफर कर दूंगी, है ना. तो यूजुअली एफिशिएंसी वेज थ्योरी पहली चीज ये कहती है कि क्योंकि फर्म्स ये नहीं चाहते हैं कि टर्नओवर रेट हाई हो, मतलब सेपरेशन रेट हाई हो, है ना, तो फर्म्स क्या करेंगे, फर्म्स एंड लेबर्स को अपने पास रखने के लिए उनको ज्यादा वेज ऑफर करेंगे. सेकंड थ्योरी बेटा, इसी में ये भी सोचा जाता है कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है. अगर मैं आपसे 1000 मांग रही हूँ पर आवर और आप मुझे 2000 पर आवर दे रहे हो, then I will also think ना यार ये अच्छी कंपनी है, यहाँ पे अच्छे से काम करना है, so I will work even harder. So when you go ahead and you pay above the reservation price, तो इस केस में क्या होता है बेटा कि इस केस में आपको ऐसा लगता है कि आपका लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा. तो ये दोनों चीजें एफिशिएंसी वेज थ्योरी के अंडर आती है. लिखते हैं आप इसे. सो प्लीज राइट डाउन. फर्म्स pay higher than reservation wage because they want their workers to be productive. तो वर्कर्स को प्रोडक्टिव करने के लिए वो सोचते हैं कि ज्यादा वेज देनी चाहिए. सो दे वांट देयर वर्कर्स टू बी प्रोडक्टिव. एंड हाई वेज कैन हेल्प इन अचीविंग दिस गोल. ठीक है जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लीज लिखो, फॉर एग्जाम्पल इफ वर्कर्स आर वर्किंग वेल, नो फर्म विल वांट टू लूज दोज वर्कर्स. बेटा अगर वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उनको लूज तो नहीं करना चाहोगे. अगर आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज दोगे तो वो कभी भी जा सकते हैं आप जॉब छोड़ के, क्योंकि वो इंडिफरेंट होंगे. बट अगर आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करोगे तो वो स्टे कर जाएंगे. सो इफ वर्कर्स आर वर्किंग वेल, नो फर्म वांट्स टू लूज देयर वर्कर्स, राइट. बट बाय पेइंग द रिजर्वेशन वेज, an individual would be indifferent between staying and leaving. ठीक है बेटा. सो जब आप उनको रिजर्वेशन वेज पे करते हो तब एक रेट होता है जिसे बोलते हैं हम टर्नओवर रेट. तो बेटा ये समझो जरा, जो हमारा टर्नओवर रेट होता है ये टर्नओवर रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो होता है दो चीजों का, द अमाउंट ऑफ सेपरेशन, कितने लोग सेपरेट हुए हैं, डिवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट. तो इमेजिन करो बेटा कि सपोज मैंने यहाँ पे जो मैंने वहां एग्जाम्पल डाला था ना, मैंने 10 लोगों को एम्प्लॉय किया और 10 लोग छोड़ के चले गए. तो बाइट बेटा माई टर्नओवर रेट इज 4/10 into 100, 40%. ठीक है. सो टर्नओवर रेट ये बताता है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं एज कंपेयर टू कितनी जॉब्स हैं, राइट. सो जब आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज ही पे करोगे, जब आप उनको ऐसी वेज पे करोगे जिसके बीच में वो इनडिफरेंट है बिटवीन स्टेइंग एंड लिविंग,
तो वो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हैं। सो टर्नओवर रेट बहुत ही हाई होगा, और कोई भी फर्म नहीं चाहता कि टर्नओवर रेट हाई हो, क्योंकि अगर बार बार लोग छोड़ के जाएंगे तो हर नए इंसान को बार बार ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उसकी भी तो कॉस्ट है। सो प्लीज राइट डाउन दैट इफ फर्म pays reservation wage, the turnover rate will be very high. बेटा अगर टर्नओवर रेट हाई होगा तो क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट of training the new employees every time there will be separation. तो बेटा जितनी बारी भी पुराने वाले छोड़ के जाएंगे, नए वालों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिजर्वेशन वेज से ज्यादा ही पे करो। देयरफॉर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब सेम लोग बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम करते रहेंगे। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से हूं और मैं वही काम बार 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 कर रही हूं, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट भी होंगी और ज्यादा प्रोडक्टिव भी होंगी। तो वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेटा तब आएगी ना जब यू विल कीप वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा लेओवर्स हो, उल्टा मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ ही रहें, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं उनको ज्यादा वेज ऑफर करूंगी। सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फर्म शुड ऑफर हायर वेजेस। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ बेटा। अच्छा, अब एफिशिएंसी वेज थ्योरी में ही ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो, जो हमने अभी बताया। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें? कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो ऐसा लगता है कि वर्कर्स को अपने बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम तो बहुत अच्छा है, और जब उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहना चाहिए, ये मेरे साथ अच्छा, दे आर बिहेविंग वेल विद मी, वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट ये कहता है दैट मोस्ट फर्म्स, प्लीज राइट डाउन बेटा, वांट देयर वर्कर टू बी more productive by paying more wage. Workers feel good about the firm and loyal to the firm. तो जब आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करते हो, दे फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स, और वो बहुत लॉयल भी रहते हैं, और इसीलिए उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या है? क्या पढ़ा हमने इस पूरे में? क्या बोल रहा है एफिशिएंसी वेज थ्योरी? एफिशिएंसी वेज थ्योरी बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोगों को रिजर्वेशन वेज से ज्यादा वेज ऑफर करो ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई एफिशिएंसी वेज थ्योरी। इसमें हमारे 2 सब नोट्स हैं, प्लीज राइट डाउन नोट। बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी के साथ साथ वो ये भी बोलता है कि वेज जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सो इन विद इन एफिशिएंसी वेज थ्योरी, द वेज मस्ट डिपेंड on 2 factors. ध्यान से समझो, पहले एक बारी समझ लो फिर लिखेंगे। पहला है बेटा नेचर ऑफ जॉब, इसको थोड़ा सा समझो। देखो
सपोज मैं एक फैक्ट्री चला रही हूँ और इस फैक्ट्री में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने दिनों के लिए मेरे यहाँ पे काम करते हैं। मतलब अगर कोई 1 महीना काम करे और छोड़ जाए, मेरे को उसका रिप्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा। और अगर कोई महीनों काम करके भी ना छोड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही तरीके का काम है। सपोज बिस्किट्स की फैक्ट्री है तो एक ही तरीके का काम है कि मशीन से सिर्फ बिस्किट रैप्ड बिस्किट्स को उठा उठा के रखना है। तो बेटा ऐसी जॉब्स जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा तो कुछ स्किल की जरूरत नहीं है, तो वहां पर मुझे लोगों की लॉयल्टी की भी जरूरत नहीं है। वो ज्यादा टाइम रुके या ना रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट ऑफ सेपरेशन कितना है, क्योंकि उसमें मेरे को उनको कुछ ट्रेन करने में बहुत एफर्ट नहीं है। वो आएंगे, मुझे उन्हें बस सिखाना है कि कैसे उनको बिस्किट्स को मशीन से उठाना है ना। तो अगर नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी नहीं है जिसमें उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो, तो उसमें एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है। और जहां एफिशिएंसी का ही मतलब नहीं है वहां पे मैं रिजर्वेशन वेज से ऊपर क्यों पे करूं। सो बेटा प्लीज राइट डाउन दैट फर्म्स such as high-tech firms see employee morale and commitment as important factors and thus pay higher wage. आपने सुना होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो इतने सारे बोनस कमिटमेंट बोनस और इंक्रीमेंट ये सब देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें फर्क पड़ता है एम्प्लॉय के मोराल से, एम्प्लॉय की कमिटमेंट से। बट बेटा जहां पर इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, जो काम बहुत रूटीन वर्क है, वहां पे आपको रिजर्वेशन वेज से भी काम बन जाएगा। हाउएवर in work which is routine and same kind of काम बार बार करना है, higher wage need not be paid. ठीक है बेटा, तो वहां पर मेरी एफिशिएंसी थ्योरी का भी कोई काम नहीं है। हायर वेज के बिना भी आपका काम बन जाता है। बेटा सेकेंड थिंग समझो, सपोजिटली मैं बात करती हूं इस केस में लेबर मार्केट कंडीशंस की। अब लेबर मार्केट कंडीशन क्या बोल रही है? अगर सब लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं तो इसमें मैं आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकती हूँ बिना ज्यादा सैलरी दिए। इमेजिन करो कि इकोनॉमी में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है और वो इंसान जिसने पीएचडी भी किया हुआ है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, उसको भी जॉब नहीं मिल रही। तो अगर एक इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक हाईली स्किल्ड वर्कर जिसने बहुत बहुत अच्छे से स्किल्स लिए हुए हैं, जिसका सब कुछ अच्छे से है, अगर उसको भी जॉब नहीं मिल रही है तो बेटा वो भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार रहेगा। सो जबकि एफिशिएंसी वेज थ्योरी बोलती है कि हाई स्किल्ड लोगों को रखने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, बट बेटा लेबर मार्केट कंडीशन अगर बुरी हो, अगर ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस केस में आप इनसे भी सस्ते में काम करवा पाओगे। सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट अ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट makes it attractive for workers to quit and thus demand higher wage. ठीक है बेटा, ये हमने ऊपर भी अच्छे से समझा दिया। द नेक्स्ट हेडिंग इज wages, prices and unemployment.
ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम कि वेजेस डिटरमाइन कैसे होती है। अब देखो, जब हमें वेज डिटरमाइन करनी होती है तो एक इक्वेशन होती है जो हमें समझनी है। इक्वेशन है W इज इक्वल टू PE F U, Z। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, ओके बेटा। इसमें W stands for wage, PE stands for expected prices, U stands for unemployment rate, and Z stands for other factors, जिसको बुक लिखती है कैच ऑल वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये इनके सिंबल्स हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि वेज जो है वो इससे, इससे और इससे, इन तीन चीजों से अफेक्ट हो रही है। तो हमें तीनों को एक एक करके समझना है। जो हम सबसे पहला फैक्टर समझेंगे वो होगा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट फैक्टर विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। पहले समझेंगे, फिर देन वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द आंसर। ओके बेटा, नाउ अंडरस्टैंड। भूल जाओ एक्सपेक्टेशन, भूल जाओ एक्सपेक्टेड प्राइस, भूल जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो। पहले सोचो एक बारी कि सपोजिडली आप एक वेज पे काम कर रहे हो। लेट्स से दैट आपकी वेज जो है वो 100 रुपीज पर डे की है। इस वेज से आप एक थाली खाते हो, और ये जो थाली है वो जो भी आपका लंच की थाली होती है और डिनर की थाली होती है बेटा, दैट कम्स फॉर ₹30। एवरी डे यू अर्न 100 रुपीज, उसमें से 30 रुपीज आप इस थाली पे स्पेंड करते हो। अब ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन इस वेंडर के पास जाते हो एंड दिस वेंडर टेल्स यू, नो सर, आज से 30 रुपीज की नहीं रहेगी, फ्रॉम टुडे दिस थाली इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40 रुपीज। नाउ थिंक अबाउट इट बेटा, अगर ये मैं लंच और डिनर में खा रही थी, अर्लियर आई वाज स्पेंडिंग 60, अब अगर मुझे यही को, इसी चीज को लंच और डिनर में खाना है, आई विल हैव टू स्पेंड 80। इट्स अ बर्न ऑन माई पॉकेट, मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सो क्या मैं ये 100 रुपीज में काम करना चाहूंगी? नो, आई ऑल्सो वॉन्ट मोर मनी विद इट। ठीक है, तो बेटा वर्कर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना पैसा नॉमिनल टर्म्स में मिल रहा है, मतलब कितना पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट उस पैसे से वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पैसे से वो कितना खा पा रहे हैं, क्या गुड्स खरीद पा रहे हैं, उससे उनको सारा फर्क पड़ता है। सो वर्कर्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट वी कॉल एज द रियल इनकम। अगर मैं 100 रुपीज कमाती हूं और एक थाली का प्राइस 30 है, तो पहले मैं 3.33 थाली खरीद पा रही थी। बट अगर एक थाली का प्राइस 40 कर दोगे तो सिर्फ मैं 2.5 थाली खरीद पाऊंगी। दैट्स अ रिडक्शन इन माय रियल वेज। कितना मैं खरीद पा रही हूँ वो कम हो रहा है। सो बेटा जैसे ही प्राइस चीजों का बढ़ता है, आप चाहोगे कि आपकी वेज भी बढ़ जाए, आप ज्यादा वेज डिमांड करोगे। ये हो गया वर्कर की साइड से, फ्रॉम वर्कर्स साइड। अब दूसरी साइड से सोचो, एम्प्लॉयर की साइड से सोचो। एक एम्प्लॉयर से अगर आप जाके बोलो कि सपोज ये एम्प्लॉयर, मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ, बिस्किट्स बनाता है। अब आपने इसको बोला कि बॉस मेरी थाली तो एक्सपेंसिव है, मेरे को इतने कम वेज में काम नहीं होगा, आप मेरी वेज बढ़ाओ। तो ये एम्प्लॉयर वेज बढ़ाने के लिए उसको पैसा भी ज्यादा कमाना होगा। अगर उसको आपको ज्यादा पैसा देना है तो उसको पैसा जो अर्न करना है वो भी ज्यादा होना चाहिए। और वो ज्यादा मनी कब अर्न करेगा? जब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा। सो बेटा ही विल अर्न मोर मनी ओनली इफ द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सो जब प्राइस बढ़ेगा सिर्फ तभी तो वो आपकी वेज बढ़ाएगा। तो एम्प्लॉयर के साइड से भी P और W में डायरेक्ट रिलेशन है, और वर्कर की साइड से भी
P और W में डायरेक्ट रिलेशन है। सो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि PE भूल जाओ, भी एक्सपेक्टेशन पे मत जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो कि प्राइस और वेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे मैं एम्प्लॉयर की बात करूं या वर्कर की बात करूं। पहले ये रिलेशन को एकदम क्लियर कर लो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब बेटा यूजुअली क्या होता है ना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हो अपने एम्प्लॉयर के साथ कि 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए ये मेरा सर्विस अग्रीमेंट है, मैं आपके साथ इस वेज पे सो एंड सो काम करूंगी। अब सपोज आपने ये अपने वर्क एम्प्लॉयर के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 1 साल के लिए मैं आपसे 100 रुपीज में काम करूंगी। अब अगर इस 1 साल के अंदर इसी आपकी लंच की जो थाली थी उसका प्राइस बढ़ गया, सपोज द प्राइस ऑफ दैट थाली इंक्रीजेस, तो क्या होगा बेटा, आप तो कम अफोर्ड कर पाओगे। सो यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट 1 year in advance. The only way to ensure कि आपकी कंजम्पशन कंसिस्टेंट रहे, क्या रहेगा, दैट यू डिटरमाइन द प्राइसेस इन एडवांस। आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप आज ही सोच लो ना कि 1 साल के अंदर अंदर कितना प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे 1 साल के अंदर। तो आप आज सोच लो कि 1 साल में कितना प्राइस बढ़ेगा, और उसके बेसिस पर कि 1 साल में कितना प्राइस बढ़ सकता है, फिर आप पैसा मांगो। सो वेजेस डोंट डिपेंड ऑन एक्चुअल प्राइस, क्योंकि वेज तो पहले डिसाइड करनी पड़ेगी 1 साल की, दे डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप पैसा भी आज ज्यादा मांगोगे। सो दैट इज वाई प्राइस की जगह पर हमने यहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस रखा है। बेटा लेट्स राइट डाउन दिस एंटायर स्टोरी नाउ। आ जाओ, let's write down the answer for this. Let me just remove all of this. Okay, please write. So write down, workers do not care about nominal income, but about how many goods they can buy. Therefore, they are interested in real income. I hope ये क्लियर हो गया बेटा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। तो बेटा रियल इनकम हो गई W/P, ये उनको सेम रखना है। तो अगर मुझे W/P सेम रखना है तो ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ाओगे ना। सो प्लीज राइट डाउन, देयरफॉर वर्कर्स डिमांड हायर नॉमिनल, नॉमिनल मतलब ये W, वो ज्यादा W मांगेंगे जब P बढ़ेगा। सो दे आस्क फॉर हायर nominal wage when price increases. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये हमने लिखा वर्कर की तरफ से। अब सेकंड पॉइंट, सो बेटा सेकंड पॉइंट जो आपका हो गया वो हो गया हमारा एम्प्लॉयर की साइड से, हमने वर्कर की साइड से लिख दिया ना। सो प्लीज राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। Second point is that the employer does not care about nominal wage. एम्प्लॉयर को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि उसको वेज कितनी पे करनी है, उससे फर्क पड़ता है कि उसको रियल वेज कितनी पे करनी है। So even employer does not care about the wage. The employer also cares about the real wage. So please write down beta, the employer does not care about nominal wage, but
the real wage they pay to the workers. So if price of good increases, they are willing to pay more. तो बेटा अगर मेरे गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हूं. अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं, if I am earning more, then I'm also willing to pay more for it. Is this clear बेटा? सो बेटा ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए. अब हमने ये प्राइस से रिलेटेड लिखा है, अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए. सो प्लीज राइट डाउन दैट इन रियलिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड इन एडवांस. तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में साइन हो गया तो जब असली में प्राइस बढ़ेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे. इसलिए पहले ही सोच लो कि 1 साल में कितना बढ़ने वाला है और अकॉर्डिंगली वेज मांगो. सो देयरफॉर द वर्कर्स शुड फॉर्म एक्सपेक्टेशन about wages and ask for more wage if they are expecting the price to rise. बेटा आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल इज नॉट द पॉइंट. यू शुड बी ऑल्सो राइटिंग इट इन द राइट वर्ड्स. अगर आप इसको करेक्ट वर्डिंग्स में नहीं लिखते हो तो पूरा का पूरा समझा हुआ खराब हो गया. राइट? सो दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट. तो हमने बताया कि वेज और प्राइस एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे आप सोचोगे कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा आप ज्यादा वेज भी डिमांड करोगे. बेटा कम टू द सेकेंड रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट के साथ. सो माय सेकेंड रिलेशनशिप इज विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं. बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कहते हैं? अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो बेटा एज अ फर्म मैं लोगों को कम पैसे में ऑफर करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास भी जॉब नहीं है, वो सस्ते में भी काम करेंगे. सो व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, फर्म विल ऑफर लोअर वेज. और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो एज अ वर्कर मैं भी कम पैसे में काम करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि नौकरियां ही नहीं है. सो बोथ वर्कर एंड फर्म agree on a lower wage when unemployment rate is high. So please write down beta that when unemployment rate is high, firms offer lower wages. And since there is a lot of competition, worker is willing to accept lower wage. तो बेटा फर्म कम पैसा ऑफर करेगा, वर्कर वो कम पैसा एक्सेप्ट कर लेगा और वेजेस लोअर सेट हो जाएंगे. सो When unemployment rate is high, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आपकी बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है. यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में, यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में. और क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है इसलिए आप अपना लो वेज में भी काम कर लेते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बेटा राइट डाउन द लास्ट फैक्टर. इसको इन्होंने बोला है कैच ऑल वेरिएबल. Z को बोला गया है कैच ऑल वेरिएबल. इस कैच ऑल वेरिएबल में बेसिकली
हमारे पास दो मेन फैक्टर्स आते हैं, एक को बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, सेम ही है एक्चुअली, बहुत सिमिलर बातें हैं, समझ लो पहले क्या है फिर लिखेंगे। तो बेटा सपोज इमेजिन करो कि आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, आप एक जगह पे जॉब मांगने गए, उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको ₹100 पर डे ऑफर करूंगा। अभी आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो भी मिल रहा होगा आप उसको इजीली एक्सेप्ट करके ले लोगे। सो यू विल से अच्छा ठीक है यही दे दो एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग। नाउ बेटा इमेजिन करो कि यहां पे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी लोगों के पास जॉब नहीं है, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको मैं 200 पर डे दूंगा। गवर्नमेंट ने 200 पर डे ऑफर कर दिया, तो क्या आप 100 पर डे में काम करोगे? नो। अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैं काम तो करूंगा, बट जो मेरी मिनिमम वेज होगी वो एटलीस्ट अगर आप मेरे को 210 या 250 या 300 दोगे तब मैं काम करूंगी, क्योंकि काम ना करके भी मुझे 200 तो मिल ही रहा है। सो बेटा जैसे ही गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मार्केट में लेकर आती है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको हम पैसा देंगे, तो इससे फर्म्स को ज्यादा वेज ऑफर करनी पड़ती है, क्योंकि कम वेज में कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, लेट्स राइट दैट डाउन बेटा। तो जेड ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरह है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होगी, अगर ये वेरिएबल्स मिलेंगे, तो बेटा कब आप काम करोगे? जब आपको ज्यादा वेज ऑफर होती है, तो इससे आपका वेज इंक्रीज होगी, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी। सो प्लीज राइट डाउन, when there are factors like unemployment insurance और मे बी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी जॉब को प्रोटेक्ट करते हैं, it increases bargaining power of the labor। तो वर्कर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स since a labor gets gets money even for not working, he would be willing to work only at a high wage। ये समझ में आया? तो क्योंकि इस केस में आपको काम ना करने का भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आप सिर्फ तब काम करोगे जब आपकी वेज रेट बहुत ज्यादा हाई होगी। सो बेटा सिंपली यू कैन से दिस इंक्रीजेस द वेज रेट आस्क्ड बाय लेबर। मैं एक और लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी, इसे बोलते हैं मिनिमम वेज रेट। जैसे बेटा आज तक आपको जो वेज रेट ऑफर हो रही थी वो 100 ऑफर हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने बोला कि देखो द मिनिमम वेज जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगी वो 150 होगी। तो इससे क्या होगा? कोई भी आपको 100 ऑफर नहीं करेगा, सब लोग 150 ऑफर करेंगे। 150 से नीचे नो कंपनी कैन ऑफर नाउ। सो बेटा इससे भी तो वेज बढ़ जाएगी ना। सो ये जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स लेकर आती है, लाइक मिनिमम वेज रेट, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बेटा ये सारे वेरिएबल्स को उन्होंने एक साथ जेड के अंदर लिख दिया।
तो ये जो वेरिएबल्स है हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ऑल दीज वेरिएबल आर कॉल्ड एज जेड। और इन वेरिएबल्स की वजह से आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। तो जब जेड बढ़ता है तो उससे आप जो वेज डिमांड कर सकते हो वो भी बढ़ती है। सो बेटा वी हैव डन दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन टुडे। क्या क्या हमने देख लिया कि वेजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइस से पॉजिटिवली अफेक्ट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं, और ये कैच ऑल वेरिएबल जेड से पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। अगेन बेटा दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ये कैसे आएगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। What are the factors that determine wage rate? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ इज वेज रिलेटेड टू कैच ऑल वेरिएबल? तो अगर सिर्फ कैच ऑल वेरिएबल पे ही क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बेटा आपको ये तो बताना ही है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बट यहां पे ये भी लिख देना दैट व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम वेज it increases bargaining power of worker. Hi, good evening everyone. Beta, today the aim is to go ahead and finish chapter 6 of Blanchard. We have already gone ahead and we have already covered some part of Blanchard. So I've already gone ahead and I have taught you what is the efficiency theory. We also talked about what is wage determination. Today I will go one step ahead and I will talk about the price determination. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ना कैच और वेरिएबल क्या होते हैं, और ये एक इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी बेटा। ये इक्वेशन थी W is equal to PE F of UZ, ये वाला हमने पढ़ लिया था। आज I will go ahead and I will continue this lecture. So please write down the topic for today. And the topic that I have in mind is called price determination. Right? Price determination. Okay, beta. Now, whenever we want to talk about price determination, we always, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। तो we always go ahead and we go towards the firms. ठीक है? Firms क्या करती हैं? Firms production करती हैं। और ये प्रोडक्शन करने के लिए फर्म्स बेसिकली एक इक्वेशन पे डिपेंडेंट होती हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, अभी कुछ नहीं लिखना है, प्लीज पहले समझो बेटा। व्हेन आई से y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि y x पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे ये x चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये सब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये होता है ना। सो बेटा नाउ व्हेन आई गो अहेड एंड से प्रोडक्शन फंक्शन, इसका क्या मतलब है दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट। तो मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ वो लेबर और कैपिटल पे डिपेंडेंट होगा, इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं ना, हम एज्यूम कर रहे हैं एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन इस चैप्टर के अंदर। So what we are assuming is going to be a linear production function. That means we will say y is equal to labor. जितना लेबर होगा उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेबर और आउटपुट बराबर के हैं। But I am going to include a factor A, and but this factor A is called the technology factor. This factor A is called the technology factor. So I hope this is clear to you, beta. I am saying output depends on the input, लेबर इनपुट है, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज होगा आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड ये जो ए है इसको हम बोलते हैं अपना टेक्नोलॉजी फैक्टर। ठीक है बेटा,
Acha. Now let's write this down. So please beta go ahead and start writing with me. So write down that the price set by firms depend on the cost that firms face. तो जो प्राइस फर्म सेट करते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है. ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो ज्यादा प्राइस, कम कॉस्ट लग रही है तो कम प्राइस, है ना बेटा. अब ये जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है. सो प्लीज राइट डाउन कॉस्ट इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन. सो बेटा प्राइस डिपेंड कर रहा है कॉस्ट पे और कॉस्ट डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन फंक्शन पे. अब हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन बच्चे? प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप between input and output. एक रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में तो उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. जैसे बेटा y इज इक्वल टू a इंटू n, ये प्रोडक्शन फंक्शन है. यहां पे हम लिख लेते हैं दैट y इज द आउटपुट, a इज द टेक्नोलॉजी फैक्टर and n is the labor. So we are saying output depends on input. ठीक है बेटा. अब समझो, देखो इसमें जो A है ना ये टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और इसको हम लेबर प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं. तो हमारे लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है? प्रोडक्टिविटी मतलब देखो ध्यान से समझो, ट्राई टू लुक हियर बेटा. So if I say y is equal to a into n, so this implies that y by n will be a. So suppose I tell you that beta there are 100 units that I produce and there are 10 labors that I have. तो बेटा 100 by 10 क्या हो गया? आउटपुट पर लेबर हो गया ना, आउटपुट पर लेबर. मतलब हर लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है वही तो ये ए है ना. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड आउटपुट पर लेबर एंड दिस टेल्स मी द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर. दिस इज ए, दैट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर. सो लेबर प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट आउटपुट पर लेबर. एक और चीज है जो समझनी होगी बेटा कि ये ना बहुत ही एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है. आइडियली प्रोडक्शन फंक्शंस इतने सिंपल नहीं होते हैं. आइडियली प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट यहां पर हमने एक बहुत सिंपल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम किया. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल माने क्या? दैट इज एनी प्रोडक्शन फंक्शन विच इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इनपुट. तो ये देखो बेटा जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ए एन. सपोज मैंने बोल दिया कि a ना 4 है, मतलब y इज इक्वल टू 4n. तो अगर मैं लेबर 1 यूनिट लगाती हूं तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 4. अगर मैं लेबर को डबल करती हूं तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 4 into 2 8. अगर मैं लेबर को 3 करती हूं तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 4 into 3 12. So beta as you will scale the labor, your output will also scale. That is called डबल ही हो रहा है ना. जैसे लेबर को डबल कर रहे हो, 1 से 2 किया, डबल किया, आउटपुट भी डबल हो गया. लेबर को 3 टाइम्स किया, 1 से 3, आउटपुट भी 3 टाइम्स हो गया. So when your output is exactly proportionately scaling to your input, beta that is called as constant returns to scale. And in this class, we will assume CRS production function. So we are assuming, this is an assumption that we have a CRS production
फंक्शन। ये मेरी एक एजम्पशन है इस क्लास के लिए, ठीक है बेटा। आगे देखो, see if I tell you that y is a into n, in our class for today we assume that a is equal to 1. This is my assumption today, that a is equal to 1. So beta, if a is 1, then I will have y is equal to 1 into n. So this means I will have y is equal to n. मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे वो कितना होगा, जितना इनपुट। अगर 10 लेबर है तो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 20 लेबर है तो 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? Now let's define a term that is called as marginal cost of production. So beta, what is marginal cost of production? क्या होती है? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. In today's lecture, I will not only finish this, but I will also do some assignment questions that can come in exam. So please be very sincere. इसको एंड तक अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि एंड में मैं बहुत सारे ट्रू फॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ. So the lecture is going to be very, very important. Okay, beta? Let us continue. So now just think about this. Beta, now I am going ahead and I am asking you, what is going to be your marginal cost of production, right? So what is marginal cost? Change in cost as you change the inputs. Or in other words, the additional cost of additional inputs. तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो बोलता है that how your total cost will change as your input changes. ठीक है, हमारे केस में समझो, जब मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉय किया, तो बेटा एक्स्ट्रा कितना पैसा दोगे आप उस लेबर को? उसकी वेज के बराबर. You will pay him the wage when you employ one more labor. So in our case, the cost of producing an additional, sorry, not here, input beta. So marginal cost is cost of producing an additional unit of output. यहाँ ना y कर दो, additional output. हाँ, so now understand. Beta, cost of product that we have, what is the cost of the product? Product कब बन रहा है? मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट कब बना रही हूँ? बेटा जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को बना रही हूँ, when I am going ahead and I am employing one more unit of labor, एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से एक यूनिट आउटपुट का एक्स्ट्रा बनता है, और ये एक लेबर को लगाने का जो कॉस्ट है वो है जो हम उसको वेज पे कर रहे हैं. So the marginal cost is nothing but it is the wage. So please start writing with me. Write down the marginal cost of production. Marginal cost of production is the cost of producing one more unit of output. In our case, देखो बेटा y is equal to n था, जितना लेबर उतना ही आउटपुट. तो अगर मैं लेबर एक से बढ़ाऊंगी तो आउटपुट एक से बढ़ेगा, और लेबर को एक से बढ़ाने के लिए वो एक एक्स्ट्रा लेबर को उसकी वेज देनी पड़ेगी. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज द वेज. क्लियर बेटा? अब बहुत ध्यान से समझो. देखो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, देन इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस
and the wage are supposed to be equal to each other. In perfect competition, price and wage are set equal to each other, है ना? मतलब जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है. इफ यू रिमेंबर, एक परफेक्ट कंपटीशन बेटा ऐसा चलता है, ये हमारा हो गया AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P. ये होता है मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पे दोनों मीट करते हैं उतना आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं. सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल. बट यूजुअली मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है. सो यूजुअली, हाउएवर, in markets, perfect competition doesn't exist. So beta, what do I mean when I say perfect competition does not exist? I mean that the price that I will be keeping, therefore, the price will be above marginal cost. हम प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं रखते हैं. तो बेटा जो हमारा प्राइस होता है वो हो जाता है 1 plus m times the marginal cost, where m is called the markup. मतलब हम वेज से थोड़ी ऊपर मार्जिन, मतलब वेज से थोड़ी ऊपर या मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ी ऊपर प्राइस को रखते हैं और उसको हम बोलते हैं मार्कअप. तो जब जैसे सपोज आपने बोला मुझे बेटा दैट मैम आई वांट टू कीप अ मार्कअप ऑफ 10%, मतलब अगर आप वेज 10 रुपए दे रहे हो तो आप जो प्राइस रखोगे वो 11 रुपए रखोगे. 10%, 10% of 10 rupees you will keep as your markup, as your profit. Are you getting it? So let's say that the wage is 10 rupees and you tell me ma'am I want to keep a markup of 10%. So बेटा markup की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10% of 10, तो ये हो गया 10 by 100 into 10, that means 1. तो बेटा जो आपका प्राइस आएगा वो हो जाएगा 1 plus m into w, माने 1 plus 1 into w. Not 1 plus, sorry, 1 plus m into w. और ये जो पूरा इसको आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मार्कअप कितना रखा है? 10% ना. सो 10% into w, तो बेटा हो जाएगा 1 plus 10 by 100 into w. तो बेटा ये हो जाएगा 1 plus 10 by 100 into 10 and this will be 11. सो जो आप प्राइस रखोगे वो है वेज प्लस ये जो मार्कअप आपने कैलकुलेट किया है वेज के ऊपर 10% of 10. इसको ऐड करके आपको जो प्राइस है वो मिलेगा. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, है ना? तो बेटा जो मार्कअप होता है दैट इज ओवर एंड अबव वेज. इस पे आज एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड में. सो हाउ मच, व्हाट इज द मार्कअप? द अमाउंट दैट यू, द प्राइस दैट यू सेट ओवर एंड अबव द वेज. प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन बेटा. P इज इक्वल टू 1 plus m into w. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. प्लीज लिखो, m is the markup of the price over the cost. If we have perfect competition, m will be 0. बेटा अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो ये m 0 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो I will get P is equal to 1 plus 0 into W. That means I will get P is equal to W. तो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, है ना? However, if markup is greater than 0, अगर मार्कअप पॉजिटिव है then प्राइस विल बी मोर देन वेज. जैसे यहां था, जब मार्कअप को 10% रखा तो जो प्राइस आया ना वो कितना आया बेटा? प्राइस आ गया आपका 11 और वेज कितनी थी? 10. तो अगर हम अपने लिए पॉजिटिव मार्कअप रखेंगे तो प्राइस जो है वो वेज से ज्यादा आएगा. कितने अमाउंट से?
by the factor equal to 1 plus m. इस फैक्टर से ज्यादा आ जाएगा. ठीक है बेटा? Okay. Now, what I want to go ahead and do is the following. Let us define the two relations together. So, if you remember, in the last class, beta, we did something which is known as a wage setting relation. ये जो वेज सेटिंग रिलेशन हमने किया था, ये वेज सेटिंग रिलेशन हमने एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ किया था. क्या लिखा था हमने बेटा? दैट W is equal to PE F U Z. ये वेज सेटिंग रिलेशन था. Now, suppose let's assume that P is equal to PE. मतलब जो भी हमारे लोग हैं इकोनॉमी के, वो एग्जैक्टली प्राइस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं. दे आर एग्जैक्टली एबल टू टेल दैट प्राइस इन द इकोनॉमी विल बी दिस मच. वो सही एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर पा रहे हैं, वो एक्चुअल प्राइस बता पा रहे हैं. सो प्राइस और एक्चुअल प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस वो बराबर हो रहे हैं, राइट? सो इफ पीपल आर एबल टू फॉर्म द करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, राइट? आई विल टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस इन द कमिंग क्लासेस. But अभी के लिए, if people are able to form the correct expectations, then beta price and expected price will become equal to each other. So instead of PE, I can write P and I will get W is equal to P F U Z. So from here I will get W by P is equal to F of U Z. This relationship is called as the price, as the wage setting relation. ठीक है? इसको ना प्लॉट भी कर सकते हैं. So let's say that I take unemployment rate here. अब एक बारी बहुत ध्यान से सोचना है हमने. देखो, जब हमने इनके बीच में, suppose I take real wage here. When I am making a relationship between the real wage and unemployment rate, what is the relationship I had taught you in the last class? Negative relationship. Why? What did I teach you? I taught you that beta, when unemployment increases, ज्यादा लोग हैं मार्केट में जिनके पास जॉब नहीं है. When unemployment rate increases, then beta competition will increase. ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है. When competition will increase, तो इमेजिन करो एक रूम जो फुल ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं. अगर इनको जॉब के लिए बैठना है, दे विल बी विलिंग टू वर्क एट अ लेसर वेज. सो द वेज दैट दे विल चार्ज विल डिक्रीज. दे विल वर्क फॉर अ लोअर वेज, है ना? सो बेटा, ये हो जाता है नेगेटिव रिलेशनशिप कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, पीपल विल बी विलिंग टू वर्क एट अ लोअर वेज. पीपल विल हैव लोअर बार्गेनिंग पावर, राइट? People will have lower bargaining power. Clear हुआ? ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है ना? So we can write that the higher the unemployment rate, the lower the real wage. Okay बेटा, इसको हमने बोल दिया वेज सेटिंग रिलेशन. अब हम आते हैं प्राइस सेटिंग रिलेशन पे. बेटा, प्राइस सेटिंग रिलेशन है कि प्राइस कैसे सेट होते हैं. मैंने अभी आपको सिखाया दैट P इज इक्वल टू 1 प्लस M इंटू W. अच्छा, सपोज मुझे यहां से भी W बाय P निकालना है, तो मैं P को इस साइड ले जाती हूँ और इसको यहां ले आती हूँ. सो आई विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस M is equal to W by P, है ना? बेटा, मार्कअप तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. जैसे मार्कअप हमने एक नंबर पे फिक्स कर लिया, 10%, 5%, 7%. मार्कअप एक कांस्टेंट वैल्यू है ना? सो इफ मार्कअप इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 प्लस M भी कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस M भी कांस्टेंट होगा. सो बेटा, इफ दिस इज कांस्टेंट, that means I am equating the real wage to some constant. I am equating the real wage to some
कांस्टेंट। सो बेटा इस केस में जो प्राइस सेटिंग रिलेशन होता है वो ये बोलता है कि आपकी जो रियल वेज होगी वो एक कांस्टेंट लेवल पे होगी। तो हमने क्या किया, अपनी रियल वेज को यहां रखा और इसको एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्राइस सेटिंग रिलेशन। सो प्राइस सेटिंग रिलेशन बताता है कि एक्चुअल में जो फर्म्स हैं वो कितनी वेज दे सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द फर्म साइड, क्योंकि ये मार्कअप तो फर्म की साइड से था ना, कि उन्होंने जो प्राइस सेट किया है वो वेज से कितना ऊपर है। सो प्राइस सेटिंग रिलेशन determines the real wage that will be paid by the firm, right? Whereas the wage setting relation is what the laborers are asking, and it depends on the bargaining power of the labor. Clear hua? So beta please write down the price setting relation determines the real wage paid by the firm. ओके बेटा, अच्छा एक बात ध्यान से समझो, मैंने निकाला दैट रियल वेज पेड बाय द फर्म विल बी 1/1 प्लस m. सो बेटा व्हेन दिस m विल इंक्रीज, जैसे जैसे ये m इंक्रीज होता है मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, सॉरी मतलब फ्रैक्शन डिक्रीज होती है, जैसे जैसे m इंक्रीज होता है डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, तो बेटा जो ये फ्रैक्शन है वो पूरी की पूरी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ये फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रैक्शन इसके बराबर है, मतलब रियल वेज भी डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? लुक एट इट अनदर वे। सपोज बेटा मैं कह रही हूं कि मैंने मार्कअप बढ़ा दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैंने वेज जो है ना वो 10 रुपीज पे रखी हुई है। अब जो मेरा मार्कअप था बेटा, मार्कअप था 10%, तो जो मैंने प्राइस सेट किया होगा वो 11 रुपीज किया होगा। 10% अबव द मार्कअप है ना, तो मेरा जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m इंटू डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 11। तो जब मेरी वेज 10 रुपीज थी और मार्कअप 10% था तो प्राइस 11 आ रहा था। सो बच्चा व्हाट विल बी योर रियल वेज? Your real wage will be W by P. That means 10/11. ये real wage हो गई। Now, suppose I am telling you that बेटा I am increasing the markup to 20%. मैंने markup बढ़ाकर ना 20% पे कर दिया। Can you tell me what will be the price in this case? 1 plus M into W. But अब markup ही 20% है, तो ये हो जाएगा 1.2 into 10, तो ये हो जाएगा बेटा 12। सो जब मार्कअप मैंने 20% पे किया, जब मैंने मार्कअप को इंक्रीज कर दिया कि मैं अपना 20% अबव वेज रखूंगी, मेरा प्राइस आ गया 12। बेटा व्हाट विल बी योर रियल वेज? 10 डिवाइडेड बाय 12। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हेन आई टेल 10 डिवाइडेड बाय 11, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 11, क्या होगा आंसर इसका? This will be 0.90. So your real wage is 0.90. Now can you tell me what will be the value when you do 10 divided by 12? क्या आंसर आएगा? 0.83, right? The answer you will get will be 0.83. So जब आपका मार्कअप 10% था, रियल वेज 0.90 थी, और जब मार्कअप 20% पे हो गया तो रियल वेज 0.83 पे हो गई। मतलब एज द मार्कअप इज इंक्रीजिंग, द रियल वेज, जो फर्म्स रियल वेज ऑफर कर रहे हैं वो गिर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वेजेस गिर जाएंगी, राइट? सो नाउ एक और तरीके से सोच सकते हैं, देखो जब मार्कअप बढ़ेगा, फर्म्स चीजों को महंगा कर रहे हैं, आपको तो सैलरी सेम मिल रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो रियल टर्म्स में आप कम खरीद पाओगे ना। सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट दिस डाउन बेटा। व्हेन फर्म्स इंक्रीज मार्कअप,
it increases the price of the product. अब प्राइस बढ़ रहा है, so since the nominal wage is constant, मतलब W को मैंने constant रखा है, increasing price decreases real wage. समझे बेटा? आपको सेम पैसा मिल रहा है, आटा दाल चीनी एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आप कम आटा दाल चीनी खरीद पाओगे ना. That means your real wage will decrease. So increasing price decreases the real wage. अब हमने ये प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप को ना, वी हैव टू, ये हमारा प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप हो गया, ये हमारा वेज सेटिंग रिलेशनशिप हो गया. अब इन दोनों से बेटा वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो हाउ कैन वी फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन? प्लीज राइट डाउन इक्विलिब्रियम. और ये इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We will go ahead and we will have the price setting relation here, the weight setting relation here, और ये हमारा हो गया 1/1 plus m. But wherever the price setting relation and the weight setting relation are equal to each other, this is called your equilibrium. This is called your equilibrium. ये आपके different unemployment rates हैं, but जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर हुआ? सो प्लीज राइट डाउन दिस बेटा. प्लीज राइट दिस डाउन दैट whenever, write down the natural rate of unemployment is the unemployment rate such that the wage setting relation equals to the price setting relation. Is this clear? Okay. अब इस चीज को एक बार थोड़ा सा और समझो. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ना बेटर भी समझाना है बेटा. नेचुरल मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं एक्ट नेचुरली, नेचुरल मतलब प्रोवाइडेड बाय द नेचर व्हेन देयर इज नो चेंज. सो एक्चुअली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब एक इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, मतलब जितने भी लोगों को जॉब्स चाहिए उन सबको जॉब मिली होती है. सो बेटा इफ एवरीवन हु इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब हैज अ जॉब, जिनको भी जॉब चाहिए उन सबके पास जॉब है, तो फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? व्हाट इज दैट? सो बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि किसी भी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बेसिकली 3-4 तरीके की होती है ना. सो अनएम्प्लॉयमेंट in any economy can be frictional, it can be structural, it can be cyclical. बेटा फ्रिक्शनल वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो तब होती है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते हो, तो फ्रिक्शनल समझो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, दिस पर्सन ही हैज लेफ्ट हिज जॉब ऑन 31st of August and he has to join a new job on 10th of September. तो बेटा ये बीच के दिनों के लिए he is unemployed, but he will get back a job ना. इसकी जॉब ऑलरेडी साइंड है, बस ये 9 दिन बीच में अनएम्प्लॉयड है. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल. The second is called बेटा structural unemployment. Structural क्या होती है? For example, I know how to use a computer. Now tomorrow you come up and you tell me कि आज से कंप्यूटर पे काम बंद, सुपर कंप्यूटर्स पे काम स्टार्ट, and I don't know how to use a super computer. So बेटा you will kick me out of my job. So when you lose your job because of technology,
दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब तीसरा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हम इकोनॉमी में साइकिल्स की वजह से क्रिएट करते हैं। साइकिल्स मतलब क्या? हर इकोनॉमी में एक पीरियड होता है बूम का, फिर रिसेशन, फिर बूम। ये रिकवरी पीरियड है, ये रिसेशन पीरियड है, इसको एक्चुअली डिप्रेशन भी बोल सकते हैं यहाँ वाले को। सो एक इकोनॉमी बूम से रिसेशन डिप्रेशन होते हुए वापस रिकवर करके बूम में जाती है। जब इकोनॉमी बूम की पीरियड में, व्हेन द इकोनॉमी इज इन द पीरियड ऑफ द बूम, the economy will have maximum employment. Everybody will be employed. When the economy is in recession or depression, it will have unemployment. Like जैसे कोविड के एकदम बाद इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, people were unemployed, right? So बेटा de-unemployment, which is due to the cycles, that is called cyclical unemployment. अब full employment क्या है? Full employment is when everybody is employed. अगर सबके पास जॉब है, that is called full employment. But ये full employment के होते हुए भी इस full employment में हम assume करते हैं कि दो तरीके की unemployment फिर भी exist कर सकती हैं, और वो है frictional और structural. तो अगर एक इकोनॉमी में सबके पास जॉब है, everyone has job, सिर्फ दो तरीके के लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एक जो एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरे जो टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब से निकाले गए हैं, और उसके अलावा सबके पास जॉब है, एवरीबडी हैज अ जॉब, देन बेटा दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नेचुरली क्रिएट हो रहा है, ये किसी रीजन से क्रिएट नहीं हुआ कि रिसेशन है, डिप्रेशन है या कुछ भी और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ना ना। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज दीज टू थिंग्स आर नेचुरल। ये अपने आप से चली जाएंगी, ये नई टेक्नोलॉजी सीख लेगा तो जॉब मिल जाएगी, जॉब है बट इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, और ये जैसे अपनी वापस नई ज्वाइन करेगा तो जॉब मिल जाएगी। सो नेचुरल मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड ओनली टू अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट। Now in this case, बेटा natural rate of unemployment is represented by U के नीचे एक subscript UN, ठीक है, इसको हम natural rate of unemployment बोलते हैं। I hope this is clear to you. So natural rate of unemployment is that unemployment where only two unemployments exist, frictional and structural. Rest everyone is employed in the economy. अब हमने क्या बोला कि जहां पर ये वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप्स इक्वेट होते हैं, उससे जो इक्विलिब्रियम आता है उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज एक्चुअली द ट्रू अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सबके पास जॉब है, इस रेट पर, इस पॉइंट पे ये जो इक्विलिब्रियम आया है, एवरीवन हैज अ जॉब, द ओनली टू पीपल अनएम्प्लॉयड आर स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल। इज दिस क्लियर? The position of the wage setting and price setting relation curves determine the equilibrium and the unemployment rate. At any given unemployment rate, higher unemployment benefit leads to higher real wage. So, we understand this, that as Z increases, W by P is a function of U and Z and a positive function of Z. So as Z increases, W by P increases. Now, if the real wage increases and I don't want to change the real wage, then what will I do? I will simultaneously increase the unemployment rate. The moment the unemployment rate will increase, then there will be more competition and real wage will fall. So an increase in Z, which causes real wage to increase, must be compensated with increase in U, which will cause the real wage to decrease. By letting firms increase their prices given wages, less stringent enforcement of antitrust legislation leads to decrease in the real wage. Again,
As prices increase, automatically W by P decreases, so real wage decreases. So let's see this one. This is when there is an increase in Z. When Z increases, wage setting relation shifts upwards. So there is an upward shift of the wage setting relation. When the wage setting relation shifts upward, the new equilibrium is with the new intersection at A dash. So the unemployment rate increases. So increase in Z causes increase in real wage. Correspondingly, the unemployment rate increases, causing the real wage to decrease. So the equilibrium is maintained. An increase in unemployment benefit leads to increase in natural rate of unemployment. Markups and natural rate of unemployment. An increase in the markup. So when mu increases, 1 plus mu also increases. 1 upon 1 plus mu decreases. So the price setting curve shifts downwards because this is decreasing. And the new intersection is at A dash with higher rate of unemployment. And this makes sense. If firms keep more profit to themselves, if firms want more profit, firms are going to charge higher prices. More profit means more price you will charge. And more price would mean decrease in real wages. And when real wage decreases, then less people will be willing to work. So unemployment rate will automatically increase. So increase in markup decreases the real wage. And because real wage is lower, people will not work. So unemployment rate will increase. Because the equilibrium rate of unemployment reflects the structure of the economy. A better name for natural rate of unemployment is called structural rate of unemployment also. So because it tells about the structure of the economy, tells how your economy looks, therefore it is also called the structural rate of unemployment. From unemployment to employment, this is very simple. See, what is L? Labor force. Unemployed plus employed. Right? If I divide on both sides by capital L, I will get 1 is equal to, this is U by L, unemployment rate, plus this is employment rate. So employment rate will be nothing but 1 minus unemployment rate, and unemployment rate will be nothing but 1 minus employment rate. Right? So this is what we have written. Unemployment rate will be 1 minus N by L. N by L is employment rate. Now, if we have U is equal to 1 minus N by L, L is the number, N is the number of people employed. You can write it by N, you can write it by E. They're synonymous. Same. So if U is equal to 1 minus N by L, then from here I will get N by L is equal to 1 minus U, this one. So from here I will get N is equal to 1 minus U into L. Now when U is equal to UN, which means unemployment is at equilibrium, then after I put instead of U, UN, I get a value of N. This is called NN. This is called natural level of employment. So when, what does it mean? When I find this equilibrium from wage setting and price setting relation, I get this equation that I get this equilibrium unemployment rate called natural level of unemployment. Now, for any unemployment level, I have unemployment rate is equal to 1 minus unemployment rate. So the number of people who are employed is 1 minus U into L. This is for any level of U. But
at equilibrium, because unemployment rate is equal to UN. This is the unemployment rate at equilibrium. So U is replaced with UN. So when I put equilibrium value here, I get a corresponding equilibrium value here. This is called natural level of employment. So when unemployment is at its natural rate, correspondingly employment is also at equilibrium. So this is the natural level of employment. Associated with the natural level of employment is the natural level of output. So remember, from the production function, we had studied that Y is equal to N. How much ever labor you employ, that much will be the level of output that you will produce. And now remember that we just proved that at equilibrium, the amount of labor employed is 1 minus UN into L. So therefore, at this equilibrium, the amount of output produced is also 1 minus UN into L. So this is the amount of output that is produced, which is nothing but the amount of people who are employed. Okay. So this is the amount of output that you produce. Here, in fact, when I wrote E here, because the number of people who are employed is equal to the output produced, in fact, everywhere here also, we could have written Y. We could have done that because Y and N are same. So here also you could have written Y. You could have found out the output produced at any level. So this is what we are saying, that you can simply, instead of N, write Y everywhere. This is what you can do. This output is called natural level of output. So please see, UN is called natural level of unemployment. Correspondingly, NN is called natural level. Actually, this is natural rate. Natural rate of unemployment. NN is called natural level of employment. This is rate because this is U by L. Unemployed by labor force. Okay, so this is natural level of employment. And YN is natural level of output. Now, we also go ahead and understand that because I had W by P as a function of unemployment and Z, at equilibrium, unemployment is UN. So I can say that at equilibrium, W by P is Y, is a function of UN and Z. And unemployment is nothing but 1 minus employment, and employment is nothing but equal to output. So UN is nothing but 1 minus natural level of output by Y. So I can also write that W by P is a function of 1 minus YN by L, comma Z. This is important, very important. Why? Because now I have a relation between wages and output. How output affects wages. So this is going towards the relation between output and wages. So this is also an important relationship. The Phillips curve, natural rate of unemployment and inflation. Okay, beta. Now, see, in 1958, very, very early, I mean, imagine we are talking about a period when economics had just started in the world in many, many terms, right?
So in 1958, we had this economist and his name was A.W. Phillips. What he did is he drew a diagram in order to go ahead and explain the relationship of inflation against unemployment. ठीक है जी? And he did this for years between 1861 to 1957. He found out that there is an inverse relationship between unemployment rate and inflation, right? So let's try to go ahead and plot some relationships better. In 1958, we had this economist. His name was A.W. Phillips. अभी लिखवाऊंगी बाद में, पहले एक बारी समझ लो सब, फिर लिखेंगे, हाँ? So in 1958, he was this economist, and he took data set from 1861 to 1957. And in this data set from 1861 to 1957, he found out that there is a negative relationship between unemployment rate and inflation. तो क्या पता चला कि जब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी तब तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम थी, और जब जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी तब तब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम थी. So he found this negative relationship. Then after 2 years, that means in 1960, we had two economists coming up, दो economists आए. एक का नाम था Paul Samuelson, and the second economist बेटा he was called as Robert Solow. तो ये दो economist आए. अच्छा, A.W. Phillips, इन्होंने जो डेटा सेट कलेक्ट किया था, he collected this data set for UK. सिर्फ UK के लिए ही कलेक्ट किया ये डेटा सेट. So then Solow and Samuelson, इन दोनों ने ये फिलिप्स की एक्सरसाइज को अपनी कंट्री के लिए रेप्लिकेट करने की कोशिश की. So 1900 से लेके 1960 तक का डेटा सेट इन्होंने कलेक्ट किया, and these two economists बेटा they were from US. So they collected this data set from US, हाँ. और फिर उन्होंने दोबारा निकालने की कोशिश की कि क्या ये सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नेगेटिवली रिलेटेड है या नहीं है. इन्होंने भी सेम पाया, दे फाउंड द सेम थिंग कि यस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड तो हैं, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. बट बेटा उन्होंने देखा कि जब बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी तब ये रिलेशन थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था, बट मोर और लेस स्टिल नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, आई मीन नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टेड. सो इनको भी लगा कि हाँ ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. And because they also found out the same thing, that there is a negative relationship between the two, so they thought why not just give it a name. मतलब दोनों जो फिलिप्स ने देखा अपनी कंट्री के लिए, उसी चीज को ये लोग अपनी कंट्री में देख पा रहे थे. They could go ahead and see the same thing. So they thought, okay, if the same relationship exists, इसको कुछ नाम देना चाहिए. So then these two economists, Phillips ने खुद से नाम नहीं दिया था. Samuelson and Solow, these two economists, beta, they came ahead and they gave this relationship the name called Phillips curve. Okay. So they named this relationship as Phillips curve. Clear हुआ? After this, in 1970s, people started testing whether this relationship holds true or not. And they found out in 1970s, in US and in other OECD countries, they saw that inflation was also high. मतलब prices बहुत high थे. There was very high inflation, but still people were unemployed. Unemployment भी high थी. So both inflation and unemployment were high. But Phillips had suggested that there should be a negative relationship between the two, na? So this relation broke down. This was a contradiction to the Phillips curve, right?
So what they found out is that this relation which existed till 1960s, this no more existed in the 1970s. The question is now whether this Phillips curve is actually valid or not. क्या ये Phillips curve actual में hold true करता है या नहीं करता? Right? Is this clear? This chapter, beta, welcome to this chapter. This chapter is all about these things. This chapter is to understand what is the relation between inflation and unemployment. This chapter is also to understand what is expected inflation, what is the relation between expected inflation and unemployment. But this chapter will also go ahead and talk about how Phillips curve has evolved over time. With time, Phillips curve कैसे change हुआ है, उसके बारे में भी हम इसी chapter में पढ़ेंगे. We will study about all of that in this chapter. Is this clear? So let us write this down first. हाँ, हमने जो भी explain किया, I want to go ahead and write that down. So please start writing that in 1958, A.W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. Okay, beta. Answer writing is very important. You should know what to write. वरना कोई फायदा नहीं है. So in 1958, A.W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. This was based on data collected in UK from 1861 to 1957. Okay, beta. Right, continue. 2 years later, Paul Samuelson and Robert Solow replicated the same relation in US for the years 1900 to 1960. Since they found the same negative relation, they named that as the Phillips curve. Okay, beta. Then write down, continue. The third thing that we have talked about क्या है? About how this relationship, it broke in the 1970s. So let us continue that during 1970s, this relationship broke in US and OECD countries. Right? There was both high inflation and high unemployment. Beta, only write what I am writing. Please don't write all this. ये सब सिर्फ explanation के लिए है. You should write only what I have written here. हाँ? अच्छा. Now let us continue. So now we want to go ahead and understand what inflation is and how we can draw the relationship. तो बेटा ध्यान से समझो पहले. यहाँ पे ये लिखना बाद में, पहले एक बारी समझ लो. So beta, if you remember, we did two relationships. One was called as the price setting relation and other was known as the wage setting relation. है ना? So beta, what was the price setting and wage setting relation? One we did was W is equal to PE F UZ. ये wage setting relation था. That wage depends negatively
with unemployment, positively with the factor Z, and positively with the expected prices. This is the first relation we had done. But what is the other relation? That price is a markup over the wages. Acha, now just think about it. But can I go ahead and instead of this W, write this? Because if you remember, we were equating the wage setting and price setting relation. We were equating the two. So beta, can I replace this W with this? Dono equations ko equate karna hai na? So I can just write this as P is equal to PE 1 plus M F of U Z. Excuse me. Excuse me. Sorry. So we can go ahead and write it like that, beta, right? So I have gone ahead and I have written, just give me a moment. Okay, I have gone ahead and I have written my relationship between price and expected price. Dhyan se samjho. Beta, this is the relation that is showing how price is affected by expected prices, price is affected by the markup, and price is affected by unemployment rate. Now, what your book goes ahead and does is that it gives some functional value to this function. हमें पता था ये function represent करता है negative relationship with unemployment and positive relationship with Z, है ना? So what this book has gone ahead and done, this book has gone ahead and it has used some function for it. So I can also go ahead and I can also use this function. So what I can say is that let this function, it has just named this as 1 minus alpha U plus Z. So I can just say that T will be PE 1 plus M 1 minus alpha U plus Z. I hope this is clear to you. I am just going ahead and using this function. अब बेटा इसके appendix में, book के appendix में, the author has derived a relationship which talks about inflation. देखो ध्यान से समझो, हाँ, जब हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, so everything is in terms of prices. I need to convert this relationship which is in terms of price in terms of inflation. तो कैसे कर सकते हैं? बेटा inflation is what? Inflation क्या होता है? Inflation is nothing but change in price over time, है ना? Inflation is change in price over time. So inflation can be defined as the PT plus 1 minus PT upon PT. How price changes over time. The change in price upon the initial price, that is the inflation rate. But I can go ahead and I can write this in terms of T minus 1 and T also. देखो कैसे लिखेंगे? So I am writing this as PT minus 1 upon PT minus 1. एक ही बात है. So जब भी किसी भी चीज का change निकालना होता है, whenever you have to find change in anything, how can you find that? Rate of change, I mean. So change in a variable divided by the base value into 100. है ना? So if I tell you that price in 2010, it was 40. Price in 2011, it was 50. तो बेटा inflation कितनी हो जाएगी? 50 minus 40 upon 40 into 100. मतलब 10 by 40 into 100, मतलब 25% inflation आ गई. Clear हुआ? So this is how you can go ahead and find inflation. So बेटा इसको, इस equation को हमें inflation के terms में convert करना है. We need to convert this equation in terms of inflation. How can I do that? First of all, I will go ahead and I will put a subscript T, that this is for time period T. Now, I will divide both sides by PT minus 1. मैंने दोनों साइड पे ही
PT माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया. Okay, beta. Now just think about this. I have to convert this into inflation now. तो inflation के लिए somehow I need to subtract. मेरे को subtract inflation का formula ही है कि मुझे subtract करना होगा past value, base year value. So I must subtract this from the numerator. यही करना पड़ेगा. So what I'm going to go ahead and do in this case, beta, is that numerator में I will subtract this value and I will also add this value. Add और subtract करने से कुछ change तो नहीं होता. Add भी कर रही हूँ, subtract भी कर रही हूँ. And here I will still have this into 1 plus m into 1 minus alpha u plus z. But just open this up. This will be PET minus PT minus 1 upon PT minus 1 plus 1. 1 plus m, 1 minus alpha u plus z. Let's just solve this. बेटा ये देखो, इस ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस लास्ट ईयर का प्राइस, मतलब ये हो गया चेंज इन प्राइस, बट एक्सपेक्टेशन में हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू इंक्रीज, नॉट द एक्चुअल इंक्रीज इन प्राइस, हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू इंक्रीज. So beta, this I can go ahead and say that this will be expected inflation. क्या हो जाएगा ये बेटा? Expected inflation plus 1. ये पूरा वैल्यू हो गया expected inflation, है ना? Plus 1. This will be beta, just multiply this. What will you get? You will go ahead and you will get 1 into 1 is 1 minus alpha u plus z plus m minus alpha um plus m into z. This is what you will go ahead and get. I hope this is clear to you. Everyone is clear with what we have done. Any doubt in this? Okay. Now, what we can do is, here beta I still have this only. यहाँ पर मेरे पास अभी भी यही है, PT upon PT minus 1. इधर भी मुझे inflation ही चाहिए ना. Here also I need inflation only ना. So what I can do, I can convert this side also बेटा. तो कैसे convert कर सकते हैं? PT subtract this, add this upon this, है ना? तो इसको मैं लिख सकती हूँ PT minus PT minus 1 upon PT minus 1 plus PT minus 1 upon PT minus 1. तो बेटा ध्यान से देखो, this is nothing but change in price divided by the original base year price. So this is nothing but inflation and this is nothing but 1. And what is your right hand side? क्या मिल गया हमें right hand side में? Right hand side is 1 plus pi e into 1 minus alpha u plus z plus m minus alpha u m plus m z. Clear हुआ? Is this clear? Everyone is clear with this? Okay. Now listen to me very carefully. What the book does. देखो बेटा, book assumes that ये u बहुत कम होगा और m भी बहुत कम होगा. Imagine this. Unemployment rate ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 4%, 5%, 7%. It is a very small number, ना? So suppose I tell you unemployment rate is 4%, beta. So I will write it as 0.04. Markup भी बहुत ज्यादा नहीं होता. How much can you charge above the price, above the wage rate? 5%, 7%, 8%. इससे ऊपर markup तो charge नहीं कर सकते हो ना. 100% markup नहीं charge कर सकते हो. So let's say that markup is also beta 8%. I am charging 8% above my wage. Can you tell me what will be u into m? Yes, ma'am. It will be 0.04 into 0.08. बेटा ये क्या हो जाएगा? 0.0032. This is so less. ये कितना कम है? This is very close to 0 only. अभी इसको अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना है. अल्फा भी अपने आप में एक छोटा सा वेरिएबल है. So when I keep multiplying this, this is very small number, u into m. So since this is very small, beta, can I say that u into m will become 0, very close to 0,
And similarly, m into z will also be assumed to be close to 0. It's a very small number, so we can neglige it. 0 nahi hai, close to 0 hai. So beta, what I will do is, ye jo equal to ka sign hai na, I will convert this into an approximation sign. I will convert this into an approximation sign, that this is an approximate. क्योंकि मैं कुछ variables हटा दूंगी जो बहुत कम है. And I will get 1 plus pi e 1 minus alpha u plus z plus m bus. Not mz is also not required. These two are very, very close to 0. So I have assumed that these two variables, I am just removing them. And now I am saying it is not equal to, it is an approximate sign. ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा 1 plus pi e 1 minus alpha u plus m plus z. Is this clear to everyone? So, beta, pi t can be written as 1 plus pi e, 1 minus alpha u plus m plus z minus 1. Just open this up. So, this will be 1 into 1 is 1 minus alpha u plus pi e into m plus pi e into m plus z. Right? 1 minus alpha u plus mz, m plus z plus pi e minus pi e alpha u minus 1. This is what you will get. But this derivation is not required. It is only so that exam में आपको direct number याद करना है. But I want you to understand things. Huh? So beta, again, these are very, very small numbers. These are very, very small. And ye 1 and 1 will cancel out. So when all of this happens, finally you're left up with pi e minus alpha u plus m plus z. This is pi t. This is your Phillips curve equation. इसको समझ के भी काफी है. It is fine if you just understand it and you don't derive it. But I want you to derive this once. Huh? Remember that this is an approximate relationship. This is not an actual relationship क्योंकि हमने बहुत सारे variables को हटाया है, assuming that they are very, very small. Is this clear? Any doubt in this? Okay. After this, please write down. Okay. Please write down that शुरू से लिखते हैं, हाँ? The weight setting relation can be written as W is equal to PE F U Z. Negative relation with U and positive with Z. Better write down the price setting relation can be written as P is equal to W1 plus M. Putting, let's name this as equation 1 and let's name this as equation 2. So putting 1 in 2 gives us P is equal to PE F of UZ 1 plus M, negative, positive. Consider F as the following function. So I'm just making a function by F. So F of UZ, this is 1 minus alpha U plus Z. This captures negative relationship of wage with unemployment. So if you remember beta, हमने ये बोला था ना that one unemployment rate is high.
तो बार्गेनिंग पावर कम रहेगी. And if bargaining power is low, if you can bargain less, then beta we said that in that case, your wage will also be low. So when unemployment was high, your wage rate was low. So we need a negative sign here to show that negative relationship. And with catch-all variable, we showed a positive relationship. So this captures negative relationship of wage with unemployment and positive relation of catch-all variable and wage rate. So we are showing a positive relationship between catch-all variable and the wage rate. I hope that is clear to you, beta. So this is the final relationship that we have got. Name this relation as relation number 3. Now, name this as 4. So just write down, putting 4 in 3 gives us. So if I go ahead and I put this 4, if I put this here, what will I go ahead and get, beta? I will get P is equal to PE 1 plus, so what is this? What have I got? 1 minus alpha U plus Z into 1 plus N. And I showed you that after some manipulations, we can get, क्या मिल जाता है इससे बेटा? Pi is equal to pi E plus M plus Z minus alpha U. अब इस relationship को हम एक बारी explain कर लेते हैं. Let us go ahead and let us try to explain this relationship. So just see. Beta, I am saying that inflation is positively affected by expected inflation. That means, see, if you expect that the price in the market is increasing or it will increase in the future, then as a labor, you will ask for more wage. When you will ask for more wage, to pay you more, firms will increase the price of the product. आपको तो ज़्यादा तब देंगे ना जब वो ज़्यादा earn करेंगे. So to pay you more, they will increase the price of the product. And when they will increase the price of the product, in that case, there will be inflation in the economy. So expectation about inflation leads to actual inflation. Whenever you will expect inflation, it will go ahead and it will lead to actual inflation. I hope that is clear to you. Okay, beta. So next thing, the relationship between M and inflation. See, whenever firms are keeping higher markup, तो जितना ज्यादा markup था उतना ज्यादा price था. So that is coming from the price setting relation. Just see here. So if I just go back to my price setting relation, when markup was more, the price was increasing. There was a positive relationship between markup and prices. So beta, that is exactly what is happening here. That when markup increases, that means firms are keeping more price. If firms keep more price, it means inflation in the economy will increase, right? Okay, beta, come to the next one. Catch-all variable. We know when there is a catch-all variable, like for example, when government goes ahead and it pays you insurance, right? Unemployment insurance. It means that beta, you will be not working at a low wage. You will be demanding a higher wage. We have done that. So when Z is there, Z has a positive relationship with W. जब भी Z बढ़ेगा तो W बढ़ेगा. Wage rate will increase. And if wage rate increases, then with increase in wage, price will be more. Economy में अगर सब पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, income ज़्यादा मांग रहे हैं, so firms will increase the price of the product. And when firms increase the price of the product, but it will cause inflation. And at last, unemployment rate. When unemployment rate increases in the economy, you have less bargaining power. You cannot bargain. आप ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकते हो. इतना competition है, किसी के पास भी job नहीं है. So when unemployment rate increases, you can ask less wage. When you ask less wage, it decreases the inflation in the economy.
So this relationship is clear to everyone? Absolutely clear? Okay, please write these down. So relationship number 1. When there is increase in expected inflation, it leads to increase in actual inflation. It leads to increase in actual inflation. क्यों बेटा? So please write down. If wage setters, अगर wage जो set करे मतलब firms expect a higher price level, they set wage setter की बात हो रही है. I'm sorry. Wage setter means you can think about wage setter as the wage demanders. By setter, we should say demanders, and wage demanders are the laborers. So if wage setters expect a higher price level, they set a higher, they set means they ask for a higher nominal wage, which leads to increase in prices. So I hope you're clear. See, I am an individual. I think that in future prices will rise. So I am forming expectation that price will rise. So क्या करूंगी मैं? I will go to the firm and ask for higher wage. Firm can pay me more wage only when they earn more. अगर उनका revenue ज़्यादा होगा. And they can earn more by increasing the price of the product. So when expectation about price increased, then when they expect prices to increase, then they go ahead and they ask for higher wage. When they ask higher wage, it leads to increase in the price level. Okay, beta? Fine. Please write down. Similarly, an increase in expectation of price leads to actual increase in price from the side of firms too. ठीक है. अब बेटा, I'm sorry, just price की जगह पे ना use a better word, because हम inflation के terms में बता रहे हैं ना, so you should use the word inflation. It's the same thing only, but you should use the right word, huh? अच्छा. Now think about the firms. बेटा, if I'm expecting कि future में inflation आने वाली है, so that means I will think the cost of production will increase. So when I think that the cost of production will increase, what will I do? I will demand a higher price on my product, right? So दोनों ही side से, whether I think from the side of the labor or I think from the side of the firm. So this is because, please write down, this is because firms would expect cost of production to increase and hence increase the price of the product. Okay, beta. So firms will increase the price of the product. I hope this is clear. Beta, write down the second relationship. Now we are talking about the relation with M. So beta, जब भी एक चीज को एक के साथ analyze करते हैं, whenever you analyze one relationship, you go ahead and you hold other relationships constant. So holding these other things constant, then you do that, right? So please write down that given expected inflation, there is
a positive relationship between markup and unemployment. Sorry, and inflation. So why is that going to happen? Because when markup is more, that means that the firms are charging more profit over and above wage. So more profit means they are setting higher price of the product. So when they set higher price of the product, then automatically inflation will come in the economy. So higher markup implies firms are setting higher price of product, thereby leading to inflation. But the same, exactly same, you have to write for your Z catch-all variable. So let me just copy this. You please make a different point. So we will write the third point. Okay. So the third point, beta, is this. Given expected inflation, there is a positive relationship between the catch-all variable and Z. So catch-all variable के साथ क्या है? When catch-all variable is high, when Z is high, it means that the labor is getting what? The labor is getting some benefit, unemployment benefit. So labor will demand higher wage. When labor will demand higher wage, firms have to set higher price. तभी ज़्यादा wage दे पाएंगे. Higher price means higher inflation. So higher Z. Let's write this down, beta. Higher Z implies labor would be willing to work only at higher wage. We have done this in the previous classes, no? When labor demands higher wage, firms would set higher price. So firms would go ahead and they would set higher price of the product, thereby leading to inflation. Clear हुआ बेटा? अच्छा, point number 4. बेटा अब आते हैं unemployment के साथ. So unemployment के साथ there is a negative relationship. क्यों? जब unemployment increase होगी तो bargaining power गिर जाएगी, wage low रहेगी तो firms low price में sell कर पाएंगे. So please write down the last relationship. Given holding expected inflation constant, there is negative relationship between inflation and unemployment rate. When unemployment rate, better please write the entire, don't write you, write complete sentences. When unemployment rate is high, bargaining power is low, labor's demand low wage, thereby firms set low price and hence low inflation. Hence low inflation. Clear हुआ? तो बेटा अब तो हमें समझ में ही आ गया
that inflation and unemployment, why they are negatively related to each other. That is what the last point says. That we just proved that inflation and unemployment, they are negatively related to each other, right? But this itself, this is called the Phillips curve. So this negative relationship between inflation and unemployment, that is called the Phillips curve. Now, just write down, beta, say early incarnation. Early incarnation. What are we going to do? Suppose I tell you that so शुरू में ना people didn't know about expected inflation. उन्हें नहीं पता था कि कुछ expected inflation नाम की भी चीज होती है. So what they did is they started thinking that pi e is 0. It was only later on that they realized that there is something which is known as expected inflation, right? So what we should be going ahead and doing is to begin with this relation that we have derived. Pi is equal to pi e plus m plus z minus alpha ut. I will go ahead and I will put this pi et as 0. So beta, if I put this as 0, what will I get? I will get m plus z minus alpha ut. Abhi bhi, the relation between inflation and unemployment is intact, that they are negatively related to each other. Now, what happened is, because we were not aware of expected inflation, this is the initial relationship that actually existed. शुरू में ये वाला relationship पढ़ा गया था. But in this relationship, what started happening is that this relationship started breaking down. Now, so हमने देखना शुरू किया that this relationship did not exist too much in many years. There was negative relation जो हमारा है between wage and unemployment, it just failed, right? And I will write all of this down, don't worry, पहले समझ लो. And one major thing that happened, one reason why that happened, that is called as the wage price spiral. उसको हमने क्या बोला? Wage price spiral. ठीक है? So go ahead and try to understand what is wage price spiral. पहले ये समझते हैं. Suppose there is low unemployment rate in the economy. If unemployment rate is low, बहुत कम लोग unemployed हैं, they can demand higher wage. So wage will be high in the economy. When wage will be high in the economy, to pay high wage, firms will have to increase the price of the product. When price of the product will increase, अगर price बढ़ गया product क्या, तो उस महंगे product को खरीदने के लिए again workers will ask for higher wage. When workers will ask for higher wage, again firms will have to increase the price of the product again. So this will continue. The wage price will keep increasing. One will increase, other will increase. One will increase, other will increase, and so on. This is called as the wage price spiral, that whenever wage will increase, the prices will automatically keep increasing. Is that clear? Okay. Now, let us go ahead and let us try to write some points down, and then I will explain you along with it. So please write down that Phillips curve के बारे में लिख लें, that the relationship between unemployment rate and inflation was first discovered by, so हमने ऊपर भी बताया है, Phillips, Samuelson and Solo during 1960, right? Now, please write down, during 1960, not during, let's say since 1960, inflation has been positive
in all years except 2009, right? In such an environment, so inflation has been positive, मतलब price बढ़ते जा रहे हैं. Inflation, अगर मैं बोलूं inflation 4% है, बेटा मतलब हर साल पिछले साल के कंपैरिजन में prices 4% से बढ़ जाते हैं. So prices increase every year by 4%. That is inflation. So I'm saying since 1960 it has been observed that prices have been continuously increasing. तो अगर prices बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है, in such an environment wage setters जो हैं वो अपने wage को कैसे set कर सकते हैं? How will they set wage in such an environment? So in such an environment, this is E, huh? An important question arises. How will the wage setter set their wage? That means how much wage will they go ahead and will they demand? अब ध्यान से समझो प्लीज. हाँ, ये देखो बेटा 1960 से पहले, before 1960, some years you had positive inflation, some years you had negative inflation. Positive, negative, positive, negative, ऐसी inflation थी. कुछ साल पॉजिटिव रहती थी और कुछ साल नेगेटिव रहती थी. हाँ, बट उसका जो एवरेज था ना, ऑन एन एवरेज inflation was zero. Sometimes positive, sometimes negative, average inflation was zero. So before 1960, average inflation was zero. But after 1960, inflation has only been positive. Now imagine a person standing here 1960 mein. He has seen that average inflation is zero. So what will be his expectation about inflation? Zero only, na? He will not expect that the inflation will be positive. He will think on an average, my expectation is that inflation should be zero because that is what he saw in the past, right? So that is why, because till 1960, they saw that average inflation was zero. Kabhi positive, kabhi negative, but average inflation was zero. They were right that they expected the inflation to continue at zero, and then they derived this relationship. Are you getting it? Okay. Right? So, since before 1960, average inflation was zero, people expected inflation to continue being zero. So they expected that the inflation will continue being zero. Is this clear? Okay. Now, so they just put pi e equal to 0 and got the relation. क्या relation मिलता है बेटा? Pi t is equal to m plus z minus alpha ut. And this is exactly the relationship that they found in UK. And this is exactly the relationship that they found in US. UK में Phillips ने निकाला and Solo and Samuelson they found out in US. But they found out this relation, this negative relation. They didn't talk about expected inflation at all. They just talked about this relationship, and the reason that they gave behind this relationship is that they said that when unemployment is high, wage is low. So low wage means low prices, means low inflation. But when unemployment is low, then wage is high. And beta, जैसी wage high demand होती है, it starts the wage
price spiral. So price continue to increase. I hope you are clear with these 2 points. I hope you are clear with what is wage price spiral. So what is wage price spiral? Wage price spiral is very simple, beta. You ask for higher wage, firms will pay higher money only by increasing price of their product. When firms increase the price of product, it causes inflation in the economy. When there is inflation in the economy and things are expensive, then laborers will again ask for more wage. ज़्यादा पैसा चाहिए होगा वो खरीदने के लिए. Again, firms will increase the price of the product. Again, inflation will increase, and so on. So when unemployment is low, you have more bargaining power. You ask for higher wages and you set into what is called as the wage price spiral. क्या शुरू हो जाता है बेटा? Wage price spiral. Is this clear? Okay. So we will stop here for today. We have understood what is Phillips curve. We have understood the earlier incarnation of Phillips curve by putting pi e as 0. अब जो ये earlier Phillips curve था, ये कब टूटा? Why did this relationship break? And why did we take expectation into consideration? We will try and do that in the next class. Okay, thank you. Beta, this is the full syllabus of Econometrics revision. Just do this before your exam and it should be enough. एक बात ध्यान से देख लेते हैं. I am also going to provide the link of these notes to you. You can go ahead and access these notes also, ताकि आप immediate revision कर पाओ. तो just exam से पहले quickly आपको ये सब कुछ revise करना होगा and this should be enough. ठीक है? बेटा पेज 1 को skip कर दो, not required. 2 skip कर दो, जरूरत नहीं है. I will just tell you कहाँ से आपको आना है. This is not required, not required. नीचे आ जाओ. And simply go ahead. नीचे not required, not required. You can simply go ahead and come to chapter number 2. Chapter 2 से आपको revise करना है. Okay. जल्दी से मेरे साथ we will revise the entire thing together. सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं correlation coefficient क्या होता है. Correlation coefficient R को बोलते हैं. R -1 से 1 के बीच में होता है और ये हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है. ये हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है. तो अगर y और x का रिलेशन ऐसा है तो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, और अगर ऐसा है तो दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. नॉन लीनियर रिलेशंस को डिटेक्ट नहीं करता. तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो नो रिलेशन कह देंगे हम इसे. देयर इज नो रिलेशन. ठीक है बेटा, इन नोट से आप इस फॉर्मूला को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे और उसके बाद r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब नेगेटिवली रिलेटेड. नो कोरिलेशन मतलब या तो कोरिलेशन नहीं है या फिर एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं, वी कैन गो अहेड एंड से कि लीनियर कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, जब तक आपका कोरिलेशन 0.8 से ज्यादा होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बोलते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की. 0 मतलब नो लीनियर कोरिलेशन, +1 या -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. जितना ज्यादा क्लोज होगा +1 या -1 के रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग है. रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो साइन पर इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइन. वो साइन पर डिपेंड नहीं करती है. ओके बेटा, very important, this can come as true false. Correlation coefficient is unit change in one variable results in constant change in the other variable. ठीक है, अब ये देख लो, ये पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव, नो रिलेशन. अब नीचे आ जाते हैं बेटा. अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करेंगे. यू विल गो अहेड एंड रिवाइज दीज फॉर्मूलाज. उसके बाद लेट अस गो अहेड एंड रैंक कोरिलेशन का नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको स्किप कर दोगे. Now let us go ahead and come to the next topic, simple linear regression model. यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि जब हम y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x प्लस ui बोलते हैं तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक कॉम्पोनेंट, और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस इज नोन एज स्टोकेस्टिक कॉम्पोनेंट या रैंडम कॉम्पोनेंट. ठीक है, स्टोकेस्टिक और रैंडम कॉम्पोनेंट. ठीक है, ये बात फिर से समझ लेना. इट कैन कम इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू फॉल्स में ये आ जाता है दैट रिग्रेशन एंड कॉजेशन दो अलग बातें हैं. कॉजेशन यूजुअली थ्योरेटिकली
कोई कॉजल रिलेशनशिप है कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है। रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है और उसका कॉजेशन से कोई रिलेशन नहीं है। सो रीड दिस, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिविजन रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, कम टू द टर्मिनोलॉजीज, ये सारा टर्मिनोलॉजीज हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन, प्रिडिक्टेंट, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, एंडोजेनस भी बोलते हैं। प्लीज प्लीज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो गो थ्रू द नोट्स साइमल्टेनियसली, नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो एंड जस्ट रीड दीज नोट्स ऑल्सो। बेटा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, एक्सोजेनस भी बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा जो टाइम टू टाइम जाता है फॉर वन वेरिएबल, क्रॉस सेक्शनल जो बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ही पर्सन का इनकम, कंजम्पशन एंड देन इन्वेस्टमेंट उसका सब कुछ दे दूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। पूल्ड इज क्रॉस सेक्शनल प्लस टाइम सीरीज। ठीक है, नाउ यू कैन स्किप दिस, ये पहले हम स्टैट्स में यूज करते थे, नॉट रिक्वायर्ड। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, वी विल गो अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट दिस। तो ये बात याद रखनी है कि हम जब भी अपने रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं या लाइन की बात करते हैं, ये लाइन हमेशा कंडीशनल मीन के थ्रू पास करती है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स। ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स। ठीक है बेटा, फिर ये हमारा एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, विदाउट एरर टर्म लिखते हैं तो फंक्शन होता है, लाइन होती है, विद एरर टर्म लिख देते हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन बन जाती है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना कि अगर पॉपुलेशन डिस्पोजल में ना हो, सिंस पॉपुलेशन इज नॉट एट डिस्पोजल, तो हम हमेशा सैंपल के साथ काम करते हैं। सैंपल की इक्वेशन हो जाती है वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई प्लस ई आई। तो ये वाले पार्ट को हम बोल देते हैं वाई आई हैट, और ये काउंटर पार्ट होता है सैंपल वाला ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई के, ये पॉपुलेशन का है। ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई पॉपुलेशन का है, वाई आई हैट सैंपल का है। वाई आई हैट हो जाता है बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई प्लस ई आई, ये वाई आई हो गया, और सैंपल में हम लिख देंगे वाई आई इज इक्वल टू ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई प्लस यू आई। ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई होता है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई, इसको हम वाई आई बोल देते हैं। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन है मेरा, ये सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले इक्वेशन को देखने के लिए, तो ये हमारे जैसे जैसे हम सैंपल चेंज करते जाते हैं तो हमारा जो सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन आता है वो भी चेंज होता जाता है, इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजंस हैं कि एरर क्यों होता है, द रीजंस फॉर एरर। अगर मैंने कोई वेरिएबल को नहीं इंक्लूड किया, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो रेनफॉल और फर्टिलाइजर पे डिपेंड करती है, और मैंने फर्टिलाइजर को इंक्लूड नहीं किया, तो देन इट विल बी ओमिशन ऑफ वेरिएबल, जिसकी वजह से एरर आएगा। द सेकेंड इज रैंडम बिहेवियर, अरे मैं लोगों के डेटा के साथ काम कर रही हूँ, रैंडमनेस रहेगी। तीसरा आ जाता है इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर्म, मुझे यूज करना था लॉग लॉग मॉडल और मैंने यूज कर दिया लिन लॉग मॉडल, तो ये गलत हो गया। जो नेक्स्ट आएगा बेटा वो आएगा एरर ऑफ एग्रीगेशन, कभी कभी जब हम चीजों को इकट्ठा करके एक साथ एक डेटा सेट में डालते हैं तो एरर हो जाता है। एरर ऑफ मेजरमेंट, कभी कभी हम जैसे किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो कोई हम मेजरमेंट इशू भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम लीनियरिटी की बात करते हैं इट इज ऑलवेज लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर इन वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, हमें लीनियर इन पैरामीटर चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन लीनियर इन पैरामीटर तो है बट वेरिएबल में नहीं है, बट इकोनोमेट्रिक्स में हम हमेशा लीनियरिटी इन पैरामीटर की ही बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लीनियरिटी इन पैरामीटर। बेटा ये एजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है, इससे कोई ना कोई हमारा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आता ही आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ध्यान से देखो। पहला एजम्पशन है एरर टर्म्स का जो मीन होगा वो 0 होगा, फिर उसके बाद जो हमारा वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, मतलब होमोस्केडास्टिक मॉडल है। फिर एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरर टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कोवेरियंस बिटवीन यू आई यू जे 0 होगा, एक्स की वैल्यूज फिक्स्ड है, माने दे आर फिक्स्ड इन नेचर, फिक्स्ड मतलब नॉन स्टोकेस्टिक है।
फिक्स्ड वैल्यूज हैं xi की, एंड u जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, द कोवेरियंस बिटवीन u एंड x इज 0, u और x रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। और उसके बाद हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है, और जो हमारे एक्सेस हैं वो वेरी नहीं करने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द assumptions ऑफ द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे, एवरीवन विल रिवाइज दिस, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ओएलएस करता क्या है। ओएलएस का काम है समेशन EI स्क्वायर को मिनिमाइज करना। तो जब हम ओएलएस को समेशन EI स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस निकल के आती हैं। पहली नॉर्मल इक्वेशन हो जाती है y बार इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट x बार, और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन निकल के आता है समेशन yi xi इज इक्वल टू β1 समेशन xi प्लस β2 समेशन xi स्क्वायर। इन दोनों को हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया बेटा कि हमने अपने समेशन ui हैट स्क्वायर को मिनिमाइज किया विद रिस्पेक्ट टू β1 एंड β2। जब हमने मिनिमाइज किया और इक्वेट टू 0 किया तो ये नॉर्मल इक्वेशन 1 आ गई और ये नॉर्मल इक्वेशन 2 आ गई। जब हम इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, तो हमें β1 हैट और β2 हैट की वैल्यूज मिल जाती हैं। वो वैल्यूज ये रही, रिवाइज क्विकली रिवाइज बेटा, वो रही ये वैल्यूज ये हैं। तो ये रही मेरी β2 हैट और ये रही β1 हैट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। तो अगर मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, तो β2 बताता है कि y ऑन एन एवरेज कितने यूनिट से चेंज होगा जब x 1 यूनिट से चेंज होगा। When x will change by 1 unit, तो on an average by how much will y change? y कितने से चेंज होगा, ठीक है। और β1 बताता है कि अगर x 0 है तो y की एवरेज वैल्यू β1 है। रिवाइज, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा, अगेन इसमें से ट्रू फॉल्स बनता है, तो इन स्टेटमेंट्स को आप बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। ये जो बीटाज हैं ये पॉइंट एस्टिमेटर हैं। पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब ये है कि ये एक वैल्यू दे रहे हैं बीटा की, मतलब β1 पॉपुलेशन की वैल्यू है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिल रही है सैंपल से β1 हैट, है ना। तो ये एक फिक्स्ड 1 वैल्यू दे रहे हैं, तो इनको हम पॉइंट एस्टिमेटर बोलते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन मीन वैल्यू से पास करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन कम एज ट्रू फॉल्स। जो हमारा y हैट दैट मींस प्रिडिक्टेड y का मीन होता है और एक्चुअल y का मीन होता है, वो दोनों ही इक्वल होते हैं। रेसिडुअल्स का मीन 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि yi हैट को मैं β2 हैट स्मॉल xi भी लिख सकती हूँ। रेसिडुअल्स जो होते हैं वो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ अनरिलेटेड होते हैं। इट विल डेफिनेटली कम एज अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेटा, प्लीज रिवाइज। If I will find the correlation between ui hat and yi hat, it will be 0. इसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल टर्म्स आर अनकोरिलेटेड विद प्रिडिक्टेड y एंड रेसिडुअल टर्म्स आर अनकोरिलेटेड विद x, कैन कम इन एग्जाम, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला शीट में भी मैंने आपको दिया था, वेरिएंस ऑफ β2 हैट, स्टैंडर्ड एरर, β1 हैट एंड सिग्मा हैट स्क्वायर का फॉर्मूला, रिवाइज करो इसे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन जो होता है उसे समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर बाय n माइनस 1 अंडर रूट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। ये रहा बेटा, रिवाइज, ठीक है बेटा। दिस विल अगेन कम इन एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल के ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सो यू विल गो अहेड एंड रिवाइज दिस। The variance β2 hat is directly proportional to sigma square, यही इसी के फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएंस जो है डायरेक्टली रिलेटेड है सिग्मा स्क्वायर से और इनडायरेक्टली और इनवर्सली समेशन xi स्क्वायर से। तो यही ये पॉइंटर्स दिए हुए हैं, रिवाइज बेटा, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आई एम लीविंग अप टू यू विल बी गिवन दिस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपके पास है, रिवाइज इट। गॉस मार्कऑफ थ्योरम पे देते हैं बेटा। गॉस मार्कऑफ थ्योरम ये बोलता है कि आपके जो एस्टिमेटर्स निकल के आएंगे वो ब्लू होंगे, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर। लीनियर मींस कि वो y का लीनियर फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन ऑफ y। अनबायस्ड मींस जब हम इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन के बराबर होगा, और एफिशिएंट मींस कि इनका जो वेरिएंस होगा वो
मिनिमम होगा। अब हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन का बात करेंगे। रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में हम हमेशा रॉ वैल्यूज लेते हैं, राइट। और रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में देखो यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो समेशन ई आई स्क्वायर बाय एन माइनस के है, तो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 हो जाता है। ठीक है बेटा, अगेन ट्रू फॉल्स के लिए कॉमन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आर स्क्वायर को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन नहीं, वो आर था। आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हो जाता है बेटा गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट, ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आर स्क्वायर 89 है 0.89, तो हम बोलेंगे 89% ऑफ वेरिएशन इन y is due to variation in x और can be explained due to variation in x। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे इसको देखो, ये इक्वेशन बोल रही है कि TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई TSS, ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई ESS, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई RSS। यही चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। हमारा जो आर स्क्वायर होता है इट इज ESS बाई TSS, और इसी को हम 1 माइनस RSS बाई TSS भी लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ये आर स्क्वायर के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, प्लीज रिवाइज। सुबह ही मैंने आपको फॉर्मूला शीट में भी ये करवाए हैं। आई हैव ऑल्सो डन इट इन फॉर्मूला शीट। दिस विल कम इन एग्जाम 150%, तो रिवाइज दिस, इट विल कम इन एग्जाम, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर। ये नॉन नेगेटिव होता है और 0 से 1 के बीच में होता है। आर स्क्वायर का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो वो हमें आर देता है। आर को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टी हैं। ये हमेशा सिर्फ लीनियर रिलेशन ही दिखाता है, नॉन लीनियर रिलेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। अगर हमें कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बीटास को एज्यूम करें कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बीटास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। बीटास y का लीनियर फंक्शन है और y एरर पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर है तो y भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और बीटास भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बीटास भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इज दिस क्लियर बेटा? ओके, आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट। आई नीड टू जस्ट गिव यू एंटायर ब्रीफ जो आप रिविजन में यूज कर पाओ। बेटा बीटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये z टेस्ट है बीटा का, और जब भी हम z टेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है बीटा 2 हैट माइनस पॉपुलेशन वैल्यू अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। बेटा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये इंटरप्रिटेशन रीड, इट विल कम इन एग्जाम फॉर श्योर टुमारो। रीड 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 मेनी टाइम्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है? आई हैव डन दिस इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। ये चीज मैंने ऑलरेडी डाली है इन द क्वेश्चन सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल। अगर आप रिकॉर्डेड सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल पे जाओगे वीडियो सेक्शन में तो यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, प्लीज रीड दिस, दिस विल कम इन एग्जाम, कल आएगा एग्जाम में। ठीक है, ठीक है बेटा। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे निकालते हैं, तो अगर मुझे बीटा 1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो इट विल बी बीटा 1 हैट माइनस स्टैंडर्ड एरर इनटू टी वैल्यू, बीटा 1 हैट प्लस स्टैंडर्ड एरर इनटू टी वैल्यू। इफ इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन तो हम z यूज करेंगे, इफ इट इज अ स्मॉल पॉपुलेशन तो हम t यूज करेंगे। t का डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस k रहेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सेम चीज रिवाइज करनी है। जस्ट रीड इट रीड इट रीड इट बेटा। लीविंग इट टू यू, लीव इट, आपको खुद से करना, नॉट लीव इट, लीविंग इट टू यू, आप रिवाइज करना। हाँ ठीक है, अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर की बात कर लेते हैं। इट कैन कम इन एग्जाम, प्लीज रिवाइज इट। अगर हमें सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो उसके लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, और उसका जो हमारा इंटरवल रहता है सिग्मा स्क्वायर लाइज बिटवीन n माइनस के
n माइनस के इनटू सिग्मा हैट स्क्वायर जो सैंपल का वैल्यू है डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वैल्यू, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर में दो वैल्यूज निकलती है, एक लो टेल एक हाई टेल। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं अल्फा बाय 2 और यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फा बाय 2 लेते हैं। आई होप यू नो दिस, ये आपका स्टैट्स का लास्ट सेम से आया है, स्टैट्स क्लास से आ रहा है कि काई स्क्वायर टेबल से कैसे रीड करते हैं। बट दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके बेटा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये टू टेल हो गया। तो अगर एग्जाम में कोई आपको बोले चेक दैट बीटा 2 इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो ये टू टेल होगा। चेक दैट बीटा 2 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये वन टेल होगा। तो आपको टू टेल और वन टेल दोनों टेस्ट पता होने चाहिए। वन टेल में आप टी का वैल्यू भी वन टेल का लोगे और टू टेल में आप टी का वैल्यू भी टू टेल का कंपेयर करने के लिए लोगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके बेटा, सो दिस इज योर एग्जाम्पल। अब हम एक वो कर लेते हैं कि इफ टी कैलकुलेटेड आपका टी टेबल से ज्यादा आएगा, सो यू विल रिजेक्ट नल इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव। और इस केस में आप बोलोगे दैट योर बीटास आर सिग्निफिकेंट। बीटास क्या हो जाएंगे इस केस में? सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम बेटा। हम डायरेक्टली कभी कभी क्या करते हैं, अगर हमें टेबल से वैल्यूज नहीं निकालने को आती या टेबल नहीं गिवन होता, तो हम डायरेक्टली 2 से कंपेयर कर लेते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि टेबल की वैल्यू 2 है और हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को 2 से कंपेयर कर लेते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए कि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हो और सैंपल साइज मोर देन सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब n माइनस के मोर देन 20 हो, तो हम सीधा 2 से ही कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज नोन एज द 2T, दिस इज नोन एज 2T रूल ऑफ थंब। मल्टीपल रिग्रेशन पे आ जाओ बेटा। मल्टीपल रिग्रेशन में इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना, इनको हम पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में बस ये बात याद रखनी है कि ये बता रहा है हाउ y चेंजेस एज x2 चेंजेस होल्डिंग x3 कांस्टेंट। ऐसे ये बता रहा है हाउ y चेंजेस ऑन एन एवरेज व्हेन x3 चेंजेस होल्डिंग x2 कांस्टेंट। रीड दिस आउट। जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पे आते हैं तो हमारी एजम्पशंस में एक एक्स्ट्रा एजम्पशन ऐड हो जाती है, दैट मींस नो लीनियर रिलेशनशिप। तो हम नो मल्टीकोलिनियरिटी की भी बात करते हैं। ओके बेटा, यहां पे ये बताया गया है कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो क्या होगा। तो सपोज मैं कहती हूं कि y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ui, और मैंने बोल दिया कि x3 इज 2x2 और यहाँ पे 2x2 से रिप्लेस कर दिया। तो आप देखोगे कि मेरा मॉडल मल्टीपल से सिर्फ सिंगल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया और ये वाला जो वैल्यू निकल के आया इसको मैंने कुछ एक नया अल्फा बना दिया। तो नाउ आई विल बी एबल टू गो अहेड एंड इंटरप्रेट बीटा एंड अल्फा, पर मैं वापस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नहीं निकाल पाऊंगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जस्ट रीड इट आउट। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं जब आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में होते हो, और उन नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट एंड बीटा 3 हैट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड योर आर स्क्वायर बेटा। आर स्क्वायर अब बताता है जॉइंट सिग्निफिकेंस। तो अब ये बताएगा, तो अगर आर स्क्वायर 0.89 है तो बताएगा कि 89% ऑफ वेरिएशन इन y कैन बी जॉइंटली एक्सप्लेन्ड by x2 and x3 together। ठीक है, x2 और x3 मिलकर कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपके वेरिएंट्स हैं रिवाइज। नीचे आ जाते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। और अब हम बात करेंगे आर स्क्वायर के फॉर्मूला की। तो आर स्क्वायर को हम ESS बाय TSS लिख देते हैं, और ESS का ये भी फॉर्मूला है जब हम सिंगल वेरिएबल के साथ करते हैं, और मल्टीपल या 2 वेरिएबल्स के साथ करते हैं तो ESS का ये फॉर्मूला है। एक और चीज है जो हमें समझनी होगी कि जैसे जैसे हम वेरिएबल्स बढ़ाते जाते हैं, मतलब 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल से 4 से 5 पे आते हैं, तो आर स्क्वायर हमेशा ही बढ़ता जाता है। तो हमें कैसे पता कि कौन सा मॉडल करेक्ट मॉडल है और कहाँ पे रुकना है। तो इसके लिए हम आर बार स्क्वायर चेक करते हैं, और जिस भी मॉडल के आगे जाने पे आर बार स्क्वायर डिक्लाइन करता है, माने सपोज हियर आर बार स्क्वायर इज 0.89 और यहाँ पे आर बार स्क्वायर 0.84 हो गया, डिक्लाइन कर गया, वी विल स्टॉप
with that many variables. वहीं पे हम रुक जाएंगे. So adjusted R square डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करता है. ये adjusted R square के फॉर्मूलाज हैं और adjusted R square हमेशा R square से कम होता है गिवन की के 1 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 से ज्यादा हो, और adjusted R square नेगेटिव भी हो सकता है, जिस केस में आप उसको 0 की तरह इंटरप्रेट करोगे. ओके बेटा, ये आपके फिर से फॉर्मूलाज हैं. ये वाला पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. लीव ये बस 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं. मैट्रिक्स वाला आप छोड़ सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये सिर्फ चीजों को आसान करने के लिए बताया गया है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. ठीक है, अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं. तो 2 तरीके की टेस्टिंग आ जाती है. एक सिंगल टेस्टिंग हो जाती है और इंडिविजुअल टेस्टिंग, और एक जॉइंट टेस्टिंग हो जाती है. इंडिविजुअल टेस्टिंग में हम टी टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें हम बीटास की इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर. और जॉइंट टेस्टिंग में हम एफ टेस्ट यूज करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए, जिसमें हमारा नल होता है कि बोथ बीटाज आर 0. और जॉइंट टेस्टिंग में हम एनोवा फॉर्म करते हैं, जिसमें हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं. एफ टेस्ट में हमारा फॉर्मूला रहता है ESS डिवाइडेड बाय K-1 अपॉन RSS डिवाइडेड बाय N-K. ये हमारा एफ टेस्ट का फॉर्मूला है. ये भी एफ टेस्ट का फॉर्मूला है. यू कैन गो अहेड एंड यूज एनी ऑफ दीज. ठीक है, ये आपका एनोवा टेबल है. रिवाइज. ठीक है बेटा, ओके. एफ टेस्ट के बाद हम आगे आते हैं. व्हाट इफ वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू चेक the variance between the two variable between the two samples, या अगर हमें ये चेक करना है कि दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस से 2 सैंपल्स निकल रहे हैं, उनका वेरिएंस सेम होगा या नहीं, तो देन ऑल्सो वी यूज एफ टेस्ट. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, यू कैन लीव दिस पार्ट. ये इट वॉज देयर अर्लियर, बट अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है. बेटा, एफ टेस्ट और आर स्क्वायर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी हम एफ टेस्ट को आर स्क्वायर के थ्रू करते हैं. एग्जाम में सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू दी होती है और जॉइंट सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी होती है. तो इन दैट केस एफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये बन जाता है. ठीक है, ओके. ये उसका एनोवा टेबल है. ये मैंने आपको सुबह का फॉर्मूला शीट में भी प्रोवाइड किया था. बेटा, अब हम डमी वेरिएबल पे आते हैं. तो जब हम डमी वेरिएबल की बात करते हैं, सीधा डमी वेरिएबल पे आ जाओ. ये हमारा डमी वेरिएबल मॉडल है. डमी वेरिएबल की जब भी हम बात करेंगे, थोड़ा 1 मिनट. तो डमी वेरिएबल की जब भी हम बात करेंगे, आपको सिर्फ ओपन करना सीखना है, विच इज वेरी सिंपल. जैसे D2I बोल रहा है 1 इफ नॉर्थ ईस्ट 0 अदरवाइज. तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का निकाल रही होंगी तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगी. D3I बोल रहा है 1 इफ स्टेट इन साउथ. तो अगर मैं स्टेट का साउथ स्टेट का कर रही होंगी तो यहाँ पे भी आई विल पुट 1. तो ये β3 हो जाएगा, ये β2 हो जाएगा, ये β1 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये UI हो जाएगा. तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी एवरेज सैलरी, ये किसकी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट प्लस रीजन साउथ की. अगर मैं यहाँ पे 0 करती तो रीजन नॉर्थ हो जाता या कोई और रीजन हो जाता, जो भी बाकी रीजन वो मान रहे हैं. और यहाँ पर क्योंकि 1 था तो ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल ही रहता. तो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन इंटरप्रेट द डमी वेरिएबल्स. यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आते हैं. ये कुछ कॉजन है डमी वेरिएबल के. आपको मेक श्योर करना है कि आप डमी वेरिएबल ट्रैप में ना पड़ो. डमी वेरिएबल ट्रैप में कब नहीं होगे? जब आप डमीज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो एक लेस डमी इंट्रोड्यूस करोगे देन द कैटेगरीज. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कैटेगरी को हम स्किप करते हैं, जैसे मैंने लिखा जेंडर इज इक्वल टू 1 इफ मेल 0 इफ फीमेल. तो जो हमने कैटेगरी को 0 बोला उसको हम बेस या बेंचमार्क कैटेगरी भी बोलते हैं. फिर जो डमी वेरिएबल्स का डिफरेंस आता है उसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट बोलते हैं. जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 D2I प्लस β3 xi, और मैंने बोल दिया कि D2I इज इक्वल टू 1 इफ मेल 0 इफ फीमेल. तो मेल्स की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 प्लस β3 xi, और फीमेल की बन जाएगी y इज इक्वल टू β1 प्लस β3 xi.
तो ये जो हमारा बीटा 2 होगा इसको हम डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट बोलेंगे, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं। बेटा ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है, डमीज में सिर्फ वंस एंड जीरोस प्लग इन किए हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपको बोलूं कि मैरिड नॉन साउथ रीजन के बंदे की सैलरी बताओ, तो व्हाट विल यू से, मैरिड मींस D2I विल बी 1। ठीक है, तो ये हो गया 8.8148 प्लस 1.0997, और नॉन साउथ मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया, तो दिस विल बी 8.8148 प्लस 1.0997। ऐसे जिसकी निकालनी है, मैरिड प्लस साउथ की निकालनी है, तो हम यहाँ 1 लगा देते एंड इनटू ये वाला वैल्यू, है ना, एंड अकॉर्डिंगली वी वुड हैव गॉट द आंसर। तो दिस इज व्हाट द डमी वेरिएबल मॉडल इज। उसके बाद हम एनकोवा मॉडल पे आते हैं। एनकोवा मॉडल वो मॉडल है जिसमें एक्स की प्रेजेंस हो, जैसे ये तो सिर्फ एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे कोई एक्स ही नहीं है, तो दिस इज एनोवा मॉडल। बट अगर एक्स प्रेजेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एनकोवा मॉडल। तो ये हमारा एनकोवा मॉडल है क्योंकि इसमें एक्स की भी प्रेजेंस है। ठीक है, इसी में बेटा देयर इज ऑल्सो एन एडिशन ऑफ द इंटरैक्शन टर्म, उसको प्लीज फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लेना, दैट आई प्रोवाइडेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे आते हैं और हम बात करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी की। तो मल्टी कोलिनियरिटी मींस कि हमारे जो एक्स वेरिएबल्स हैं x2 एंड x3 आए, इनमें कोई रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशन है जैसे x3 is 2x2 आए, तो इसको परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। इस केस में हम कोई OLS रन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर इम्परफेक्ट रिलेशन है मतलब प्लस सम एरर टर्म, तो हम इसे इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं, और इस केस में हम रिग्रेशन मॉडल रन कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा सोर्सेस क्या है मल्टी कोलिनियरिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और कॉन्सिक्वेंसेस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अभी भी वो ब्लू रहेगा बट वेरिएंस बहुत बढ़ जाएगा, और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो टी रेशियो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली बेटास जो होंगे हमारे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, और जॉइंटली वो दिखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है ना। तो जब हम एफ टेस्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट आएगा, जब हम टी टेस्ट करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट आएगा। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी है। ठीक है, तो लार्ज वेरिएंस हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे VIF की बात की है कि VIF के थ्रू भी हम मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो टी रेशियोज इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि वेरिएंस बढ़ गया ना, और जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो वेरिएंस से अफेक्ट होता है। तो जब वेरिएंस बढ़ेगा स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ जाएगा। अब ये है हमारा डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, अगेन इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, इसको रिवाइज कर लेना। अगर हमारा R² हाई है मतलब जॉइंटली सिग्निफिकेंट है बट टी लो है, तो ये हमारा हो गया मल्टी कोलिनियरिटी। अगर हमारे पेयर वाइज कोरिलेशन हाई आ रहे हैं, मतलब मैंने x2 और x3 के बीच में कोरिलेशन निकाला और वो हाई है, तो हाँ वो तो कोलिनियर हो ही है ना। और अगर मेरा VIF हाई आ रहा है, वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर, तो भी हाई मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर को इन पर्टिकुलर हम 10 से कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद 10। ठीक है बेटा, ये कुछ रेमेडीज हैं, या तो कुछ भी मत करो या कुछ ये सब करके देख लो। तो दीज आर सम ऑफ द रूल ऑफ थम्स इंपॉर्टेंट। क्या क्या कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा को कंबाइन कर दो, वेरिएबल को ड्रॉप करने का सोचो, x2 और x3 में रिलेशन है ना, एक हटा दो, वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करने का सोचो, लॉग लॉग मॉडल यूज करने की कोशिश करो, या फिर वेरिएबल्स को क्या करो ना, एक लैग फॉर्म में ले आओ, 1 साल पुराने में लेके आओ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन को यूज करो। राइट, सो दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। डेटा सेट में और इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत करो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी की। हेटेरोस्केडास्टिसिटी कब एग्जिस्ट करता है, जब वेरिएंस जो है वो चेंज होता रहता है और कांस्टेंट नहीं होता। ये है बेटा सोर्सेज ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसको एक बारी पढ़ लो। तभी भी हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है अगर आप एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल को स्किप कर दो, अगर कोई आउटलायर डेटा है
मतलब सारी इनकम लोगों की 100 से 2000 के बीच में थी, एकदम से अंबानी की इनकम ऐड कर दी, है ना, तो आउटलायर हो गया, तभी भी हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी डेटा को अलग अलग तरीके के लोगों में इंक्लूड करते हो, वैसे वैसे हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। हेटेरोस्केडास्टिसिटी के अंदर हम बेसिकली जीएलएस यूज करते हैं। जीएलएस को बोला जाता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। हम कोशिश करते हैं कि हम थ्रू आउट वेरिएंस के अंडर रूट, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें, ताकि जो हमारे पास न्यू मॉडल आए वो होमोस्केडास्टिक मॉडल हो। ठीक है, अब बेटा यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? अब ये इनएफिशिएंट हो जाएंगे, दे विल बिकम इनएफिशिएंट, बायस्ड भी हो जाएंगे, और जो हमारी प्रिडिक्शन है वो भी ठीक नहीं रहेगी। बेटा ये है कि किस तरीके से हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी को मेजर डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, या तो आप एक बेसिकली डेटा देख के जान जाओ कि अच्छा मैंने बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को डेटा को लिया है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी हो सकती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप एरर यूआई स्क्वायर को प्लॉट करके देख सकते हो, और देख सकते हो कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये गैप इंक्रीज हो रहा है मतलब ये हेटेरोस्केडास्टिक है, तो ग्राफिकल अप्रोच यूज कर सकते हो। इसकी रेमेडीज क्या रहेंगी? रेमेडी इस पे डिपेंड करेगी कि क्या आपको सिग्मा स्क्वायर नोन है या अननोन है। अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है तो आप सिंपली वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड या जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर लोगे। अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो आप देखोगे कि सिग्मा स्क्वायर जो हमारा ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूआई स्क्वायर है वो किससे प्रोपोर्शनल है। तो इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर एक्सआई स्क्वायर, तो आप सिग्मा, इसका अंडर रूट आ जाएगा सिग्मा एक्सआई, तो मतलब आप थ्रू आउट एक्सआई से डिवाइड कर दोगे और जो मॉडल आएगा वो होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका डेटा सेट सिग्मा स्क्वायर एक्स से प्रोपोर्शनल है, तो इसका अंडर रूट हो जाता है सिग्मा रूट एक्स, तो आप रूट एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे डेटा को, और जो डेटा आएगा फाइनली वो होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर, ठीक है। फिर अगर वो सिग्मा स्क्वायर ई वाई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो ई वाई से डिवाइड कर दोगे और होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी कभी हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो भी हम होमोस्केडास्टिसिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। सो दिस इज the end of this revision beta. I hope that you find this revision useful, and do go ahead and revise it before your final exam. Okay beta, thank you.